फॉर्म वेब्स पर भी सुन सकते हैं। This is Akashvani. The Union Budget for 2026-27 will be presented in the Parliament today. We now bring you a special discussion program in Hindi and English on the Union Budget. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You can also listen to it on our mobile app News on AIR and OTT platform Waves. नमस्कार, समाचार सेवा प्रभाग के बजट पूर्व चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में अपने साथी वैभव श्रीवास्तव के साथ मैं चंद्रिका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। A very warm welcome to this pre-budget discussion on Akashvani. बजट से देश के हर नागरिक की उम्मीदें जुड़ी हैं। बजट शब्द जब सामने आता है तो किसान सोचता है कि खेती को टिकाऊ बनाने के लिए उसे क्या मिलेगा। युवा ये जानना चाहता है कि रोजगार और स्टार्टअप्स के लिए कौन से नए अवसर खुलेंगे। मध्यम वर्ग के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या टैक्स में राहत मिलेगी या फिर जेब पर बोझ और बढ़ेगा। और आम गृहिणी जिसके लिए बजट का सीधा मतलब होता है रसोई का संतुलन, क्या महंगा होगा और घर का खर्च आर्थिक दबाव में कैसे संभलेगा। यानी बजट सिर्फ अर्थशास्त्रियों का या चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये देश के सीधे तौर पर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान उपस्थित हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय आर्थिक विश्लेषक उदयन राय और शिशिर सिन्हा हैं जिनका हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में और आपसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। और साथ ही हम मुंबई और चेन्नई के स्टूडियोज भी चलेंगे, वहां से भी हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। Absolutely. At the onset, we all know how important the budget is. It is the 9th consecutive time that the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman will be presenting the budget. Here she is. We are seeing her walking on the footsteps of the Sansad Bhavan. Shishir, my first question at the onset, what should be the budget like, or what do you expect the budget to be like? Thank you very much for inviting me, and you have rightly used the word expectation, because the time is now over for any kind of speculation. What we can only say that what we can expect from the budget. See, this time from a very common taxpayer point of view, we should not expect much relief on the taxation front, because that has already been done in 25-26. First by changes in the direct tax, and second by the GST, which implemented from September 22, 2025. So what can we expect? See, this year budget is important because from April 1, 2026, we are going to have new income tax law. Number one. Number two, there are many questions on what will be the shape of the law. Of course, the law has already been enacted. Law is in the public domain, but still there are a number of questions. So what we are expecting in this budget, that the finance minister will try to answer all those questions. So you will find that the part B, which is normally shorter than the part A, will be a longer one, and it will give a kind of short-term vision, medium-term vision and longer-term vision. The second thing which is important is especially considering the geopolitical situation and considering the investment flow, how to attract more and more investment. Investors need very much clarity on what kind of taxation system is going to work. So in the part B, that will also be explained in much detail. So this is one change which we are going to see. The third thing, there are some new things which are coming into operation, especially like Manrega is being replaced by VVG Ramji. So what kind of allocation would be there, people would be interested in knowing. And the fourth thing which is very important is that from this year budget, we are not going to see a concrete fiscal deficit, but the range of the fiscal deficit, and more focus will be on debt to GDP ratio. Because last year the government announced that we are going to reduce the fiscal debt to GDP ratio, and the target is 50% plus minus 1 or 2 in next 5 years. So what would be the debt to GDP ratio? So these are 4 or 5 critical things which we are expecting in this budget. लेकिन उदयन सर, जैसा कि ये बजट बनाना एक बहुत बड़ी कवायद है और सरकार को लगातार अपना घाटा भी पूरा करना होता है, और कोविड के बाद से लगातार लोगों को राहत देती आई है सरकार, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को एक तरफ घाटा पूरा करना है, दूसरी तरफ विकास के रास्ते पर अग्रसर होना है। और ये ऐसे सिनेरियो में, पूरे परिदृश्य में, क्या ये कहना उचित होगा कि जीएसटी के कारण जो विकास यात्रा है वो बहुत तरीके से आगे बढ़ पाई है?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ना केवल जीएसटी, अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के दूसरे जो काम किया गया है, चाहे वो आपके यूपीआई हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो, तो अब जैसे कि अब मान लीजिए कोई पेंशन जाता है, वो पहले जिस तरीके से जाता था और अब जैसे जाता है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। अब रियल टाइम डायरेक्ट स्पर्श के थ्रू से जाता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ये बहुत कारगर चेंजेस हैं। मनी मैनेजमेंट गवर्नमेंट का, वो उसकी जो हाउसकीपिंग हुई है वो बेहतर हुई है और बिल्कुल पैनापन है। पहले अगर एक ब्रॉड साइड फायर करते थे, अब बिल्कुल शार्प शॉट्स निकलते हैं। तो ये अपनी जगह ज़रूर है, पर अगर आप मुझसे पूछें कौन दो चार चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जो शीशे ने कहा, वहाँ से मैं एक छोटी सी बात करता हुआ निकलूँ। एक डेट इन्वेस्टमेंट्स जो होता है, जो अगर डेट फंड्स होता है या बॉन्ड्स में लेते हैं, उसका एक ट्रीटमेंट किया गया है पीछे, कैपिटल गेन्स जो हटाया गया था। उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो एक पूरा क्लास है ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे जो निवेशक है उसको कंसिडर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें टैक्स आपका इतना ज़बरदस्त निकल रहा है। अगर हमें आप देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे में डेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, डेट मार्केट्स के बारे में बात की गई, तो अमूमन ये पाया जाता है किसी भी विकसित देश में शेयर मार्केट से कहीं ज़्यादा बड़ा डेट मार्केट होता है। अगर उसका विकास आप उसको सेमिनार्स या ऐसे डिस्कशन हम जो स्टूडियो में कर रहे हैं वहाँ से हट के वो एक कारगर एक व्हीकल बने, क्योंकि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे तैयार करना है, वो डेट से तैयार होगा, वो इक्विटी से नहीं होगा। वो बैंक भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपसे फिक्स डिपॉजिट ले रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए आपको डेट मार्केट सुधारना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे टैक्सेशन, आपके और हम जैसे लोग अगर पैसे नहीं डालेंगे तो फिर हम विदेशियों पे निर्भर करते, तो वो एक हिस्सा है। पर मैं क्विकली दो चीज़ें बताता निकलूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर दुनिया अगर देख रही है और हम अंदर भी जो भारत में देख रहे हैं, सबसे पहला है कि हम एक जो चैलेंज रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, ज़्यादातर मैं कहूँगा करेंसी, एक्सपोर्ट से करेंसी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है पर उसका करेंसी पे आपका एक फ़र्क पड़ा है, कैसे परसीव किया जा रहा है। और हमने करेंसी में डेप्रिसिएशन किया है, कुछ आयात ज़रूरी है। वो कौन से प्रपोजल्स होंगे जो हमारे करेंसी को, ये काम बजट का नहीं है, ये रिजर्व बैंक करता है, पर वो लॉन्ग टर्म दूरगामी कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, जिससे लोग कहेंगे कि ठीक है हम भारत के साथ और ट्रेड करेंगे, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। क्योंकि जब आपका नेट फिक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, नेट कुछ आप अंदर आता है कुछ बाहर जाता है, वो जब ऊपर जाएगा, अभी वो उसका स्तर नीचे गिरा है, वैसे अंदर आ रहा है, पर नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे ऊपर जाने वाले जो प्रस्ताव होंगे उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 है रूरल इनकम्स, जो है आपके रूरल एरियाज में जो आय है उसको बढ़ाने वाली कौन सी ऐसी बातें हैं जो बढ़ेंगी। क्योंकि अगर अर्बन एरियाज में भी आप पाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है आगे चल के हर 10 भारतीय में से 4 सिटीज़ में रहेंगे, शहरों में रहेंगे, पर वो अपनी जगह है। पर अभी भी तो ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में, तो रूरल इनकम कैसे बढ़ेगा, वो एक है। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सिर्फ टेक के उसमें नहीं है। हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप और हम जिस तरीके से मोबाइल फोन्स का भारतीयों ने इस्तेमाल किया, क्या वो हर हिस्से में भारतीय के हर काम में कैसे आएगा। और इसका मैं आखिरी वाकई ये बताता चलूँ कि अमेरिका और दूसरे देशों के फ़र्क ये इकोनॉमिक सर्वे में भी है कि फ़र्क ये है, उनकी इनकम का हिस्सा जो वो प्रोडक्टिविटी से या गुणवत्ता से बढ़ता है, और वो वेल्थ क्रिएट करता है, वो आपके इनकम ऊपर करता है। जो काम आप 5 दिन में करते हैं वो अगर 1 दिन में करते हैं तो जाहिर है आप बेहतर होंगे, आप कमाएंगे ज़्यादा। और इसको कैसे वो डिफ्यूज़ किया जाएगा, जो आपने देखा होगा, इसके बारे में मेंशन भी है। ये 3 तो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, पर अभी मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। लेकिन जिस तरह से अभी पीछे दिनों में हमने देखा है, पिछले कुछ सालों में, कि टैक्स पेयर की संख्या भी बढ़ी है और लोगों को अब ये एक उनके दिल में ये चीज़ है कि राष्ट्र के लिए उसको टैक्स देना ज़रूरी है। और
बढ़ चढ़ के लोग देते हैं और उस पर गर्व भी अनुभव करते हैं। तो इसका भी एक फर्क पड़ेगा। और दूसरा जो आपने कृषि क्षेत्र में कहा, किसान की आय कमोबेश अगर बढ़ती है तो उसका भी लाभ मिलता है। और एक जीडीपी जो 7.2% ग्रोथ प्रोडक्ट है सकल घरेलू उत्पाद का, तो इसकी संख्या 330 लाख है। जीडीपी में भागीदारी जब बजट में एलोकेशन होगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर इसका कितना योगदान रहेगा। जैसे कि ये कहा जाता है ना कि एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। जी देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि आज जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत जो व्यय की बात है, उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर सरकार 1 रुपया निवेश करती है तो उसका फायदा 3 रुपए का होता है। दूसरा क्या होता है कि निजी क्षेत्र को एक विश्वास बनता है कि सरकार पैसा दे रही है तो हमें भी आगे आना चाहिए। ये एक हकीकत है कि निजी क्षेत्र का निवेश उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है जिस रफ्तार से उम्मीद की जा रही थी, और सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया है। तो अब जरूरत यह है कि उनकी परेशानियों को हम समझें और देखें कि कौन सा ऐसा मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से वो निजी क्षेत्र नहीं आ पा रहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने एक आंकड़े का जिक्र किया, 330 लाख करोड़, ये हमारी अर्थव्यवस्था का आकार है। और अब हमारा 3 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का जो कि 2027-28 का है, फिर उसके बाद $5 ट्रिलियन का है जो कि 2030 का है, फिर 2033 में हम $10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं और 2047 में $30 ट्रिलियन यानी कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप निजी निवेश को किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा जो आपका था मुद्दा कि किस क्षेत्र के लिए आवंटन किस तरीके से होता है, चाहे वो कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें या सेवा क्षेत्र की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का कृषि क्षेत्र पे होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लगभग हमारी 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति जो है वो कृषि पर निर्भर है। और अगर आप जीडीपी में उनका योगदान देखिए तो वो 3%, माफ कीजिएगा, करीबन 15 या 17% के लगभग में 3% की दर से वो विकास कर रहा है। तो कृषि आय का बढ़ना इस समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें काफी बड़ी आबादी वहां पर निर्भर है। और वहां पर जैसे हम कहते हैं कि अब वीवी राम जी है, उसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसके अलावा यह है कि किसानों को समय पर कर्ज और वो भी रियायती दर पर कर्ज मिले। ये 2-3 ऐसे प्रावधान हैं जिनके जरिए उनके लिए संसाधनों का इंतजाम करें। फिर यह है कि किसान जो उत्पादन कर लेता है उसके लिए बाजार कैसे विकसित हो। तो जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग एफपीओ कहते हैं, वो एफपीओ को की व्यवस्था को और कैसे मजबूत करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में इन पर जिक्र होगा। जी। And let's take a stock update in the middle of this important discussion. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and Nifty were trading in positive zone during morning trade today ahead of the presentation of the Union Budget 2026-27. Sensex added 159 points to 82,428, while the Nifty rose 31 points to 25,352. When reports last came in on the sectoral front, buying was seen in auto, capital goods and industrials, while metal was the major drag. Then geopolitical shocks like we've never seen in the history. Tech transfers or tech changes like we've never seen in the history of mankind, rather. Things are changing not just every 6 months or every quarter, they are changing every week. AI gaining up on jobs, on employment, and the impact is pretty clear. And India, as Honorable Shri Ashwini Vaishnav ji had said in Davos, that India is not just an adopter of AI, it is actually leading the revolution from the front. What do you think are the things that we need to focus on in the coming times, or what the budget will focus on when we talk about geopolitical changes, when we talk about tech changes, and we talk about the fact that India's fundamentals, the balance sheets, have stayed strong? Yeah, so I'll just take off from the speech or the things that the minister said at Davos. Absolutely. So he actually, interestingly, he clarified what India is trying to do, and it's very smart. Yes. So he's talking about the whole chain. He's talking about your semiconductors, Yes. chips, the power that's needed, okay, to produce all these things. Also, the power that's needed to AI requires a lot of power.
Okay, and then all the models and things like that. So the first time anybody from the West talks about AI, and they're talking about some godforsaken amount of money being spent on developing models. So we are trying to be smart in using AI. We are not trying to reinvent the wheel. It's like the difference between DeepSeek and ChatGPT. So when DeepSeek from China came out, so ChatGPT had to acknowledge, almost everybody acknowledged how smart they were. So we are trying to be smart, and we are smart. So we don't need a certificate from anybody else. So now comes the important point. Why is this so important? If you ask me, and I'm probably the 100 millionth guy who's probably saying it, this is as important as the invention, or you can't call it discovery, invention of the steam engine. That revolutionized the way you started having factories. Before that, you didn't have factories. You could mass produce things. Here you're doing things faster. When you're doing faster, if you put in money, you get the return faster. The money is circulating faster. So it's revolutionizing everything. Now, to give you a sense of what happens when you become more productive. Today, about 10 years back, the difference in per capita income between Canada and US, let's talk about the really affluent guys, was very less, about 15%. Today, that gap has become about 40-45%. That is what AI and tech-driven productivity does to you. So what are we talking about? We can leapfrog if we do this well. If we do the energy transition well into green energy, then we don't have to keep looking for oil and all the blackmailing that happens related to oil. That's my personal opinion. That's absolutely fine. Don't buy here, do this and do that. We don't have to digest all those lectures, number one. Second is the whole bypassing that we can do. And have we done this in the past? Yes, we have. Guess what? We have done this with mobile phones, and we are going to do it again. And we don't need, this is not some bombastic thing you can see already happening. And we've done it on internet as well. Yeah, absolutely. And look at the AI usage. Every AI company wants to do it here because they need the data. They need smart people. As users, people who are developing. So we are part of the ecosystem. Doesn't matter which step upper lip says what to us. So these are very important things that you're pointing out. वैश्विक परिस्थितियों की हम बात कर रहे थे, चर्चा आपने की बीच में. अभी अगर मैं संसद के शुरू में राष्ट्रपति जी ने रक्षा सेवाओं की सराहना की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उसके बाद आम जनता के बीच एक रक्षा सौदों को लेकर, रक्षा क्षेत्र की सुरक्षा क्षेत्र में ये तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए, तो क्या लगता है कि बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किस तरह का आवंटन देश देखेगा? देखिए, रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आवंटन पर कोई राजनीति और कोई बौद्धिक चर्चा नहीं हो सकती. वो अनिवार्यता है, वो आपको करनी ही करनी है. और जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, अगर हम अपने पड़ोस की ही बात करें, जिस तरह के माहौल की बात है, उस माहौल में हमें कई तरह के, चाहे आप ज़मीनी स्तर पर तैयारियों की बात करें या आभासी दुनिया में तैयारियों की बात करें, दोनों को मजबूत करना है. और ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात को तो हमारे लिए जाहिर कर दिया कि अब की लड़ाई जो है वो केवल आमने सामने नहीं लड़ी जाती है, बल्कि आभासी दुनिया में भी लड़ी जाती है, बल्कि आप टेक्नोलॉजी के जरिए भी आप लड़ते हैं, जहाँ पर कहते हैं ना, बिना एक खून की एक बूंद बहाए जो है वो आप लड़ाई जीत भी सकते हैं. वो उस सिंदूर के माध्यम से काफ़ी हद तक स्पष्ट हुआ है. तो रक्षा सौदों पर जितना निवेश है, और देखिए, रक्षा को लेकर के एक बात कही जाती है कि रक्षा को लेकर के जो खर्च है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, यानी कि राजस्व खर्च का बात है. ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि उसको हम लोग कैपिटल में क्यों नहीं रखते हैं. लेकिन वहां पर एक जो बड़ा हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, वो एक बहुत बड़ी रकम होती है. उसमें कितना प्रावधान किया जाता है उस पर हमारी नजर होती है, क्योंकि वो रक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में काफी हमारी मदद करता है. लेकिन इसको जब इसको रखा जाता है इसकी मद में खर्च करने के लिए, तो क्या ये एक मेरा स्वाभाविक सा प्रश्न है कि क्या वो पड़ोसियों की रक्षा तैयारियों को देखते हुए भी उस पर खर्च किया जाता है क्या? अगर आप मुझसे पूछे, आपके पास जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो पहले क्या होता है, तादाद कितनी है. अब
आपके पड़ोसी भी यही कहते हैं कि आपको आपके जो डिफेंस फोर्सेस उसको स्मार्ट होना पड़ेगा। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमें बहुत खर्चा करने की ज़रूरत है अगर हम ट्रेडिशनल माइंडसेट से चलें, पर हम तो भारतीय हैं, हम स्मार्ट काम करते हैं। आप देखिए ना, एयर डिफेंस में अगर कोई, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर आपने जब कोई भी डिस्कशन देखी कितने स्मार्टली हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है और कितने स्मार्टली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पड़ोसी यस, पर अगर हम अगर हमारे आप पड़ोसियों को चुन तो नहीं सकते, उनके साथ आप डिप्लोमेसी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि चाइना का रक्षा खर्च हर बजट में बढ़ जाता है। पर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना जो खर्च करता है वो स्मार्टर खर्च है। वो जो युद्ध पोत बना रहे वो अपने यहाँ बना रहे। अमेरिका ने युद्ध पोत ही बनाना बंद कर दिया है, अब उनके पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो कई चीज़ें जो हम खुद बना रहे हैं और लोग तर्क करते हैं ये क्यों बनाने की ज़रूरत है, ये क्या हो रहा है, ये ठीक से नहीं हो रहा है। जो भी है, सक्सेस भी हमारी, फेलियर भी हमारा, ठीक है ना। और हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। अगर सब मिलके कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी मिलके कर रहे हैं, दिमाग लगाया जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और जैसा कि शिशिर सर ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये किसी चर्चा, वाद विवाद से परे होता है, क्योंकि ये पूरे देश की रक्षा और सुरक्षा का प्रश्न है। इस बीच we have online a special guest. We have Ms. Gauri, the chairperson of the Economic Committee of Hindustan Chamber of Commerce. Welcome to the discussion, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. The budget will be presented very shortly. What are your views? What are the expectations of the budget? The major areas that we can focus on. Yeah, this is every budget, gives a lot of expectations. This budget, especially soon after the GST 2.0 reforms, so now the demand side is taken care. Now the supply side will be looked into. What all the things stops given for it. Then infrastructure, the major thrust, and the macro stability in the fiscal consolidation, and then the last, what is that is the surging gold, the topic which has been, every minute being talked about by every individual. Will there be any tax on it? Will there be any import duty reduction? What will be the status from the retail purchaser and as well as from the investor speculators? So these are all the major things which causes the thing. And one more supplementary thing, which as a senior citizen segment which I have been interacting, they were expressing now that there is a lot of awareness happened with reference to mutual fund. So the FD interest, if it is increased for the senior citizen for a longer period, probably those who stick to the conservative type of investing, continue to invest in fixed deposit with public sector banks, would get benefited because they have no idea about mutual funds, nor they would like to take a risk about it at this age. So that one thing from the senior citizens corner was looked upon. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable insights. Shishir, a very important point that Ms. Gauri, the chairperson of the Economic Committee there, told us that domestic consumption has always been a very strong focal point for the strong benchmark of the Indian economy's performance. Now too, we are seeing the same thing as Udayan just mentioned. We are talking about domestic production in India for defense. We're talking about defense. We're talking about defense exports being increased to a massive level. We're talking about investments, as ma'am just mentioned. The small investor, the medium investor, the large investor, the households that are investing everywhere. The domestic word is just keeps getting highlighted. How important will it be to ensure or make sure that the investors who are in India आपके जवाब देने से पहले मैं श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगी कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मीटिंग इस समय हो रही है। जी Vaibhav, the thing which you ask about the consumption thing, especially about the domestic consumption, economy runs on two kind of thing. One is called virtuous cycle, another one is called vicious cycle. So when we are talking about target, medium term, short term or long term, we have to focus on that how we are promoting the virtuous cycle. What is virtuous cycle? Just for the sake of our listeners, I would like to add here that the virtuous cycle means that one positive is leading to another positive. That means when the consumption is high,
the producer will be encouraged to produce more. When the producers are in producing more, that means there will be more and more job opportunity. Then when there will be more and more job opportunity, people will have more money in the hand, and if they have more money in the hand, they will go for the consumption. This is the virtuous cycle. So that virtuous cycle, even if you can remember when Chief Economic Advisor was talking about economic survey for 25-26, he also focused on the that's virtuous cycle. And at this moment, rural consumption is good, but urban consumption is slightly on a lower side, and that is the real concern, how to boost that urban consumption. Any particular reasons for that, Shishir? One thing is that because of this, you can say that the increment or the increase in the salary is not that much which we were expecting, and that could be one of the reason why that consumption, urban consumption, is not picking up. This is one reason, and many of the economists have said this thing, and in fact many of the survey has also mentioned about that the urban area, we are not seeing the increase in the income per se as compared to the rural area, because in rural area you have number of schemes which is giving more money in the hand of the people. When we talk about this Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, or whether we talk about Manrega, of course now it will be called as the VBG Ramji. It has not been implemented, so as of now we will talk about just the Manrega. Sure. And there are certain other schemes also. And the other thing which we need to remember, that the MSP of almost 21-22 crops have also increased significantly, so that is also giving some kind of increase. We have good food grain production, so rural consumption is good. We have to focus on the urban consumption. So if you see 25-26, that when the income tax reduction was done, that means earning up to annual earning up to rupees 12 lakh, and for the salaried person 12.75 lakh, no taxation at all, no income tax at all. That was the purpose, to provide some more money in the hand of the urban consumer. At the same time, when we saw that GST 2.0, which was implemented from September 22, 2025, that was also the real purpose behind that, to provide the good at a cheaper cost. So you have money in the hand and the goods are available at a cheaper cost, so you will go for consumption. And we have seen during last 3-4 months how the consumption has picked up. Today, automobile companies are sharing their numbers, their monthly sales, and if I go by the two company numbers which we have just got, both of them have recorded good sales in the month of December. So that shows in the month of January. So that shows the consumption is slightly picking up, but we need more and more measures to that. And corresponding to that, you talked about the domestic investor. Investor, not just the individual investor, we also have to think about the corporate investor, also the stock market investor. True. We have almost 13.9 crore unique investors in the stock market, and overall 19 crore investors in the stock market. Now, to encourage more and more retail participation, we have seen the flurry of IPOs. More and more IPOs are coming. More and more people are putting money into that. But at the same time, we are also seeing that more and more people are putting money in the F&O market, where the losses are very high, and 9 out of 10 investors are losing money. So we have to channelize that particular money from the retail investor in more productive side, rather than just going for more speculative side. So this should be the strategy of this budget. जैसे कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, वैसे भी वो जो एक लक्ष्य है विकसित भारत का, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं. तो बजट में मूल रूप से आप किन सुधारों की अपेक्षा रखते हैं? ये अभी आकलन नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है. अगर मैं आपको एक ब्रॉड मतलब डायरेक्शनल एक्सपेक्टेशन बताऊं, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें जो भारत में अधिक उत्पादन, अधिक सप्लाई उसको रोक रही है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, उद्यमियों का, या कुछ और चीज़ें हों, तो वो सारी रिफॉर्म्स जो बाधा डालती हैं आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करने में, बेहतर गुणवत्ता करने में, नए मार्केट खोजने में, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जहाँ जिस सेक्टर में हैं वो उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ पे होगा. ये भी मैं कहता चलूँ, शायद ये मैं बहुत ज़्यादा कह जाऊँगा, आई थिंक ये वाला जो बजट है ये रिफॉर्म्स वाला बजट होगा, क्योंकि इसके अलावा ये जो बजट है ये अगले 1 साल वाला बजट नहीं है. ऐसे जियोपॉलिटिकल दूरगामी प्रभाव बिल्कुल, क्योंकि
इसमें आपको कई चीजों में आपको चेंज करना पड़ा, आपको नए मार्केट ढूंढने पड़े, नई ग्रोथ इंजन, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर, वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत के नए जो मित्र देश हैं जी, और जो नए हमारे समझौते होते हैं उन सबको देखते हुए तो ये एक बड़ी चुनौती पूर्ण कार्य देखिए किसी ने कहा है, मतलब कई लोगों ने ही कहा है कि जब चुनौतियां आती हैं वो क्राइसिस तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली द सेइंग इज अ क्राइसिस इज टू गुड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस। क्राइसिस दो सिक्के के दो साइड्स हैं, एक साइड में अगर क्राइसिस या चैलेंज है, दूसरी साइड में एग्जैक्टली क्राइसिस वर्ड नहीं है, ये चैलेंज है, चैलेंज है उल्टे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी सरकार ने सारे वो इंडिकेशन दिए हैं कि वो ऐसे एक बजट लाने वाली है। और आप इसको भी देखें ना, ये इसके बाद ये एक मौका है जब आप बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं। एक बिग शॉट में आके आप कह रहे हैं हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, बॉल आपके कोर्ट में। अपने प्राइवेट सेक्टर देखिए, जो बात शिशिर कह रहे थे वही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अगर हमें विकसित भारत वाला टारगेट हमें अचीव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट 30% फंड शॉर्टफॉल होगा, रिसोर्स शॉर्टफॉल होगा। वो आएगा कैसे? क्योंकि जो इसमें लीडरशिप जो आगे का काम सरकार कर रही थी, सारा का सारा बोझ सरकार नहीं उठा पाएंगी, तो आपको वो वाले काम करने पड़ेंगे, वो वाले प्रपोजल्स लाने पड़ेंगे जो अनलॉक करेगा। हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तकरीबन 3/4 75% के आसपास घूम रहा है, उसको आप 100% करके लोगों को कहेंगे कि कैसे आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स डालेंगे। छोटा मोटा इधर उधर 19-20 हो रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। तो सरकार अगर कहती है कि हम ये बिल्कुल बिग लीप ले रहे हैं, तो फिर सरकार लीड करती है। एक अच्छे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में सरकार लीड करती है, कंडीशंस बनाती है। लास्ट सेंटेंस मैं ये कहूंगा चंद्रिका जी, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, इकोनॉमिक हिस्ट्री, हमारा प्रॉब्लम डिमांड कभी नहीं रहा है, हमारा प्रॉब्लम सप्लाई का है। हमने हमेशा डिमांड मैनेजमेंट किया, दवाइयों के दाम कम कर दो, यहाँ पे उसको पैसे दे दो, उसको वहाँ सब्सिडी, वहाँ पे कट, ये वो सब चले गए। आपको गाड़ियाँ ज़्यादा चाहिए, आपको जॉब ज़्यादा चाहिए, नर्सें ज़्यादा होंगी, डॉक्टर ज़्यादा होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई एंड विड्थ वो बढ़ाने वाले प्रपोजल चाहिए। ये भारत की मांग है, विकसित भारत करने की मांग यही है। शिशिर सर, आप कुछ इन रिफॉर्म्स के बारे में कहना चाहिए? So what I think that when we are talking about reform express, जैसे उदयन सर का कहना है कि वो इसको आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ता हुआ एक कदम आगे देखना बिल्कुल। देखिए, बजट के मामले में एक चीज जाहिर है कि हम जो रिफॉर्म की, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है, उसका हम एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के हमने पिछली बार जब ये देखा था, उसके बाद जब कंसोलिडेशन हुआ था 2019-20 में, उसके बाद प्रधानमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं, वित्त मंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि हमें दुनिया के शीर्ष बैंकों में शामिल होना है। तो बैंकिंग गवर्नेंस को कैसे आप और बेहतर करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट आपको इस बजट में देख सकता है। दूसरा ब्लूप्रिंट आपको FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को लेकर के, उसके ऊपर आपको दिख सकता है। हम आगे बात करेंगे। इस समय फोन पर हमारे साथ बॉम्बे से We have a market expert from Mumbai joining with us in the discussion, Siddharth Kuaval. Welcome to this discussion on Akashvani, Siddharth. Good morning. Very good morning, Siddharth. Budget पेश होने वाला है बहुत जल्द. What are your views? What are your expectations? Any particular sectors that you are looking forward to for the huge transformations that the government is wanting? I think the major announcement will be in infrastructure. That has been the flagship program of this government. And I think good positive announcements will be made for investment into infrastructure by domestic institutions and foreign investors. Some good lucrative incentives and tax relation is expected in this budget. सर, सिद्धार्थ सर, इस समय मार्केट का रुझान आप कैसा देख रहे हैं? Markets are positive, so that's an indication budget will be positive and nice, giving some direction. Thank you so much, Siddharth, for those valuable insights. Udayan, again, my question will be to you. We've talked about the long-term vision of the government. We talked about making sure that the potential is reached to take all the cues from geopolitical situations and making sure that India remains a beacon of hope
We've seen in the recent past that the government has moved on from multilateral agreements, or as you've just mentioned, I won't repeat it, but then yes, we have tackled a certain person, a certain economy in a very smart way, in a very brilliant way. We have still kept on our engagement, but we haven't said a particular answer. We've moved on to bilateral trade agreements, and we've done these agreements with huge number of countries, and now with the European Commission, with the European Union, the mother of all deals has been cracked. How important are these deals in the long-term efficiency of the economy, and how important are these deals in making sure that India keeps the supply chains active? Well, Vaibhav, let me say this, that the proof of the pudding lies in eating. तो अगर आपने डील कर लिया पर उसका आप फायदा नहीं उठा सकते जी, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ. हमारी आसियान के साथ डील है. Is that a spectacular success? I suspect not. Okay, तो डील एक फैसिलिटेटर है. Then you need policies, आपको नीतियां चाहिए, उसके ज़मीनी जो इम्प्लीमेंटेशन वो इम्पोर्टेंट है. अब देखिए क्या हो जाता है, अगर आप कुछ रिफॉर्म्स नहीं करते हैं तो ऐसे डील में जब जाते हैं तो आपके पास कुछ कार्ड्स होते हैं, वो वीक कार्ड्स होते हैं. हम अगर आज हम RCEP में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कुछ डेयरी दूसरे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमें लगता नहीं है कि हम उसको प्रतिस्पर्धा को झेल पाएंगे. अब अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं और हमारे पास हमारे लिए वो महत्वाकांक्षा और सही है, तो आप फिर तो विरोधाभास हो जाता था. हम ये कह रहे हैं कि हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं और इधर कमजोरी है. तो ये बजट जैसे मौके आते हैं, वो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसे प्रपोजल्स चाहिए, ऐसी नीतियाँ चाहिए जो आपका जो रिलेटिवली नॉट सो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है. वहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी इनकम्स बढ़ेंगी और वहाँ पे भी गुणवत्ता वाली बात है, ठीक है ना. तो वो ठीक करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे. आगे बढ़ने से पहले हम संसद भवन चलते हैं. हमारे संवाददाता दीपेंद्र वहां पर हैं. दीपेंद्र जी, हाँ बताइए, क्या आप आसपास देख पा रहे हैं और क्या वहां पर नई ताजा अपडेट है? देखिए, कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक चल रही है. इसमें जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको मंजूरी दी जाएगी. इससे पहले हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, जहां राष्ट्रपति ने जो है द्रौपदी मुर्मू ने दही चीनी खिलाकर जो है उनको अपनी शुभकामनाएं दी हैं. आपको बता दूं कि ये जो निर्मला सीतारमण जी का लगातार 9वीं बार जो है केंद्रीय बजट जो है पेश करेंगी. 2019 में जब से उन्होंने वित्त मंत्री का पदभार किया था और अपने बजट भाषण में वह अगले वित्त वर्ष के लिए जो आर्थिक विकास की जो रूपरेखा है, उसके साथ सरकार की जो आय है, व्यय है, उसका ब्यौरा जो है इसमें वो प्रस्तुत करेंगी. क्योंकि हमने देखा था कि बजट तैयार करते समय जो है सभी से उन्होंने राय मशवरा लिया था, चाहे वो युवा हो, आम नागरिक हो, सभी से उन्होंने सुझाव लिए थे. उसके बाद जो है आज ये जो बजट जो है 11 बजे पेश किया जाएगा. सबसे पहले यह बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद इसकी कॉपी जो है राज्यसभा में रखी जाएगी. जी दीपेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो उदयन सर, बजट की एक अग्नि परीक्षा होती है महंगाई पर नियंत्रण रखना, क्योंकि सारी चीजें उसी से हैं. माल ढुलाई है, वो जेब पर भारी पड़ती है. तो सरकार इसके लिए क्या उपाय कर सकती है? क्योंकि अभी वैश्विक परिस्थितियों में पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें जो हैं किस ओर ले जाएंगी महंगाई को? देखिए, अगर कच्चे तेल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड काउंट योर ब्लेसिंग, आपको जो आशीर्वाद मिले हैं उसकी गिनती आपको हमेशा करनी चाहिए. तो अच्छी बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तेल के जो कच्चे तेल के दाम वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं. दूसरा है चंद्रिका जी, ये चीज़ तो माननी ही पड़ेगी, चाहे जितने मर्जी लोग आलोचना कर लें आर्थिक नीतियों और पिछले 10, 12, 15 साल में, कि हमने इन्फ्लेशन मैनेजमेंट बेहतर किया है. अगर आप आज़ादी के बाद से देखें तो एक बिल्कुल सेक्युलर ट्रेंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बैंड है वो कम होता चला जा रहा है. ये कब रहा है कि इन्फ्लेशन रेट इतना इस रेंज में रहा है? इन्फ्लेशन रेट जब कम रहता है उसके फायदे क्या है? आपके जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो एक टैक्स है
सो गरीब से गरीब जो भारतीय है उसको भी देना पड़ रहा है, जो कि बहुत अनफेयर है। तो इन्फ्लेशन ब्रॉडली कंट्रोल में है, मुझे नहीं लगता वो बाहर जाने वाला है। आप अगर, मैंने जैसे पीछे बोला, सप्लाई इशू है, आप सब्जियां ठीक टाइम पे पहुंचनी है, उसके सीजन के हिसाब से प्रॉब्लम होती है। आप मैनेज फूड ग्रेन्स मैनेज अच्छा कर रहे हैं, आप जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इंपोर्ट्स को ठीक कर रहे हैं, सर्विसेज को आप ठीक कर रहे हैं। अगर आपके पास अस्पताल की सप्लाई ठीक नहीं है, 2 ही अस्पताल हैं और लाखों लोग हैं, तो नेचुरली चार्ज बढ़ेगा। आप अगर उसको ठीक करेंगे तो आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम ठीक रहेंगे। तो ये जो सप्लाई साइड है उसको अगर बेहतर मैनेज करेंगे, आपका सिस्टम बचत योजनाओं पर भी सरकार का कुछ ध्यान जाएगा, मुझे लगता है जाएगा। और उन पर देखिए, जब आप मूव कर रहे हैं मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स के, पहले क्या होता है, एक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पीएफ में मिल रहा है, स्मॉल सेविंग्स में कुछ और मिल रहा है, उससे क्या होता है कि जो दाम है, फंड्स के जो प्राइस है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। आपको एक बेहतर सिस्टम करना पड़ेगा जी, इंटरेस्ट रेट मैनेजेबल है, पर आपको ये भी नहीं करना कि जो बुजुर्ग हैं उनके फिक्स डिपॉजिट का रेट तो आपने कम कर दिया और इधर आप लोन दिए जा रहे हैं और वो लोन रिकवरी नहीं हो रही। तो दोनों साइड से वो चेक्स एंड बैलेंस हुआ है, वो बेहतर हुआ है, परफेक्ट नहीं है, बट देन वो परफेक्शन आपको, इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस, राइट? I believe then India is in a position of going through a marathon and a sprint together. Shishir, what will your views be when I talk about different sectors? We talked about a dream that was shown to us by the Honorable Prime Minister a decade back, that we can become self-reliant in all of our spares. We've seen more than 5,500 items of the defense supplies being manufactured in India. Now the deals that happen, be it aircraft, submarines or any other thing, any other huge equipment, the deals have a huge clause in them that they will be having a tech transfers. The position of a Goldilocks, how do you see the future? How do you see that we define different sectors with this huge transformation that is happening? Or one of my colleagues was just saying reform, transform and perform has actually happened. Okay. Coming to the term which we have used is a Goldilocks. That's a very unique term, and everybody is using that. I mean, even the economic survey has also talked about the Goldilocks situation. Just for the sake of our listeners, we need to understand that the Goldilocks basically implies high growth rate and lower inflation rate. Fortunately, as Chandrika ma'am was asking about the inflation rate, currently the inflation rate is much below the RBI targeted range of 2 to 6%. That range, so that is giving some kind of comfort. At the same time, when we talk about reform, and if you go by the economic survey has used a very interesting line that Swadeshi is necessary, but Swadeshi should not be used, or Atmanirbharta should not be used to block the import, but to use the enhance our capability, our capacity. That means when we talk about Swadeshi, when we talk about Atmanirbharta, these are not the two terms, these are the two parts of one particular goal, what we call as the Viksit Bharat thing. And Swadeshi or Atmanirbharta means that we need to manufacture more and more, and wherever we need something to import, like we need raw material, we need some kind of technology, there should not be any hesitation. So Swadeshi or Atmanirbharta is not creating the import wall, but it is facilitating the domestic infrastructure. Absolutely. So we believe that the inflation data that has come from the World Economic Outlook database from IMF has shown that India has seen the highest reduction, that is 1.8% in headline inflation among major economies in 2025. इस बीच कैबिनेट की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है और कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी मद में सरकार कितना क्या कुछ कर सकती है? स्वास्थ्य, देखिए जैसे मैं कह रहा था कि डिमांड मैनेजमेंट ज्यादा रहा है, ठीक है ना, तो आपने इंश्योरेंस बनाई है जो आप दे रहे हैं, फिर सप्लाई की है कि जो भी आयुष, दूसरा जो मेडिसिन का सप्लाई, पर इवेंचुअली आपको जो सर्विसेज हैं
उसके ऊपर ध्यान देना है। डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। प्राइमरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो है, आधी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल रही हैं, फिर उनको प्राइवेट। ये मैं बताता चलूँ कि एक भारतीय अगर 100 रुपये हेल्थ में खर्चा करता है तो 65 से 70% उसकी जेब से जाता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक विकसित देश की निशानी नहीं है। तो वहाँ से तो आपको कोई भी प्रस्ताव अगर इस बोझ को कम करता है, क्योंकि हम जैसे जैसे हम हमारे देश में हमारे हेल्थ आउटकम्स बेहतर होने, हम वी आर लिविंग लॉन्गर। तो जैसे कई बीमारियां वो लाइफस्टाइल बीमारियां, डायबिटीज़, हार्ट, इनकी जो आप इसको ट्रीटमेंट करने जाते हैं लाखों में जाता है। एक बार अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, आपके आर्थिक स्टैंडर्ड में इससे नीचे जाता है। तो आपको सप्लाई बेहतर करनी है, डिलीवरी बेहतर करनी है, ताकि लोग अस्पताल ना पहुंचे और इससे जुड़ी हुई कई जो बातें हैं. And there was a major boost, I believe Shishir knows this and we all do, that the GST on insurance was lowered completely to 0%, and that was one of the major steps that was taken in GST 2.2. Shishir, your views? See, what I wanted to add, what Udayan sir was talking about, out of the pocket expenses. If you go to the economic survey, the two things they have discussed, one is called obesity, and the second one they have discussed about the mental health, especially because of the very high screen time we are spending. So these two things are also adding to our expenses on the health. Whenever we talk about the health expenditure, we always think about the critical illness. We are not talking about the illness or the some kind of diseases which are, I mean, almost grappling us. We are just trapped by those diseases. They're creeping up slowly. Yes. Like obesity. Obesity is one of the, what we can say, the worst thing happening with a human being, because that affect not just the productivity, but it also affect the overall contribution in terms of the GDP. So there we have to think about what more can be done. Right? Second thing about the health infrastructure. Unfortunately, the primary health center or the government provided health centers have a very, very limited capacity. There we need to boost up. The good thing we have seen that we have given some kind of encouragement for the health infrastructure to states as well as local bodies also. There we need to give more and more encouragement, because health is one thing which is directly related with the productivity. If the healthy person is there, he will be able to produce more, or he will be able to contribute more in the productivity. तो ये देखना होगा कि बजट से आर्थिक गति को कितना और तेजी मिलती है. Absolutely, Chandrika, the reform 2.5 मिनट बाकी है. Absolutely. Well, talking about one thing that Devendra, our correspondent, had told us from the Sansad Bhavan was the fact that the Honorable President has shared some dahi chini with the Honorable Finance Minister. Some traditional things that we always see happen. We in India take our roots along with us. We're always grounded. When we talk about of that, I believe we have a new update, Chandrika. हाँ, अब बिल्कुल बजट पेश होने के ही उस पर है. निर्मला सीतारमण और सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री लोकसभा संसद भवन में पहुंच चुके हैं, और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर सरकार का एक बड़ा फोकस एरिया रहा है. सड़क, रेलवे, शहरी विकास के लिए कितना बजट में आवंटन होगा, क्या ज़मीनी स्तर पर रोजगार और निवेश को गति मिलेगी, रक्षा सुरक्षा को किस तरह का प्रोत्साहन मिलेगा, और युवाओं के लिए ख़ास तौर पर इस पर क्या होगा, गृहिणियों के लिए क्या होगा, ये सब देखेंगे. और जैसा कि हमने अभी बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई और बजट प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई. And let's take a little update on the stocks. The benchmark domestic equity indices, the Sensex and Nifty, were trading with modest gains ahead of presentation of the Union Budget 26-27. The Sensex added 219 points to 82,488, while the Nifty rose 51 points to 25,372 when reports last came in. On the sectoral front, buying was seen in auto, capital, goods and industrial. Conversely, metal, commodities and PSU banks were dragging or lagging the most. Udayan, your views? Well, you're asking the wrong person. As a person, I completely ignore what's happening and how the markets are behaving during the budget. True. Only a trader will do it. And best of luck to traders. They have to make money. They have to make their ends meet. As far as I'm concerned, it's another day in the office. So I'll ignore it, and I'll advise any of my friends to ignore it, because it's a long journey. It's a marathon.
you're trying to do something for things which are going to be many years down the line. For the Amrit Kal. No, for my home, my car. That's not happening day after tomorrow. If you need something for day after tomorrow, stock market is not the place to invest. Okay, so that's how I see it. बजट भी इसी तरह की एक लंबी कवायद है और बजट बनाना और उसे तैयार करना। और चंद्रिका मैम, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। उधर ने बिल्कुल सही कहा सर ने कि वो व्यक्तिगत तौर पर उससे नहीं जुड़े, लेकिन आज विशेष दिन है क्योंकि पहली बार शेयर बाजार में रविवार को कारोबार, संडे, हाँ, ये मार्केट ट्रेडिंग। जी। और जैसे कि हमने एक्सपर्ट से पूछा भी तो उन्होंने इसको बहुत रुझानों को बहुत उचित बताया। इस समय लोकसभा में ओम बिरला जी अपने आसन पर विराजमान हैं और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने को ही है। हम सब भी उत्सुकता से बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये कार्यवाही शुरू होगी, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी और यहाँ हमारे जी। और आइए चलते हैं संसद भवन सीधे। निर्मला सीतारामन जी बजट भाषण के लिए आ चुकी हैं। With your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets,
exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology
and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers
such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of
corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradip and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure
and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10% with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven.
Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1.
set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to
to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyang Jan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises,
C. Enhance creation of livestock, dairy and poultry. I'll read that again. Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration,
strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP.
In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time
till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity
from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes.
I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up
sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines,
and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment.
to support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. अभी आप संसद भवन से केंद्रीय बजट 2026-27 का सीधा प्रसारण सुन रहे थे। अब से कुछ ही देर में विशेष बजट बुलेटिन होंगे, लेकिन व्यापक तौर पर बजट में आर्थिक सुधारों के आह्वान के साथ विभिन्न प्रमुख बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया। जैसे ईमानदार करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया की गई है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जीएसटी का सरलीकरण किया गया। शहरों में आर्थिक शहरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मछली पालन को प्रोत्साहन दिया गया है। मछुआरों को मदद के लिए सहायता के विभिन्न उपाय किए गए हैं। सेमीकंडक्टर, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, कॉरपोरेट बॉन्ड, इसके अलावा आयुर्वेद की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों के प्रस्ताव किए गए। काजू, कोको, चंदन की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भी विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं। होटल मैनेजमेंट और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। 7 गंभीर रोगों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। कैंसर रोगियों के लिए दवाओं के निजी आयात शुल्क से छूट दी गई है। व्यापार में सुगमता के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें कस्टम प्रक्रियाओं को आसान बनाने का प्रस्ताव है। कार्गो वेरिफिकेशन बार बार नहीं करना होगा। व्यापार में सुगमता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया गया है। सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली लागू होगी और मछुआरों को निर्यात में मदद के लिए भी प्रस्ताव किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए साल 2026-27 के बजट में देश के विकास पर खर्च 53,47,315 करोड़ रुपए किए जाएंगे और बजट में वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया। वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.4% रहा। बजट में किसी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसके अलावा 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये भी बजट में कहा गया। और एक बार फिर से बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मनरेगा योजना भी जारी रहेगी। 30,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में देश की युवा शक्ति को प्रेरणा दी है। इसमें युवा शक्ति के अलावा गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
आर्थिक सुधारों को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों में बजट पर जोर दिया गया है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक विकास, एमएसएमई पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर फोकस रहा। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बजट में कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए डानकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे की घोषणा की गई। अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। देश में चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। इसके अलावा देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की घोषणा की गई और पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की गई। हेल्थ केयर, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन पर खास फोकस किया गया। तो इस तरह से बजट में विभिन्न क्षेत्रों में जोर दिया गया और इससे आर्थिक विकास की रफ्तार और तेज होगी. Absolutely, Chandrika. Focusing on stable long-term growth was the focus of Union Budget 2026. As we've all read about the economic survey that was laid before the Union Budget, 3 kartavyas or 3 responsibilities were clearly sorted out. One was building resilience. Second was taking aspirations to aims and achievements, and 3, as the Honorable Prime Minister often says, Sabka Saath, Sabka Vishwas, amenities and opportunities for everyone, every nook and corner of the country. Reforms more than 350 plus, including the GST reforms, the labour codes, the quality control reforms, and in more or better cooperation between centre and state. A Biopharma Shakti initiative has been launched or has been announced by the Honorable Finance Minister. More steps towards bettering the condition of the semiconductor. और अब विशेष बजट बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे. नमस्कार, आकाशवाणी से विशेष बजट बुलेटिन के साथ मैं लवली निगम. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश किया. क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल, इसे युवा शक्ति से संचालित बजट बताया. वित्त मंत्री ने कहा, बजट आर्थिक वृद्धि आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के 3 कर्तव्यों से प्रेरित. इसमें प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध होंगे. खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव. वस्त्र क्षेत्र के लिए बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की लघु और मध्यम उद्यम एसएमई विकास कोष की घोषणा की. इससे क्षेत्र के भविष्य के चैंपियन उभरेंगे. श्रीमती सीतारामन ने कहा, एसएमई ऋण लेने वालों के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी. अगले 5 वर्ष के लिए बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान. 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के गठन की घोषणा. वर्तमान 7 संस्थानों को उन्नत किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने लगातार 9वें बजट में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया. खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना की जाएगी. श्रीमती सीतारामन ने अगले 5 वर्ष में कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी. 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अवसंरचना विकास के लिए पब्लिक कैपेक्स 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई.
पूर्व में दनकुली से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे की स्थापना की घोषणा। अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग NW संचालित होंगे। इससे ओडिशा में खनिज समृद्ध तलचर और अंगुल आपस में जुड़ जाएंगे। वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए जहाज मरम्मत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। रेल और सड़क यातायात पर बोझ कम करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। अगले 5 वर्ष में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और रासायनिक उपकरणों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए विकसित भारत बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया। वित्त मंत्री ने भारत से बाहर रहने वाले लोगों को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश की अनुमति दी। सरकार विकसित भारत के प्रमुख संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति का गठन करेगी। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं। संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई। संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। सरकार ने डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की। सरकार भारत को मेडिकल टूरिज्म के प्रमुख क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 5 स्थानों को विकसित करेगी। अधिक पेशेवर चिकित्सा कर्मी तैयार करने के लिए 3 अन्य अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। सरकार अखिल भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रोत्साहन देगी। मुंबई में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVCG कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा, बड़े उद्योगों और लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए 5 टाउनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। देश के प्रमुख विरासत स्थलों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित की जाएगी। सरकार खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत करेगी। अगले 1 दशक में होगा खेल जगत का विकास। वित्त मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट के विकास की योजना को मंजूरी दी। सरकार रांची और तेजपुर में निमहंस 2 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय खोलेगी। आपातकालीन सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में अतिरिक्त सुविधाओं का होगा विस्तार। आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ये उनका रिकॉर्ड 9वां बजट है। वित्त मंत्री ने आज माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जन्म शती के पावन अवसर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा सुधार और जनहित को प्राथमिकता दी है। आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय वित्तव्ययता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। बजट 2026-27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने इस युवा शक्ति संचालित बजट कहा। वित्त मंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के प्रयासों में मजबूती से साथ देने के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक विकास को गति देने, नागरिकों के क्षमता निर्माण की आकांक्षाएं पूरी करने तथा सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और विकास को गति तेज करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। सुधार एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है और ये अपनी गति बनाए रखेगी। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहर को आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा, भारत को एक वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया। इससे जैविक घरेलू उत्पादन के लिए परिवेश तैयार होगा। इस रणनीति के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान और 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन शामिल है। 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार होगा।
देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले वर्ष 22,919 करोड़ रुपए के परिव्यय से आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं। इस गति को पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनाने के लिए खनिज संपन्न राज्य उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की विशेष सहायता का प्रस्ताव किया। बजट में घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। पूंजीगत सामग्री की सुदृढ़ क्षमता में और वृद्धि के लिए बजट में नए प्रस्ताव किए गए हैं। इनमें उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण, घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विनिर्माण और बुनियादी ढांचा मजबूत करने की योजना तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना का प्रस्ताव भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कपड़ा सेक्टर के लिए एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया। इनमें रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर तथा मानव निर्मित फाइबर और आधुनिक फाइबर से आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, पूंजीगत सहायता से पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर और मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्रों तथा परिधानों को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र अनुकूल पहल तथा उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के उन्नयन के लिए समर्थ कार्यक्रम के दूसरे चरण का प्रस्ताव शामिल है। वित्त मंत्री ने इनके अतिरिक्त मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अगले 5 वर्ष में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और रासायनिक कारखानों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए वित्त मंत्री ने 4 उपायों का प्रस्ताव किया। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सभी खरीद के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेन देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में अधिदेशित करना, इस प्लेटफॉर्म पर ऋण गारंटी सहायता तंत्र शुरू करना, जेम प्लेटफॉर्म को ट्रेड से जोड़ना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजी व्यय में भारी वृद्धि हुई है। इस गति को बनाए रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में इस आवंटन को बढ़ाकर 12,20,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। बुनियादी ढांचा विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के प्रति निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा जोखिम गारंटी निधि बनाने का प्रस्ताव किया। भारत को उच्च गुणवत्ता और किफायती मूल्य पर खेलकूद सामानों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वित्त मंत्री ने निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थित पहल का प्रस्ताव किया। बजट में विरासत के 200 औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार के लिए नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने चैंपियंस के रूप में इन्हें विकसित करने के लिए 3 सूत्रीय उपायों का प्रस्ताव किया। इन उपायों में इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता शामिल है। वित्त मंत्री ने इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लघु मध्यम उद्यम विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव किया। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले नया माल ढुलाई कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा अगले 5 वर्ष में ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से आरंभ करते हुए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्र और कलिंग, नागर जैसे औद्योगिक केंद्र को पारादीप तथा धमरा बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन सेक्टर में कार्बन उपयोग और भंडारण के लिए शुरू की गई कार्य योजना के अनुरूप इस कार्य में और तेजी लाने के लिए अगले 5 वर्ष 20,000 करोड़ रुपए के प्रव्यय का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने श्रेणी 2, श्रेणी 3 और मंदिर शहरों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाओं की जरूरत पर बल दिया। इन शहरों की क्षमताओं को और बढ़ाने तथा सुविधाजनक बनाने की योजनाओं पर अगले 5 वर्ष में हर शहरी आर्थिक क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव है।
पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कंटेनर के रूप में 7 उच्च गति के रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये कॉरिडोर हैं मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थायित्व समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत के लिए उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति के गठन का प्रस्ताव किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया। व्यापार सुगमता के लिए वित्त मंत्री ने अनिवासी भारतीयों के लिए सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से इक्विटी में निवेश की अनुमति होगी। भारत को मजबूत चिकित्सा पर्यटन सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्यों को 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में मदद देने की योजना प्रस्तावित की गई है। इस कार्य में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी रहेगी। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा पारंपरिक औषधि के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने एनिमेशन उद्योग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद देने का भी प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता देगी। बजट में इस वर्ष आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा रिकॉर्ड समय में पूरी कर ली गई है और आयकर अधिनियम 2025 इस वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विदेश यात्रा पैकेज पर टीडीएस दर वर्तमान 5% और 20% से कम करते हुए 2% की गई है। शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धन प्रेषण योजना LRS के अंतर्गत टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा की भी घोषणा की। ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वालों के लिए समय सीमा 31 जुलाई तक रहेगी। बिना ऑडिट वाले व्यापार मामले और ट्रस्ट के लिए ये समय सीमा 31 अगस्त निर्धारित की गई है। अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर शुल्क TDS 10 की जगह खरीदने वाले के पैन आधारित चालान से जमा किया जा सकेगा। व्यापार सुगमता के लिए कर निर्धारण और दंडात्मक कार्यवाही को एकीकृत किया गया है। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के दौरान दंड की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा पूर्व भुगतान की मात्रा 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए दुग्ध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति के साथ साथ पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को कटौती में शामिल किया गया है। डाटा केंद्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए निवेश में वृद्धि हेतु किसी भी विदेशी कंपनी के लिए वर्ष 2047 तक कर में छूट दी जाएगी। देश में टोल प्लाजा के निर्माण के लिए गैर प्रवासी को आयकर में 5 वर्ष की छूट देने की प्रावधान है। मदिरा, स्क्रैप और खनिज विक्रेताओं के लिए TCS दर को तर्कसंगत बनाते हुए 2% निर्धारित किया गया है। तेंदुपत्ते पर कर दर को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। वायदा कारोबार पर मौजूदा 0.02% शुल्क को बढ़ाकर 0.05% किया जा रहा है। छोटे शेयर धारकों के हित के लिए सभी प्रकार के शेयर धारकों के लिए बाईबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव है। इससे कॉरपोरेट जगत को प्रोत्साहित करने वाली कंपनी के लिए प्रभावी कराधान 22% होगा। इसके अलावा ये गैर कॉरपोरेट जगत के लिए यही कर 30% होगा। परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर वर्तमान सीमा शुल्क छूट वर्ष 2035 तक बढ़ाई जा रही है। बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए मूल सीमा शुल्क छूट जारी रखने का प्रस्ताव है। सोलर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग के लिए जाने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी सीमा शुल्क की छूट का प्रस्ताव किया गया है। माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों की सीमा शुल्क में छूट दी गई है। कैंसर के रोगियों को राहत देने के लिए 17 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है।
टीयर 1 और टीयर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों के लिए शुल्क स्थगन अवधि 15 दिन से 30 दिन की जा रही है। मात्र विनिर्माताओं आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सीमा शुल्क पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि वर्तमान 3 वर्ष से 5 वर्ष की जा रही है। सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। देश में मछुआरों की सहायता समुद्री क्षेत्र के संवर्धन के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या मछली पकड़ने वाली नौकाओं से पकड़ी गई मछलियों पर शुल्क समाप्त करने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता देगी। इन शैक्षणिक जोन में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोथल, धौलीवेरा, राखगढ़ी, अदिनालूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेलकूद प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने अगले दशक में खेलकूद क्षेत्र के बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश किया। क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल, इसे युवा शक्ति से संचालित बजट बताया। वित्त मंत्री ने कहा, बजट आर्थिक वृद्धि, आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के 3 कर्तव्यों से प्रेरित। इससे प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधन, सुविधा और अवसर उपलब्ध होंगे। हाथी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। वस्त्र क्षेत्र के लिए बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की लघु और मध्यम उद्यम एसएमई विकास कोष की स्थापना की। इससे इस क्षेत्र के भविष्य के चैंपियन उभरेंगे। अगले 5 वर्ष के लिए बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन। प्रावधान 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के गठन की घोषणा। वर्तमान 7 संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अवसंरचना विकास के लिए पब्लिक कैपेक्स 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई। पूर्व में दनकुली से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे की स्थापना की घोषणा। वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए जहाज मरम्मत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अगले 5 वर्ष में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और रासायनिक उपकरणों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए विकसित भारत बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया। इसके साथ ही विशेष बजट बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। This is Akashvani. Special Budget Bulletin read by Valsa Williams. The headlines. Budget 2026-27 focuses on capacity building and reforms. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls it Yuva Shakti driven budget. Finance Minister says budget inspired by 3 kartavya of accelerating economic growth to fulfill aspirations of our people, building their capacity and aligned with vision of Sabka Saath Sabka Vikas to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities. Proposal to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. For textile sector, the budget proposes integrated program with National Fibre Scheme and National Handloom and Handicraft program to set up mega textile parks. The Finance Minister introduces a dedicated 10,000 crore rupee SME growth fund to create future champion SMEs, incentivizing enterprises based on select criteria. Ms. Sitharaman says an infrastructure risk guarantee fund to be established to provide prudently calibrated partial credit guarantees to SME lenders.
10,000 crore rupees outlay for Biopharma Shakti to build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars over a 5-year period. 3 new National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, upgrading 7 existing ones. The Finance Minister, presenting her 9th budget in a row, proposes to increase outlay of electronics components manufacturing scheme to 40,000 crore rupees. 3 dedicated chemical parks to be established to promote mining, processing, research and manufacturing. Ms. Sitharaman, presenting the budget in the Lok Sabha, proposes a scheme for container manufacturing with outlay of 10,000 crore rupees over a 5-year period. Budget proposes to increase public capex to 12.2 lakh crore rupees to continue focus on developing infrastructure, especially in cities with over 5 lakh population. Establishment of new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat to operationalize 20 new national waterways over next 5 years, starting with NW5 in Odisha to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna, also to launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail and road. An outlay of 20,000 crore rupees proposed over the next 5 years for carbon capture, utilization and storage across power, steel, cement, refineries and chemicals. 7 high-speed rail corridors to be developed between Mumbai and Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi and Varanasi to Siliguri. The government decides to set up high-level committee on banking for Vikasit Bharat to review the banking sector. Individuals, persons resident outside India PROI to be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. The government to set up high-powered education to employment and enterprise standing committee to focus on the services sector as a core driver of Vikasit Bharat. Basic customs duty exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. Government to provide support for 5 regional medical hubs to promote India as a hub for medical tourism. 3 new All India Institutes of Ayurveda to be established to prepare more skilled health personnel. Government to provide support to the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges. Centre to provide support in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistic corridors. National Destination Digital Knowledge Grid will be established to digitally document significant heritage sites. The government to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. Scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. Government to set up Nimhans 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and Tezpur as regional apex institutions. Government to strengthen emergency services and increase capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centres. Government to exempt any interest awarded by Motor Accident Claims Tribunal from income tax. Government announces tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. Government exempts from minimum alternate tax MAT to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Fiscal deficit in 2026-27 estimated to be 4.3% of GDP compared to 4.4% in current fiscal. Centre declares tax buyback for all types of shareholders as capital gains, promoters to pay additional buyback tax. Limit increased for duty-free imports of specified inputs used for processing seafood products for export. Duty-free imports of specified inputs extended to export of shoe uppers in addition to leather or synthetic footwear. Basic customs duty exempted on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Exclusion of entire value of biogas in central excise duty payable on biogas blended CNG. Government simplifies approval process for cargo clearance. No change in income tax. Budget proposes to extend time to file revised return or belated return. Filing time for revised return up to 31st March following the tax year.
proposes reduction of compliance on sale of immovable property by non-resident to resident individual. Government announces removal of interest deduction against dividend and mutual funds income. Proposes to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme from 5 to 2%. SIT on futures increased from 0.02% to 0.05%. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas to be made free of duty. Landing of such fish on foreign ports to be treated as export of goods. Finance Minister Nirmala Sitharaman today presented the Union Budget for the year 2026-27 in the Lok Sabha. This is the 9th consecutive budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Terming the budget Yuva Shakti driven, the Finance Minister highlighted substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of the country's people. She said this year's budget is inspired by 3 kartavya of accelerating economic growth, to build capacity of the people, and to provide resources, amenities and opportunities to every family, community, region and sector. She said the government has taken comprehensive economic reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. She pointed out that after Prime Minister Narendra Modi's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out, which include GST simplification, notification of labour codes, among others. She said the centre is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. She stressed that the reform express is on its way and will maintain its momentum to help the kartavya envisioned by the government. The minister announced the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crore rupees will be launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub in the next 5 years. The minister also proposed for a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research and upgrading 7 existing ones. The finance minister also proposed to increase the outlay of electronics components manufacturing scheme to 40,000 crore rupees. 3 dedicated chemical parks to promote mining, processing, research and manufacturing will also be established. She also announced the scheme for container manufacturing with 10,000 crore rupees over a 5-year period. For the labour-intensive textiles sector, the finance minister announced to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. She said an integrated program with National Fibre Scheme and a national handloom and handicraft program will be set up in the mega textile parks. The finance minister also introduced a dedicated 10,000 crore rupee SME growth fund to create future champion small and medium enterprise. The government has decided to increase public capital expenditure to 12.2 lakh crore rupees to continue focus on developing infrastructure, especially in cities with over 5 lakh population. She said an infrastructure risk guarantee fund will be established to provide prudently calibrated partial credit guarantees to lenders. Amid thumping of the desk by the members of parliament, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors. These corridors will be developed between Mumbai and Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi and Varanasi to Siliguri. Highlighting the robustness of the country's financial sector, the finance minister said the government has decided to set up a high-level committee on banking for Viksit Bharat to comprehensively review the banking sector. She said the government will take further steps to improve the scale and efficiency of the public sector NBFC. She said the government will restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. She also said total return swaps on corporate bonds will be introduced for suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. She said an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore rupees will be provided to encourage the issuance of municipal bonds of higher value by large cities. On the importance of artificial intelligence in governance, the finance minister said adoption of technology is for the benefit of people, including farmers, women, youth and Divyangjan, to access newer opportunities. She said with the sustained efforts of the government, 25 crore individuals have come out of multidimensional poverty. The finance minister said the government will set up a high-powered education to employment and enterprise standing committee to recommend measures that focus on the services sector as a core driver of Viksit Bharat.
To create professionals for the Viksit Bharat, the finance minister said existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. She said a strong care ecosystem covering geriatric and allied care services will be built. She expressed confidence that over 150,000 caregivers will be trained in the coming year. She said the government to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector to promote India as a hub for medical tourism. She said these hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities, highlighting the global recognition for Ayurveda. The minister said exporting quality Ayurvedic products will help farmers who grow herbs and to meet growing global demand. The minister said the government is to set up 3 new All India Institutes of Ayurveda, upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem, and make available more skilled personnel. The WHO Global Traditional Medicine Centre in Jamnagar will be upgraded to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. To promote the animal husbandry sector, the finance minister said the government to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-vet colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories and breeding facilities in the private sector. On the growth of the country's animation, visual effects, gaming and comics AVGC sector, which requires 2 million professionals by the end of the year 2030, the minister said the government will provide support to Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges. The minister also announced a new National Institute of Design in the eastern region of India. For the growth of the higher education sector in the country, the finance minister said the government will support states in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistic corridors. The minister also announced 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded to promote astrophysics and astronomy. On the potential of the tourism sector for employment generation, the minister said the government will set up National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. She also announced that pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites will be launched. Finance Minister Nirmala Sitharaman said a national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance like cultural, spiritual and heritage. She stressed that the government will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir. She said this year India will host the first ever global Big Cat Summit to deliberate on collective strategies for conservation. The finance minister said the government will develop 15 archaeological sites including Lothal, Dholavira, Rakhigarhi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur and Leh Palace by turning them into vibrant experiential cultural destinations. On the growth of the sports sector and nurturing sporting talent in the country, the minister said the government will launch a Khelo India mission. Finance Minister highlighted the government's vision for increasing farmers' income, empowering the Divyangjan and the vulnerable to access mental health and trauma care, and focus on the Purvodaya states and the northeast region to accelerate development and employment opportunities. She announced that a coconut promotion scheme to be initiated to increase production and further enhance competitiveness in coconut production. During her speech, the finance minister said the government has exempted any interest awarded by Motor Accident Claims Tribunal to a natural person from income tax, and any TDS on this account will be done away with. Ms. Sitharaman also announced the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in the 5 Purvodaya states and the provision of 4,000 e-buses. The Finance Minister said the Income Tax Act 2025 will come into effect from the 1st of April 2026. She said the simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty.
The government said the exemption from capital gains tax in respect of sovereign gold bonds will be available only where such bonds are subscribed to by an individual at the time of original issue and are held continuously until redemption on maturity. Finance Minister Sitharaman announced that no deduction will be allowed in respect of any interest expenditure incurred in relation to dividend income or income from units of mutual funds, and existing provision permitting such deduction will also be omitted, subject to a specified ceiling. The Finance Minister announced to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centres, connectivity and pilgrim amenities. The Finance Minister said fiscal deficit in financial year 2026-27 is estimated to be 4.3% of GDP compared to 4.4% in the current fiscal. She said the government has extended the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file return till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till the 31st of August. And now, before we end the special budget bulletin, here are the budget highlights again. Budget 2026-27 focuses on capacity building and reforms. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls it Yuva Shakti-driven budget. Finance Minister says budget inspired by three kartavya of accelerating economic growth to fulfill aspirations of our people, building their capacity. Proposal to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. For textile sector, the budget proposes integrated program with National Fibre Scheme and National Handloom and Handicraft program to set up mega textile parks. The Finance Minister introduces a dedicated 10,000 crore rupee SME growth fund to create future champion SMEs, incentivizing enterprises based on select criteria. An infrastructure risk guarantee fund to be established to provide prudently calibrated partial credit guarantees to SME lenders. Centre proposes a scheme for container manufacturing with outlay of 10,000 crore rupees over a 5-year period. Budget proposes to increase public capex to 12.2 lakh crore rupees to continue focus on developing infrastructure, especially in cities with over 5 lakh population. An outlay of 20,000 crore rupees proposed over the next 5 years for carbon capture, utilization and storage across power, steel, cement, refineries and chemicals. Government decides to set up high-level committee on banking for Viksit Bharat to review the banking sector. Basic customs duty exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. Government to provide support for 5 regional medical hubs to promote India as a hub for medical tourism. 3 new All India Institutes of Ayurveda to be established to prepare more skilled health personnel. Government to set up NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and Tezpur as regional apex institutions. Fiscal deficit in 2026-27 estimated to be 4.3% of GDP compared to 4.4% in current fiscal. No change in income tax. Budget proposes to extend time to file revised return or belated return. Filing time for revised return up to 31st March following the tax year. Proposes reduction of compliance on sale of immovable property by non-resident to resident individual. Proposes to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme from 5% to 2%. And with that, we end the special budget bulletin. Union Budget 2026-27. नमस्कार, समाचार सेवा प्रभाग के बजट पश्चात चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में अपने साथी वैभव श्रीवास्तव के साथ मैं चंद्रिका जोशी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ हैं शिशिर सिन्हा और उदयन राय, और एक एक हम पॉइंट पर एक एक बिंदु पर आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं चर्चा करना चाहती हूँ या कहें कि हम आम लोगों को बताएं कि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है, और जहाँ तक नज़र जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज पर विशेष जोर दिया गया है। जी। तो अगर आप मुझसे पूछें तो कुछ जो
देखने को नॉर्मली क्या होता है बजट में, आप सबसे पहले पूछा जाता है कि कोई टैक्स है, कोई छूट मिली है, क्या इससे मुद्रास्फीति होगी, तो वो वाले सवाल आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आगे की तरफ देख रहा है, और जो कि इस बजट को करना था, ये मौका था जो वो कर रहा है। जो कुछ चीज़ें जो सीधी तरीके से एटलीस्ट मुझे नज़र आ रही हैं, जो मुझे को बहुत पसंद आ रही हैं, कि कुछ एरियाज हैं जो क्लियरली इस बजट में थिंकिंग, जिन्होंने ये बजट बनाई है उसमें क्लियरली थिंकिंग आ रही है। एक तो टेक्नोलॉजी की एरियाज में है, एक वो वाले एरियाज हैं, वो वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे रोजगार के काफ़ी उम्मीदें हैं, जहाँ पे पोटेंशियल है, और इसको अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। ये मतलब ये पके हुए फल हैं या कुछ दिनों में आ जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा अगर काम किया जाए तो वो काम आ सकता है। और कुछ जो है स्किल रिलेटेड आगे जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। तो अगर आप जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वाली बातें हैं, तो आप देखेंगे कि प्रपोजल्स रहे रेयर अर्थ, जो उड़ीसा में वहाँ पे कुछ प्रपोजल्स आए हैं, फिर सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए जो प्रपोजल्स हैं वो हैं, फिर डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स से जुड़ी हुई प्रपोजल्स हैं। ये आपके नॉलेज एरिया में जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, जहाँ पे एआई में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो एआई में अगर करना है तो आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, तो उससे जुड़ी हुई नीति होनी चाहिए थी, उसमें इनकरेज करने की ज़रूरत थी, रेयर अर्थ्स की ज़रूरत थी। फिर आप विश्व के फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन में आना चाहते हैं, उसके वजह से केमिकल पार्क्स, तो ये एक एरिया है। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट है आपके रोजगार से जुड़ी हुई, तो उसमें तो मुझे लगता है आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। शिशिर सर, आप क्या कहना चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लोग बजट की बात करते हैं और इस समय के बजट में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी था, वो था मैन्युफैक्चरिंग। और उसके पीछे वजह ये थी कि आज के समय में जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, वहां पर विनिर्माण को बढ़ाना बहुत जरूरी, क्योंकि उसकी भागीदारी जीडीपी में देखिए 17 से 18% है, और उसको बढ़ा करके हमें 22%, 25% तक ले जाना है। तो ऐसे में आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कुछ कर सकते थे, चाहे वो टैक्सेशन का प्रोविजन हो, या फिर आप विदेशी निवेशकों को लुभाना हो, या देसी निवेशकों को लुभाना हो, कर के प्रस्ताव में किस तरीके से रियायत देनी है। तो पूरा का पूरा एक फोकस देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग पे और उसके साथ साथ एमएसएमई पे है। देखिए, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग का दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पे हमारे मन में पहली तस्वीर आती है बड़े उद्योगों की। अब बड़े उद्योग को छोटे उद्योग कैसे सपोर्ट करें, तो उनके लिए जरूरी है कि हम उनको भी बढ़ावा दें। आप चाहे उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात करें, या फिर आप उनमें चैंपियन एमएसएमई बनाने की बात करें, उनकी स्किलिंग की बात करें, उनमें किस तरीके से उनके लिए व्यापार करना, बाजार में पैठ बनाना आसान हो सके। और ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री ने इस पर बहुत जोर दिया है। बिल्कुल, देखिए एमएसएमई का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 40-42% उनका योगदान है जीडीपी में, और जब एक्सपोर्ट में भी 40% से ज्यादा योगदान है। जब आप चैंपियन एमएसएमई बनाते हैं, यानी कि आप देश में उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, और चूंकि इस सरकार का एक बड़ा लक्ष्य रहा है कि हमें रोजगार देने वालों की संख्या बढ़ानी है, तो वो संख्या कब बढ़ेगी, जब आपके ये उद्यमी जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को सहारा देने वाले एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, और एमएसएमई में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। ये पूरी की पूरी एक चेन है। Absolutely. So Udayan sir, if I may ask, various sectors on which we can focus on: health, self-reliant manufacturing, complete supply chain logistics through India, by India, to support the larger industries. Key takeaways of the Union Budget 2026-27 as per you. Well, as Shishir has mentioned, MSMEs is really, I find the proposals very exciting, especially the capital infusion, equity participation. It is already such schemes are there. SIDBI has a scheme. Now, what happens, Vaibhav, is MSMEs, you want them to grow bigger. True. When they grow bigger, they employ more people, right? So what typically happens is, you have startups, you have a bustling startup system, but you know what happens is at every stage there's a chance of mortality.
these guys going out of business. Now, what equity infusion does is when the owner or the entrepreneur is running low on the equity capital is used up, 1 year, 2 year, 3 years down the line, you've basically used up. That is when you have the concept, you understand, then the money comes in. So that is great. Then you are also training, according to this, you will be training people, youngsters, who will help them in compliance, because sometimes what happens is MSMEs get challenged on compliance. Apart from that, Vaibhav, I really like the proposals related to things like fisheries. I like all the proposals. There are innumerable proposals related to tourism. I think, there's at least 10 minutes of the speech where at some various points of time deal with tourism, whether it's the Northeast, whether it's having guides, whether, all kinds of tourism. And as we know, tourism is a big generator of employment, and it also does, it also pulls other sectors. You will have transport and all that. So it like construction and auto, tourism also pulls. So that's another exciting area. Textile is another exciting area. So these are some of the initial takeaways. I would say that these are all employment intensive, and I really like for Northeast. Yeah, tourism for Northeast. Yeah. Some of the animal husbandry and agri related, they're related to, not fish, but animal husbandry and some of the other high value agriculture. There, I guess Northeast would be there. There are some other proposals which are relating to Northeast, but I really like that. And as I mentioned upfront, I really like the proposals related to rare earths, semiconductors, and dedicated. So we believe the parks. employment opportunities will not just be in one part of the country, it will be throughout all the sectors and in all the nooks and corners of the country. One of the major sectors which has been given as the name of the first driver of growth is agriculture. Shishir, what do you feel? Agriculture has never ever been overlooked. Agriculture for this government has always been a very important sector. Farmer incomes, the yields of productivity have to be increased. They've always focused on it. What are the key takeaways in this sector from this year's budget? Okay. Before that, I just would like to add one thing on the tourism sector. Tourism is one area where you do not have to think about the raw material or the input, but the output is very high. Absolutely. So that input ratio, if you putting some priority on for the tourism sector, the input output is very favorable for the output point of view. And I believe whether we talk about mining, whether we talk about health, insurance, or any other sector, the ancillary sectors have been on the focus, and I believe these are the very sectors which give a lot of impetus to employment opportunities. Certainly, and in case of tourism, not just the heritage tourism or the archaeological thing, or the temple we are tourism. Also talking about the medical tourism, promoting Absolutely. in a big way. So that I think is a very good initiative, and tourism is one area where the job multiplier is amazing. And when you are also talking about training of 10,000 guides, that is also giving you some kind of input. Now coming to the agriculture part. Agriculture, I think the most important thing is the value added, or the what we call as the commercial crop production. There has always been a kind of complaint that we focus on the conventional crops like paddy or wheat or something like that. Why can't we move from this to a kind of highly yielding in terms of the commercial thing? And that is why when we say high value agriculture produce, so that high value agriculture produce will bring back people to the farming. Many of the generations are going away from the farming sector. When we talk about the high value agriculture, they will come into that area, number one. Number two, if you talk about the small and marginal farmer, going by the 2015 census of farming community, there are almost 86% farmers which are called as a small and a marginal farmer. That means people having less than 2 hectares of land. All right. And when we talk about the small farmers, they are just 76%. That means they have less than 1 hectare of land. So if we're talking about this kind of number, and if our budget is focusing on promoting and encouraging this small and marginal farmer, I believe this is a very good approach. One, from increasing the productivity. Number two, bringing back people to the farming sector. तो हम वित्त मंत्री ने जो बजट में कहा किसानों के लिए, वो आपको सुनवाते हैं.
increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. सीमांत और मझोले और छोटे किसानों की हम बात कर रहे थे। इसके साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के जो सरकार का एक विचार शुरू से रहा है, इस बजट में उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उदयन जी। देखिए काफ़ी एरियाज में बात हो रही है, यहाँ पे फिशरीज मतलब मत्स्य पालन, फिर एनिमल हस्बेंड्री जो मुर्गा, हाँ, या तो और नारियल से जुड़ी हुई बातें, कैश्यू, पाइन, हाँ, काजू, कोको, इसको एक पूरे वैश्विक स्तर पर लाने की जो एक कोशिश दिखाई दे रही है सरकार तो ये हायर वैल्यू एडेड, तो कुछ दिक्कतें, ये तो वेरी वाइडली डॉक्यूमेंटेड है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, जो शिशिर बात कर रहे थे, जो सीरियल क्रॉप्स हैं, एक तो वो उनकी जमीन के ऊपर एक असर पड़ रहा है, जो सॉइल क्वालिटी के ऊपर असर पड़ रहा है, उससे जो आपको जो आमदनी है वो भी खास नहीं है, उस हिसाब से आपकी आय नहीं बढ़ रही, आपके लैंड साइजेस छोटे हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सप्लीमेंटल जो इनकम के स्रोत हैं ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और ये पाया गया है कि जब ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इसमें कोई ज्योग्राफी वाली बात नहीं है, कई जगह में ये भी होता है चंद्रिका जी कि आप साल भर थ्रू आउट द ईयर यू कैन नॉट डू एग्रीकल्चर, हाँ, पानी की समस्या, कोई और समस्या आ गई, तो आपको इनकम में एक स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हर बार अगर गवर्नमेंट को जाके इंटरवीन करना पड़ता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, मतलब सब्सिडीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट के हाथ रिसोर्सेज उतने बंध जाते हैं। आपको सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है फार्मर्स को, और फार्मर्स ने जबरदस्त काम किया है। आप देखिए, जब भी हमारे इंडस्ट्रियल डाउनटर्न्स हुए हैं, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़िया रहा है, एंड आज जिस स्थिति में है, कई क्रॉप्स में तो हम वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो ये कोई कारण नहीं है, जैसे वित्त मंत्री ने बोला कि कोकोनट्स यानी कि नारियल में सबसे अधिक उत्पादन हम करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर, तो मैं जैसे शुरू में कह रहा था, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे शिशिर ने टूरिज्म के बारे में होता है, इसमें दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस बजट है। एक वैश्विक पहचान मुझे लगता है इसमें बनेगी, काजू, चंदन, कोको, ये ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ मिलता है, और ये जब वैश्विक बाजारों में जाएगा तो एक ब्रांड वैल्यू इंडिया की पहचान बनेगी उससे। बिल्कुल। और एक और चीज में जो उदयन सर ने बात कही है एग्रीकल्चर की, वहां पर अगर आप दो खास योजना देखिए, एक भारत विस्तार, हाँ, और दूसरा जो है सी मार्ट फॉर रूरल विमेन लेड एंटरप्रेन्योर, हाँ, इसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल। ये जो पहला विस्तार है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण है कि स्थानीय स्तर पर एआई का कैसे यूज हो रहा है। उनका अपना एक नेटवर्क है जो मोबाइल फोन पे, जिसके जरिए वो सारी सूचनाएं, बाजार से सूचनाएं, मौसम की सूचनाएं, वो सब कुछ हो जाता है। अब इसी को एक पूरा एक ऑर्गेनाइज वे दिया गया है भारत विस्तार के जरिए। दूसरा जो सी मार्ट है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में एक दिलचस्प आंकड़े आपको मैं बताऊं कि अगर आप पीएलएफएस पे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के भीतर जो रोजगार की दर है वो काफी ज्यादा है, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा है। अब उन्हीं की उद्यमिता को सामने लाने के लिए आपने कहा कि कम्युनिटी बेस्ड आपका एक मार्केटिंग नेटवर्क होगा, जो भी सामान वहां पे पैदा हो रहा है, जो भी आप तैयार कर रहे हो, उसको वहां से बेचने का होगा। तो महिलाओं के बीच उद्यमिता बढ़ेगी, तो जो हम लोग कहते हैं ना कि आधी आबादी पूरे विकास यात्रा में कैसे योगदान कर सकती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण। Absolutely. And we will talk about more on engaging the people through various corridors, through various seats in trees in the national institutes. But first, let's hear the reaction on the budget of the president of CII, Shri Rajiv Memani ji. बजट जो इंडस्ट्री की मांग थी वो काफी हद तक पूरी करता है, खासकर रिफॉर्म्स में कई सेक्टर्स को फोकस करना, एमएसएमईज को फोकस करना, सर्विसेज में भी नया फोकस उन्होंने दिया है, और सोसाइटी के हर एक वर्ग को अलग अलग भागों में कर उनके लिए क्या कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा था। और टैक्स में कई चीजें जो रेज करी जा रही थी सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो भी उन्होंने काफी हद तक सॉल्व किया। Shishir, Udyanji, one more important thing that we were talking about is the engagement of the people in a longer term. We talked about financial prudence, we talked about delayed gratification, we talked about that this budget is all
for long-term growth, long-term progress. There are many factors or many pointers in the budget that we see, just like the National Institute of Hospitality, just like more jobs in the sector of AI, more jobs or the expectation of more jobs in the content creators economy, 6,500 more seats. We've seen so many things in various sectors. How do you see this sustaining through a longer period of time, Udayan? Well, textiles is brilliant because you just had an EU deal. That the price on the pot of gold at the end of the rainbow is $40 billion. True. It's big money. So if you have trained people, rejuvenation of legacy plants and enterprises, and you have got trained guys, world is your oyster. Absolutely. And you have, who are you competing with? Your neighbors. That will be good payback for some of the things they have been doing. I'm so sorry to say. So good for us. We should be ready. We are not going to get a fruit dropping on our lap. It won't be a low-hanging fruit, but there will be huge opportunities. We were always good in textiles. You just have to see Bombay, Ahmedabad and all those places. We just have to reclaim what was truly ours. Shishir, as Udayan just said, I'll also like to add on to it cashew, cocoa, sandalwood, walnuts, almonds, so much more. How do you have to add on to what he was just saying? So, of course, the value addition product in agriculture, farming sector, combined with if we are giving more kind of attention to the animal wealth, what we call in Hindi as a pashudhan. So that combination of these two, value addition plus animal wealth, that combination will help the farmers in a big way. At the same time, I would just like to add, when you were talking about the job opportunities and employability and various other sectors, and at the same time we are also talking about AI, semiconductors and everything. So if I combine all those things, we have to see three elements. Number one is HI, which is human intelligence. True. Number two, AI, which is the artificial intelligence, and the third one is the SI, which is the synthetic intelligence. So combination of these three will help if we need more and more technical support for the growth to accelerate. True that, and we've also talked about reforms in the bio sector. We've talked about reforms in biopharma, Shakti, the initiative. When we were talking earlier in the pre-budget discussion, I believe we were talking about, and I believe Chandrika ma'am has a lot of expertise in that, we were discussing about health. Yes. We were discussing about the diseases that slowly creep in, like obesity, like mental health illnesses, the ailments that are creating an issue for the younger generation, or everyone rather. This budget provides a lot for not just mental health, but also for various industries that will be accompanying or complementing the growth of the healthcare sector. It will also be providing corridors. It will also be providing the new age tech with these sectors. उसके साथ ही जो गंभीर बीमारियां हैं, 7 बीमारियां ऐसी हैं जिन पर टैक्स में छूट मिलेगी और जो सीमा शुल्क से बिल्कुल उसमें आप देखिए तो कैंसर में जो 17 तरह की और दवाएं जो हैं उनमें शामिल की गई, जिनमें सीमा शुल्क बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। 7 गंभीर बीमारियों के मामले में दवाएं और उनके लिए जो फूड सप्लीमेंट स्पेशल होता है। Well, we also talked about urbanization or city economic regions. Now it's time for going live from the Rajya Sabha. 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, macroeconomic framework statement. Papers to be laid on the table, Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay on the table under Article 281 of the Constitution a copy each in Hindi and English of the following papers. A report of the 16th Finance Commission for the years 2026 to 31. B, explanatory memorandum on the action taken on the recommendations contained in the report of the 16th Finance Commission. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd February 2026. That was the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, giving the remarks on the Union Budget. राज्य सभा में
शिशिर जी, हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र जी के बिल्कुल। उसमें मेरे लिए जो दो एक तो आपने जो दवाओं की बात की, कैंसर की दवाएं जो 17 और दवाएं हैं, और गंभीर बीमारियों के मामले में 7 तरह की गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए दवाएं, और जो स्पेशल फूड सप्लीमेंट होता है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हेल्थ प्रोफेशनल्स ज्यादा से ज्यादा तैयार हों, और जो हम लोग बजट पूर्व की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने खास तौर पर चर्चा की थी। और मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप एक जो संस्थान जो कि बहुत फेमस है वो निम्हांस है। निम्हांस का एक और जो कहें परिसर जो है वो उत्तरी भारत में खोला जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रांची और तेजपुर। जी, रांची, हाँ, निम्हांस 2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, वो बहुत तेजी से फैल रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा ये भी है कि जो हम स्क्रीन टाइम हमारा बहुत हाई है, वो भी कहीं ना कहीं हमें एंगर, जिसको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये काफी ज्यादा दे रहा है। वो भी आपके मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ शिशिर जी, हमने ये भी देखा कि आयुर्वेद को इस बार बजट में, देखिए आयुर्वेद, आप जब बात करते हैं आयुर्वेद में वो सारे कहते हैं ना कि वो सारे स्रोत छिपे हुए हैं जो आपको बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि एलोपैथी जो है वो आपको फौरी तौर पर राहत दे देता है, एक लंबे समय के लिए आपको जो चाहिए वहां पर आयुर्वेद आपकी मदद करता है। हालांकि कुछ डॉक्टर सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि मैं एलोपैथिक को बुरा नहीं मान रहा हूँ। वैश्विक स्तर पर इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद को हम एक मान्यता दे रहे हैं, और हम एलोपैथी को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन हम आयुर्वेद को ही मान्यता दे रहे हैं। क्योंकि एक वजह यह भी होती है कि हमारे पास जब चरक की हम लोग बात करते हैं, जो कि ऋषि चरक थे जिन्होंने पूरे आयुर्वेद को एक नया स्वरूप दिया था, उस देश के हम हैं। और उस देश में अगर आयुर्वेद को महत्व देने की बात होती है तो वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं जो भी चल रही है, बल्कि उस व्यवस्था को एक और सपोर्ट देने के लिए हमने आयुर्वेद को जोड़ा है। And Shashir, the 3 kartavyas or the 3 responsibilities that the Honorable FM talked about: building resilience, talking of going from aspirations to achievements, and then Sabka Saath, Sabka Vishwas, of providing amenities and opportunities to every nook and corner of the country, to every person, making them believe that this growth journey, this growth story is their own. If they grow, the country grows. How important is that? Certainly, because if you talk about the sustainable growth and considering the geopolitical situation, you need more and more support from your own domestic market and domestic forces. As if you can go to the economic survey, there we have talked about Swadeshi and Atmanirbharta. Budget is taking one step forward when we are talking about more focusing on domestic market, more focusing on domestic resources, more focusing on domestic knowledge. That is the key to the sustainable growth, because the growth will not just come only from the foreign investment or the foreign trade. We need more and more development of the domestic market, as well as the skilling, upskilling and reskilling of the youth forces. So all these things you will find a specific program or a scheme for these kind of things in this budget, and that is why this budget is more talking about the sustainable growth. Because if we have to achieve $30 trillion by 2047, you need to grow at say certain level, say 6.57%, and that 6.57% will not come just focusing on just focusing on the external thing. You have to promote and develop, and more promoting the domestic. And I believe when the government or the Honorable Prime Minister or the Honorable Finance Minister talk about self-reliance or Atmanirbharta, they don't just mean that we are substituting anything that is coming from abroad or outside. We are not creating import wall. Absolutely. It's not a substitute. It's just that we are trying to make our domestic industries better. Udayan, my question to you would be that when we talk about future industries and we talk about corridors, it's not just rail corridors, it's chemical parks, it's about biopharma, where we are creating pharmaceutical corridors, we are creating corridors for semiconductors and AI. How important is it to not just focus on agriculture, health and infrastructure in the domestic setup, but also keep an eye on the future with all these sectors? इसके साथ ही मैं एक बात जोड़ दूं वैभव के क्वेश्चन के साथ, कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों को जो भारतीय कंपनियों में निवेश करने की एक अनुमति दी गई है, ताकि वो भी देश के विकास यात्रा में सहभागिता के. Absolutely, Udayan. Your take, sir. So these things are being done to ensure कि
जो अप्रवासी भारतीय हैं वो उनके वो निवेश में उन कई जगह में रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बेहतर पार्टिसिपेट कर सकें। और जहाँ तक बात फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बात चल रही है और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो कई जगह में कई इसमें प्रावधान ऐसे हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प हैं और बहुत सिग्निफिकेंट हैं। आपके न्यूक्लियर एनर्जी के एरियाज में जो कस्टम से जुड़ी हुई बातें हैं, फिर डेटा सेंटर्स में अगेन जो कस्टम से जुड़ी हुई बातें हैं, ये सब फॉरवर्ड लुकिंग है। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का एरिया खुल जाए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, इसके ऊपर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पीछे आई हैं, तो ये बजट उसके एक कदम आगे ले रही है। ठीक है, दूसरा है डेटा सेंटर्स। अगर आप एआई की तरफ जा रहे हैं, आपने सेमीकंडक्टर किया, फिर आपने ट्रेनिंग कराई, तो आपको डेटा सेंटर्स जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक अगेन डेटा सेंटर्स सिर्फ एक उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो उसके साथ पावर भी आ गया है, रियल एस्टेट भी आ गया है, वो खींचता है, फाइनेंशियल सर्विसेज सबको लेके आगे बढ़ता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो इसके साथ आगे बढ़ रहा है। सो जो वैभव कह रहे हो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो इस लिहाज से भी फॉरवर्ड लुकिंग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैभव, जो चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, कस्टम्स ड्यूटी में कस्टम्स से जुड़ी हुई जो बातें हैं, अब तो वो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। मुझे लगता है ये पाथ ब्रेकिंग है, ये उस दर्जे की है जैसे हमारे डायरेक्ट टैक्स कोड में जब हमने चेंज की थी, फिर हमने जीएसटी के लिए चेंज की थी। कस्टम्स मुझे लग रहा था एक इलाका था शायद वहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत थी। अब इतने सारे अगर ट्रेड एग्रीमेंट आप करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे भी सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग अगर परेशान होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। अब अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स के हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसको फास्ट होना पड़ेगा। इनपुट्स आपके कहीं से आ रहे हैं, आपको भेजना होगा कहीं पे भी। इसके साथ जुड़ी हुई बात वैभव ये भी है कि पूरा जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, जहाँ आप वेयरहाउस में रखते हैं सामान, फिर उसको कैसे आप फैक्ट्रीज तक लेके जाते हैं, तो वो लॉजिस्टिक्स का जो एक जो पूरा एक रिफॉर्म, एक मॉडर्नाइजेशन करना था, वो फ्रेमवर्क जो जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप शुरू में ये बजट पीस में क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। कंटेनर्स से जुड़ी हुई चीजें देखेंगे आप। भारत में हम अगर ज्यादा ट्रेड करेंगे, हमें कंटेनर्स की जरूरत है, हमें शिप्स की जरूरत है। शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी रातों रात नहीं आ सकती, बट कंटेनर्स में आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो फॉरवर्ड लुकिंग बात आप कर रहे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। सीमा शुल्क मतलब एक बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग जब फॉरवर्ड लुकिंग की बात कर रहे हैं, व्यापार कारोबार को बढ़ावा देने की बात करें, तो उसमें एक बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम हो। आप देखिए 3 बड़े घोषणाओं की मैं बात करूं, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात है, दूसरा 5 या 7 जो उन्होंने वाटरवेज की जो बात की है, और कंटेनर की निर्माण की बात की है, शिप रिपेयरिंग की बात की है। इन सभी को अगर आप जोड़ के देखें तो इसका मकसद ये है कि आप सामान की आवाजाही के लिए बुनियादी सुविधाएं कैसे विकसित करते हैं। कच्चे माल को फैक्ट्री पहुंचाना और फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार पहुंचाना या विदेशों में पहुंचाना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी लागत को कैसे कम करते हैं। और अभी तक की कई बार शिकायत रही है कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो डबल डिजिट में है जी, 2 अंकों में 12-13% तक हो जाता था। अभी एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि ये एकल अंक में आ चुका है। अभी इसमें और कमी करने की जो है वो गुंजाइश दिख रही है। इन सभी अगर आप देखेंगे जो कदम उठाए गए हैं, इन पर जब अमल होगा तो उसका सीधा सीधा फायदा आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी होगी, और जिसका सीधा फायदा होगा कि आपकी जो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धा करने की जो आपकी क्षमता है, वो और बेहतर होगी। And as you were just adding something to what Udayan has said, I'll add to something what you were saying. You talked about container manufacturing, you talked about lifts, firefighting equipments, tunnel boring equipments. Also, a very important stress has been given upon creating labs for high precision tools, which also means that every part of that supply chain, the whole logistics system will be through India, by India, and for India. A very important sector, the water area, the water sector, as I could say, the blue sector, economy. The blue economy. Fisheries and waterways both have been given a huge level of importance. Every area in the coastal areas has been given a huge importance, whether we talk about agriculture, whether we talk about supply. How important is it for the future of not just logistics, but also to decrease our dependency on any other mode of transport?
Well, Vaibhav, one line in the speech just blew my mind. जी. Dankuni is in West Bengal, and I think she's talking about Dankuni to Surat. It blows my mind that you're crisscrossing your country, completely, our beloved country, from east to west with a dedicated freight corridor. Or rather, we are covering it. Yeah, if we can say, we are covering the entire country through a corridor. So basically, like the bridge on the Chenab. This is again another engineering marvel. Some of the freight corridors are already engineering marvels. So some of the things which have been said in a sentence in this speech, if you actually action them, I can't even begin to think of what the country will look like. And that's possibly the vision, that's the beautiful thing that we are all trying to create in this country, of a much better, more beautiful place than of course we have inherited something very beautiful, but this is really something else. Just imagine going from the east to the west. Your stuff is going at a high speed and at break, and also of course there have been high speed train corridors, passenger corridors. And interestingly, most of these connectivity is happening in the IT sort of circuit, IT AI circuit, Bangalore, Chennai and all that. So just imagine that somebody wants to set up a business and wants to do a trip. He doesn't have to perforce take a flight, he can take a train. So all these options are being opened up. In inland waterways, and which you just talked about, is another option which somehow has not got the kind of traction that is there in, say, in other continents and other countries. So it's time that these things happen. They were being done. It's just that a leg up is being given. इससे थोड़ा सा हटके अगर हम युवाओं की जब बात कर रहे हैं बजट में, तो खेलो इंडिया मिशन की बात भी इसमें आई है कि खेल जगत के विकास के लिए इसकी शुरुआत सरकार ने करने का प्रस्ताव किया है. देखिए, ये नॉट ओनली जैसे खेल के बारे में हम तो जानते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, पर अगर अभी तो हमने एक स्पोर्ट में ही एक गेम खेला है, तो खेलो मतलब खेल के साथ भी खेल खेलना है. क्योंकि अगर अलग अलग स्पोर्ट्स अगर हम उसी हिसाब से हमें उसको प्रमोट करें, देखिए ट्रेनर्स होते हैं, लोन्स चाहिए होंगे आपको, इक्विपमेंट चाहिए होगा आपको, ढेर सारे अगर इक्विपमेंट ना होगा, इतना स्केल होगा, तो आप कोलैबोरेशन करके इंडिया में बनेगा. तो ये कई चीज़ें जो शिशिर ने बताई, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स जिनको ट्रेनिंग करने की बात है, ये इनकी शॉर्टेज है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की शॉर्टेज है. कि जैसे ये सब बातें, उसके बाद टूरिस्ट गाइड, ये सब, तो लगता है कि युवाओं के लिए बहुत कुछ है इस बजट में. बिल्कुल. देखिए, एक दिलचस्प चीज ये है कि एक तरफ तो आप खेल मिशन, खेलो इंडिया मिशन मिशन मोड में है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो गाइड्स हैं, उनको भी बढ़ावा देंगे. तो आप ये चाहते हैं कि दोनों स्तर पे, यानी कि समाज में एक वो युवा जो कि काम करने में एक अलग तरह की दिलचस्पी लेता है, उसके लिए किस तरह से जीविका के उपाय हो, और एक जिसके लिए खेल ही जीवन है, उसके लिए क्या उपाय है. तो युवाओं को जब इस तरह के विकल्प मिलेंगे, देखिए खेल ऐसा नहीं है कि आप केवल खेलते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं, बल्कि वो आपकी जीविका का भी साधन होता है. आप 4 लोगों को उसमें रोजगार भी दे देते हैं. तो खेलो इंडिया मिशन के मोड में, क्योंकि खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं होती हैं, वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की प्रतियोगिताएं होती है, खत्म हो जाती है. लेकिन पूरे साल के लिए अगर आप एक मिशन मोड में उस इवेंट को लेकर के चलते हैं, तो युवाओं की क्षमता का आप और बेहतर इस्तेमाल कर. मुझे लगता है इसमें एक थोड़ा सा ऐड ऑन ये करूं कि भारतीय डिजाइनरों की मांग बहुत महत्वपूर्ण है. जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का जो दूसरा परिसर खोलने की बात, पूर्वी क्षेत्र में, और इसके साथ साथ जैसा हमने अभी मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने बात की थी, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल की बात की, ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें, जो कि मुंबई में एक इंस्टीट्यूट खोले जाने की बात है. ऑरेंज इकोनॉमी आज के दिन में हमारे श्रोताओं के लिए जरूरी है कि ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब कंटेंट क्रिएशन है. देखिए, हम लोग रील बना रहे हैं, पूरी दुनिया आजकल रील पे टिकी हुई है. अब उस रील को ही आप अपने लिए कैसे, अपने लिए जिसको कहते हैं ना, आपकी अपनी क्षमता को और बेहतर इस्तेमाल कर सकें, वो क्रिएटिविटी को आपने जो है, वो रचनात्मकता को आप बढ़ावा देने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें. तो ऑरेंज इकोनॉमी, खेलो इंडिया मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और हेल्थ प्रोफेशनल, इन चारों को अगर आप जोड़ दीजिए तो युवाओं के लिए एक रोजगार सृजन का ये बहुत बेहतरीन माध्यम हो सकता है. बिल्कुल. और ये बहुत व्यापक विस्तार से इस बार के बजट में ये रखे गए हैं. And I believe expanding what we were just talking about on the services sector, high-powered education to employment and enterprise standing committee, upgrade and establishing new institutes, allied health professionals, NSQF aligned programs, medical tourism, Ayush
3 new All India Institutes of Ayurveda, as we were just talking about, setting up of AVGC, and then the design, and then of course Khelo India Mission. The stress that the Honorable President was giving in a speech before the Republic Day, what the Prime Minister said in the Prime Minister's NCC rally, what has been the main bedrock of every policy, youth and self-reliance is the way forward. Am I right to say that, Udayan? Absolutely. And Vaibhav, there's it's not explicitly mentioned, but our policymakers are getting very, very smart, So when you're saying orange economy, you are saying that, see, everybody cannot be doing a 9 to 5 job. True. So why don't you set up your own thing? And it's not, so reels or shorts or whatever you want to say, they are designing. So if somebody is doing an AI thing, AI product he's making, the front end is being done here. Some of the Marvel films that design all the special effects are being done by Indian studios, by the way. Not just the design or the special effects, but voiceovers are being done over absolutely, here. Translations are being happening over here. And India's economy's whole employability, 30% of that, or rather more than 1/3, are actually freelancers who are working in different fields or sectors. So I believe this is not just a sector which is a sport or a fun activity anymore, Shashir. It's actually an employable thing. Yeah, and I would just like to add one thing. When we're talking about the demographic dividend, we have to provide a demographic dividend infrastructure. कुल मिला के अगर एक एक पंक्ति में दोनों विशेषज्ञों से पूछूं बजट के बारे में, मेरे लिए ये एक बजट कहा जाए तो युवा ही नहीं बल्कि आधी आबादी को ज्यादा प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है, सशक्त बनाने का एक माध्यम है। अगर आप अगर मेरे को मालूम होता है कि इसका एक मतलब 15 मिनट का भी कंटेंट अगर बजट पेश करने से पहले मालूम होता, मैं ये कहता आपको, बजट शुरू होने से पहले मैं ये कहता ये आज के लिए अप्रोप्रिएट बजट है। धन्यवाद। हम अपने दोनों विशेषज्ञों शिशिर सिन्हा और उदयन राय का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं स्टूडियो में आने और बजट पर हमें बहुत अच्छी तरह से बातें समझाने के लिए। इसके साथ ही समाचार सेवा प्रभाग से बजट पश्चात चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम से मैं चंद्रिका जोशी अपने साथी वैभव श्रीवास्तव के साथ अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार। केंद्रीय बजट 2026-27। आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। माली साल 2026-27 के मरकजी बजट में सलाहियत साजी और इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की गई है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने इसे युवा शक्ति के सरकर्दा रोल वाला बजट करार दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट के लिए लोगों की उमंगों की तकमील और हर कुंबे बिरादरी खित्ते और शोबे के लिए वसाइल, सहूलियात और मौक़े को यकीनी बनाने की खातिर सबका साथ सबका विकास के नज़रिए से हम आहंग मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के 3 कर्तव्यों से तहरीक मिली है। खादी, हथकरघा और दस्तकारी को मुस्तहकम बनाने की खातिर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के आगाज़ की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मखसूस SME ग्रोथ फंड कायम किए जाने का ऐलान किया ताकि मुतल्लिक़ा पैमाने पर मबनी कारोबारी इदारों को तरगीब देकर मुस्तक़बिल के चैम्पियन SMEs इदारे कायम किए जा सकें। सरकार ने बैंकारी शोबे के जायजे की खातिर विकसित भारत के लिए बैंकारी के बारे में आला सतह की कमेटी कायम करने का फैसला किया है। 17 दवाओं और कैंसर मरीजों की दवाओं को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के एक बड़े मरकज़ के तौर पर भारत को फ़रोग़ देने की खातिर 5 इलाकाई तिब्बी मराकिज़ के लिए मदद फराहम करेगी। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद कायम किए जाएंगे ताकि मज़ीद हुनरमंद सेहत अहलकार तैयार किए जा सकें। सरकार अगली दहाई में खेलों के शोबे की काया पलट के लिए एक खेलो इंडिया मिशन का आगाज़ करेगी। माली खसारा मौजूदा माली साल में GDP के 4.4% के मुकाबले 2026-27 में 4.3% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। इनकम टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बजट में नज़रसानी शुदा रिटर्न या ताख़ीर वाले रिटर्न दाखिल करने के लिए वक्त की हद में तोसी करने की तजवीज़ भी पेश की गई है और सरकार ने डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से आमदनी पर सूद में कटौती हटाने का ऐलान किया है।
अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज माली साल 2026-27 का मरकजी बजट लोकसभा में पेश किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के इक़्तिसादी सफ़र में इस्तेहकाम, माली डिसिप्लिन, पायदार तरक्की और मोतदिल इफ़रात ज़र इसकी खुसूसियत रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने ठोस कार्रवाई करने, इस्लाहात को आगे बढ़ाने और आवाम का ख्याल रखते हुए फैसला कुन और तसलसल के साथ इक़दामात किए हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि सरकार ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हुकूमत के हर कदम के फ़ायदे शहरियों तक पहुँचें। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गरीबों, महरूम तबकों और कमज़ोर तबकों पर तवज्जो मरकूज़ करना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट है और हमें 3 कर्तव्यों से तहरीक मिली है। इनमें से पहला, पैदावार और मुसाबकत को बढ़ाकर मुआशी तरक्की में तेज़ी लाना और आलमी उथल पुथल के दौर में मजबूत निज़ाम कायम करना। दूसरा कर्तव्य, आवाम की उमंगें पूरी करना और खुशहाली की समत भारत के सफ़र में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि तीसरे कर्तव्य में सबका साथ सबका विकास के नज़रिए के साथ हमाहंग होते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि हर कुंबे, बिरादरी, खित्ते और हर शोबे को बामकसद शमूलियत के लिए वसाइल, सहूलियात और मौक़ों तक रसाई हासिल हो। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सरकार ने रोज़गार पैदा करने, पैदावार बढ़ाने और तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए जामे इक़्तिसादी इस्लाहात की हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद से 350 से ज़्यादा इस्लाहात की गई हैं। इनमें GST को सहल बनाना, लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन और लाजमी क्वालिटी कंट्रोल अहकामात को माकूल बनाना शामिल है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि तेज़ रफ्तार इस्लाहात का अमल सही समत में आगे बढ़ रहा है और हमारे कर्तव्य की तकमील के लिए ये अपनी रफ्तार बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान अवामी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर वसअत देने के लिए कई इक़दामात किए हैं और 5 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जो तरक्की के अहम मराकिज़ बन गए हैं। उन्होंने बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ और तामीराती मरहले के दौरान जोखिम के ताल्लुक से प्राइवेट डेवलपर्स का एतमाद मुस्तहकम करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फ़ंड कायम किए जाने की तजवीज़ रखी। वज़ीर ख़जाना ने भारत को एक आलमी बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की खातिर अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ बायोफार्मा शक्ति कायम किए जाने की तजवीज़ पेश की। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स अंदरूनी मुल्क तैयार करने का इको निज़ाम कायम हो सकेगा। मोहतरमा सीतारमन ने भारतीय बैंकारी शोबे का जामे जायज़ा लेने और इसे भारत की तरक्की के अगले मरहले के साथ हमाहंग करने की खातिर विकसित भारत के लिए बैंकारी के बारे में आला सतह की कमेटी कायम किए जाने की तजवीज़ रखी। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि जुलाई 2024 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जामे जायज़े का ऐलान किया गया था और ये रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया गया है। नीज़ इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस साल 1 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सहल बनाए गए ज़ाब्तों और फॉर्म्स को जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा ताकि टैक्स दहिंदगान को इसकी ज़रूरियात से खुद को रूशनास कराने के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। उन्होंने बताया कि ये फार्म इस तरह तैयार किए गए हैं कि आम शहरी भी किसी दुश्वारी के बगैर इस पर अमल कर सकते हैं। In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. उन्होंने कहा कि सरकार समाजी ज़रूरियात पर समझौता किए बगैर लगातार अपने माली वादों और जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उन्होंने माली साल 2021-22 में साल 2025-26 तक माली खसारे को GDP के 4.5% से नीचे रखने का जो वादा किया था वो पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि माली साल 2025-26 में माली खसारा GDP का 4.4% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। उन्होंने MSME इदारों को तरक्की के एक अहम वसीले के तौर पर तस्लीम करते हुए इन इदारों को चैंपियंस के तौर पर तरक्की करने में मदद के लिए 3 सतही हिकमत अमली इख्तियार किए जाने की तजवीज़ रखी।
उन्होंने कहा कि शुमाली भारत में दिमागी हिफ्जाने सेहत के कोई कौमी इदारे नहीं हैं, इसलिए एक निमहंस 2 कायम किया जाएगा और इलाकाई आला इदारों के तौर पर रांची और तेजपुर में दिमागी सेहत से मुताल्लिक कौमी इदारों को जदीद तर्ज पर ढाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इमरजेंसी और ट्रामा केयर सेंटर कायम करके जिला अस्पतालों में गुंजाइश को मुस्तहकम बनाएगी और इसमें 50% तक इजाफा किया जाएगा। खेलकूद के शोबे से रोजगार, हुनरमंदी और रोजगार के मौक़ों के बहुत से वसीले फराहम होते हैं। खेलकूद से मुताल्लिक हुनर को मुनज़्ज़म तरीके से तरक्की देने के लिए जो खेलो इंडिया प्रोग्राम की शक्ल में जारी है, वज़ीर ख़ज़ाना ने एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की तजवीज़ पेश की है ताकि खेलकूद के शोबे में अगले 10 में यकसर तब्दीली लाई जा सके। I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. खास खबरें एक बार फिर। माली साल 2026-27 के मरकजी बजट में सलाहियत साजी और इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने इसे युवा शक्ति के सरकर्दा रोल वाला बजट करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट के लिए लोगों की उमंगों की तकमील और हर कुंबे बिरादरी, खित्ते और शोबे के लिए वसाइल, सहूलियात और मौक़े को यकीनी बनाने की खातिर सबका साथ सबका विकास के नज़रिए से हम आहंग मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के 3 कर्तव्यों से तहरीक मिली है। वज़ीर ख़ज़ाना ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मखसूस SME ग्रोथ फंड कायम किए जाने का ऐलान किया ताकि मुतल्लिका पैमाने पर मबनी कारोबारी इदारों को तरगीब देकर मुस्तकबिल के चैम्पियन SME इदारे कायम किए जा सकें। 17 दवाओं और कैंसर मरीजों की दवाओं को बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। इनकम टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई है और बजट में नज़रसानी शुदा रिटर्न या ताख़ीर वाले रिटर्न दाखिल करने के लिए वक्त की हद में तोसी करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the midday news. The budget headlines. Budget 2026-27 focuses on capacity building and reforms. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls it Yuva Shakti-driven budget. Finance Minister presenting her 9th budget in a row proposes to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts for textile sector. The budget proposes integrated programs with National Fibre Scheme and National Handloom and Handicraft Program to set up mega textile parks. Finance Minister introduces a dedicated 10,000 crore rupee SME Growth Fund to create future champion SMEs, incentivizing enterprises based on select criteria. Government to increase outlay of electronics components manufacturing scheme to 40,000 crore rupees. 3 dedicated chemical parks to be established to promote mining, processing, research and manufacturing. 7 high-speed rail corridors to be developed. Centre decides to set up high-level committee on banking for Viksit Bharat to review the banking sector. Government to set up high-powered education to employment and enterprise standing committee to focus on the services sector as the core driver of Viksit Bharat. Basic customs duty exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. 3 new All India Institutes of Ayurveda to be established to prepare more skilled health personnel. Government to launch a Khelo India mission to transform the sports sector. Centre to set up NIMHANS 2 and also upgrade National Mental Health Institutes in Ranchi and Tezpur as regional apex institutions. No change in income tax. Budget proposes to extend time to file revised return or belated return up to 31st of March following the tax year. Government announces removal of interest deduction against dividend and mutual funds income. And STT on futures increased from 0.02% to 0.05%. And now the news in detail.
Finance Minister Nirmala Sitharaman today presented the Union Budget for the year 2026-27 in the Lok Sabha. This was the 9th consecutive budget presented by the Finance Minister. Prime Minister Narendra Modi is now speaking about Union Budget 2026-27. We now take you live to listen to the Prime Minister's address. इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। Presenting her 9th consecutive budget in the Lok Sabha, the Finance Minister termed the budget Yuva Shakti driven. Ms. Sitharaman highlighted substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of country's people. She said this year's budget is inspired by 3 kartavya of accelerating economic growth, to build capacity of the people and to provide resources, amenities and opportunities to every family, community, region and sector. The minister announced that Biopharma Shakti, with any outlay of 10,000 crore rupees, will be launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub in the next 5 years. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. For the labour-intensive textile sector, the Finance Minister announced to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. Amid thumping of the desk by Prime Minister Narendra Modi and members of the Parliament, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the government will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.
Highlighting the robustness of the country's financial sector, the finance minister said the government has decided to set up high-level committee on banking for Viksit Bharat to comprehensively review the banking sector and to safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. On the importance of artificial intelligence in governance, the finance minister said adoption of technology is for the benefit of people, including farmers, women, youth and Divyangjan to access newer opportunities. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan, National Research Fund and Research and Development and Innovation Fund. On the growth of the sports sector and nurturing sporting talent in the country, the minister said the government will launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. The finance minister highlighted the government's vision for increasing farmers' income, empowering Divyangjans and the vulnerable to access mental health and trauma care, and focus on the Purvodaya states and the northeast region to accelerate development and employment opportunities. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the northeast region to accelerate development and employment opportunities. Finance Minister has announced to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. The finance minister said fiscal deficit in financial year 2026-27 is estimated to be 4.3% of the GDP compared to 4.4% in current fiscal. She said the government has extended the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file return till the 31st of July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st of August. Finance minister said the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st of April 2026. She said these simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details on Union Minister Ashwini Vaishnaw has thanked Prime Minister Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman for creating a strong foundation of growth for Viksit Bharat through the Union Budget. Talking to reporters outside Parliament, Mr. Vaishnaw said that the budget has laid emphasis on manufacturing, including electronics and semiconductor manufacturing. He said for railways, there is a provision of setting up new high-speed corridors.
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को। I would like to thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister for the work done in today's budget to ensure all-round development of the country and build strong foundation for a Vikasit Bharat. In today's budget, a major focus has been placed on manufacturing, whether it's electronics manufacturing, semiconductor manufacturing, and a significant simplification for IT services through the introduction of Safe Harbor and Fast Track APA Advanced Pricing Agreement provisions. और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके। PhD Chamber of Commerce and Industry has welcomed the Union Budget 2026, stating it will increase competitiveness among the small and medium enterprises or MSMEs. He said the fund will increase the competitiveness among the MSMEs. The basic aim of this growth fund is definitely to enhance the competitiveness of our MSMEs, also to see that how they can integrate the technology in their manufacturing system so that there can be efficiency in their manufacturing processes. At the same time, when we are doing many FTAs where our MSMEs will have to compete in the global market, and how they can adopt the sustainable practices, the green transition, how we can build up the MSME champions. I think this fund is very strong step that government has taken. Fundamentally, it will enhance the competitiveness of our MSMEs. They'll become more efficient and they'll become globally competitive. Confederation of Indian Industry (CII) has hailed the Union Budget 2026, terming it positive. Talking to media, CII President Rajiv Memani said the Union Budget 2026-27 fulfills the demands of the industries, including those of the MSMEs. He also lauded the special focus on the services sector. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Budget 2026-27 focuses on capacity building and reforms. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls it Yuva Shakti-driven budget. Finance Minister, presenting her 9th budget in a row, proposes to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. Finance Minister introduces a dedicated 10,000 crore rupee SME growth fund to create future champions, MSMEs, incentivizing enterprises based on select criteria. 3 dedicated chemical parks to be established to promote mining, processing, research and manufacturing. 7 high-speed rail corridors to be developed. Basic customs duty exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. And with that, we end the midday news. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट क्षमता निर्माण और सुधारों पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट बताया। वित्त मंत्री ने लगातार अपना 9वां बजट पेश करते हुए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बजट में नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करके भविष्य के चैंपियन SME बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित SME ग्रोथ फंड पेश किया। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव। सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। सरकार विकसित भारत के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन करेगी। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई। अधिक कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करेगी। सरकार निम्हांस 2 की स्थापना करेगी और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अद्यतन करेगी। आयकर में कोई बदलाव नहीं।
बजट में संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव, संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय कर वर्ष के बाद 31 मार्च तक, सरकार ने लाभांश और म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाने की घोषणा की और वायदा कारोबार पर एसटीटी 0.2% से बढ़ाकर 0.5% किया गया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड 9वां बजट था। बजट 2026-27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट कहा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय वित्तीयता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया। India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल है। वित्त मंत्री ने भारत को एक वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया। इससे जैविक घरेलू उत्पादन के लिए परिवेश तैयार होगा। देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 22,919 करोड़ रुपए के परिव्यय से आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं। इस गति का पूरा लाभ लेने के लिए योजना के लिए परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कपड़ा सेक्टर के लिए एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया। इनमें रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर तथा मानव निर्मित फाइबर और आधुनिक फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, पूंजीगत सहायता से पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के उन्नयन के लिए समर्थ कार्यक्रम के दूसरे चरण का प्रस्ताव शामिल है। वित्त मंत्री ने इनके अतिरिक्त मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हरकतघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने चैंपियंस के रूप में इन्हें विकसित करने के लिए 3 सूत्री उपायों का प्रस्ताव किया। इन उपायों में इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता शामिल है। वित्त मंत्री ने इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लघु मध्यम उद्यम विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव किया। I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. सूक्ष्म उद्यमों की मदद और पूंजी जोखिम से बचाने के लिए वर्ष 2021 में 2,000 करोड़ रुपए से निर्मित आत्मनिर्भर भारत निधि को और सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजी व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। ये वित्त वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष तक 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस गति को बनाए रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में इस आवंटन को बढ़ाकर 12,20,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया।
Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. Financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum, to strengthen the confidence of private developers. बुनियादी ढांचा विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के प्रति निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा जोखिम गारंटी निधि बनाने का प्रस्ताव किया। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले नया माल ढुलाई कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा अगले 5 वर्ष में ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से आरंभ करते हुए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालित किए जाएंगे। अंतर्देशीय जलमार्ग की जरूरतें पूरी करने के लिए बनारस और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने तथा अंतिम छोर और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वित्त मंत्री ने समुद्री विमान के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया। इसके लिए From rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में 7 उच्च गति के रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये कॉरिडोर हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, नई दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष और अनुसंधान विकास तथा नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजन के हित में विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund and Research and Development and Innovation Fund. वित्त मंत्री ने कहा कि 1 दशक से जारी सुधार प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर गरीबी से ऊपर उठे हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेलकूद प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने अगले दशक में खेलकूद क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया। I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. Competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E. Development of sports infrastructure for training and competition. उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान के रूप में निमहांस 2 की स्थापना और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया है। अधिक कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है। आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय कर वर्ष के बाद 31 मार्च तक कर दिया गया है। सरकार ने लाभांश और म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाने की घोषणा की है। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.2% से बढ़ाकर 0.5% किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट देश के हित में है और इससे देश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में
बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण सहित विनिर्माण क्षेत्र की ओर विशेष जोर दिया है। आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का काम किया है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट देश की जनता पर केंद्रित है। आज का बजट इतना प्रैक्टिकल था और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक प्रदर्शित वित्त मंत्री जी ने किया है। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि बजट निरंतरता और स्थिरता को दर्शाता है। मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना किया जाना सकारात्मक कदम है। सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 81,490 और निफ्टी 276 अंक गिरकर 25,045 पर आ गया। आईटी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के सूचकांकों में गिरावट देखी गई। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, धातु और तेल तथा गैस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट क्षमता निर्माण और सुधारों पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट बताया। वित्त मंत्री ने लगातार अपना नवा बजट पेश करते हुए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बजट में नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करके भविष्य के चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड पेश किया। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। केंद्रीय बजट 2026-27। नमस्कार। हर साल एक दिन ऐसा आता है जब देश के सपने कागजों पर उतरते हैं, जब संसद की दीवारों के भीतर कही गई बातें किसानों के खेतों, युवाओं की नौकरियों और हर घर की रसोई तक पहुंचती है। आज वही दिन है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश का आम बजट पेश किया है। एक ऐसा बजट जो सिर्फ आंकड़ों का नहीं, भारत के भविष्य का दस्तावेज है। इस बजट में विकास को दी गई है नई रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया गया है निवेश ताकि सड़कें मजबूत हों, रेल तेज चले और देश बढ़े आगे। ये बजट किसी एक वर्ग का नहीं, ये बजट किसान, युवा, महिला, उद्यमी, हर भारतीय की उम्मीद से जुड़ा है। और ये बजट कहता है कि भारत रुकने वाला नहीं है। इसी बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मेहमान हैं, आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली और अश्विनी राणा जी, और साथ में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं अर्जुन चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Anand Srivastav, and a warm welcome to all our listeners and followers on Akashvani. The Union Budget 2026-27 is always a special occasion for those who are following the fiscal policy on taxation and spending, what the spending is going to be, economic, social, and military spending as well. We'll try and understand from our experts Sharad Kohli and Ashwini Rana what are the objectives in our economic and social spending, what are the revenue targets as well, and how the
budget is being balanced. The fiscal deficit is at 4.3% of GDP, and we'll try and understand what the key takeaways are and how do the stakeholders of this budget actually benefit from this announcement by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Sharat Kohli, let's begin with you because our listeners want to understand in very simple terms what the key takeaways from the budget are. Good afternoon, Arjun, to you, Anand, and my fellow panelist Ashwani, and of course to the viewers of Akashvani. I would like to divide the budget from your question perspective into two parts. One part is the macro level. Now, when you speak of the macro level and when you speak of Aam Aadmi, the common citizen, well, the macro level impact on common man is indirect. For example, when we talk of the capex of 12,10,000 crores, now this capex goes on highways, it goes on railway stations, on airports, it goes on building the infrastructure, which India has spent more than 100 lakh crores over the last several years. So this is in continuation of that. And if you ask me, I attribute a lot of this GDP growth to the infra spend which the government has been doing. And from an economic principle point of view, every 1 rupee spent on infrastructure, Arjun, has an 8 times multiplier effect. So this is the growth, I would say, fulcrum, the infra spending. So whereas to a common man, might wonder that what has 12,10,000 crore got to do with me? What am I getting in my pocket? The fact of the matter is this is an indirect macro level impact. So that's my part. And of course, you spoke of the fiscal discipline. Fiscal deficit, by the way, FY27 target is 4.3%. This year, she said it's going to be below 4.5%, which is well within the target. And the target is to take it up to 4%. Now, where does this affect Aam Aadmi? High fiscal deficit means high inflation, because then government goes for deficit financing like the way US does, printing currency and so on and so forth, which is not going to be there, which means inflation is going to remain within control. Now that is how Aam Aadmi is impacted by fiscal. Now these are the numbers which people generally ignore. An Aam Aadmi says, what have I got to do with fiscal deficit? So that's where it connects. Now I come to the second part where Aam Aadmi is segmental, because announcements have been made in various segments. For example, for the girl child, for higher education, for people interested in bird watching, people interested in turtle trail, people interested in tourism, content creators, Ayurveda enthusiasts. So I call that as segmental announcements. Now these announcements impact the Aam Aadmi from various different segments. So which is why I say it's in two parts. One is the macro level, impacting the entire economy and the entire population. The other is segmental, which impacts as per the announcements made for the respective sectors. अश्विनी जी, इससे पहले कि हम विषयवार ज्यादा डिटेल में चर्चा करें, जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की टैरिफ नीतियों की चर्चा हो रही है, ऐसे समय में इस बजट को भारत के आम आदमी के नजरिए से आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि आपने कंपैरिजन हम यूएस और भारत का कर रहे हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी जरूर है, लेकिन जो मुश्किलों में दौर से वो गुजर रहे हैं वो भारत में नहीं है कम से कम। तो जिस प्रकार से अभी कोहली जी ने बताया कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत कंट्रोल में है, जबकि वहाँ अलग बात है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, उनका डेट टू जीडीपी भी बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से हम बहुत लकी हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं विद इन दैट गवर्नमेंट जो है मैनेज कर रही है, हमारे ऊपर कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं डाल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि उनके ऊपर उनको अगर रिलीफ कुछ नहीं मिल रहा तो उनके ऊपर कोई टैक्सेस या उनके ऊपर भार भी नहीं आ रहा। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि जिस प्रकार से उस एक लिमिटेड रिसोर्स के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा राहत है। और मैं कई बार बजट में हर आदमी को लगता है टैक्स, इनकम टैक्स में क्या हुआ। इनकम टैक्स कुछ लोगों के रिलेटेड है, लेकिन जैसे कोहली जी ने कहा कि भाई ये एक बहुत बड़ा केक है, उस केक का हिस्सा जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण या चीज़ों के कारण बजट के कारण मिलेगा, उस केक का हिस्सा हर को मिलने वाला। ये नहीं है कि भाई अगर रोड बनेगी तो रोड पर कोई एक आदमी चलेगा, मतलब उसमें बड़ा आदमी छोटा आदमी कोई भी चल सकता है। वैसे ही एयरपोर्ट पे, रेलवे, सभी वो लोग इंजॉय करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि भाई इस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। Let's now hear what the Union Minister for
Information and Broadcasting, Ashwani Vaishnav, had to say about the union budget. आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है, सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके। आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी, जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। Sharat Kohli, I would like your reaction to what the Union Minister for Information and Broadcasting had to say about industry, manufacturing and MSMEs, and this in the context of the economic survey that was carried out, and the first advance estimates for the current financial year is 7.4% growth in the GDP, and for the next financial year it's between 6.8 and 7.2% growth in the GDP. Let me pick up the threads from what you said at the end. A lot of people are wondering that from 7.4%, why are we going down to 6.8 to 7.2? I think when the estimates are given, they're always given in a conservative way. That's point one. Point two is there are global challenges at this point of time. There is geo-economic and geopolitical upheaval of the global world order going on. So I think that has been factored in. Allow me to go back to Minister Ashwani Vaishnav's comments. A lot of people are asking, what are these safe harbor rules? Because I think Akashvani listener may not be able to make out what is safe harbor. I would just like to decipher that, because in a lot of areas safe harbor has been mentioned. It is part of the tax provisions. What safe harbor basically means that when there is a concept in tax called transfer pricing, that is when two related entities are dealing with each other. So you are not investigated for the left arm dealing with the right arm. If you declare a certain percentage, if you see safe harbor has been made at 15%, earlier this was 20%, so you have to mandatorily declare certain amount of profit and pay tax on that. That has been brought down, and of course the exemption, a tax holiday until 2047 for data centers and so has been provided. I think a lot of people also heard about the orange economy for the first time, because I think this orange economy constituents people knew, Arjun, but then what exactly is orange economy? I think the content creators from today onwards, they'll start calling them as orange in color, because 15,000 content creator schools to be created. I think that is a major announcement for people who create content on YouTube and other places, because this is the new economy which is coming up. 40,000 crores on the ISM 2.0, which is semiconductor mission. This speaks volumes about how much government of India is serious about semiconductors, because that is going to be tomorrow's gold, I would say, or tomorrow's oil. Remember, oil used to be called gold at one point of time. I think it is artificial intelligence, data equipments, rare earth minerals which are part of the next gold. Yes, Anand. इस बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला भारत चाहता है कि तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अब लोगों की ख्वाहिश ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बने। आइए सुनते हैं उन्होंने कहा। ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है, और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जी हां, आप चलते हैं अहमदाबाद, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार कातिन त्रिवेदी जी। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार।
आपसे ये समझना चाहेंगे कि वित्त मंत्री ने कहा कि सुविधा एक्सप्रेस चल रही है और ये बजट जो है वो युवा केंद्रित बजट है जिसमें रफ्तार, क्षमता और सबका साथ, ये 3 विजन हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, वित्त मंत्री जी ने जो कहा है वो उसी का प्रतिघोष अभी हमें बजट में देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो सबसे बड़ी बात है कि 2047 तक भारत में जो डेटा सेंटर खोलेगी कंपनियां, उसको जो टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है वो मेरे ख्याल से, मैं पर्सनली मानता हूं कि सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा कि युवाओं के सामने जो अपॉर्चुनिटीज उभर के आएगी अगले 2 दशक में, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक कदम होगा जिसका रिजल्ट हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। दूसरा, हमारा जो फोकस है वो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में और बायो फार्मा में जो 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है, तो वो दोनों सेक्टर से हमारा जो एक सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है, उस दिशा में मैं मानता हूं कि ये दोनों बहुत ही ठोस कदम साबित हो सकते हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात, तो एक टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ साथ जो 10,000 गाइड को ट्रेन करने की बात है IIM जैसे संस्थानों की मदद लेके, वो भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा तो देगा, साथ साथ जो लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की दिशा में भी मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। जी कातन जी, आपसे कुछ राज्यों की भी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में वो कौन कौन से राज्य हैं जिनको ज्यादा उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों को वित्त मंत्री ने पूरा किया है। जी, मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा जो फोकस है वो पूर्वोत्तर पे दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो अभी तक पिछले 10 साल पहले जो पूर्वोत्तर स्टेट जहां हमारे वहाँ थोड़ा निग्लेक्टेड था, और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अलावा एक कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। तो मैं मानता हूं कि जितना नॉर्थ ईस्ट में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने की, पोटेंशियल को साकार करने की बात ये बजट कहीं ना कहीं कर रहा है। जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार कातन त्रिवेदी जी। Sharat Kohli, our listeners on Akashvani would also like to know that apart from the GDP growth of India for this financial year and for the next financial year, how are the states faring? The GDP of the states, are they in revenue surplus or deficit? Because when we look at the spend by the central government on industry, manufacturing, MSMEs, infrastructure, the financial sector reforms, technology and innovation, and you mentioned about the fiscal multiplier. How are we going to actually improve the condition of the states which are in deficit so that India becomes the leading economy in the world? Well, Arjun, a very pertinent question, I must say, because we should not forget that after all, it's the states which form the country. And it is true that some of the states, as far as the GSDP is concerned, we call it as the gross state domestic product. That may be better, but then overall their fiscal balance sheet may not be as good. Some of the states like Himachal Pradesh, Punjab, their debt bearing ratio is very high, and their GSDP to debt ratio is also not very favorable. In fact, we have an act called Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM. So if you look at the parameters of FRBM, some of them may be slightly going over the board as far as FRBM is concerned. I think, which Prime Minister refers so many times, the freebies which come at the time of elections, I think they have been partly responsible for disturbing the health of some of the states. For political gains, if the states go on an overspend mission on these freebies, then it disturbs the developmental projects. So when your development is impacted, obviously your fiscal balance sheet gets upset, and the people of the state do not get the benefit. I think the government of India at federal level, at the central level, is trying its best to offset that or negate that impact. But I think we speak of double engine sarkar. When we speak of double engine sarkar, because there is the same party which is ruling both the center and states, obviously it facilitates, because we find many a times, Arjun, that states resist
the policies of the center. So if the states tend to resist that, because we have a different list in constitution where the states have a discretion of whether to implement a center policy or not. So the states, for example, Ayushman Bharat, when Delhi had another government, they refused to implement it. So when the states do not implement those policies in letter and spirit, obviously you don't take the people of the state do not get the benefit. So I think this is the complexity of the structure of our political system, which I'm sure the states would understand over a period of time, Arjun. Ashwini, Rana ji, I also want to ask you about the relevance of banking in a growing economy like India. Do talk about the financial sector reforms in terms of restructuring of public sector enterprises, corporate bonds and municipal bond issuances, because without finance, none of this is possible. Yes, definitely you are right, because in this financial reform, there's a lot of work to be done, because in this present circumstances, finance is very key role in the development of the country and in the economy, whereas public sector banks are lacking behind because they don't have the real liquidity for that. In economic survey also, they have mentioned that people they are shifting from banks fixed deposit to share market, bonds, mutual fund. So that is a worry for the banks. So for that, if they could give some relaxation for this bank depositor, this could be better. जी अश्विनी जी, आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको सीधे लिए चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में, जहां पर वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एक मीडिया संबोधन को संबोधित कर रहे हैं. First, the Honorable Finance Minister will make her opening remarks. Thereafter, we will take some questions. Please remember, identify yourself and your organization's name. And I would request you to ask one question only so that your friends can be accommodated. Thank you very much. Over to Honorable Finance Minister. Good afternoon. This is the customary press conference that we hold with all the secretaries. You've heard the entire budget being presented in the Parliament. So as opening remarks, I'll just highlight some of the points which we want to draw your attention to. But subsequently, of course, we'll answer all your questions. All the secretaries are here with me. So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Vikasit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, technology, 21st century, this century is completely driven by technology. So we will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefits in the sense of ease of doing living, or for his business to prosper, or for farmers for greater productivity or better logistics, whatever. So technology for benefiting every common man, and above all, with all this, inclusive development, sabka saath sabka vikas. And that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations for bringing better health facilities, creating a cadre of people, not cadre in that sense, but a bulk of people who can come in as health workers. Also making sure we are able to provide
dignified opportunities for Divyangjan. Mental health has also received a lot of attention. So these are the side for Vikasit Bharat and making sure Sabka Vikas hoega. But the idea is the advantage and the momentum that we gained since after COVID by increasing public capital expenditure will continue. We've announced that 12.2 lakh crores are coming through public expenditure this time. It is 4.4% of the GDP. I'd like you all to please notice that, which is the highest, at least in the last 10 years. It could even be highest if you were to take data earlier. No increment in capital expenditure, sustained fashion has happened ever before. This one marking 4.4% of the GDP. Then what are the kind of things which will happen through it? You will have dedicated freight corridors. I've named Dankuni in the east, Surat in the west. Then I've also highlighted that 20 new national waterways, not national highways, national waterways are being planned. And again there, those are going to pass through some of the critical mineral areas. Orissa, where the mineral-rich state, you have the waterways taking it to the port, and the two ports have been identified, Paradip and Dhamra. Similarly, we are also making sure that the coastal cargo movements will be enabled through a cargo route, so that through the coastal area we are able to cut down on cost of movement of goods. City economic regions, developing them is a very big new measure that we are coming up with. And for that, an allocation of 5,000 crore per city economic region. Imagine the amount, 5,000 crores in 5 years, 1,000 crore per year per city is being given, and the emphasis is going to be largely on tier 2, tier 3 cities. And then talking of infrastructure further, with the capital expenditure coming with the big number, you're having also the high-speed rail corridors, 7 of them announced, and the destinations are clear, so that they become the bridge for all these economical robust centers. So those are for making sure that the infrastructure and the capital expenditure are getting tied up, and the country benefits from the ripple effects that these can bring in. The 7 strategic and frontier sectors in which we've highlighted that will increase productivity and also have new investments come in and give emphasis for India's own brand on those things is on the biopharma sector. I think that's going to be a big change in the way in which we are looking at giving capacity for those who are able to research, who are able to undertake research and development. So 10,000 crore initiative again over 5 years for domestic biologics and biosimilar production. This is a clear message and backed with enough substance that India's lead in the pharmaceutical sector should be kept intact, but at the same time bring in newer ways of helping the pharma sector, and also because it has an impact on human health. Semiconductor mission had 2 major announcements that will improve the India stack and also the IP related matters. Electronic components manufacturing scheme for 40,000 crores is a major encouragement for electronics to become self-sufficient. We have also announced establishing rare earth corridors so that India can face and be able to meet its own requirements with its materials. So once we identify and are able to explore these minerals and process them, make them available for us, our dependency on external sources for bringing in the rare earths will be lesser, and we've identified the states where we want to establish this rare earth corridors. They are going to be in Orissa, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So these are very important developments, and they are going to have multiple decadal impact on the Indian economy. Our dependence on magnets and rare earths will be brought down. 3 dedicated chemical parks, again for reducing our import dependence.
high-tech tool rooms for research. That will be set up in 2 locations. Very important thing is about the construction equipment being imported. That could be for building tunnels or metros or high energy and also heavy duty equipments which we are relying on imports. We want to manufacture them in India, and that is why I said, how does it affect a common man? It affects because firefighters today have novel, new, big ticket and small, very small firefighting tools and weapons or equipments. We don't have them in this country. That's why if there is a fire accident in some very congested area, our equipments are not able to reach those points, whereas there are equipments which today are produced abroad, which can navigate those small corridors and go save people's lives. Whether they or huge ones, all of which we want to make sure that we will have production in this country itself, whether they are tunnel boring or anything else, from small to big, we want to bring in those very impactful infrastructure into India. So we'll support domestic manufacturing. Then container manufacturing is another which we'll support. I think I've gone in detail talking about the textile support in various forms. One very important announcement was made, Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative, which will make sure khadi, handloom, handicrafts will all be brought in, and one district, one product will all be brought in this initiative, and we'll be able to support rural artisans, rural workers and handloom weavers in those areas. Legacy industrial corridors have got saturated. Manufacturing happening there is now very constricted because they are not able to bring in newer robotics and others. So we want to upgrade these legacy industrial clusters so that they become cost competitive and efficiency comes into these places. Even more important is the champion MSMEs, small and medium industries, entrepreneurs, MSMEs, who are going to be given all the support, and 3-pronged approach is being taken up there. We are giving equity support, we are giving also liquidity support, above all professional support for them, so that MSMEs, the equity support is supported by a 10,000 crore SME fund, growth fund. Above all, we are also topping up the Self-Reliant India Fund with 2,000 crores. So MSMEs should not feel any dearth of resources for equity. Similarly, they shouldn't feel any difficulty for liquidity in their hands, because the TREADS platform will now be treated almost as a backed up, security backed up instrument with which they'll be able to discount and get their monies. For professional support, we're working with the chartered accountant and cost accountant institutes so that they can create corporate mitras who can help these MSMEs in filing their returns, doing their accounts and so on. Above all, for youth and training, there's so much. You've heard this speech, so I won't want to take your time on it. High-powered education to employment enterprise standing committees being formed so that they can recommend measures for service sector as a core driver of Vikasit Bharat. Part B concentrated a lot on tax and related concessions that are being offered. More importantly is the process simplification which has been announced. So elaborate measures have been taken. You will be able to also seek clarification if you want. New export opportunities for fishermen who can go into the economic India's zones, high seas, and also assess and access the global markets. The one very touching, and I really was moved by this proposal, is where we have identified 17 drugs or medicines which are going to be basic custom duty exempt, which are important for cancer patients. Similarly, 7 more rare diseases are added to the import exemption list of the import duties.
baggage clearance and personal items which you bring in when you travel are all being given enhanced duty-free allowance. Besides that, there are quite a few direct tax and indirect tax proposals. Decriminalizing the penalty proceedings and support to the IT sector are some of the high points. As an opening remark, I'll conclude here. I'm sure you'll be able to ask questions and seek clarification. Thank you for coming. Thank you, ma'am. That was the Union Minister for Finance, Nirmala Sitharaman, who had a press conference at the National Media Centre, and she spoke about the highlights of the Union Budget 2026-27 with some greater depth as well. I'm joined with our experts, Sharad Kohli and Ashwani Rana, to give a little bit more perspective for the benefit of our listeners and followers on Akashvani. Sharad Kohli, let's ask you the first question regarding this press conference. And somehow one got the impression that there was this intent on the part of the central government to link industry, manufacturing and MSMEs with infrastructure, not only your high-speed rail corridors, but the waterways in order to access a supply of critical minerals from ports and then route it to different distributors and manufacturers so that our cost of manufacturing actually comes down. And there is a linkage to trade and logistics as well, with states being announced like Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, where you have critical earth, and this is known as a rare earth corridor as well. Absolutely. I think a lot of people felt before this that where in our country are these rare earth magnets and minerals. I think Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha and Kerala, that's where I think when the corridors are being focused in that area, Arjun, obviously that's where they lie. And recently, some time ago, there were changes made in the royalty also about the rules regarding the royalty. So I think India is very, very serious about rare earth magnets, and as I said, that's going to be the future as far as electronic manufacturing is concerned. An interesting thing which came out was about MSMEs, where she spoke about SMEs and micros separately. Anand wants to say something. जी आपको वापस ले चलते हैं राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, जहां पर वित्त मंत्री अपने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रही हैं. And the increase in rate is essentially in that direction. So it is meant to essentially handle the systemic risk in derivative markets. Even after this increase, however, the rates of STT will remain modest compared to the volume of the transactions that is happening there. This is the reason. 54. मैम तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस. मैम आपने पूरा बजट जो है वो न्यू इमर्जिंग सेक्टर पे बड़ा फोकस रखा है. मैम मेरा सवाल आपसे दो हैं यदि आप अलाउ करें. एक, मैम आपने जो एक्साइज ड्यूटी का कैलकुलेशन किया है वो पिछले बजट एस्टिमेट से इस बजट एस्टिमेट में तकरीबन 22% की ग्रोथ देखने को मिली है. दूसरा, मैम जो आपने एमएसएमई के लिए कहा कि जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा, तो क्या मैम ये सीपीएसईज के लिए कंपलसरी होगा जो डिस्काउंट ट्रेडिंग की जो बात है? थैंक यू. I'll take the second question, ma'am. So, हाँ, ये CPSCs के लिए मैंडेटरी होगा कि डिस्काउंटिंग एज वेल एज नॉन डिस्काउंटेड बिल्स दोनों को ही ट्रेड्स पे करना होगा ताकि वो 45 दिन में भुगतान एमएसएमई को कर पाएं, और ये हर तरह से चेक कर लिया गया है कि ये हो सकता है. सो वी वांट टू मेक CPSCs as pioneers. We hope, like ma'am has said in her speech also, that other corporates will also follow. On excise? Increased by 22%, sir, from last year B to this year. Because there is from 1st of February, all the tobacco products have come back into excise, and all those revenues will account for the increase of the next year. 209. Ma'am, Prakash Predashi from ET Now.
The budget has announced restructuring of PFC and REC. What will this restructuring look like? And does this also mean that these NBFC will be merged going forward? What is the later part of your question? That these NBFCs are not going to merged going forward? Yeah, I've said we are rationalizing it. You'll get to know as we go forward. We want to streamline it, and therefore we'll be taking some steps. We'll let you know the moment we decide how to go about it. 234. Hello ma'am, Harsh Kumar from Business Standard. Ma'am, two questions. One is, you said that a high level committee will be formed on the banking reforms in order to 2047. Are we going further for any kind of merger or something, since government is continuously saying that we need at least two of the big banks, in at least of the top 20 banks. So are we going towards that? No, first of all, when I say that it's going to be a high-level committee which is going to look into it, the terms of reference will be prepared, and we are looking at committee to go into the entire expanse of the banking sector so that they come up with recommendations which help us to plan for banking for 2047. We need, by the time we become a Vikasit Bharat, 2047 is our goal. We need to understand what are the other steps that we need to take in the banking area, and based on the recommendations we'll go forward. But we have the Secretary Department of Financial Services. We'll ask him to also give us, please. Ma'am, I think you have rightly responded. There are large number of aspects relating to the banking requirement. For example, the credit to the GDP, commercial credit to the GDP ratio low, and the expansion of the banking network, and what kind of procedures currently we have that is impeding both the deposits as well as credit. All those aspects will be looked at by an expert panel, committee, and we'll definitely have TUR, and then also consult the all the stakeholders, and the government will take a view on how to lay strong foundation for 2047 Viksit Bharat. Ma'am, one more question. 229. Left side, yes. Ma'am, Premanshu from Anandabazar Patrika. Ma'am, have you consciously avoided announcing any bonanza for the poll-bound states? And secondly, can you elaborate on this East Coast corridor, industrial corridor you announced? See, the industrial corridors are very critical for supply chains. We need a predictable mineral, rare earth and magnet related products to be made available for India's manufacturing. Whether it's lithium ion, whether it's automobile sector, whether it's the new age solar, you need these rare earths to be processed and be made available. We have enough raw materials. The coastal areas are rich in these minerals, and therefore states also felt, I mean, I must credit that the interaction that I had with the finance ministers pre-budget, many states felt that there are rare earths which they can utilize. We then sat up in the budget group that we have, Revenue Secretary, Secretary DA, and thrashed out, talking with the states. What are the kind of things that we can do so that their capacities to extract these minerals, process them, make them something which the industry can benefit from. So India can be less dependent on imports of these materials. That is where, having spoken to states, we thought it's very important to recognize the corridor and give a policy for it so that industries can invest, private sector can come in, governments, state and center can come together on it. That is where these corridors were announced. And looking at the success of the defense corridor, I can confidently say these rare earth corridors will make that big a difference to the Indian economy. The first question, I think there's enough to cover all the election states. If I do, you will ask me, why have you done it only for the election states?
Now I've done it for election and non-election states as well. You want me to spell out what has been done only for the election states? I'm quite happy to do it. 262, front. At the front, please. Here. Front side. Front row. Good afternoon, ma'am. Sapna Das here from CNBC TV 18. Two quick questions. Just wanted to understand the gross borrowing at over 17 lakh odd crore. Would the government look at it as being on the higher side? Just asking that. And within that also, if you look at your net tax revenue stream, of course, B to RE it's higher, and a lot of concessions have been given away both on direct and indirect taxes. But the trend seems to be a bit flat, around 28 lakh odd crore. So if you could explain to us, how is this entire thing looking? And second, ma'am, in terms of the disinvestment aim, 80,000 crores, would this also include IDBI stake sale sometime in FY27, ma'am? Thank you very much. So you've covered a number of secretaries all at one go. So on the borrowings, no, we don't think it's on the higher side because the net market borrowings are in the range of 11.73, which is been plus around that number for the last couple of years. The larger number is because we have 5.5 lakh crores which have to be repaid this year. So to that extent, we don't think that it's a large number. We have a plan how to manage this, and according to that plan, which also gets released from time to time, the markets would also know, as well as all of you all. 4. Okay. So, on the tax stream, because of some concessions that were given this year, there has been some course correction. But if you look at the next year, the direct tax is growing at 11.4% and continues to be 3.1% of the GDP. The total collection would be 6.9%. The indirect tax excise is growing very healthily because of the base correction, the base which has got added. Customs too is showing a decent buoyancy. So on the tax revenue, I think we are looking up. And even GST, as you would have seen the collection figures today, after rate rationalization, the buoyancy which we had expected, and in this hall we had discussed about it, you can see that coming back on that tax. Hi, ma'am. Meghna Mittal from Money Control. The fiscal deficit target that you have set for next year from 4.4 to 4.3 is being seen as very, very gradual. Is there a specific reason, or is it because of the global uncertainties as one of the major factors for being such a gradual fiscal consolidation path? I would have thought you'll appreciate it being gradual. Because particularly fiscal, drastic changes don't go down well. One or the other section gets hurt. We will have to be gradual, but yet keep it well within that band which gives confidence. And to show that we care for fiscal prudent management. There's no point in me dropping it to, let's say, 4. It has to be steady so that the economy goes in a steady speed. So it is a responsible number and realistic number. It's not as if I wanted it to be so gradual. It is a responsible number. We should achieve it and equally not bring in any kind of turbulence anywhere. Thank you. From the center flank, 190. Thank you, and congratulations on a very comprehensive budget. Before you start, I was going to look at PIB and say this side is being ignored. Yes. But good that he called you. Thank you. I'm Aprajita Saxena from CNBC International in Singapore. I'm very curious because you started talking about tech, and I want to ask a question about the ISM 2.0. There are those on the outside who say that India sort of lags when it comes to AI innovation, especially innate innovative LLMs. Is the strategy of ISM 2.0 to sort of become part of the global value chain, or are you more positioning towards India creating its own native LLMs? Thank you. I think Kashmini Vaishnav, the minister, has been speaking extensively about this. There are several aspects of it. We want to be sure that in the semiconductor domain, we have every expertise for all those 5 major chip or modeling or, the
infrastructure, design, every aspect of it. So he is talking about creating abilities within, capacities within the country to be able to have that kind of a infrastructure well laid out within the country. And similarly, if you're looking at the way in which our startups are working, using AI, and very clearly we have also shown a path that it is not just the large language models, but also smaller ones, medium-sized ones, which can serve the requirement of your economy. So AI in India, particularly when you have a huge demographic dividend, will have to give us results to ensure that our people have work, and also the opportunities are going to be enticing enough for the youth. It cannot replace human efforts. So we are at the same time redefining for ourselves, if I may use that expression, on how to use AI, what is the capacity that we have to create, the kind of infrastructure that we have to lay in the ground for it. Equally, the products which come out of it will have to benefit our people, because our youth are revving to do more and new. For them to do something new and for them to do something more, we have to create benefits out of AI rather than push along with AI unthinkingly that it doesn't serve our people. So I think these many different factors play in making a decision on semiconductor. And that is why semiconductor ISM 2.0 looks into these aspects as well. And I'll ask the CEA to speak a bit on it, because he spent a lot of time so that he could write effectively capturing what's happening down. Ananta, you want to say anything on it? Actually, we have to see the semiconductor mission and the announcements related to the rare earth corridor, which ma'am talked about a few minutes ago. All of them as part of the framework that we presented a couple of days ago here on the strategic resilience part. So, in fact, many elements of this ma'am's budget speech focus both on equipping us to handle the AI-related technology as well as skilling the population in areas where they can be immune to some of the AI-related impacts as well. So it covers both dimensions, and therefore the semiconductor mission, the rare earth corridor, and also some of the Part B announcements ma'am made about the various electronics and manufacturing sectors were all part of the initiatives to make sure that we make ourselves strategically resilient in a very fraught global environment. 138 at the back side. Yeah. I'm Rishabh with NDTV Profit. Just wanted to ask on the buyback tax, the rationale behind it, because was it essential to do it now? Because in 2025 there were a lot of companies that came out with significant share buybacks. Also because, and also do you foresee some sort of a reduction in buybacks? And secondly, on pollution related schemes, the outlay has been very stagnant, but pollution as a problem remains. Is this not a policy priority for the government now? On the buyback, I'll have Revenue Secretary brief us. So first of all, on the buyback, I'd like to clarify. I hope that the point was clear enough in the speech also, that it is in fact a relief. It's not a tax, additional tax. It is a relief. Buyback tax system was changed to make it as a dividend income, which is income at the applicable income tax rate at the hand of the shareholder. It has been corrected now, and we have put the tax to be in the hands of shareholder as a capital gains tax, which long term, for example, will be only 12.5%. So there is a correction and a relief which has been given to the shareholders. All that has been done is, the whole objective of doing that change at that time was misuse of a tax arbitrage by promoters. So the change made for promoter is that additional buyback tax on them, which again keeps things status quo for them. So even today, the marginal rate at which they would have been paying the tax as a dividend, which is at their respective income tax rates, we have kept it at 30 and 22. If it is a corporate, 22. If it is an individual, 30. So as far as promoters is concerned, it is status quo. As far as the other shareholders concerned, it is actually a very big relief. So that is probably what may make the point little clearer, the announcement itself clearer. 76 at the front side.
pollution. So pollution is a priority with government, and not everything has to appear at the budget speech is how I would put it, ma'am. So we are working with many state governments on projects related to air pollution, even water pollution. There is a significant budgetary outlay on sewage control as well as drainage. And as it was noted, you would have seen the Finance Commission recommendations also. A large portion of the Finance Commission grants to the local bodies, urban and rural, is tied to water and sanitation, particularly I would say sanitation. So pollution of all kinds remains a top priority, and there are different ways in which we are trying to tackle it. Hello ma'am. Ma'am, I am Monica from Business Standard. Ma'am, I have two questions. Ma'am, I am here. Ma'am, I have two questions with regard to customs. Ma'am, in your budget speech, you said that honest taxpayers will be able to close their case and they can pay the additional amount in view of penalty. So I want to know whether this is a customs amnesty scheme, and if you can provide the contours of this scheme. And also, ma'am, Economic Survey flagged the need for convergence between transfer pricing, which comes under income tax law, and customs valuation. But there was no mention in your budget speech. So is there any such proposal being considered by the government? Both on the direct tax and the indirect tax, this is not an amnesty scheme. This is essentially an offer given to the honest taxpayer who would otherwise, when he gets to know that he has to pay the duty, he will like to pay it. But because our laws require him to also pay a penalty on that, the negative connotation associated with being penalized, which he has to obviously disclose at some point of time, does create a situation for him or an incentive for him to rather dispute the duty, even though he may not want to do it. So the window that we are giving to the taxpayer is that you will, if you are willing to pay your tax or whatever is the duty, instead of penalty, the same amount you can pay in the form of an additional amount. So it will not be either a relief or an amnesty. At the same time, this amount that you pay will not be treated as a amount which you have paid as a penalty, and therefore that negative connotation will go away. You may have seen that there is another announcement of a similar nature on the income tax side, where when it comes to the cases of under-reporting today, there is a provision under which you have to pay tax, interest on tax, and a 50% penalty. If you are willing to accept the demand and not go on appeal, you need not pay the penalty of 50%. You can go ahead and pay your tax and interest, and the matter is closed. What we have done is expanded this window and included even misreporting cases, where penalty is otherwise 200%. But there again, we are telling him that you can settle it by paying the tax, the interest on tax, and this 200% get reduced by half. You pay 100% as an additional income tax. The idea here is that if you are an honest taxpayer, accept the fact that you have to pay the duty. We will not like to brand you by using the word like penalty. That is these two windows are essentially meant to take care of those situations, which is why reference to an honest taxpayer. Yeah, we are examining that separately. 194. Left side, yes, back. Ma'am, this is Amitod Singh from CNBC International. Congratulations to you and your entire team. I have two questions. The first is around foreign investors. There were a number of expectations that, taxation structures would be changed, particularly when you think about things like withholding tax. So what we want to understand is whether that was even discussed within the government. And my second question is 15% defense spend increase. How much of that has to do with global uncertainty? Revenue Secretary can answer on the first question. See, global uncertainty is something which definitely occupies all the officials' mind when we are preparing for the budget. But I won't attribute it to be the cause for any one step. Across the board, we kept that in mind. So it's not the cause for any one thing that we've done or one thing which we did not do. That's kept in our mind. Our macroeconomic fundamentals are strong. You heard the CEA speak
that despite you having a macro sound economic foundation, you're still sort of facing a world which is uncertain. And therefore, when currency, Indian rupee versus the dollar becomes an issue, you have done everything within the country to make sure your fundamentals are fine. But the uncertainty globally is affecting on many grounds, and we are seized of it for everything that we do, not for one particular thing, but ours. Yeah, I think today we need to look at what has been announced in the budget. So we would rather focus on that, because there would obviously be many of the issues which would be discussed and deliberated. But what has come out for you before in the budget is what is there, and we should probably focus on that. And if you saw that there are many announcements, especially which are addressing the needs for attracting investment in India, bringing more certainty, both for the residents who interact with their related parties as well as for the non-residents who otherwise do business here. There's a whole host of those announcements. You would appreciate that what, for example, has been done in IT services is a change which is completely, and it's a fully comprehensive change, which practically will take care of just about 30 companies need to now sign APAs. The rest, all 11,000 odd, will be covered under one or the other system of certainty of taxation, either through safe harbor rules or through the APA agreements. So this has been a major change. In specific sectors where we felt that the residents needed certainty, we have provided that, whether it is in the data center, whether it is in manufacturing, electronics, even for the expats, if they are going to stay here, the experts, for a longer time. On the data center, I just thought I'll take this opportunity to clarify, because there was some speculation about what has been done. The thought process in this is that a global entity which is providing kind of cloud-based data services uses data centers all over the world to provide services to the customers. So it is very difficult to connect one-on-one as to which data center has resulted in what type of revenue. So the international entity of this nature would like to set up data services centers in India, which is a net economic plus for us, because it adds to that scale and level of economic activities. It has strategic purpose too. So the arrangement we have done is, just because that entity will set up data service centers and will use this as one of the many to provide services globally, should not become a cause of uncertainty for it that its global income will get taxed here. So that is the certainty which we are giving to it. Quite naturally, the data service center which is located in India will be taxed depending on the way it is positioned, and that entity will be selling its services to customers in India through a reseller entity, which again gets taxed. What we are excluding from taxation is this global entity, which is essentially doing cloud-based services using data services centers across, and we do not want it to be deterred from enhancing its business footprint in India to provide such global services. I'll just come in to add to that point on foreign investors, to point out one or two points on the Part A side also, which are important. One is that this was this ask from AIFs for a very long time, that most AIFs in our country are formed as trusts. Their request had been for a pretty long time to consider if the LLP Act can be modified and amended to align it with the functional requirements of AIFs. So that has been announced today, which is a very big sort of move forward, as it will allow them to, the amendments are going to be of such a nature that by becoming LLPs, first of all, the liability will get limited. And then there are going to be amendments which will also allow for document filing rationalized for entry and exit of partners, and similar such things to make it easy for the AIF partners. So that's one of the announcements today. The other was the announcement on the PROIs and the relaxations given therein of how much they can invest in a company individually and together. So those limits have been significantly enhanced, and all of it has been rationalized in line with OCIs and NRIs. Other than that, the FEM NDI rules, we intend to review it for two things. One is, again, we are continuously in touch with investors. There are asks over there. So instead of doing it one by one, this shows the intent of the government to actually reach out and address the world which is interested in investing in India, and make it easy for them to do so. 214. मैम मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ CNBC आवाज से। मैम मेरा सवाल यही है कि जो सवाल STT से रिलेटेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से, मैम यहाँ पे
मैम जो पॉलिसी है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। और दूसरा कि जो एसटीटी बढ़ाया गया है, बहुत ही जैसे रेवेन्यू सर ने कहा कि बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है, तो क्या इससे जो सरकार की पॉलिसी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे जो बहुत हाई रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है उनमें निवेश से एक तरह से कॉशन करने की पॉलिसी है, तो क्या इससे ये मकसद हासिल होता है क्या? I'll ask the Revenue Secretary to go into the details, but आपका विषय जो मकसद के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैं पिछले बजट के समय में भी इसका एक्सप्लेन भी की। We are touching only the futures and options. STT otherwise बाकी सब का ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं किया, मगर जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो दिस नॉमिनल इंक्रीज इज प्योरली एम्ड एट हाई स्पेकुलेशन ओनली टू डिटर देम। मकसद बोल रहे हैं, हाँ, उनको थोड़ा डिस्करेज करने के लिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, जरूर एक्टिविटी जो होता है उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मगर इतने लॉस और इतने छोटे छोटे लोग का लॉस को सरकार देखकर कैसे आप चुप रह सकते हो? डिटर करो थोड़ा उसको पीछे हटने के लिए, बस उतना ही। So the tax is only one element of kind of supplementing or supporting that policy, which is what I explained before. In as far as the rest of what and how this market has to be regulated is probably for the market regulator to respond better on that aspect of it. 67 from the center. So I'm Pallavi from CNN News 18. Little political question because the reactions are coming in from the opposition parties. Rahul Gandhi specifically says that the budget has failed to go in for a course correction and that it did not address the real concerns of the country. With due respects, I don't know what course correction he is referring to. Economy and its fundamentals are strong. Global uncertainty is facing many of our sectors for whom we have brought in so many different schemes for those small and medium enterprises, for textiles, for leather, for shoe uppers, for people who are working in the rural areas, schemes for benefiting them, for even the farmer and value addition, for women entrepreneurs who are chote groups, self-help entrepreneurs, the she marts that we've come up with. These are ways in which we are reaching out to the common small people to make sure that they don't have to face big changes in their life because of any volatility coming from outside. They could be contributing to exporting small things. But different uncertainties can affect them equally. Many of them have been shown as successful because you see when you go there, Lakpati Didis is a fantastic difference made to women in the rural areas. Now we are bringing them together to sell their wares. Are these not measures through which we are reaching out for the poor, the small, those in a difficult terrain or in rural areas? And with all this, the fundamentals of the economy remain strong. And that has come out even in the economic survey. So, well, politically you want to criticize, you're welcome, please do it. But if you want to give me the facts on which you're basing your argument, I'm willing to hear and willing to reply to that. 16 at the center, yeah, on left side. Ma'am, I am Bani Kinkar Patnaik from the Economic Times. Ma'am, I think probably one of the most important features of this budget is that for the first time in probably many years, your effective capital expenditure at 4.4% of GDP is going to be slightly higher than your fiscal deficit, projected fiscal deficit for the next year. So it means, I mean, in other words, you will be using more than your entire borrowed resources. You will be deploying that in productive spending. So I wanted to ask you that, whether it is going to be the new normal in the coming year.
years. And ma'am, one clarification I needed. This VV Jiramji scheme, you have allocated more than 95,000 crore. At the same time, I see that Narega has also got 30,000 crore. So is it going to be on top of that, or because Jiramji scheme is supposed to replace this Narega scheme? I'll ask the Expenditure Secretary to respond on that. Yeah, on the new scheme, the Jiramji, the budget provision has been provided exactly as what you would have seen when the bill was being presented and the act was there. So we have gone exactly whatever is required has been provided. Now on the old scheme also having some money, in fact it's a legacy of the inefficient way in which the scheme was, the MG Narega was being implemented by the states. So there is some carryover of liabilities, 30,000 crores. So that we have taken the responsibility of verifying and fulfilling it. So that's why we have kept that, but otherwise fresh implementation will be on the new provisions. I would say that the fact that we have an annual budget means that we review everything annually. So I will leave it at that time. We have done our fiscal math, and I think we come with a certain credibility on the fisc that we are confident of meeting, and while adhering to our commitment to higher capex. And fiscal deficit financing, as we have always done, is through a mix of market borrowings as well as NSSF. So that will continue. So there's not many major changes like that. Thank you. 37 at the back, yeah. Hi ma'am, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. Just wanted to understand that this one-time foreign asset disclosure scheme, how that will be different from the similar scheme in the past, and if you could elaborate a contour of that, and also is there any estimation of undisclosed foreign assets being done by the department? So this scheme is meant first of all for small taxpayers. There is a ceiling of the amount that can be disclosed. This window was provided for the first 3 months when the act was brought in, the BMA Act, and that time people utilized it. What has been found is that there are many small taxpayers who, because of their ignorance, etc., have not been able to do proper disclosures. So this window is being given as a one-time 6-month window for such small taxpayers, the list of which some idea of who they are has been given in the budget speech also. So there are two streams in this window. One is of the people who have paid their tax, the income is disclosed and is quite transparently known. All that they failed to do is they were not able to disclose the asset, foreign asset that they had because of that. Which means they will be able to prove that the income was put to tax. However, the asset was not, just only thing they did not do is did not disclose it in their returns to the income tax department. So this is the window B, where we are saying that if you have a foreign asset of up to 5 crores, you can pay a fine of 1 lakh rupees, which today under the Act would have entailed them a fine of 10 lakh, a penalty of 10 lakh rupees and prosecution. So you will get both immunity from penalty and prosecution, and you can declare those assets. This is category B. There would also be category of people who may not have been able to or have not properly disclosed their income. This is the category A, for which this limit is 1 crore rupees. So 1 crore rupees of foreign asset or income, if they have not disclosed, then they can disclose it during this window. In this case, however, they will have to pay the tax as well as 30% tax and then 30% additional tax on top of that, and a certain amount of interest. Again, they will get immunity from penalty and prosecution. The idea is to essentially help those NRIs, returning NRIs, students, some professionals, people who have gone out, people who may have got ESOPs, any kind of such assets that they may have outside. They'll be able to disclose it and be able to protect themselves against penalty and prosecution and come clean. And it has been structured in a manner that it addresses only small assets, and secondly, it is something which will be helping them to also get away from all the procedural problems of penalty and prosecution. 25.
Hello, ma'am. Ruchika Chitravanshi from Business Standard. Ma'am, while you have stated that global uncertainty was playing on the minds of officials across the board, if I may ask you, what was the one challenge that you were trying to address, or economic concern that you were trying to address in this budget? And we said global uncertainties play in the minds of all the officials. It is truth that all of us are watching that global uncertainties are really of the magnitude that we've never seen before. So naturally, we had to assess for ourselves the various ways in which these uncertainties are playing out. So all of them are equally important. 243. Good afternoon, ma'am. Kriti Ambe from Informist Media. Ma'am, this year's nominal GDP projection, the projection of 393 lakh crore, does it take into account the upcoming base year revision, or is it possible that this number would undergo further revision when MOSPI releases the new base year and releases its estimates based on the new base year by the end of February? Let the CEA and Secretary EA answer that. The 393 lakh crores or 10% nominal GDP growth was arrived at based on the existing GDP base year and the methodology. Ma'am, if I could follow up on that, back in 2015 when the base year revision had happened, the previous year's 14 and 13 numbers went up, nominal number went up by odd 9 lakh crore. So if FY26 number goes up by that sort of magnitude, or even if not from 357 it goes to 360, your fiscal deficit estimate would come down even further. So do you think there is possibility? You began your question with the if, right? No answers from my side for ifs. Sure, thank you, ma'am. 45. I think center. Hello ma'am, this is Pushpita Dey from the New Indian Express. So a lot of custom duty reductions have been introduced. So how do you see the impact on the revenue, and also particularly for the consumer goods like 50% duty reduction, will there be any measures to ensure there is no dumping after the reduction happen? And also, not particularly related to the budget, after the recent Tiger Global Tax Supreme Court verdict, do you see there will be any impact on the foreign investment for India? Thank you. Customs duty, the reductions, etc., which have been given have a logic for that sector, the need for those items to be brought into India, and customs duty not to add cost to it. So there is an economic logic of why it has been done. And if you have seen, most of them are meant to essentially enhance either manufacturing or value addition within India, or help the cause of exporters who are using those imported items to export items from out of India. So this is a very conscious sectoral call. For each sector item, the value chain has been analyzed, based upon which decision on whatever moderation or whatever calibration of duties were to be done have been done. The second part, in terms of revenues, etc., is concerned, what you would have seen is there are a lot of custom process reforms that have been proposed. And the idea is essentially to enhance the volume of international trade, which should fetch us more revenues rather than playing on the rate itself. So we do hope that these process reforms will encourage more people to kind of, export, in the process probably the part of global value chain, more imports, and duty or revenues will be a result of that buoyancy. I just want to add one additional point to what my colleague Revenue Secretary said. If you look at many of the customs duty reliefs given in Part B, you have to read them in conjunction with the announcements made in Part A on manufacturing. So you look at electronic component manufacturing and you look at the concessions given in Part B, there is a certain logic, alignment and synergy between the two. So that's exactly what you need to focus on. So actually, the fear of dumping there, will you be monitoring it? We are looking at only those sectors where we need to have our production capabilities improved
and raw materials shouldn't be a constraint on those items which are necessary for us. So it is a very calibrated way in which we've done that. 39, the front row. Thank you, sir. Congratulations, ma'am, and everybody. Karishma from Business Today. Ma'am, I just want to also continue the question on the rural employment scheme. A couple of states have shared skepticism and apprehension if they'll be able to fiscally absorb it and if they have the appetite on the cost sharing for the scheme. Ma'am, second, just a follow-up question, if there could be an update given on IDBI disinvestment. I think the Agriculture Minister has spent a lot of time interacting with states to tell them what actually is Vikasit Bharat Gram, the G Ramji program is about. It is not about money. We have continuously given. That's why you heard Expenditure Secretary say, Manrega, balance which had to be carried forward, had to be provisioned for, we had to pay them back. Although inefficiently spent, we have to still give them, though we made the provision. And Vikasit Bharat Ji Ramji, as was at the time of the act getting passed, whatever was predicted was going to be provided, we provided for that. So I think there need not be any doubts in the minds of what is going to happen about rural employment guarantee scheme. In a way, the new scheme actually understands how efficiently it can function in the ground. Inefficiencies have been removed from it, and the money allocation proves that we have put the money where we spoke about. So that's fine. All disinvestments which have been approved by the cabinet earlier, that list will continue to be before us, and we will carry forward every such. And on specific, if you want to know, we have our Deepam Secretary. Please do tell. I think one thing we must keep in mind is that we follow a composite strategy, and disinvestment and closure have to be seen together as part of that composite strategy, which enhance or increase the participation and efficiency of the private sector. As part of that strategy, as Honorable FM said, whatever in principle approvals we have obtained for both disinvestment and closure, say about 50 of them, half of them have already been completed, which means about 12 closures and 13 strategic disinvestment transactions. The other ones are on track. That is why we keep aspirational targets, because we are fully on track and fully committed to completing each one of them and taking to a logical conclusion. Thank you. Yes. 81, backside. नमस्ते, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मुझे याद है कि दीपावली के दिन मैंने पूछा था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या करेंगे, तो आज आपने पिटारा खोल दिया उसके लिए। आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा सवाल मैम ये है मैम कि यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की आपने 5 बात की, क्योंकि डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हमारे बैकबोन है ग्रोथ का भारत के लिए, उसके लिए इसमें क्या है? और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है? हायर एजुकेशन के लिए जब हम 5 यूनिवर्सिटी हब्स बनाने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट आज प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज बहुत आ रहे हैं। स्टेट्स का मन लग रहा है कि और हायर एजुकेशन सेंटर्स जरूर होना चाहिए। इन सब को सुनने के बाद हम हायर एजुकेशन में और ऑप्शंस ले आ रहे हैं, जिससे हर तरह का कोर्स
उस हब्स में बने. Our students don't need to go out in case उनको वीजा नहीं मिला और बोरोइंग करके जाना है. उस क्वालिटी का एजुकेशन भारत में ही हो. इसीलिए जितने भी स्टेट्स वो क्या बोलते हैं चैलेंज मोड में आकर के बोलेंगे कि हम जमीन देने के लिए तैयार है. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बनाते हैं, ऐसे universities with different types of courses can all come and set up, and this will also mean partnering with universities abroad. So higher education में जो flexibility के साथ function करना है और हमारे students जो बाहर जा रहे हैं उनको उसी क्वालिटी के एजुकेशन इधर देने का, ये नहीं कह रही हूं मैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी नहीं है, मगर एस्पिरेशनल लोग को कुछ और सर्टिफिकेट जब चाहते हैं वो सर्टिफिकेट क्यों ना भारत में ही ना मिलना. Why don't we provide for it? And इसीलिए वो स्कीम ले आए. So it does not immediately mean that we are not going to be spending on primary and secondary. प्राइमरी एंड सेकेंडरी में इतनी सारे स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए पीएम श्री स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बहुत सारे कदम पिछले 5 साल में उठाया गया. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उन सबको अभी भी सपोर्ट मिलेगा सेंटर से. हम कम नहीं कर रहे हैं बजट को. 22 the front. Hello ma'am, good afternoon. This is Surbhi from Business Today. Ma'am, firstly I wanted to understand the impact of your tax proposals both on the direct and indirect tax side and as well as the net implication. Ma'am, secondly a very basic question in terms of your new fiscal anchor on central government debt reduction. What are the measures that will be followed on that? Thank you. So on the new fiscal anchor, we, like it has been announced, the glide path will be continued, and fiscal deficit, in other words, shall be the operational target to attain the debt to GDP. So it's not that we are going away from the fiscal deficit. It's not going to be the monitorable target. The target will be the debt to GDP that we are going to be monitoring. But both do work in tandem, and that is understandable. That's the way we are anchoring this. So I have already explained the growth rates for the tax the next year. So if you look at the buoyancy, for example, for direct tax, we are taking the buoyancy would be around 1.14. So which shows that we expect that with all these reforms, the tax growth should become and would be growing at a rate faster than that of the economy itself. So we do expect the tax income, the tax revenues to be sufficiently buoyant in the coming year. 46, this side, left. Ma'am, this is Priyansh from Money Control. I have two questions. One is on the GST. So the GST numbers that the target for FY27 is 2.5% lower than this year's target. So although there has been, this is due to the reduction in rates, but when can we expect the growth to be in the positive territory? And second question on the nominal GDP number, have you taken under consideration the conclusion of the trade deal with US on the nominal GDP? And if it is concluded, can it be higher? So the nominal GDP, as the CA explained, has been calculated on an as-is where-is basis, which includes the US-India trade deal as-is where-is. When things change, we will see how the data shows up. 249. Achha. GST revenues, what is the question? Can you repeat the question? Over the last year. No. You will have to account the fact that compensation cess is not going to be there the next year. So you'll have to exclude that, which is why you would see our monthly figures are showing other than compensation cess. That is the right number to look at. Hello ma'am, this is Priyoshmita from Informist Media. Ma'am, since you mentioned that gross borrowing for FY27 is not particularly high,
can we expect more buybacks this year as well to bring down subsequent repayments? And secondly, are you looking to switch bonds with the RBI as well to manage your repayments? You did this this year in May after a gap of 2 years. Thank you. So the reason we do buybacks and switching is basically to reduce our repayment burden and to mitigate the bunching up effect, and also to manage the costs. So we did a significant switching of high coupon securities this year. Next year, this 5.5 lakh crore which needs to be repaid, as they keep coming up, we will be taking decisions closer to those, while work is continuously going on this in one division of DEA. 24. Mike, please. Yes, ma'am, this is Rajesh Singh from ANI. My question, could you clarify some measures in the budget to boost savings? Because there was some demand by bankers for FDs to be linked with like equity benefit, or NPS scheme were demanding some kind of tax benefit. Because we need greater savings for greater growth. We need greater savings for greater role, all right, and the banks know how to do it. 9. Please pass. Hi, this is Adija from Money Control. I had 2 questions. One was on the fact that the economic survey had also raised some concerns about states' fiscal health and their borrowing, putting pressure on the sovereign borrowing rates also. I just wanted to understand, has the center thought about how do we want to tackle this with the states, because we are targeting a debt to GDP ratio, but we know overall debt to GDP ratio is the anchor that most global agencies look at and ideally needs to be looked at. Second, my question was on the FEMA rule changes. I just wanted to understand with the interaction with the investors or, the stakeholders, globally, what are the kind of demands or what are the kind of requests that are coming in, especially amid the status when it comes to foreign investor outflows. So what are we looking at, if you've thought about anything yet? We're talking with states about their borrowing can only be done as a nudge conversation. Beyond that, the center cannot do. Equally, if you look at it, the center is also under Article 293(3), duty bound to make sure that the borrowings of the states are also monitored in a way. We can't curb them, but beyond their FRBM, we can sit with them and have a conversation. But that's about where it is, and I think largely states understand their duty under the FRBM Act. So I leave it there, you understand. But on this question, the next question, the NDA rules. So on the NDI rules, there is a whole bunch of suggestions that we've got, but it's not like a review has started and a serious public consultation in a structured way has started. So there have been, I don't remember from the top of my head, but some things on the definition of FDI itself, some investors have raised. And there are other such things, but when we like ma'am has announced today that a review will be taken place. So when we start the process formally, there will be formal interactions with investors and we'll take it. अभी आप सुन रहे थे नेशनल मीडिया सेंटर में वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के सवालों का जवाब। समय हो चला है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। समाचार के बाद आम बजट 2026-27 पर आकाशवाणी पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी। केंद्रीय बजट 2026-27। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड 9वां बजट था। बजट 2026-27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट कहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है।
India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना है। इसके अतिरिक्त देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 22,919 करोड़ रुपए के परिव्यय से आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं। वित्त मंत्री ने इनके अतिरिक्त मेघा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। इस नई पहल से बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों और एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. भारत को उच्च गुणवत्ता और किफायती मूल्य पर खेलकूद सामानों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वित्त मंत्री ने निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की एक समर्थित पहल का प्रस्ताव किया। बजट में विरासत के 200 औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार के लिए नई योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने चैंपियंस के रूप में इन्हें विकसित करने के लिए 3 सूत्रीय उपायों का प्रस्ताव किया। इन उपायों में इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता शामिल है। सूक्ष्म उद्यमियों के मदद और पूंजी जोखिम से बचाने के लिए वर्ष 2021 में 2000 करोड़ रुपए से निर्मित आत्मनिर्भर भारत निधि को और सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया है। पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में 7 उच्च गति के रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये कॉरिडोर हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। आयकर में कोई बदलाव नहीं। बजट में संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय कर वर्ष के बाद 31 मार्च तक। सरकार ने लाभांश और म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताया। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि यह बजट 21वीं सदी की दूसरी तिमाही का पहला बजट है जो भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for the year 2026-27 in the Lok Sabha today. This was the 9th consecutive budget presented by her. The Finance Minister termed the budget Yuva Shakti driven. She highlighted substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of country's people. She said this year's budget is inspired by 3 kartavyas of accelerating economic growth to build capacity of the people
and to provide resources, amenities and opportunities to every family, community, region and sector. The minister announced that Biopharma Shakti, with an outlay of 10,000 crore rupees, will be launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub in the next 5 years. For the labour-intensive textile sector, the Finance Minister announced to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. The government has decided to set up high-level committee on banking for Viksit Bharat to comprehensively review the banking sector and to safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. Ms. Sitharaman proposed to increase outlay of electronics components manufacturing scheme to 40,000 crore rupees. She also announced that 3 dedicated chemical parks will be established to promote mining, processing, research and manufacturing. 7 high-speed rail corridors will be developed between Mumbai-Pune, Pune-Hyderabad, Hyderabad-Bengaluru, Hyderabad-Chennai, Chennai-Bengaluru, Delhi-Varanasi and Varanasi-Siliguri. Government will set up high-powered education to employment and enterprise standing committee to focus on the services sector as a core driver of Viksit Bharat. Basic customs duty has been exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. 3 new All India Institutes of Ayurveda will be established to prepare more skilled health personnel. Also, Nimhans 2 will be set up and National Mental Health Institutes in Ranchi and Tejpur will be upgraded as regional apex institutions. Today's budget proposed to extend time to file revised return or belated return up to 31st of March following the tax year. Interest deduction against dividend and mutual funds income have been removed. The Finance Minister highlighted the government's vision for increasing farmers' income, empowering Divyangjans and the vulnerable to access mental health and trauma care, and focus on the Purvodaya states and the northeast regions to accelerate development and employment opportunities. A scheme will be launched for the development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. Later, in a post-budget press conference in Delhi, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the budget is the first one in the second quarter of the century, leading to a vision for India to become a developed nation by 2047. The Finance Minister said the budget is aimed at Sabka Saath, Sabka Vikas. The Finance Minister added that in this year's budget, health has been given equal importance with special emphasis on mental health. Primarily, we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, we will ensure that technology is brought in to benefit the common man. And above all, with all this inclusive development, Sabka Saath, Sabka Vikas, and that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations for bringing better health facilities and also making sure we are able to provide dignified opportunities for Divyangjan. Prime Minister Narendra Modi has hailed the Union budget, describing it as historic. In a video message, the Prime Minister said this budget is a foundation for the country's journey towards a Viksit Bharat. He called it a Yuva Shakti budget, reflecting the aspirations of 140 crore Indians. He said this year's budget will give India's reform express new energy and new momentum. And that is the end of this news bulletin. केंद्रीय बजट 2026-27। नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम आम बजट 2026-27 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने आपको अतिरिक्त मिलेंगे। कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा। रक्षा बजट 15% बढ़ाया गया है। सेना के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च किया जाएगा।
भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। आयुर्वेद के 3 एम्स भी बनाए जाएंगे। करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल होगा। लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की योजनाएं हैं। रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ाई गई है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। आय और रोजगार बढ़ाने के मौकों पर फोकस किया जाएगा, खासतौर पर खेती और पशुपालन और मछली पालन में। नेशनल फाइबर स्कीम और खादी को प्रोत्साहन देने की बात है। 20 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर 10,000 गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे और विदेश में पढ़ाई और इलाज से जुड़ी घोषणाएं भी हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं इस पैनल में शरद कोहली, अश्विनी राणा और नरेंद्र तनीजा, तीनों आर्थिक विशेषज्ञ हैं। साथ ही मेरे को एंकर अर्जुन। Thank you, Anand Srivastav, and a warm welcome to all our listeners and followers on Akashvani. The Union Budget has been presented by the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, and the press conference is concluded at the National Media Centre, where questions were invited from all media houses regarding the Union Budget 2026-27. And for those of you tuned in to Akashvani, I'm sure you have questions regarding the income tax and indirect taxes as well. We'd like to thank Sharad Kohli for continuing with us on this special program. Sharad, what are the key takeaways when it comes to taxes? I think the attempt, Arjun, has been on simplification of compliance, if you ask me, because there was front loading of major announcements made in the last year's budget where 12 lakh rupees of Section 87A rebate was given to the taxpayers. And that meant a huge tax benefit for the taxpayers. So I was quite expecting that there's going to be no bumper announcement on tax front, because there was a lot done, and I think people are still trying to absorb, and you are getting benefit of that as of today. The focus this year has been on simplification. One of the key takeaways, if you ask me, is there's a lot of taxpayers who've got overseas bank accounts, overseas small investments. So I think a kind of an amnesty scheme has been launched, for 2 categories of taxpayers. One of the category is where you have actually paid taxes, but you failed to disclose. So there's a penalty of 1 lakh rupees, and you can declare, and you can wrap up the matter. And if you've really missed declaring and paying taxes, then of course you pay 30% and another 30%, so you avoid the penalties. Then simplification on TCS, another very key benefit for the taxpayers, Arjun, which has been done is, people who do mistakes in filing their return, they say to err is human. So people who do mistakes, they tend to revise their returns. So the time for revising the return was 31st of December, which has now been revised to 31st of March, which means if you've done a mistake, you can now revise your returns for a longer time. Then another change which has been made is there was something called Section 139(8)A, which was introduced some time ago. This was called an updated return, ITRU. This is meant for people that if you by mistake or deliberately, whatever, you missed paying taxes on something, and you now, as a matter of guilt, you realize that I should have paid the taxes, and you could pay in the first year by paying 25% extra tax. But this facility was not provided to a person whose assessment proceedings had already started. Now this will be available for even if your assessment proceedings have been started. So I think a very major, I would say, I think the government is trying to decriminalize a lot of provisions, prosecution relaxation has been given. So if you're defaulting on tax, I think the viewpoint of the government is you're not a criminal. You may have done it advertently or inadvertently, but you are given a chance by easing out things. They're calling penalty as a fee. This is to check corruption and other practices which may take place during the process. So I think the whole attempt of direct taxes this time has been to simplify compliance, to rationalize compliance, and also, Arjun, a very important thing, from 1st of April 2026, the new Income Tax Act, the old Income Tax is now going to be 65 years of age and is finally going to retire. So the new Income Tax Act is going to come in force. So if you see the fine print, the finance bill, you will see a lot of transition provisions where new forms would be introduced to make sure that the provisions and the processes synchronize with the new Income Tax Act. So all in all, no bumper announcement, but a lot of ease of compliance as far as the taxpayers are concerned. Indirect taxes. Yes.
Well, indirect taxes, I thought custom duties, a lot of rationalization done there. Well, we should keep in mind that there are a lot of listeners of Akashvani who feel, kya mehenga hua, kya sasta hua. Well, of course, on the things where custom duties have been rationalized, you do expect some price revisions because if you are using imported components. But otherwise, if you look at it broadly speaking, I think custom duty reliefs have been given. There are schemes introduced in custom duty also for rationalization. As I said, fee has been introduced instead of penalty. But GST Council takes care, which is some of the Akashvani listeners, they wonder as to why that Mehenga Sasta old kind of budget is not there. That's the prerogative of the GST Council going forward as far as indirect taxes are concerned. STT. Well, STT, the markets shook today, and F&O, and we were listening to the press conference by the Honorable Finance Minister, and she very rightly said, because to me, it seems like that F&O is a kind of a sin good. You don't stop that from selling, but at the same time, you want that people should not encourage. Well, SEBI data says 90% of the people who trade in F&O, they lose money. So on the futures, it's been done at 50%, and on the options 50%, on futures 150%. I think STT anyway forms a very small, and I'll give you a very interesting aspect of that people who make money, the 10% who make money for that matter, they make very big money. So I think it's a very small percentage to deter people that do not indulge. You're not being banned, but do not indulge because it can be risky for your hard-earned money. Arjun. जी हाँ, जैसा कि शरद जी बता रहे थे कि अब सस्ता महंगा होने वाला बजट नहीं आता, चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी के घटने बढ़ने से सामानों के दाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अगर आपको रुचि है कि इस बजट में क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है, तो आपको हम बताते हैं कि कैंसर की दवाइयां सस्ती हो रही हैं, माइक्रोवेव ओवन सस्ते होंगे चूंकि पुर्जों पर ड्यूटी घटी है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। ईवी बैटरी और सोलर पैनल भी सस्ते होंगे चूंकि इसे बनाने का कच्चा माल टैक्स फ्री किया गया है। जूते कपड़े सस्ते हो सकते हैं चूंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने पर कच्चे माल पर छूट मिल रही है। विदेश घूमना सस्ता होगा चूंकि सरकार ने टैक्स घटाकर 2% कर दिया है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता हो रहा है, पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटी है। विदेशी सामान मंगाना सस्ता होगा चूंकि पर्सनल यूज की चीजों पर भी टैक्स घटा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं। अश्विनी जी, इस बजट में जिस एक विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई वो है रेयर अर्थ मटेरियल्स। सबसे पहले आकाशवाणी के श्रोताओं को बता देते हैं कि वे खास धातुएं जो दिखने में आम लगती हैं लेकिन आधुनिक तकनीक की जान है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टर्बाइन और मिसाइल सिस्टम, सब में इनका इस्तेमाल होता है। नाम रेयर है लेकिन ये धरती में मौजूद हैं, बस इन्हें निकालना मुश्किल और महंगा है। भविष्य की तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा में इनकी भूमिका बेहद खास है। केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा, ये आज के बजट में कहा गया है। भविष्य में कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? नहीं, संभावनाओं का देश है ये। यहाँ हमारे पास सब कुछ है, मतलब भारत के अंदर हर चीज़ है, लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। एक्सप्लोर करने के ऊपर जो काम करना चाहिए वो अब शुरू हुआ है, तो इसके बाद वो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उनको निकालेंगे, लेकिन उनको आगे फाइन भी करना है, तो फाइन करने के लिए मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो मतलब कम से कम शुरुआत हुई है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी जो रिक्वायरमेंट है बड़ी है। पहले इसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती थी, रेयर अर्थ के ऊपर बात नहीं होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के बाद और जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है उसके हिसाब से ये रेयर अर्थ जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है और हमारे यहाँ है, लेकिन उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस जो कॉरिडोर बनाने के बाद, और उसको ट्रांजिट भी करने में आसानी होगी। वहाँ से निकाल कर एक दूसरी जगह शिफ्ट करना और फिर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ करना है, बाहर करना, तो उसके कारण एक बहुत बड़ी ईज ऑफ डूइंग मिलेगी। Anand, since we discussed about the securities transaction tax with Sharad Kohli, I think it's important to also inform our listeners about the developments in the stock market today, including the derivatives market as well. So benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, plunged nearly 2% in a volatile special trading session for the union budget today. Barring IT, all other sectoral indices ended lower. Markets started the day on a positive note but quickly dipped into negative territory. However, they managed to recover from the initial losses and traded higher as a budget presentation approached. Despite this recovery, benchmark indices faced significant pressure following Finance Minister Nirmala Sitharaman's union budget speech. Investor sentiment turned cautious due to a combination of higher than expected borrowing figures and hike in the securities transaction tax on futures and options trades.
Sensex tanked 1,547 points to close at 80,723, while Nifty slid 495 points to settle at 24,825. And I know that Sharath Kohli wants to add something to this. Well, I think it's very interesting because the markets sometimes they react like a baby. You know, you hear something and you start reacting. This also shows that how much of speculative element is in the market, because the speculator suddenly felt that they're probably going to lose a lot of money because of STT, which is not the truth, which I explained earlier. Regarding the borrowings, I would like to make a comment. If you look at a deep dive into the numbers, you will find that our capex of 12,10,000 crores, and the net borrowing is less than the capex, 11,70,000 crores. If you add the small savings and other borrowings, yes, it is 17 lakh crores. So the point I was trying to make here is that the market operators, investors, traders, sometimes they take a while to read the fine print. We should not forget that during the trading hours, the budget was announced. They'll go back home, they'll probably sit down, and the market has gone into an oversold territory anyway. So don't be surprised if the market recovers from here. They understand the provisions better, that this budget is growth oriented. This budget has the target of 2047 Viksit Bharat, and this budget is going to speed up the GDP. So when the GDP speeds up, how can the corporates remain away from that? I'm sure the market operators will settle down with a very positive mindset, and things may look different on Monday rather. So there are two aspects to this. One is the margin of the trader, especially in the derivatives space. So there's the cash market and the derivatives. Futures and options is speculative, as termed by Finance Minister Nirmala Sitharaman as well. And by hiking the securities transaction tax, the objective is to regulate the volume of trade and ensure that the losses to F&O speculators is minimal. There's also the other side to it, because you mentioned about the borrowings, and what is the debt to GDP ratio? Just to put this in perspective, what is the debt servicing? Well, we are doing very well. 56.1% is India's debt to GDP ratio, and the target set for 2030 is to bring it down to 50%. And if you compare it internationally with the world's biggest economy, it's 130% for United States of America. You can imagine how fiscally disciplined we are at this point of time. If you look at the Fiscal Responsibility Budget Management Act and you look at all the other parameters, I think a fiscal deficit target of achievement of 4.4%, target of 4.3% for FY27, I think this is a highly fiscally disciplined budget, if you ask me. And that is what I said, when the market operators deep dive into these numbers and they start absorbing these numbers to see that after all, this is not adverse for the market. You will find the markets recovering tomorrow. The market anyway has gone into an oversold kind of a territory on technical front as well. I don't want to go into details of stock market at this point of time, but then I think it's a very forward looking budget, and you will see the reactions gradually. I've seen many budgets, Arjun, and I'd like to draw Mr. Taneja's attention here also. I've seen many budgets where the markets took a long time to understand that budget, because there's so much to read in fine print. So a very forward looking, fiscally disciplined budget is what I would like to say. नरेंद्र जी, डिफेंस बजट पर थोड़ी चर्चा अगर करें तो 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ यानी 15.2% की बढ़ोतरी की गई है। हथियार की खरीदी और मॉडर्नाइजेशन पर पिछले साल के लगभग 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22% की बढ़ोतरी। किस तरह देखते हैं डिफेंस सेक्टर के इस बजट को? नहीं, जिस तरह का हमारा पूरा आजकल माहौल बना हुआ है, जो जियोपॉलिटिकल जिस हिसाब से हालात बदल रहे हैं, और अगर आप हमारी ज्योग्राफी उठा करके देखते हैं और हमारी इंडिया की जो पार्किंग है पूरा ग्लोब पे, वो इस तरीके की है कि हमको एक तरफ तो उत्तर की तरफ जो है हमको अपने को सुरक्षित करना है। पाकिस्तान के बारे में सभी लोग जानते हैं, और जो पूरा हिंद महासागर है वहाँ पे भी ऐसे ऐसे देशों की पनडुब्बियाँ और जहाज घूम रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हमारे मित्र हैं। तो हमको अब चारों तरफ से अपने को बचाना है। ऐसे हालत के अंदर जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं सबसे बड़ी, अगर पीपीपी पे जाएं तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मेरे हिसाब से लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आज हमारी अर्थव्यवस्था है पीपीपी पे। और तो इस तरह के माहौल में दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है पिछले खासतौर से 1 साल के अंदर कि शायद कोई देश नहीं चाहता कि हम महाशक्ति बने या विकसित भारत बने। वो चाहते हैं भारत भी कमज़ोर रहे, हम उनकी तरफ देखें, कहीं ना कहीं हम उनके जो सबसर्विएंट हों या सैटेलाइट कंट्री हों, जबकि भारत का जो मुकाम है बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि हम अपने ही उस पर विकसित भारत बनना चाहते हैं या सुपर पावर बनना चाहते हैं। और यही हम थे अगर इतिहास उठा करके देखें तो जब हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ऐसे हालात के अंदर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।
अगर आप बजट को बहुत ध्यान से देखते हैं, ये बात सच है कि बजट का सबसे बड़ा फोकस इस बात पे है कि हमारे देश का जो गरीब है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो मार्जिनलाइज्ड है, तो उनको मजबूत बनाना, बिना उनको मजबूत बनाए भारत मजबूत नहीं बन सकता। तो बजट का बहुत बड़ा फोकस उस पर है, कैसे हम उनको और मजबूत करें। लेकिन उसके साथ साथ कुल मिला के बजट का फोकस इस बात पे है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था की जो नसें हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मसल्स हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्टॉक मार्केट को समझने में देर लगती है। ऐसा नहीं वो समझ नहीं पाएंगे, पर उनको थोड़ा देर लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिस तरह का जियोपॉलिटिकल आजकल क्लाइमेट बन गया, एटमॉस्फेयर हमारे आसपास है, एनवायरनमेंट है, हमने ये देखा है कि हमको ये समझ में आ गया हमको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, खास तौर से सुरक्षा के मसले में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और साथ साथ जो हमारी जो डिफेंस की सिक्योरिटी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये बजट दोनों सुरक्षाओं पे काम कर रहा है। एक तरफ अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है कुल मिलाकर के जिससे कि किसी की हिम्मत ना हो कि वो भारत की तरफ आंख उठा सके, तो जो बजट बढ़ाया गया है डिफेंस का, ये अभी दरअसल अगर आप मुझसे पूछें तो थोड़ा में और बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन ठीक है, सरकार ने भी उतना किया है जितना आने वाले 365 दिन के लिए आवश्यक है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अब जब हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो हमारा डिफेंस बजट जो है वो लगभग $800 बिलियन का होगा। तब हम महाशक्ति बनेंगे सही मायने में। चाइना का बजट देखिए, हालांकि चाइना के डिफेंस बजट के जो आंकड़े होते हैं उसको पूरा यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि चाइना में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ये आवश्यक था कि ये करा जाए। दो उसकी वजह है। एक तो यह है कि हमारा डिफेंस के अंदर R&D को बूस्ट करना, जिससे हम अपने हथियार बना सके, बना रहे हैं। आज ब्रह्मोस को उठा करके आप देख लीजिए, आज जिस हिसाब से, और जो हम जो तेजस बना रहे हैं वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ यह है कि ये जब हमने बजट बढ़ाया है, अगर पूरे बजट को देखें जिसमें फोकस डिफेंस सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा अगर किसी देश के कान खड़े हुए हैं तो वो देश हमारे उत्तर में है, उसके खड़े हुए हैं बजट को देख करके। लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, पूरा देश उन पर निर्भर करता है सुरक्षा के लिए, कि वहां किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हमने ये देखा है कि जो R&D है, और आपने देखा बजट में इस बात पर काफी फोकस है कि R&D इसलिए नहीं हो कि हम हथियार इसलिए बनाए कि हम, चाहे वो हमारी आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, बल्कि साथ साथ हम जो है कुल मिलाकर के मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर बन सकें, जिससे तमाम जो दुनिया के देश हैं वो भारत से हथियार ले सकें। जिस हिसाब से हम, जैसे आज हम फ्रांस से लेते हैं, या हम इजराइल से लेते हैं, या अन्य रशिया से लेते हैं, या अन्य देशों से लेते हैं। तो इसीलिए ये बजट में। दूसरी तरफ ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन चाहे वो रोड्स का हो, चाहे वो इक्विपमेंट का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म्स का हो, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे वो स्किल का हो, हमारी फौजों को तैयार आज करा जा रहा है AI एज के लिए, AI की एज। और AI एज के लिए हमारे फौजों को तैयार करना, हमारी एयरफोर्स, नेवी, हमारी आर्मी को तैयार करना, उसके लिए आवश्यक है ऐसे ही निवेश किया जाए। मुझे लगता है इसका पूरा देश इसका सराहना करेगा जो ये फैसला बजट लिया गया है। और साथ साथ ये है कि जो लोग हमारी तरफ जो कभी कभी टेढ़ी आंख उठाते हैं, उनको भी एक मैसेज आता है कि आज भारत इस मसले को जो रिजॉल्व है, वो रिजॉल्व भारत का कहाँ है। एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन डिफेंस बजट से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि कुछ समय पहले सरकार का बहुत बड़ा फोकस था कि मेक इन इंडिया को और बढ़ावा दिया जाए डिफेंस सेक्टर में, ताकि विदेशों पर निर्भरता हमारी कम हो? इस बजट से क्या कुछ आपको उस दिशा में भी मजबूती के लिए दिख रहे हैं कदम? बिल्कुल। देखिए, इसमें दो बातें गई हैं। पहली बात, और बजट को आप देखते हैं, एक तरफ तो ये करा गया है कि जो अभी एकदम हमको हथियार लेने की जरूरत है, या जहां पर हमारी फौजों को हमने AI एज के लिए तैयार करना है, स्पेस वॉर के लिए तैयार करना है, उसको तुरंत लिया जाए। हम इसलिए नहीं कि हम मेक इन इंडिया नहीं हो पा रहा तो वहां कोई समझौता करेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। हमें आयात करने की आवश्यकता, हम आयात करेंगे। लेकिन साथ साथ जो मेक इन इंडिया, और खासतौर से मेक इन इंडिया जो आर्म्ड के लिए है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, राज्य सरकारों को इन्वॉल्व करना, उसके बजट में उसका प्रावधान है, जिससे कि वो भूमिका अदा, और साथ साथ कुल मिलाकर के उसको इंसेंटिवाइज किया गया। और जहां जहां हमको आवश्यक है कि हम कोलैबोरेशन जो है बाहर की कंपनियों से करें, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। जैसे हम रफाल लेते हैं, रफाल जो बेचती है वो प्राइवेट कंपनी है, वो सरकारी कंपनी नहीं है। लेकिन रूस से हम लेते हैं, वो सरकारी कंपनी है। तो उस सब का वो रखते हुए, तो एक तरफ तो मेक इन इंडिया को काफी प्रोत्साहन, विद इन मेक इन इंडिया साथ में अपना R&D को प्रोत्साहन, लेकिन जहां भी आवश्यक हो, आयात करना आवश्यक हो, उसको भी प्रोत्साहन। तीनों चीजों को एक साथ किया। डिफेंस के मसले में आप जानते हैं कि ये सरकार जो है, जहां तक सुरक्षा का मसला है, वहां किसी तरह का कोई किसी तरह का समझौता नहीं करती है। नरेंद्र तनेजा जी,
We'd like to also thank Sharat Kohli for being with us on this special program and giving us a special insight, really, not only on the finer points and the highlights of the union budget, but also on all the tax issues that have been raised in the union budget as well. We also now joined by Timir Baron Chatterjee, who's a financial expert and a member from BCCI from Kolkata. Mr. Chatterjee, warm welcome to you on this special program. I hope you can hear us from Delhi. Yes, thank you. Yes, thank you. Mr. Chatterjee, what is your key takeaway from the union budget from where you are right now? Is it the economic side, the social side, or the defense side? You see, I certainly look into the economic side first. Economic side first. There are certain areas which needs to be reckoned that before this budget, the central government has already taken several liberalization areas which are directly connected with the budget. That is labor implementation of the labor law, reductions of the GST rationalization, new income tax act. These are the three areas normally take part in the budget. But this year, before budget, all the liberalization areas, simplification areas have already been done. So that is a good point. And in this area, I will say 2-3 things. That our GDP, we are one of the largest and steadiest country in the areas of GDP. So we are expecting a nominal GDP of 10%. That is around 7% real GDP we are expecting, which is I think is one of the most important areas to reckon. We have been able to prune our revenue fiscal deficit to 4.3%, which is certainly a good point. And another more important area, that is foreign exchange reserve. In spite of US issue and tariff issue, our foreign exchange reserve has reached to around $710 billion. So if you see the macroeconomic areas, inflation is also under control. So if you see the macroeconomic areas, the country is in a very safe position according to me economically. Well, thank you so much, Timir Baron Chatterjee, for being with us on this special program on Akashvani and really bringing to the attention of our listeners once again what really connects them. Labor laws, because it's connected to employment, GST rates which have been rationalized, and the Income Tax Act 2025 on which Sharat Kohli spoke at great length. We can now go back to our discussion with our on-site experts, Narendra Taneja, who's spoken about defense. And I would just like to add 6.81 lakh crore rupees has been allocated for defense expenditures, and it's a hike of 9.2% from the previous financial year. And the focus this time is on aircraft and aero engines. Air superiority is clearly the priority for Government of India. Almost 64,000 crore rupees has been allocated. Well, if you look at, for instance, the Operation Sindoor, in Operation Sindoor also we saw that, the role that, our Air Force had played. And if you look increasingly the kind of war scenarios worldwide, whether you look at Iran versus, the United States, or Israel versus Iran, or for that matter, you see even other parts of the world, there is kind of increased focus these days on three things. Number one is, of course, Air Force. Number two is the missile system and the high-tech, missile system. Number three is the, kind of using space, for these purposes, including satellites. And therefore, if you look at the budget and look at the kind of thrust that is there in terms of the defense is on exactly on these areas, because our armed forces have already moved to the space age. There is even a suggestion that we should rename our Air Force and Air Come Space Force, like some countries have already started doing. So this basically comes into that. And secondly, at the same time, when you look at the overall requirement that is being repeatedly made by Indian Air Force, it has been more that they need more allocation. So I think government has done exactly that. And also what happened, what is happening around the world, government has taken clue from that, because increasingly, as
the war, for that matter, battles we used to know, that has gone through a complete transformation. Now increasingly the focus is more on technology, focus is more on AI, focus is more on Air Force and Space Force and so on and so forth. So they basically, if you look at the budget allocation and the thrust within, is exactly in that direction. जी हां, बजट के बाद प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को और देश को भी बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाने की दिशा में ये बजट बेहद प्रभावी है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायो फार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ाते हैं कि कई सेक्टर्स पर काफी फोकस किया गया। एक और सेक्टर जिस पर चर्चा काफी हुई बजट में वो है मेडिकल का क्षेत्र। कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया गया, उस पर से ड्यूटी फ्री किया गया, जहां पर हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को छूट दिया गया। मेडिकल टूरिज्म की बात निर्मला सीतारमन करती नजर आई। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में इलाज कराने आती है तो हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और मेडिकल टूरिज्म हब बनाया जाएगा। आयुर्वेद के 3 एम्स की चर्चा उन्होंने की और साथ ही साथ और प्रोफेशनल्स लाने की भी बात कही। मेडिकल के क्षेत्र में इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का जो फोकस है मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे बायो के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, उसके साथ साथ और जो ये मेडिकल टूरिज्म की बात की है, निश्चित रूप से कारण क्या है कि भाई अब देश की हमारी जो अर्थव्यवस्था है हम उस साइज पे लेके जाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी कंजम्पशन के आधार पर हम इतना तक आ गए हैं, लेकिन अब हमें नई और चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो इस जो टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म से रेवेन्यू भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और वो एक बहुत बड़ा एक, और क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वर्ल्ड वाइड जो है सबसे सस्ता और अवेलेबल है। आप देखेंगे कि कई बार कनाडा में अगर लोगों से पूछा जाए तो उनको एमआरआई करवाना तो 6 महीने की वेटिंग है, लेकिन यहाँ आप आइए और एमआरआई करवा लीजिए। मतलब लोग आते हैं और अच्छी अगर ट्रीटमेंट मिलेगी और अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे और सरकार जैसे कह रहे हैं कि वो भी उस क्षेत्र में जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो मुझे लगता है कि और इस क्षेत्र में जो है बढ़ावा जो है मिल सकता है और एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में इस क्षेत्र में बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। नरेंद्र जी, इसी से जुड़ा सवाल, 10,000 करोड़ का निवेश आयुर्वेद के क्षेत्र में करने की बात कही गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की भी बात हुई है। जब से मोदी सरकार आई है 2014 से बात करें तो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जो है वो आयुष को लेकर एक नया मंत्रालय बना, उसको लेकर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। हमने कोविड में भी देखा कि उसके कितने लाभ हैं। क्या इस बजट पर आयुर्वेद पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, आने वाले समय में सरकार की तरफ से या दुनिया की तरफ से एक ऑल्टरनेट मेडिसिन में आयुर्वेद को सबसे ऊपर देखा जा रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, अगर आप उठा करके हमारा इतिहास उठा करके देखते हैं, खासतौर से मेडिकल साइंसेस का, तो आयुर्वेद और उसके बाद आज जैसा आपने देखा यूनानी, जब अलेक्जेंडर वगैरह आए, यूनानी जो सिस्टम मेडिसिन का वो भी आया और काफी हद तक इंटीग्रेट हो गया था। इंटीग्रेट इसलिए हो गया था क्योंकि उनको भी इसमें काफी लाभ दिखा था और हमको भी लाभ दिखा था, लेकिन बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने देखा कि आज़ादी के बाद जो है उसको कमज़ोर करा गया। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मा की फर्म्स हैं, वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम है वगैरह वगैरह, कुछ लोगों की उसमें आस्था या विश्वास ज़्यादा था, करा गया। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से आप देखिए ना, अगर आपने अपनी सेहत को बना के रखना है प्रिवेंशन के लिए, आज योगा से अच्छा पूरी दुनिया ने योगा का लोहा माना है ना, पूरी दुनिया ने।
और आपने ये देखा है कि आज जो है वो जब पूरी दुनिया उसको कर रही है, और जबकि आयुर्वेद जो है अब जो सरकार ने पहल करी है, खासतौर से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस लेकिन आयुर्वेदिक के रिसर्च सेंटर, आयुर्वेदिक के एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल, और साथ ही कुल मिलाकर के ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिससे हमारे देश के लोगों के पास जो है एक विकल्प हो। और ये ऐसा विकल्प होगा, जबकि आप जैसे योगा को आपने देखा कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, क्योंकि मैं उत्तरी ध्रुव गया हूं और मैंने वहां पर लोगों को योगा करते खुद देखा है ना। तो मैं जानता हूं कि अंटार्कटिका में जो कुछ लोग एक्सपीडिशन पे जाते हैं, मैंने इंटरव्यूज देखे हैं कि वहां वो लोग जो वैज्ञानिक रहते हैं वो योगा प्रैक्टिस करते हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और उनके रिजल्ट रिसर्च के बेहतर हैं। ये आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक एंशिएंट सिस्टम है, जो वेस्टर्न सिस्टम में मेडिसिन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है उससे हजारों साल पुराना है, और उस पर बाकायदा रिसर्च और उस पर करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम खराब होता है, जो सिस्टम भी अवेलेबल है उसको सबको लिया जाएगा, लेकिन नेग्लेक्ट जिस हिसाब से करा गया था उसको जो मुझे लगता है इस बजट से उसको जो है एक नई रफ्तार मिलेगी, लोगों का उसमें विश्वास बढ़ेगा, और खासतौर से हमारे जो तमाम देश के लोगों के पास एक ऐसा विकल्प होगा जिसकी शायद जो कीमत है वो भी कम होगी। उसकी कुल मिलाकर के जो इको सिस्टम होगा उससे हजारों लाखों नए जॉब पैदा होंगे। दूसरी बात यह है कि दुनिया हमारे देश की जो पुराने जो लोग हैं खासतौर से उनकी सोच के अंदर आयुर्वेद है, तो दोबारा उससे कनेक्ट होंगे और वैज्ञानिक तरीके से ये जो एक कैंपेन था कि आयुर्वेदिक के अंदर विज्ञान की कमी है, इस तरह के पहल और इस तरह की संस्थान जब बनेंगे और बन रहे हैं, जो सरकार ने पहल की है, तो कहीं ना कहीं वो जो कैंपेन था उसको भी धराशायी करा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयुर्वेद सिस्टम है, मेडिसिन, वो खाली भारतीयों के लिए नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के लिए है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पे हम इसको जिस हिसाब से सरकार ने अब इसको एलोकेशन दिया है, जिस हिसाब से प्रोत्साहन दे रही है, आगे आने वाले समय के अंदर ये एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव विकल्प खड़ा होगा जो इसको टक्कर देगा, जो व्यवस्था हमने जिसको काफी पिछले सालों से कई अन्य सरकारों ने उसको जो प्रोत्साहित किया था। हमारे साथ जुड़ गए हैं असम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन रूपम गोस्वामी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस मौके पे हेलो रूपम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बजट में उत्तर पूर्व के लिए बहुत कुछ पेश किया गया, खासकर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बात करें, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में बात करें। कैसे देखते हैं, खासकर पूर्वोत्तर पर फोकस करके आपसे बात करें तो? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि अष्टलक्ष्मी, तो अष्टलक्ष्मी के लिए तो करेगा ही ना। उन्होंने जितना दिया है आसाम या नॉर्थ ईस्ट को, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने इतना कुछ दिया नहीं है। हर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रेलवे, डबलिंग ऑफ रेलवे देख लीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, हर जगह में। अभी वाटरवेज में कर रहा है। अभी आपका हाल ही में यूरोपियन कंट्रीज का साथ एग्रीमेंट भी किया है। इस बजट में भी काफी दिया है, एजुकेशन सेक्टर में दिया है। बहुत ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बजट। एंड मोर ओवर सबसे बड़ा चीज ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट 4.3 का टारगेट जो इन्होंने रखा है, ये फैंटास्टिक है। तो हमारा विश्वास है कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली बनेगा। अभी तो हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो ही गया है, तो हम लोग का पूरा विश्वास है। एंड वी बीइंग ए बिजनेस कम्युनिटी, we are really thankful and grateful to the Honorable Finance Minister and the Prime Minister. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया रूपम गोस्वामी जी। Ashwani Rana ji, I want to ask you a banking sector question, because reforms have been carried out, financial sector reforms have been carried out as well, and banks are a very important component when it comes to an economy, especially when you're looking at Viksit Bharat 2047. Now my question is that there is a fiscal deficit of 4.4%. We like to correct that because earlier it was 4.3%, now it's 4.4%, and to ensure there is fiscal deficit financing, there is the issue of government securities by the government, there is public finance involved, open market operations. Could you tell us how this is going to be carried out so that debt servicing for the government is minimal? And I also like to add what kind of banking reforms are being carried out. There has been news about mergers of public sector banks as well. And whenever we talk about policy of the government, the most important policies in the budget, we are talking about the fiscal policy, but the monetary policy has always been a sister policy
to the objectives of the fiscal policy. So could you tell us the financial sector reforms along with the banking sector reforms, just to simplify how the budget objectives are going to be achieved? See, this fiscal policy is actually run by the monetary policy. Basically, that is required, and RBI doing the they are doing well in monetary policy meeting, but this financial reform, banking reforms, government, they wanted to build a big banks actually, but their thinking may be correct, but as if ask me my suggestion, it is not required that big banks only can serve, because in 2008 you have seen the big bank they lost. But for that they have to do so many things, because in this economy survey they have a issue that banking deposits are reducing. People are shifting from deposit to share market, mutual fund, gold investment. For this debt, you require a sufficient funds in banks. Otherwise, bank have to take the other loans from RBI. So for that, they should give some concession to depositor. So they must keep their money in the bank to facilitate the liquidity for the debtors. जी हाँ, बिल्कुल नरेंद्र तनेजा जी, अगर बजट की बात हो और खेती और किसानों की बात ना हो तो बहुत अधूरा मामला रहता है। तो इस बजट में नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात की गई है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ज्यादा लोग नौकरी और रोजगार पा सकें। चंदन उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा, एक और भारतीय परंपरा से जुड़ी चीज। और काजू और कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का लक्ष्य है। अगर कृषि और किसानों के नजरिए से देखें तो क्या कुछ है इस बजट में? नहीं, देखिए, इस बजट में अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, वो तमाम लोग जो उस इलाके में रहते हैं जहां कि मुख्यतः जो है वो कृषि के अंदर लगे हुए हैं। देखिए, कृषि जो है वो एक राज्यों का विषय होता है, जैसा कि आप जानते हैं। जो राज्यों के बजट आते हैं उसमें कृषि में बहुत काफ़ी कुछ काम होता है। लेकिन अगर आप तमाम इसमें देखें, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे इनलैंड वाटरवेज। भारत का प्राचीन इतिहास उठा करके देखें, हमारे यहाँ उस समय सड़कें नहीं होती थी, लेकिन तमाम जो भारत सोने की चिड़िया था, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था था, 26% पूरा जो ग्लोबल GDP था उसकी भारत की हिस्सेदारी थी। सारा का सारा परिवहन जो इनलैंड वाटरवेज से होता था, गंगा से होता था, यमुना से होता था, ब्रह्मपुत्र से होता था, कावेरी से होता था, इन सब सतलज, इन सब नदियों से होता था। हमने इनको पिछले दशकों के अंदर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। अब सरकार ने, अब इसके अंदर ही आप उठा करके अगर आप देखते हैं कि जो सरकार ने इनलैंड वाटरवेज के लिए जो है नए पूरे जो है निवेश की बात करी है, और साथ में उनके लिए जो वहाँ जो नाव बड़ी वाली चलेंगी उनके लिए 2 रिपेयर यार्ड के लिए भी बातचीत वहाँ करी, जिसमें एक पटना में और एक बनारस में वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये रूरल इकोनॉमी जो है, जिसमें मुख्यतः हमारा किसान होता है, उसी को उससे फायदा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो सरकार ने डेडिकेटेड कॉरिडोर्स की बात करी है और रेयर अर्थ मटेरियल के लिए, उसके अंदर पूरे इकोसिस्टम की बातचीत है, पूरे इकोसिस्टम की। और अगर आप उसका नक्शा उठा करके देते हैं, जहां से बात हो रही है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सारा वो भी कुल मिला करके उसके अंदर जो कंपोनेंट एग्रीकल्चर का है या रूरल इकोनॉमी का है वो 35% से ज्यादा है, अगर आप उसे उठा के देखते हैं। तीसरी तरफ अगर आप ये देखते हैं, जो सरकार ने बात करी है कि कुल मिला करके जो हमारी जो बायोगैस वगैरह होती है या वो गैस का उत्पादन जहां पे उसको CNG से मिक्स करा गया है, कि अगर जहां जहां उसको जो है CNG के साथ मिलाया जाएगा, उसका लाभ भी कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो वो हमारी रूरल इकोनॉमी को मिलता है। इसके साथ में अगर आप ये देखें, जितनी भी पूर्वोदय की बात हुई है, उसमें ज्यादातर फोकस जो है वो ज्यादातर उन्हीं कम्युनिटीज को मिलता है जो रूरल कम्युनिटीज हैं और जो रूरल इकोनॉमीज हैं। नॉर्थ ईस्ट की भी कहानी मोरलेस यही आपको नजर आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट टोटल करे गए हैं, इसका बिग बेनिफिशियरी जो हमारी रूरल इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ जो सरकार ने ये भी कहा है कि जो ऊर्जा के अंदर जो आणविक ऊर्जा की बात करी है, उसमें ये कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो सरकार के इंसेंटिव्स हैं वो खाली बड़े प्रोजेक्ट के लिए होंगे। जो छोटे आजकल बात हो रही है भाई, मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है, स्मॉल रिएक्टर्स की बात हो रही है, इवन यहाँ तक कि 20 मेगावाट 50 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स की बातचीत
रही है, ये सब भी काफ़ी कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी की बात करी गई है उसके अंदर जो है कुल मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जो है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। एक बात मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा, जो बात हमें अश्विनी जी ने भी अभी करी कि जो बैंक की बात करी गई है खासतौर से कि भाई बहुत ही मेरे हिसाब से तो क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक है लेकिन आज जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप चाइना के बैंक्स को उठा के देखें, यूरोप में देखें, जापान में देखें, हमारे बैंक अच्छे हैं लेकिन हम उनका जो साइज जिस तरह का हमको चाहिए जिससे कि उनका जो फुटप्रिंट है वो ग्लोबल हो सके, ठीक उसी तरीके से जैसे हम दिल्ली, मुंबई, कानपुर कहीं भी जाते हैं हमको HSBC भी दिखता है, सिटी बैंक भी दिखता है। हम चाहेंगे कि हमारे जो आप दुनिया में कहीं भी जाए तो भारत के बैंक भी वहां दिखे। उसके लिए आवश्यक है हमारे पास 4 ऐसे बैंक होने चाहिए जो ग्लोबल साइज के हों और बड़े हों, और साथ में जो उनकी ये जो चुनौती अश्विनी जी ने जिनका जिक्र किया उसको भी वो बड़े बैंक कहेंगे तो आसानी से उसको कर पाएंगे। जो इन्वेस्टर है, जो डिपॉजिटर्स है, उसका कॉन्फिडेंस भी उनकी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन और जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो कहीं ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम, और आने वाले समय के अंदर जब तक देखिए हमको अगर आर्थिक महाशक्ति बनना है, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हमको कम से कम 6 या 7 वर्ल्ड क्लास बैंक चाहिए, जो ऐसे चाहिए जिनका फुटप्रिंट पूरी दुनिया के अंदर हो, जैसा चीन कर रहा है, यहाँ तक कि ब्राजील भी कर रहा है, यूरोप के देश तो करते ही हैं और अमेरिका, कनाडा वगैरह तो करते ही हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम। लेकिन कुल मिला के अगर आप बजट को देखते हैं, बजट का जो फोकस है वो एक जो गरीब है, मार्जिनलाइज्ड है या डिप्राइव्ड है उस पर इतना ज़्यादा है कि वो फोकस सारा का सारा जो हमारे वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में लेते हैं वही उसके बेनिफिशियरी होंगे। जी, और इस बजट में महिलाओं के लिए भी काफी कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है। लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे और इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी। कुल मिलाकर कहें कि यह बजट नारी शक्ति को और मजबूत करने का भी बजट है। क्या कहा है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए। Narendra Taneja ji, we just heard Prime Minister Narendra Modi speaking about Nari Shakti, and we've seen that startups have been played a very important role in the upliftment of women as well and promoting employment. I would like to link this question also to what my co-anchor was asking about agriculture, but this time it's about marine exports which have been hit by the US tariff policy, and there is the budget provision now for duty-free fish catch in the exclusive economic zone and the high seas. How do you see this boosting marine exports, which has been one of the kingpins when it comes to our net export earnings, just like gems and jewelry? Excellent question. You see, when you look at India's map, coastal economy in the coastal area, and we have got one of the largest coasts in the world, as you know, marine and fisheries and shrimp farming and all that play a very, very important role. You know, it creates millions and millions of jobs, and if you look at the rural economies, you know, the coastal areas is heavily dependent on that. And traditionally, if you look at the history of 5,000 years and India's maritime relationship with countries like Indonesia or Cambodia and Laos and Malaysia and Singapore is actually all kind of, thanks to the marine economy that we enjoyed in those days in the history. And basically, if you look at it, what the government incentive that the government has given,
typically the construct of the this economy is such that the men more visible because they are the guys who go out and go for fishing, catch fish and all that. But once they come back, actually women take over. They take over. And if you look at the total employment that it creates and the share of women in that economy is almost 70%. So that's Nari Shakti. And at the same time, if you go to Kerala, go to Karnataka, go to Orissa, go to Andhra Pradesh and those areas, and for that matter, go to coastal areas of Gujarat, and you see that how the role that this economy plays, both in marine but also in the associated rural economy. That's what basically Prime Minister was referring to. So if we empower women in the coastal areas, and connect it with the marine economy in such a way where the incentives are there, latest technology is available there, and at the same time you integrate it also, as the government is actually already doing. It's not in this budget, but it's already doing it. That is, offshore solar power generation, integrating it. So you don't necessarily have to need billions of dollars to get into it. It's being encouraged to those small communities living along the coastal area. So with that, plus what the Prime Minister just explained, is going to be a big game changer. At the same time, when it comes to exports, because it's a very, marine exports play a very important role in India's overall economic basket, and especially with our kind of connect that we enjoy with like Western Europe, with the United States of America and Middle East. So this is only going to go up, and especially after the kind of challenges that we have faced, originating from the United States of America. So briefly, waterways has played a very important role in this budget as well regarding supply chain management when it comes to rare earths. Now, my question is regarding the integrated development of 500 reservoirs in Amrit Sarovars. Very briefly. Yeah, I mean, if you look at the history of India's economy, you see every village used to, हर गांव के अंदर तालाब होता था, a pond. And if you look at the overall economics of the rural India, until very recently, actually, even the 50s, गांव के अंदर एक तालाब का होना, उस तालाब के अंदर मछली वगैरह पालन भी होना, पूर्वी इलाकों के अंदर वो और भी ज़्यादा होता था, कोस्टल इलाकों में और भी ज़्यादा होता था, और उसका इंटीग्रेशन होता था जो हमारी एग्रीकल्चर के साथ में। उसका नतीजा ये होता था कि जो कुल मिलाकर के पूरी जो घर की अर्थव्यवस्था होती थी, जिसमें हर घर का व्यक्ति, इसमें खासतौर से महिलाएं, उनकी बड़ी भूमिका होती थी, और लिहाजा ये होता था कि उनको वो शहरों पर डिपेंड नहीं करते थे। कुल मिलाकर के हमारे जो गांव होते थे वो रिपब्लिक होते थे, गणतंत्र की तरह होते थे, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था होती थी, उसके अपने कानून होते थे, उसका अपनी रचना होती थी, और उसी हिसाब से वो अपना जॉब क्रिएट करते थे, तो काफ़ी हद तक ऑटोनोमस होते थे। अगर आप उठा करके ये देखते हैं जो सरकार ने किया है, जिस हिसाब से 20 न्यू वाटरवेज 5 साल के अंदर, 20 नई वाटरवेज, कोई मामूली काम नहीं है। 5 साल 1500 दिन के अंदर आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। जब वाटरवेज को 20 ये बनेगी तो उसका पूरा जो फ्रंट लाइन बेनिफिशियरी है वो रूरल इकोनॉमी है। फ्रंट लाइन बेनिफिशरीज है वहाँ पे जो फिशरीज वगैरह इंडस्ट्री है उनको मिलने वाला है। इसके अलावा जो रहने वाले जो परिवहन में काम करने वाले लोग हैं उनको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ तो पूरे समुदाय होते हैं, इनको केवट बोलते हैं, उनको मिलने वाला है। इस हिसाब से तमाम कम्युनिटी जो उस इलाके में रहती हैं उनको उसको मिलने वाला है। तो ये देखिए, देखने में लगेगा कि 20 न्यू वर्ड, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा इसमें इफ़ यू डिग डीपर, इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लाखों नए जॉब क्रिएट होंगे और पूरा नया इकोसिस्टम बनेगा। जी हाँ, रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होंगे। आज के बजट से जो बातें निकलकर सामने आई है, हमने महिलाओं की बात की तो देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की भी योजना है। इससे दूर दराज इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए ज्यादा समय दे सकेंगी, जिससे हायर एजुकेशन में भी भागीदारी बढ़ सकेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड भी बनाने की बात आज के बजट में निर्मला सीतारमन ने कही है। महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और सीसीटीवी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि बिजनेस वुमन को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प यानी शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय कम्युनिटी की महिला दुकानदारों की रिटेल दुकानें होंगी।
आकाशवाणी के बजट विशेष कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का, यानी 5 बजे से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, लेकिन उसके बाद 5:10 पर बजट पर यह चर्चा जारी रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चूंकि विशेषज्ञों के जरिए हम आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के बजट में हर वर्ग के लिए क्या क्या रहा है, उससे आपके जीवन में क्या फायदा होने वाला है और देश विकास की रफ्तार को और आगे कैसे बढ़ा कर जाएगा। आप सभी का आभार। नमस्कार। नमस्कार। केंद्रीय बजट 2026-27। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ये उनका रिकॉर्ड 9वां बजट था। बजट 2026-27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट कहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल है। इसके अलावा देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने इसके अतिरिक्त मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने चैंपियंस के रूप में इन्हें विकसित करने के लिए 3 सूत्री उपायों का प्रस्ताव किया। इन उपायों में इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता शामिल हैं। I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में 7 तीव्र गति के रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये कॉरिडोर हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2% है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट 2026-27 को नागरिकों की भावनाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया है। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2026-27 की आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट देश की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पंजाब दौरे पर हैं, जहां वे जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला संत गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। हर किसी को फायदा होगा। साथियों, बजट का एक और फोकस एरिया खेल है, स्पोर्ट्स है, और पंजाब तो इसमें बहुत आगे है। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for the year 2026-27 in the Lok Sabha today. This was the 9th consecutive budget presented by her. The Finance Minister termed the budget Yuva Shakti driven. She highlighted substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of the country's people. She said this year's budget is inspired by three kartavyas of accelerating economic growth, to build capacity of the people, and to provide resources, amenities and opportunities to every family, community, region and sector. The minister announced that Biopharma Shakti, with an outlay of 10,000 crore rupees, will be launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub in the next 5 years. For the labour-intensive textile sector, the finance minister announced to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. The government has decided to set up a high-level committee on banking for Viksit Bharat to comprehensively review the banking sector and to safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. Ms. Sitharaman proposed to increase outlay of electronics components manufacturing scheme to 40,000 crore rupees. She also announced that 3 dedicated chemical parks will be established to promote mining, processing, research and manufacturing. 7 high-speed rail corridors will be developed between Mumbai-Pune, Pune-Hyderabad, Hyderabad-Bengaluru, Hyderabad-Chennai, Chennai-Bengaluru, Delhi-Varanasi and Varanasi-Siliguri. Government will set up a high-powered education to employment and enterprise standing committee to focus on the services sector as a core driver of Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi has hailed the Union Budget, describing it as historic. In a video message, the Prime Minister said, this budget is the foundation for the country's journey towards a Viksit Bharat. ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। Prime Minister Narendra Modi has landed at Punjab's Adhampur airport to be part of the 649th Prakash Parv, birth anniversary of Sant Guru Ravidas Ji, being celebrated at Dera Sachkhand Bala in Jalandhar. Large-scale security arrangements have been made. Our Jalandhar correspondent reports that before reaching at the Dera, the Prime Minister has unveiled the new name of the airport as Sri Guru Ravidas Maharaj Ji Airport, Adhampur. He has also inaugurated the terminal building of Halwara Airport in Ludhiana. Now we go over live to the PM's address. अवसर लेकर आया है और मुझे विश्वास है श्री गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से आप सभी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साथियों, इस अवसर पर मैं अपने देश के उद्यमियों, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों से
एक अपील करना चाहता हूं, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत जोर देना होगा. And that is the end of this news bulletin. Union Budget 2026-27. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम आम बजट 2026-2027 में। हम चर्चा कर रहे हैं आज जो बजट पेश किया गया उसमें क्या कुछ खास है, हर वर्ग के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है। ये बजट भारत की तरक्की का बजट है, ये भारत के भविष्य का बजट है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हैं अश्विनी महाजन और नरेंद्र तनेजा, दोनों आर्थिक विशेषज्ञ हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे को एंकर अर्जुन चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Anand Srivastav, and this is Arjun Chaudhary for Akashvani, and our listeners and followers on Akashvani will appreciate that we are once again going in depth. We're doing a deep dive on the Union Budget 2026-27 presented by the Union Minister for Finance, Nirmala Sitharaman. We have already spoken to Narendra Taneja, who has had a deep dive already on many aspects on the budget announcements. Now we have Ashwani Mahajan as well with us, and hopefully Ashwani Mahajan can deep dive with us on a critical aspect of industry, manufacturing and MSMEs. Sir, could you shed some light on the Biopharma Shakti, because that gained a lot of traction early on when it was announced by the Finance Minister? See, if you talk about the manufacturing, in fact, it was very much required, as we had, and as Economic Survey has also pointed out, that we are short of manufacturing, and our trade partners, especially the big powers, are weaponizing their global value chains, and this is very much essential to somehow increase our production capacity. And in that we see rare earth materials, we see electronics, we see semiconductors, chemicals, and all that we need to push up manufacturing, because that would reduce our dependence on the foreign countries, especially China. Coming to biopharma, it is a very essential component of this budget, because you see the biosimilars today. Dr. Trehan was also talking about it, that we have so many biological medicines available, but they were under patent earlier. Now they are off patent, and there is a need to push up production, and all sorts of push has to be given by the government. And in this, by giving a huge amount of money to the biopharma, you see, we can, and especially for the non communicable diseases, they are becoming a kind of pandemic, because cancer, health problem, the heart problems, and then you have all sorts of non-communicable diseases, including diabetics and others. So all these can be taken care of by pharma, and it's a new development. But at the same time, so far there has been effort from the private sector to push up production. But now, when the government is entering into it, we would need a whole of the government approach for pushing up production in the biopharma. So 10,000 crore rupees has been allocated for the Biopharma Shakti, which is also part of the Atmanirbharta Make in India.
just like we are seeking Atmanirbharta in rare earths extraction and processing as well, do you feel that a similar approach is also being adopted for APIs, the active pharmaceutical ingredients for making pharma products, so that we can avert an economic crisis when it comes to, say, a COVID-like situation appearing once again? Do you see that as a national security issue as well? Basically, it's a strategic thing. You see, pharma security is also a national security issue. And rare earth materials, we know, the mighty power like America had to come to the knees and has to request China to continue with that. And so the same mighty power, US, has not been able to do anything about it. We as India know that there is no dearth of rare earth material. The only problem in the rare earth material is that availability is there, but processing, manufacturing, that is the issue. So if we can do that, and that can that can help us achieve what is prescribed in the economic survey, that India doesn't need only resilience. We have to become indispensable in the global value chain, and that is possible only if we are able to produce those rare earth materials, process those, because there is no dearth of these materials in the country. जी हाँ, नरेंद्र जी, आपसे थोड़ी चर्चा करें युवाओं को लेकर। कहा गया ये युवा ड्रिवन बजट पेश किया गया है, और जो मुख्य बातें युवाओं को लेकर कही गई कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की सौजन्य से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे, जिनमें 500 कॉलेजों को और जोड़ लीजिए। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ कंपनियों में काम का मौका देकर युवाओं को कॉरपोरेट मित्र बनाया जाए। गेमिंग स्टार्टअप्स में लोन देने के लिए 10,000 रुपए करोड़ का फंड बनाया गया है। कैसे देखते हैं इन इनिशिएटिव्स को आप? नहीं, देखिए, अगर आप बजट को ध्यान से देखते हैं तो उसकी जो भावना है, स्पिरिट है, वो युवा है। नारी शक्ति और युवा, और भारत को कुल मिलाकर के सिक्योर करना। अब देखिए, अगर बजट के अंदर जिस हिसाब से वित्त मंत्री ने बातचीत करी कि जो कंटेंट क्रिएशन है, आज हमारे देश के अंदर करोड़ों युवा हैं जो अपने अपने तरीके से, यहां तक कि 7 और 8 और 9 साल के बच्चे भी अपने अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कमर्शियलाइज ना हो सके, लेकिन कर रहे हैं। उनके अंदर ये जज्बा आ चुका है। कुल मिला के इकोसिस्टम हमारे यहाँ इनफॉर्मली बहुत बड़ा डेवलप हो चुका है। अब उसको जो है कुल मिलाकर के पूरी सही टेक्निक को ला करके एक व्यवस्था उसको बनाने के लिए ये सरकार की पहल है, जो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हम जो हैं सॉफ्टवेयर सुपर पावर काफी हद तक है, लेकिन हम और बड़ी सॉफ्टवेयर सुपर पावर बन सकते हैं, अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं इस मसले में। तो कुल मिलाकर के वो सारा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पूरे देश में, जिससे कि इसके लिए जो है एक हम अपने को इस तरह का जो एक कंस्ट्रक्ट खड़ा कर दें, जिससे कि हम देश के अंदर वो उसके बाद वो अपने आप प्राइवेट सेक्टर, लोगों के इनिशिएटिव, नई नई कंपनियां आए और उसको आगे लेकर के जाएंगी। दूसरी बात, इसी से जोड़ते मैं कह रहा हूं, अगर आप बजट के अंदर देखते हैं, एक बात और करी गई है कि कुल मिलाकर के जो डिजाइन सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है नए बनाने की बातचीत है कि खासतौर से पूर्वांचल के इलाके में डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। तो डिजाइन भी लगभग काफी हद तक उससे मिलता जुलता है, और वो भी पूर्व की बात करी गई है, क्योंकि पश्चिम में उसका एक इकोसिस्टम है। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह की व्यवस्था बनाना, जिससे जो बजट की जो भावना है, एक युवा स्पिरिट है, उसको और आगे लेकर। जी हाँ, इस बजट के विशेष कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। चूंकि आप कृषि पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, खेती और किसानों के लिए आज जो बजट में पेश किया गया कि खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा। ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती के तरीके, मौसम की जानकारी और फसल के स्टॉक का अपडेट देगा। अगले 1 साल में 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन की जानकारी डिजिटल रजिस्ट्री में शामिल की जाएगी। नारियल उत्पादन बढ़ाने, चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिए जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं खेती और किसानों के लिए इस बजट को आप?
पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस बजट को हमें थोड़ा हट के देखना चाहिए। ये बजट एक जो मन लुभाने वाले बजट होते हैं उस तरह का बजट नहीं है, ये विकास को लुभाने वाला बजट है। तो इसीलिए जो भी घोषणाएं हुई उनका एम्फेसिस इस चीज़ पे नहीं था कि खाद पे ज़्यादा सब्सिडी दे दो, वहाँ ऐसा पैसा दे दो। उन सब का उद्देश्य हमारे जो पिछले 10-11 साल का कृषि का अनुभव है उसको हम आगे कैसे लेकर जाएं उस पे था। आप लोग ज़्यादातर हमारे श्रोता भी जानते होंगे कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय कृषि एक नए दौर में पहुंची है। नए दौर में ऐसे पहुंची है कि आज अब जो 10 वर्ष का ग्रोथ रेट हमारा आया है वो ऐतिहासिक ग्रोथ रेट है। उससे पहले कभी भी किसी 10 वर्ष में इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 4.5% नहीं हुआ। दूसरा ये है, ये पहले 10 वर्ष हैं जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ किसी भी साल में नेगेटिव नहीं हुई। तो एक स्टेबिलिटी भी आई है, ग्रोथ भी हमारी बड़ी है। और अब हम चाइना को भी पीछे छोड़ के जो बड़े प्रदेश हैं उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा ग्रोथ रेट हुआ है। अब इस बजट ने फोकस किया है कि इस गेन को हम कंसोलिडेट कैसे करें, इस गेट को जो हमारी अचीवमेंट है इसको हम आगे सस्टेन कैसे करें और उसको एक्सेलरेट कैसे करें। विकसित भारत का गोल हासिल करने के लिए हमारे अपने जो कैलकुलेशंस हैं वो ये हैं कि दूसरे देशों का जो कृषि आधारित इकोनॉमीज थी उन्होंने जब भी कोई 8-9% ग्रोथ अचीव किया, चाहे वो चाइना है चाहे आज से पहले का साउथ कोरिया है, तब कृषि ने उनको सपोर्ट दिया लगभग 5% की ग्रोथ से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसी चीज़ को केंद्रित किया कि हम उस 5% ग्रोथ की ओर कैसे अग्रसर हों। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है और 10,000 नए सेंटर भी खोले जाएंगे। जी। इसमें कई लोग उसको केवल इस नज़रिए से देखते हैं कि इतना बड़ा देश और 750 करोड़ रुपया, इससे क्या होगा। अगेन मैं क्योंकि आंकड़े देखता रहता हूँ, पिछले 10 वर्ष में एक पहली बार परिवर्तन आया है इस दिशा में जो आपने कहा। पहले जब से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ हमारी डिपेंडेंस केमिकल फर्टिलाइज़र पे निरंतर तेज़ी से बढ़ रही थी। वर्ष 11-12 के बाद उसमें एक मोड़ आया। वो मोड़ ये है कि पिछले 13 साल में जो हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया, डाया वगैरह बहुत सारे, उनमें जो वृद्धि हुई है, जो भी है रियल प्राइसेस पे एक्सपेंडिचर देख के हम देखें तो 13 वर्ष में केवल 6% ग्रोथ हुई है। लेकिन जो हमारे कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्योर है, उसमें 25% की वृद्धि हुई है। 11-12 तक लगभग ये जो है इसका शेयर हमारे जो कंपोस्ट है उसका कम होता जा रहा था और वो बढ़ना शुरू हुआ। तो एक मुझे ये बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आई कि वास्तव में ही मास लेवल पे इस ओर एक मूवमेंट चल पड़ा है। इस चीज़ के बावजूद कि हम यूरिया पर 80% सब्सिडी देते हैं, वो देते हैं। प्रोफेसर साहब आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, चलते हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर जहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज के बजट पर अपने विचार पेश कर रहे हैं। बड़ा अनाउंसमेंट है ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड। हम सब जानते हैं पिछले साल वेव्स में एक नया पैमाना खड़ा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के सामने। क्रिएटर्स इकोनॉमी का एक ऐसा नया एग्जाम्पल सेट किया और IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज जो IIT, IIM, एम्स की तर्ज पे बन रही है उसको स्थापित किया पहला कैंपस मुंबई में। तो अब IICT को जोड़ा जाएगा 15,000 हाई स्कूल्स के साथ और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब। जैसा आपने देखा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब बनी, सेमीकंडक्टर में 315 यूनिवर्सिटीज में EDA टूल सेमीकंडक्टर लैब बने। वैसे ही अब क्रिएटर्स इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी में 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब्स बनेंगी।
इससे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर हम मेटी का एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट देखें, मेटी में आईटी में और जीसीसी में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिला के करीब करीब 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। आज के अनाउंसमेंट से ये 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, सब्सटैंशियली बढ़ेगा और ऑरेंज इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब मैं आता हूं तीसरा, रेलवे पे। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। आप सब जानते हैं कि सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। 1,20,000 करोड़ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाएगा और जो पास्ट परफॉर्मेंस हुई है, करीब 95% सेफ्टी इंप्रूव हुई है, 95% एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। अब उसमें और ज्यादा फोकस करके मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, कवच का रैपिड इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरास लगाना, ओएचई जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है उसको अपग्रेड करना, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन करना, इन सब पे और ज्यादा फोकस देकर सेफ्टी को और इम्प्रूव किया जाएगा, कस्टमर केयर को, कस्टमर फैसिलिटीज को और इम्प्रूव किया जाएगा। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स आज बजट में अनाउंस हुए हैं। अहमदाबाद और मुंबई का हाई स्पीड कॉरिडोर की जो प्रोग्रेस है, सारी दुनिया आज उसको नोटिस कर रही है, इतनी तेजी से काम चल रहा है और जिस क्वालिटी का काम चल रहा है। उसके बाद में आज ये जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, यूटी, इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। That was Union Minister Ashwini Vaishnav making a number of announcements once again on the Union Budget 2026-27, including 7 high-speed rail corridors which will benefit major cities all across the country. Let's go and deep dive once again into agriculture with Professor Ramesh Chand, a member of Niti Aayog. Professor Ramesh Chand, you spoke about agriculture, its share in the GDP plus employment and all the resources that is attached to this very important component of measuring gross domestic product, which also includes manufacturing. And this is for the benefit of our listeners on Akashvani. How do you balance those stakeholder interests along with inflationary pressures? Because right now CPI is at an all-time low. So how are you managing this along with growth in agriculture? If you look at last year, our farmer have been greatly benefited by terms of trade moving in favor of agriculture, meaning thereby that agriculture prices have risen much faster than increase in non-agriculture prices. So major benefit accrued to farmer. They sell their produce at current price, not at constant price. So I did those calculation that because of very good growth and because of very favorable price for agriculture produce, the doubling farmer income about which so many questions were raised. In fact, in the last 10 years, farmer income has increased, not only doubled, 26% more than doubling. So, looking ahead, as you mentioned that now the terms of trade are moving toward corrections. Any student of economics will know that market has its own way to adapt to the situation. If terms of trade remain very favorable toward one sector for many years, they are bound to come down and they are bound to have I would say downward trends. So left to itself, you will see that that kind of trend will be there. But in case of India, since we have a system of minimum support price, and even with this deflation in some of the commodities,
there is an increase of 4%, 5%, like that, 6-7% in the minimum support price of 23 commodities and sugarcane. So that is one way to, I would say, negate the adverse effect of negative inflation in agri-food commodities. Then if you look at changes in composition of agriculture, there are big changes. We know that the decline in prices is not coming for all commodities. It is strictly, for example, vegetable, very steep decline, and that is the major factor for overall decline in prices also. So Indian agriculture, the concentration of cereal, concentration of food has been considerably diluted. The share of vegetable is increasing, horticulture is increasing, share of livestock is increasing, even fishery is increasing at a very, very fast rate. That also to some extent protect against this negative overall inflation in agri food prices. But I agree with you that in this kind of situation, you can control inflation, but it is very, very difficult to control deflation or disinflation. Well, there is another difficult question, Niti Aayog as a strategic planner. How are we looking forward to meeting all the requirements of exporters under the India-EU Free Trade Agreement, India-UK Free Trade Agreement, India-Australia Free Trade Agreement, which will clearly benefit the farming community? Number one, the surplus of food in India is now rising, and the growth rate in that surplus is again accelerating. Because of two reasons, that growth in production is accelerating, growth in population is decelerating. Now our population growth is going to be less than 1%. So because of these two factors, you just find, according to my calculation, by 2030, whatever is the growth between 24 and 30, we have to find market for 30% of incremental production. That is the kind of surplus which is emerging in case of India. One is that the first source of demand which comes to mind is that you export it. Then one can look at industrial uses and others, but that is the first thing which comes to mind. And there I would say that we need to see the different categories of demand for our produce. There are low income countries which would buy average quality produce. There are high income countries like EU which look for high standard, very good quality products, and Indian producers have shown that they have that ability. So I feel that as far as EU is concerned, we have to tap the market for high value product like rice. They don't want some pesticide residue in that variety, and even they gave us some grace period that within that you achieve that standard, and we have achieved that standard. It's not that we have not achieved that standard. Similarly, other areas, even high quality meat sells in UK and other market, though in small quantity. So we need to look at what kind of product is demanded in different markets, what is level of income of those people, what is their domestic production, and according to that, rather than pushing everything everywhere, so according to their purchasing power, their taste preference, we should direct our export to those markets. जी, हमारे साथ अश्विनी महाजन भी हैं, नरेंद्र तनेजा भी हैं, और वो दोनों भी आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। जी डॉक्टर रमेश चंद जी, इस बजट में बाकी सब बातों के अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर एक जोर दिया गया है, और हम हमेशा से ये बात कहते ही रहते हैं कि केवल
अनाज की उत्पादन बढ़ना, सब्जी का उत्पादन बढ़ना, फलों का उत्पादन बढ़ना उतने से ही काफ़ी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यह जो बजट है जिसमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर और फूड प्रोसेसिंग पर जो एक ध्यान दिया गया है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? जी जी, जो फूड प्रोसेसिंग है वो भी, जो मैंने कहा कि हमारे यहाँ सरप्लस जनरेट हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग भी उसके लिए हमें एक आउटलेट प्रोवाइड करता है। और फूड प्रोसेसिंग इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में कई बार आप देखते हैं कि बम्पर आउटपुट हो गया, कई बार देखते हैं कि बहुत लो प्रोडक्शन है। तो ये जो अचानक हमारे पास कोई बम्पर प्रोडक्शन आ जाती है, तो प्राइस क्रैश को रोकने के लिए हमें एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम कई बार देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर सोचता है कि मैं तो जो है ऑरेंज का जूस पी रहा हूँ, एक्चुअली वो कॉन्सेंट्रेट का, इंपोर्ट किए हुए कॉन्सेंट्रेट को डिल्यूट करके जो सेल जो है कर रहे होते हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हमें अपना जो प्रोसेसिंग है उसको ज़रूर इनकरेज करना चाहिए। एग्रीकल्चर में जैसे अब हम देखते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ रेट 4-4.5% पे पहुंच गया है, लेकिन हमारे 80-85% किसान बड़े स्मॉल होल्डर हैं। उनको कितनी ही अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी हो, स्टडीज़ ये बताती हैं कि छोटे फार्मर की प्रोडक्टिविटी लार्ज फार्मर से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो स्केल छोटा होने से वो सफिशेंट उसको नहीं इनकम उनकी होती। तो उनको एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देना, जैसा कि जापान है, चाइना है, वहाँ भी स्मॉल होल्डर हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम फार्मर्स हैं। अब पार्ट टाइम फार्मर कैसे बनेंगे? जब कोई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, जिसका आपने जिक्र किया, मेरे हिसाब से वो एक फर्स्ट बेस्ट कैंडिडेट है रूरल एरिया में, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग मीन एग्रो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, कि वो 1.5 एकड़ का फार्म है, उस पे उनको साल में 60 दिन का ही काम है। तो बाकी टाइम पे वो क्या करें? वो एग्रीकल्चर डिवर्सिफाई हो, क्रॉप के साथ साथ लाइव स्टॉक हो जाए और कोई एक्टिविटी हो जाए, प्लस वो पार्ट टाइम फार्मर, उनको नॉन फार्म सोर्सेज से भी एक इनकम जो है उसके हमें सोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो बजट इन सब चीज़ों में कहाँ तक समाधान देता है? इस बजट में कई चीज़ें डायरेक्टली ना फोकस करके इनडायरेक्टली उनकी ओर एक संकेत दिया गया है। अब इनडायरेक्टली ऐसे कि किसी को एम्प्लॉयमेंट यदि अच्छी देनी है तो उसके पास एक स्किल भी होना चाहिए। यदि हम इंडस्ट्री को चाहते हैं कि वो कहीं आए, तो इंडस्ट्री को भी एक कोई इंसेंटिव हो कि वहाँ पर वो इंडस्ट्री आए। तो इस बजट ने मेरे विचार में कई चीज़ें डायरेक्टली ना कहकर जो इनडायरेक्टली उसके लिए कंडीशंस चाहिए, तो उसको उन्होंने उसकी ओर इशारा करते हुए उसको एक अलूड किया है कि उन चीज़ों से हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर रमेश, भारत को यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जा रहा है, बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं, लेकिन बजट में देखें तो डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू करने की बात की गई है। क्या कमी देखते हैं कि डेयरी और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में स्टार्टअप्स बहुत कम आ रहे हैं? मेन तो इनमें ये था कि हमारे यहाँ बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग पे, उसके स्केल पे। मैं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था 3 दिन पहले कि वो एक देशवाल जी फार्मर हैं, वो 4000 एकड़ लैंड दूसरे किसानों से रेंट पे लेकर गाजर के लिए ही ग्रो करते हैं, और इतना जो एक किसान को अपनी मेहनत करके उससे मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा वो उनको जो है इनकम उनसे शेयर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की जो है मोस्टली स्टेट्स में या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट नहीं है,
वो नोटिफाई भी हो गया है तो स्टेट्स उसको एक डिस्करेज करती हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरे विचार में रिफॉर्म बड़े ज़रूरी हैं, तभी आप देखोगे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, यदि हम कहें कि हम तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाएंगे, कोई भी आदमी इससे ऊपर करेगा तो जब हमें दिल करेगा हम उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो है इंक्लूड कर देंगे। तो यदि हम यूनिक और इतना बड़ा कोई इन्वेस्टर चाहते हैं और हम बैन लगा देते हैं आपके यहाँ 250 क्विंटल से ज़्यादा बासमती राइस नहीं हो सकता, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये रिफॉर्म लाना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे उसको लाना, लिबरलाइज करना, एक्सपोर्ट को लिबरलाइज करना। अब अचानक ही यहाँ दूध की प्राइस बढ़ जाए तो डेयरी के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे बैन लग जाएगा, तो फिर कैसे यूनिकॉर्न आएंगे। तो इनको डील करने के तरीके हैं, हमें उस तरीके से करना चाहिए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बैलेंस कैसे करें। लेकिन मेरे विचार में ये इस सेक्टर में रिफॉर्म बड़े ज़रूरी हैं, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं उसे लाने के लिए। प्रोफेसर साहब, I think you shared this very interesting horizon that soon we might be, or we are going to be kind of, agriculture produce surplus country. And Arjun talked about the trade agreements that we are now, signed with the European Union and with some other countries, and hopefully soon is going to be the US as well. In such a scenario where we are basically integrating our economy even more closely with the rest of the world, and this probably is going to include area which are kind of at least partially dairy and agriculture especially. So how, kind of on the one hand, we are going to connect, let's say, with the rest of the world on this particular area so that our produce can go across the seas and find market, and who is going to do that? As you said, majority of farmers are too small. They are not actually into processing industry as such unless we create clusters customized for them. Secondly, since agriculture record in the constitution is also a state subject or a state subject, how do you, Niti Aayog and the government actually on this new scenario that is emerging and the kind of reform that you talked about is communicating and coordinating with various states? जी निजा साहब, एक तो we are already surplus, and even if we take into account export and import, we are surplus. Import are only 5% of our total value of agriculture output, and exports are more than 8%. And we are surplus on sustainable basis. Like you look at rice, the situation never came in last 15-20 years when we were not surplus. At present, our 30% of our rice production is surplus. In case of maize, 17% is surplus. We are using it for ethanol. Compared to domestic consumption, that is surplus. Fish is 25% surplus. Wheat is 4-5, but wheat not on sustained basis. Sometimes we have to import also. Milk right now 4%, but it's going to increase in future. So you have raised pertinent points, but I feel that kind of things, processing, exports, they are not done by farmers themselves. We need to create institution. That institution can be institution of farmers, like cooperatives. Amul is best example. It could be FPO, that they join hands and then they earn scale advantage, bargaining power, capacity, all those things. That is the second route, cooperative, FPO. Third is that private sectors. You see, ITC created a global brand for Ashirwad Atta. When we put ban, they were crying. Mr. Puri came to me, can you help us? We created this brand by investing so much. But now it is the Pakistan who is taking advantage because we have put. So private sector is the another channel for, I think, promotion of exports, and we should see to it that we promote better linkage between farmer and this kind of people. We can do it. Like contract farming is one possibility. I know that ITC under a informal contract wise
beat from the farmers by paying them slightly better than MSP prices, even in state like Punjab. So private sector, I think that is the biggest kind of actor in this game who can play this role. But then facilitating and predictable environment. They make investment, but after 4 years we put ban on them. Those kind of things we have to address. I feel if we do not create those kind of things, it could be cooperative like Amul, it could be FPO, self-help group, and private sector, including to my mind FDI. If we do not create it, we are going to face huge problem. In the sense, for 23 commodity we are giving MSP. So if rice is 30% surplus, what do we do with it? Already you will be aware that we are using, we announced few days back, 5 million ton of rice for using for ethanol. And the economic cost of that to FCI is 43 rupees. Anyway, it is not of good quality. Some of it got rotted also in FCI warehouse, and we had to give it at 23 rupees. So you imagine the loss that is happening. So I think it is very important that we plan properly how we channelize this strength. To have food surplus is a great strength. At some stage, maybe strategic, it can become a strategic tool also. Everywhere this kind of growth and development is not happening in agriculture. Many countries, they are really in crisis. So I feel that we need to have a multi-pronged approach, how we involve institution, how we change our regulations and making investments. Our logistic costs are highest among major agriculture exporter as a percent of price. There was a committee set up by 15th Finance Commission where I was a member. So they calculated that logistic cost in India constitute about 12-13%, whereas in China and other it is not more than 7%. So we need to fire all cylinders to move in this direction. Professor Ramesh Chand, you spoke about strategy time and again and firing on all cylinders as well. My co-anchor Anand Srivastava mentioned about focus on high value coastal crops, coconut, cocoa, cashew, sandalwood. What is the fine print on this? Because the farmer has to make a choice. Should I go for a cash crop or a staple crop? Just for the income, whether they should go for exports or domestic consumption. See, for farmer, what matter is where he will get good price. Okay, sometimes there is perfect substitution between domestic market and export also. Only in some cases you produce exclusively that this is for export purpose. Now coming to coconut, why there is a focus on coconut? You will be knowing that we don't produce olive oil. Some people tell me that edible oil which we get from tree sources is of better quality compared to what we get from vegetable sources like sarson, soybean and groundnut. And in case of soybean, at one time we used to have highest yield in the world, but now Jamaica has beaten us. So from last 7 years our yield is declining, and despite expansion in area our production is also declining. So since preference for coconut oil is increasing, if you look at prices of coconut oil, they are improving like anything. Different phases come in global scene. Sometimes people move to olive oil, sometimes to coconut, but I think now is the time of coconut oil. So since our production was declining, so and that was declining despite the fact that we have a new technology. But we need to have some strategy because it has a long life, it is a perennial crop, that any coconut plantation 40 years old, 50 years old give you very less harvest, and cost of harvest is also very high. But if you look at the new variety, they are not more than 20 feet high. Yield is also high, there is a disease resistance also. So we have options.
and there is a challenge. So we have option to address it. We have opportunity to harness a situation. So that's why this is coconut is specifically mentioned. प्रोफेसर साहब, एक और सवाल जो भारतीय परिदृश्य है पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि युवा का खेती के प्रति रुझान थोड़ा कम हो रहा है, और जब बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं तो युवा पलायन भी कर रहा है। नीति आयोग और आपका क्या अनुभव कहता है, क्या इस बजट में उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है कि युवाओं को खेती की तरफ जोड़ा जाए? मेरे विचार में युवाओं का खेती से बाहर जाना खेती के लिए कोई थ्रेट नहीं है। आप किसी भी देश को देख लो, चाइना में 7% वर्क फोर्स है, अब 8% 20% वर्क फोर्स है, और वो 8% उनका जीडीपी में शेयर है। हमारा 46 है, तो वो 20% से पैदावार कर रहे हैं। उसे ज़्यादा एडवांस इकॉनमी पे जाइए, ये 5% पे आ जाएगा। अब यूएसए में एग्रीकल्चर केवल 2% लोग कर रहे हैं। तो अब हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि यूथ बाहर निकल गया तो कैसे एग्रीकल्चर होगी। मैंने आपको देशवाल की एग्जांपल दी कि अकेला आदमी 5000 एकड़ एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। चिंता इस बात की है कि जो हमारा यूथ विद एस्पिरेशंस है उसको हम एक रिम्यूनरेटिव अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट कैसे दें। मेरी चिंता ये है कि जो नॉन एग्रीकल्चर है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 46% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में रहे। इवन वो 20% भी हो जाएगी तो देर आर वेज के मैन पावर को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। कभी आप आंकड़ा देखना कि जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वहाँ सबसे कम % वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में, पंजाब स्टेट में। तो ये एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं थ्रू मैकेनाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग। वो जो एग्रीकल्चर में रहेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी, जो उससे बाहर जाएंगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी। तो मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि यूथ जो है उसको तेजी से बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाए। एग्रीकल्चर को मेरे विचार में कोई थ्रेट नहीं है यदि यूथ जो है काफ़ी नंबर में उससे बाहर भी चला जाए। नरेंद्र जी एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक थोड़ा सा जोड़ता हूं। आप रोजगार की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार को लगता है कि कंटेंट क्रिएटिंग आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया रोजगार का विकल्प हो सकता है, सेल्फ अर्निंग प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि इस बजट पर उस पर बहुत ज्यादा फोकस है? जी नरेंद्र। मेरा अगर हम बजट की भावना को उठा करके देखते हैं तो भावना के अंदर जो है आर्थिक सुरक्षा और मानवीय बात है, जियोपॉलिटिकल हिसाब से सिक्योरिटी, आपने फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी बातचीत की, काफ़ी जोर दिया प्रोफेसर साहब। अब देखते हैं जो हमारे यहाँ देखिए आप इंडिया जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन है, हमारा जो रेयर अर्थ मिशन है, साथ में बायोफार्मा शक्ति है वगैरह, जो सारे कुछ है, थ्रस्ट जो है वो कुल मिला करके उस दिशा में जिसमें पूरा विश्व जा रहा है, जिसको आम तौर से आम भाषा में बोलते हैं एआई की तरफ दुनिया जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं एआई में आते हैं। तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, खासतौर से हमारे जो किसान हैं और जो गांव में रहने वाले रूरल इकोनॉमी के लोग हैं, तो किस तरीके से इस बजट में जो भी काम किए जा रहे हैं, ये सबका जो एक डायमेंशन कृषि के लिए या रूरल इकोनॉमी के लिए क्या आपको नजर आता है? चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे वो और जो नई इनिशिएटिव कंटेंट क्रिएशन की इन्होंने बात करी, तो कुल मिलाकर के हमारा गांव में रहने वाला रूरल इकोनॉमी का जो हमारा मेन हिस्सेदार है, उसका इससे कैसे एक सेतु बनता है, क्या ब्रिज बनता है? एक तो अब इसके बहुत शेड्स हैं जब हम डेवलपमेंट की और ग्रोथ की बात करते हैं। अब जैसे सेमीकंडक्टर जैसा सेक्टर, वहाँ पर एक रूरल अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पर्सन, वो उसका एम्प्लॉयमेंट उस तरह की जगह में बड़ा सीमित होगा। वो एक और तरह के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लेगा। लेकिन लार्जर पिक्चर में कुछ लोग अश्विनी जी जैसे सोचते भी हैं, और जब मैं भी आंकड़ों को देखता हूँ, इंडिया दूसरों से एक भिन्न पैटर्न की ओर जा रहा है। जैसे हम कहते हैं सिटी एज ए अर्बन ग्रोथ सेंटर, और वो होता भी है, पेरिफेरी एंड सेंटर, उसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है पुराने इकोनॉमिस्ट से लेकर। लेकिन इंडिया में अर्बनाइजेशन का ग्रोथ इतना स्लो है कंपेयर टू चाइना एंड ऑल अदर कंट्रीज, विच शोज दैट इंडिया के लोग इतना ज़्यादा
उतावले या इंटरेस्टेड नहीं है कि हम अपना गांव छोड़ के शहर की ओर चले जाएं। कुछ जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि आज से मैं वो आंकड़ा भूल गया कि यदि आप 80 में देखो तो हमारा अर्बनाइजेशन और चाइना का बराबर था और अब उसका हमारे से डबल है। तो लोगों का अर्बन एरिया में आने का जो मूवमेंट है इंडिया में, वो चाइना से आधा के कई लोग वहाँ रहना चाहते हैं। और दूसरा जो एक चैलेंज उभर के आ रहा है कि इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है। रोबोट जो है अमेजोन के वेयर हाउस में वही प्रोडक्ट जो लेबर 1 घंटे में ढूंढता है, मुझे पता चला है कि वो रोबोट जो है 2-3 मिनट में ही ढूंढ लेता है। तो ये एक थ्रेट एम्प्लॉयमेंट को हो रहे हैं। एआई भी एक ग्रे एरिया है, ऐसा आशंका है कि वहाँ भी ऐसा नहीं है। तो मैंने पीछे एक पेपर भी लिखा था, वो छपा है, काफ़ी टेंशन ग्लोबली भी उस पर आया है कि जो थ्रेट एम्प्लॉयमेंट को आगे आ रहे हैं उसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एग्रीकल्चर सेंटर्ड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे हम बायो की बात करते हैं, बायो इकॉनमी, यदि हम फार्म के अराउंड बायो इकॉनमी, बायोज की ओर जो प्रेफरेंस है, कुछ जॉब क्रिएट कर सकें, तो फिर जो एक खतरा नज़र आता है कि बाहर इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जो बनेगा, तो हम उसको कैसे करें। मैंने ये देखा था रिसेंट डेटा, जो वुमेन लेबर फोर्स में एंटर हो रही हैं उनका पिछले 7 साल में ग्रोथ 12% है, 12%। ओवरऑल जो है उसका ग्रोथ रेट 5% है। तो इतने बड़ी मात्रा में जो लेबर फोर्स वर्क फोर्स आपकी आ रही हो, तो उसमें मैं सोचता हूं कि हमें एक इंटेग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को हम एग्रीकल्चर प्राइमरी उसमें रखेंगे, कितने लोगों को एडवांस सेमीकंडक्टर या उसमें रखेंगे, कितनों को ब्लू कॉलर जॉब देंगे, इसके लिए एक बहुत मेरे विचार में एक सोचने की आवश्यकता है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी आ रही है। Professor Ramesh Chand ji, Ashwini Mahajan ji also has a question for you. प्रोफेसर साहब, देखिए आपने दोनों प्रकार की बातें कही। आपने ये कहा कि कृषि से अगर लोग पलायन कर जाते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है जी, लेकिन साथ ही साथ हम लोग समझ रहे हैं कि एआई हो, बाकी और कारण हो, गैर कृषि क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपने अंत में कहा, हमारी पूरी, आप नीति आयोग के सदस्य भी हैं और आप सरकार के निकट हैं, और हम भी सरकार को समझाते ही रहते हैं कि जो देश का विकास होगा वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित होना चाहिए। उसमें हम ये देख रहे हैं कि आधे लोग जो हैं वो कृषक हैं और आधे गैर कृषक हैं, गांवों में रहने वाले। उनके लिए वैकल्पिक रोजगार वहाँ पर खड़ा करना, जैसे आपने कहा कि हमें स्टार्टअप्स वहाँ खड़े करने होंगे, यूनिकॉर्न्स भी खड़े करने की ज़रूरत है, लेकिन हो नहीं रहे हैं। तो इसलिए यदि सरकार की नीति की दिशा उस तरफ हो, और मुझे लगता है कि काफ़ी पिछले 10-12 सालों में इस तरफ प्रयास भी हुआ है, तो हम क्यों सोचें कि सारा का सारा विकास उन 15-20-30 शहरों में हो। इस बजट में अच्छी बात कही है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को भी विकसित करेंगे, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसमें हमें ये भी करना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक हैं और जो गैर कृषक हैं, सभी के लिए वैकल्पिक रोजगार और सहायक रोजगार वहाँ खड़े किए जाए। जैसे फिशरीज़ के बारे में बात आई, ऐसे हजारों, मतलब और बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। फिशरीज़ एक है, बाकी हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मशरूम फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, ग्रामीण उद्योग, छोटे छोटे उद्योग। क्यों, क्या ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसको बाहर से सामान खरीद के लाए, क्यों ना वो वहाँ पर ही बना ले। जिसको हम स्वदेशी की बात करते हैं, सरकार भी बार बार स्वदेशी की बात कर रही है, तो ऐसे क्यों 15-20 सेंटर ही क्यों हो, ऐसे 5000 सेंटर्स हम क्यों नहीं बना सकते हैं जहाँ क्लस्टर्स हों, एफपीओज बने और वहीं पर एक सरप्लस जनरेट हो, और सरप्लस अगर हमें बाहर भी भेजना हो। दुनिया में देखिए आज जरूर है कि हम कहीं ना कहीं बंदिशें लगी हुई हैं, हम अपना सामान बाहर भेज नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास आगे चल कर के साधन होने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में
फूड प्रोडक्शन घट रहा है, हमारे पास सरप्लस है, सो वी आर द वंस हु कैन एक्चुअली रूल द वर्ल्ड। 1 मिनट का समय सर, क्लोजिंग रिमार्क्स। उसमें यही है कि हमें प्रोडक्शन एग्रीकल्चर तक ही कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। जो पोस्ट हार्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत पहले एक पेपर मैंने पढ़ा था कि यदि एक जॉब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में क्रिएट होता है यूएसए में, तो 7 जॉब पोस्ट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में होते हैं। तो हमें उस चीज़ को हार्नेस करना चाहिए, रूरल एरिया में उसका जो है बेनिफिट देना चाहिए, और इस डायरेक्शन में कभी फिर बात करेंगे कि फार्म एज ए फैक्ट्री कैसे हो सकता है। आप मानते हैं कि जो भारत की आत्मा आज भी गांव में ही रहते हैं? कुछ लोगों का अब दावा है, कहने लगे अर्बन का पूरा हिंदुस्तानी अर्बन हो जाएगा। मेरा मानना है कि जिस दिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि हमारी आत्मा भारत की वो गांव में ही रहती है, और रूरल इकोनॉमी हमारा जो है अर्थव्यवस्था कुल सोच का बहुत बड़ा आधार या बेस होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो शहर छोड़कर गांव की ओर जा रहे हैं। माइग्रेशन। तो हाँ, और मुझे लेकिन ये लग रहा है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरिया होगा। चलिए, कार्यक्रम में अब समय नहीं है। प्रोफेसर रमेश चंद आपका, अश्विनी महाजन आपका, नरेंद्र तनेजा आपका इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और बजट पर अपने अपने विचार श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। समय हो चला है आकाशवाणी पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में समाचारों का। आपको हम बता दें कि समाचारों के बाद यानी 6:30 बजे हम दोबारा इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आपसे जुड़ेंगे, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आज के आम बजट में आपके लिए यानी समाज के अलग अलग वर्गों के लिए क्या हुआ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। 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 आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ये उनका रिकॉर्ड 9वां बजट था। बजट 2026-27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। इसके अलावा देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का भी प्रस्ताव बजट में है। वित्त मंत्री ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। इस नई पहल से बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने चैंपियंस के रूप में इन्हें विकसित करने के लिए 3 सूत्रीय उपायों का प्रस्ताव किया। इन उपायों में इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता शामिल हैं। I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में 7 तीव्र गति के रेल कॉरिडोर विकसित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये कॉरिडोर हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसे कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना से तैयार किया गया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री नबीन ने कहा कि ये युवा केंद्रित बजट है और इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजित करने पर बल दिया गया है। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट देश की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट में बेरोजगार युवाओं, गिरते विनिर्माण क्षेत्र, निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी और संकटग्रस्त किसानों सहित कई मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इस बार कुल 12,20,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के रूप में आवंटित किए गए हैं, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% है। ये पिछले 10 वर्षों का सर्वाधिक आवंटन है। इसका उद्देश्य ढांचागत सुधारों और आर्थिक विकास को बल प्रदान करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को आशा है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% रहेगा, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 4.4% से कम है। वित्त मंत्री ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बजट के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर विकास की गति को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2% है और 2025-26 के बजटीय अनुमानों की तुलना में 15.19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार के व्यय का 14.67% है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह बजट सुरक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है और राष्ट्र के हित में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को विकसित भारत 2047 की नींव बताया। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री गोयल ने कहा कि इससे नए उद्योगों की स्थापना, नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बजट को विकसित भारत के लिए दूरदर्शी बजट बताया। एक संदेश में उन्होंने कहा कि बजट में फार्मा और रसायन उद्योगों को मजबूत करने के साथ साथ ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रावधान भी शामिल हैं। विभिन्न उद्योग संगठनों ने बजट की सराहना की है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में PHDCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीव मेहता ने MSME विकास कोष की स्थापना और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की सराहना की। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ एसोचैम ने कहा है कि बजट से देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलेगी। परिसंघ के अध्यक्ष निर्मल के मिंडा ने आकाशवाणी को बताया कि आयकर और सीमा शुल्क नियमों को सरल बनाने से व्यापार में आसानी होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा कि यह बजट सभी उद्योगों की मांग को पूरा करता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। श्री बनर्जी ने कहा कि बजट में कौशल विकास और रोजगार के साथ साथ राजकोषीय विवेक तथा GDP अनुपात के मुकाबले ऋण को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्यों से भी बजट की सराहना के प्रतिक्रिया मिल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह बजट 3 मुख्य कर्तव्यों पर केंद्रित है और ज्ञान के 4 स्तंभों, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के साथ साथ दिव्यांगजनों को भी
मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में मनाए जा रहे संत गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए। डेरा पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर करने की आधिकारिक घोषणा भी की और नामकरण किया। प्रधानमंत्री ने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा विशेष रूप से लुधियाना के उद्योगों के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनेगा। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब कुछ खेल खबरें। जिम्बाब्वे के बुलावायो में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 253 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्रो सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में अल्कराज ने सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविक को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwani. The news read by VC Pramod. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for the year 2026-27 in the Lok Sabha today. This was the 9th consecutive budget presented by her. She called her budget Yuva Shakti driven. Ms. Sitharaman said this year's budget is inspired by 3 kartavya of accelerating economic growth, to build capacity of the people and to provide resources, amenities and opportunities to every family, community, region and sector. आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। The minister announced that Biopharma Shakti, with an outlay of 10,000 crore rupees, will be launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub in the next 5 years. For the labour-intensive textile sector, the finance minister announced the launch of Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. The government has decided to set up high-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the banking sector and to safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. Ms. Sitharaman proposed to increase outlay of the state's electronics components manufacturing scheme to 40,000 crore rupees. She also announced that 3 dedicated chemical parks will be established to promote mining, processing, research and manufacturing. The finance minister announced 7 high-speed rail corridors. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Government will set up high-powered education to employment and enterprise standing committee to focus on the services sector as a core driver of Vikasit Bharat. Basics customs duty has been exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. 3 new All India Institutes of Ayurveda
will be established to prepare more skilled health personnel. Also, NIMHANS 2 will be set up and national mental health institutes in Ranchi and Tezpur will be upgraded as regional APEC institutions. The Finance Minister highlighted the government's vision for increasing farmers' income, empowering Divyangjans and the vulnerable to access mental health and trauma care and focus on the Purvodaya states and the northeastern region to accelerate development and employment opportunities. Later, the copy of the Union Budget was tabled in the Rajya Sabha by the Finance Minister. Defence services have received the highest allocation among the ministries in this year's Union Budget. Ministry of Defence said the allocation amounting to 7.85 lakh crore rupees stands at 2% of the estimated GDP for the next financial year and shows a significant increase of over 15% over the budgetary estimates of 2025-26. Defence Minister Rajnath Singh thanked Prime Minister Modi and said the budget strengthens the security, development, self-reliance balance and it is in the best interest of the nation. In this budget, a provision of 7.85 lakh crore rupees has been made for the defence sector. Following the historic success of Operation Sindoor, this budget strengthens the resolve to further reinforce the country's defence system. This allocation is more than 15% higher than last year. This year, a provision of 2.19 lakh crore rupees has been made for the overall capital expenditure of our armed forces. Overall, this budget strengthens the balance within security, development and self-reliance. Prime Minister Narendra Modi has hailed the Union Budget, describing it as historic. In a video message, the Prime Minister said this budget is the foundation for the country's journey towards a Vikasit Bharat. He called it a Yuva Shakti budget, reflecting the aspirations of the 140 crore Indians. He said this year's budget will give India's reform express new energy and new momentum. आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। In her post-budget press conference in Delhi, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the budget is the first one in the second quarter of the century, leading towards the vision for India to become a developed nation by 2047. The Finance Minister said in this year's budget, health has been given equal importance with special emphasis on mental health. Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Defence Minister Rajnath Singh, Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav, Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda and Transport Minister Nitin Gadkari have hailed the Union Budget. Mr. Vaishnav described it as a strong foundation for the country's all-round development and for building a Vikasit Bharat. Mr. Pradhan said the budget will give boost to education and employment creation. Mr. Pradhan said the budget presents a blueprint for the next phase of development. The Defence Minister said the budget will fulfill the sentiments and expectations of citizens. Mr. Nadda said this budget has taken care of all sections of society, including youth, poor and farmers. Chief Ministers of Puducherry, Uttar Pradesh, Gujarat have welcomed the Union Budget. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hailed the Union Budget as the foundation for Vikasit Bharat 2047. Talking to media in New Delhi, the minister said the budget lays primary focus on the manufacturing sector. Mr. Goyal said this will help to set up new industries, welcome new investment and improve the existing infrastructure. Industry bodies, PhD Chamber of Commerce and Industry, CII, FICCI have hailed the Union Budget. PhD CCI Chairman Dr. Ranjit Mehta said the budget will increase competitiveness among the small and medium enterprises. He said the fund will increase the competitiveness among the MSMEs. CII President Rajiv Memani said the Union Budget fulfills the demands of industries including those of the MSMEs. FICCI President Anand Goenka said this budget has been focused on growth, inclusivity and Yuva Shakti. Chair of the Pharmaceuticals Manufacturing Committee Abhay Kumar Srivastav said the allocation of 10,000 crore rupees for the next 5 years on Biopharma Shakti is a bold step in the right direction. The Congress has criticized the Union Budget
2026-27. Reacting on this year's budget on social media, Congress President Mallikarjun Kharge said the budget does not provide a single solution to India's many economic, social and political challenges. Congress President said the budget has no serious plan for employability for the youth or increasing participation of women in workforce. Prime Minister Narendra Modi today attended the 649th birth anniversary of Sant Guru Ravidas Ji at Dera Sachkhand Bala in Jalandhar. Before reaching at the Dera, the Prime Minister unveiled the new name of the airport as Sri Guru Ravidas Maharaj Ji Airport, Adampur. He also inaugurated the terminal building of Halwada Airport in Ludhiana. Virtually, this airport will establish a new gateway for the state, especially for Ludhiana industry. Speaking on the occasion, the Prime Minister said Adampur Airport will benefit villages, the poor, farmers and youth alike. Every rupee spent on infrastructure creates numerous new employment opportunities. संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, plunged nearly 2% in a volatile special trading session for the Union Budget today. Barring IT, all other sectoral indices ended lower. Markets started the day on a positive note but quickly dipped into negative territory. Investor sentiment turned cautious due to a combination of higher than expected borrowing figures and the hike in securities transaction tax on futures and options trades. And that is the end of this news bulletin. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य अस्य वित्तीयवर्षस्य आयव्ययपत्रकं प्रस्तुतवती, यस्मिन् क्षमतानिर्माणे सौविध्येषु च सविशेषं सबलं प्रतिपादितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् एतत् आयव्यय संकल्पपत्रं मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारतं चेत्येतयोः पदक्षेपयोः नूतनां गतिं प्रदातुं महत्वाकांक्षी संरचनां प्रस्तौति। औद्योगिक संगठनैः अस्य आयव्यय संकल्पपत्रस्य स्वागतं विहितं, येन सकलगृह उत्पादनं वर्धिष्यते। अपि च केन्द्रीय मन्त्री एतत् आयव्यय संकल्पपत्रं प्रत्येकं क्षेत्रं, प्रत्येकं वर्गं तथा प्रत्येकं नागरिकं च सशक्तीकर्तुं स्पष्टा योजना इति वर्णितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य लोकसभायाम् अस्य वित्तीयवर्षस्य आयव्ययपत्रकं प्रस्तुतवती। तस्याः एतत् अभिलेखात्मकं नवमम् आयव्ययपत्रकम् अस्ति। वित्तमन्त्री अद्य माघपूर्णिमायाः तथा गुरुरविदासस्य जन्मशताब्द्याः पावनावसरे प्रोक्तवती यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन सदैव परिष्कारार्थं जनहितार्थं च प्राथमिकता प्रदत्ता। अस्मिन् वित्तीय आयव्ययपत्रके आत्मनिर्भर भारतं लक्ष्यीकृत्य लोकनिवेशं सबलं प्रतिपादयन् विनिर्माण परिष्काराणां, राजकोषीय व्यवस्थानां तथा मौद्रिक स्थिरतानां च अनुसरणं विहितवन्तः। एतत् आयव्ययपत्रकं विशेषरूपेण क्षमतानिर्माणेषु परिष्कारेषु च ध्यानं केन्द्रीकरोति। एतत् आयव्ययपत्रकं युवाशक्तिद्वारा सञ्चालितम् इति वित्तमन्त्री उक्तवती। सा वदत् यत् एतत् आयव्ययपत्रकम् आर्थिकविकासं गतिं प्रदातुं, नागरिकाणां क्षमतानिर्माणस्य आकाङ्क्षां पूरयितुं तथा सबका साथ सबका विकास इति त्रिभिः प्रकल्पैः प्रेरितम् अस्ति, यस्य लक्ष्यं प्रत्येकस्य परिवारस्य, समुदायस्य, क्षेत्रस्य च संसाधनानां, सौविध्यानाम्, अवसराणां प्राप्ति सुनिश्चितं करणीयम् अस्ति। सा अवदत् यत् कृषकाः, अनुसूचितजातयः, अनुसूचितजनजातयः, युवानः, निर्धनाः, महिलाः च विकासस्य लाभाः सम्प्राप्नुयुः। प्रशासनस्य संकल्पः शोषितानां, वञ्चितानां प्रति च ध्यानं प्रदत्तम् अस्ति। वित्तमन्त्रिणा घोषणा कृता अस्ति यत् आगामि 5 वर्षेषु भारतं वैश्विक बायोफार्मा निर्माणकेन्द्ररूपेण विकसितुं 10,000 कोटिरूप्यकाणां परिव्ययेन
बायोफार्मा शक्ति परियोजना समारप्स्यते। श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्रस्य सुदृढीकरणार्थं वित्तमन्त्री खादी ग्रामोद्योग हस्तशिल्पानां प्रोत्साहनाय महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उद्यम परियोजनायाः शुभारम्भाय घोषणा विहिता। सा प्रोक्तवती यत् प्रशासनं नगराणां मध्ये विकास संयोजक मार्गरूपेण 7 तीव्रवेग रेलमार्गपथं विकसितं करिष्यति। देशस्य वित्तीय क्षेत्रस्य सुदृढतां प्रकाशयन्ती सा अवदत् यत् प्रशासनेन विकसित भारताय बैंक क्षेत्रे उच्चस्तरीय समितिं निर्मातुं निर्णयं विहितमस्ति, यस्य उद्देश्यं वित्तीय बैंक क्षेत्रस्य व्यापक समीक्षां कृत्वा वित्तीय स्थिरता समावेशनं तथा उपभोक्ता संरक्षणस्य रक्षणम् अस्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः महत्त्वं वर्णयन्ती वित्तमन्त्री अवदत् यत् प्रौद्योगिक्याः स्वीकरणं कृषकाणां, महिलानां, युवानां तथा दिव्यांगजनानां सहैव सर्वेषां जनानां हिताय अस्ति, ये ते नूतनाः अवसराः प्राप्नुयुः। देशे क्रीडाक्षेत्रस्य विकासाय क्रीडाप्रतिभानां पोषणाय च सा अवदत् यत् प्रशासनम् आगामि दशके क्रीडाक्षेत्रस्य परिवर्तनाय खेलो इंडिया मिशन इत्यस्य शुभारम्भं करिष्यति। प्रशासनं कृषकाणाम् आये वृद्धिं कर्तुं, दिव्यांगजनानां कृते मानसिक स्वास्थ्य आघात सम्बन्धी चिकित्सां प्रदातुं, विकासवृत्त्यवसराणां गतिं प्रदातुम् अपि च पूर्वोदय राज्येषु तथा उत्तरपूर्वक्षेत्राणां विकासाय विशेषत्वेन प्रतिबद्धोऽस्ति। सा अरुणाचल प्रदेशे, सिक्किमे, असमे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां च बौद्ध परिपथानां विकासाय एकस्याः योजनायाः समारम्भाय घोषणा कृतवती। सा प्रोक्तवती यत् वित्तीयवर्षे सकलगृह उत्पादस्य 4.3% राजकोषीय अपचितिः भविष्यति इति अनुमानितम्। यद्यपि वर्तमान वित्तीयवर्षे एतत् 4.4% आसीत्। सा अवदत् यत् प्रशासनेन आयकर शुल्क प्रतिवेदनस्य समयसीमा विस्तारिता अस्ति। जनाः जुलाई मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिवेदनं दातुं शक्नुवन्ति तथा व्यावसायिक संस्थाभ्यः न्यासेभ्यश्च अगस्त मासस्य 31 दिनाङ्कं पर्यन्तं प्रतिवेदनस्य समयः भविष्यति। वित्तमन्त्री अवदत् यत् 25-2000 आयकर अधिनियमः 26-2000 एप्रिल मासस्य प्रथमदिवसात् प्रवर्तयिष्यते। सा एतदपि अवदत् यत् सरलीकृताः आयकरनियमाः तथा प्रपत्राणि शीघ्रमेव अधिसूचितानि भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् अस्य वर्षस्य केन्द्रीय आय व्यय पत्रकं मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत इति उपक्रमयोः नूतनं प्रगतिं प्रदातुं महत्वाकांक्षी संरचनां प्रस्तौति। एकस्मिन् दृश्यश्रव्य सन्देशमाध्यमेन श्रीमोदी अवदत् यत् अस्य वर्षस्य आयव्ययपत्रकं भारतस्य परिष्काराणां कृते नूतनाम् ऊर्जां तथा गतिं प्रदास्यति। सः अवदत् यत् एतत् अर्थसङ्कल्पपत्रम् अद्यतनीयाः आकाङ्क्षाः यथार्थतां नयति तथा भारतस्य उज्ज्वल भविष्यस्य आधारं दृढं करोति। प्रधानमन्त्री एतदपि अवोचत् यत् एतत् एकं विशिष्टम् अर्थसङ्कल्पपत्रमस्ति यत् राजकोषीय अपचितिं न्यूनीकरणे तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणाय केन्द्रितम् अस्ति। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमई तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अद्यतनीयम् आयव्यय संकल्पपत्रम् ऐतिहासिकम् अस्ति तथा च देशस्य सशक्तानां नारीणां भावनां प्रतिबिम्बयति। सः अवदत् यत् एतद् बहुशः अवसराणां द्वारमस्ति यत् वर्तमानस्य स्वप्नान् साकारयति तथा च भारतस्य उज्ज्वल भविष्यस्य आधारं सुदृढं करोति। श्रीमोदी अस्मिन् विषये सबलं प्रतिपादितवान् यत् एतत् 47-2000 वर्षं यावत् भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुं दिशि उच्चतरम् आधारम् अस्ति। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है,
इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् जनपदे छात्राणां कृते नूतनानां छात्रावासानां निर्माणस्य अभियानं शिक्षाम् अधिकां सुलभां करिष्यति। सः एतदपि अवदत् यत् कृषि, दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु प्रशासनेन सदैव प्राथमिकता प्रदत्ता। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् आयव्ययपत्रके नारिकेल चन्दन उत्पादने च संलग्नानां कृषकाणां कृते महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः सन्ति। सः एतदपि अवदत् यत् आयव्ययपत्रके कृताः प्रावधानाः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु नेतॄन् नवप्रवर्तकान् रचनाकाराश्च निर्मास्यन्ति। भारतस्य एसोचैम इति भारतीय वाणिज्य एवं उद्योगमण्डलेन वित्तीय वर्षस्य आयव्यय संकल्पपत्रस्य प्रशंसां कुर्वन् प्रोक्तं यत् एतेन देशस्य सकलगृह उत्पादनं वर्धयितुं साहाय्यं भविष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह विशेष संवादे एसोचैम इत्यस्य अध्यक्षः निर्मल के मिण्डा अवदत् यत् आयकर सीमाशुल्क नियमानां सरलीकरणेन व्यापारे सुलभता भविष्यति। सममेव अवदत् यत् एतेन आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया इति पदक्षेपानां समर्थनं भविष्यति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य अस्य वित्तीयवर्षस्य आयव्ययपत्रकं प्रस्तुतवती, यस्मिन् क्षमतानिर्माणे सौविध्येषु च सविशेषं सबलं प्रतिपादितवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् एतत् आयव्ययसङ्कल्पपत्रं मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारतं चेत्येतयोः पदक्षेपयोः नूतनां गतिं प्रदातुं महत्वाकांक्षी संरचनां प्रस्तौति। औद्योगिकसङ्गठनैः अस्य आयव्ययसङ्कल्पपत्रस्य स्वागतं कृतम् इति वार्ताः। केंद्रीय बजट 2026-27। A very warm welcome to this special show today, where today we're discussing the Union Budget 2026-27. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Anubha Rohadgi, and we are joined in by a very elite panel today. Dr. Vinod Paul, member Niti Ayog, Shubhma Bhattacharya, economic analyst, and Dilip Chonoy, Secretary General, former Secretary General, FICCI. Welcome, gentlemen, to the show. नमस्कार और सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं यूनियन बजट, केंद्रीय बजट 2026-27 की, जिसे आज सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में पेश किया। सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे डॉक्टर पॉल। आज क्या जो बजट आया है, इसका आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगती है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरुआत करी, कि हमारे 3 कर्तव्य हैं जी, जो फ्रेम क्रिएट किया। मैं समझता हूँ वो जिस क्लैरिटी से इस बजट में कहा गया है, it's a great way, a great way to look at how the government should function, how we should mobilize resources, spend the resources. It's about wealth creation. It's about meeting the aspirations of people and their need, and above all, to make sure that it's all equitable, it's inclusive. So I think these core principles are very, very fascinating, and the budget as it flowed through Madam's speech, you could see that it addressed all the 3 areas, and I think it's a great template to think about our priorities and how to mobilize and use resources. Dr. Paul, if we may look at the budget in totality, the underpinning mostly has been Swadeshi. In the Honorable Finance Minister's speech, Swadeshi to strategic resilience and to strategic indispensability, if we may call it. How do you see this? I think it's fundamentally important for the nation, and it is not for the first time that that part of Atmanirbharta getting translated into ensuring that our goods, our services, our manufacturing, our knowledge products we are self-sufficient in them, and also we use them, and we use them preferentially. And that ethos, I think, is
so critical for going into the future. We have seen in the recent challenges, be it COVID or the more recent geopolitical perturbations, that ultimately we are on our own. And therefore, this philosophy, building on Atmanirbharta and focus on Swadeshi, is so very important. I think it applies practically to all the sectors. शुभॉय, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में जो अभी डॉक्टर पॉल ने पॉइंट्स उठाए स्वदेशी को लेकर, और जो एक पूरा जो आज वित्त मंत्री का जो भाषण था केंद्रीय बजट पर, जो उन्होंने प्रस्ताव रखे, जो उन्होंने बातें कही, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर पॉल साहब की बातों को दोहराऊंगा कि स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी एक समय में एक इसको माना जाता था कि ये एक ऐसा चीज़ है जो एक किसी देश का कोई पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं, लेकिन अभी दुनिया के हालत को देखते हुए एक ऐसा माहौल बन गया है कि जहाँ पे बड़े देश, और जिसमें द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज USA, चाइना, इंडिया, इन सभी देशों में अपने क्रिटिकल चीज़ों में अपना पोजीशन, अपना व्यक्तित्व अलग होना और अपना एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी बन गया। और इसमें मैं 3 चीज़ों को लाऊंगा। एक है जो वित्त मंत्री जी बता रही थी, क्रिटिकल मिनरल्स जी। दूसरा उससे जुड़ा हुआ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और तीसरा जो जिनके जिक्र डॉक्टर पॉल साहब ज़्यादा करेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन, स्किलिंग, कि अपनी जो कैपेसिटी है, डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ को, उसको कितना मतलब डीपली एंट्रेंच किया जाए, उसमें कितनी डेवलपमेंट्स लाया जाए, ये तीनों स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का एक जैसे कहते हैं नींव मंत्र बन गया है। क्योंकि इसके बिना एक देश का अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने लिए आगे चलना इम्पॉसिबल है। और आज का बजट में आप इसके कई सारे छाया आपको दिखेंगे, मिलेंगे कि किस तरीके से इन तत्वों को आगे लाया गया आज के बजट में जी। इफ आई मे टेक योर वर्ड्स फॉरवर्ड Shuma, to Mr. Chinoy, as you were talking about that no country in this cutthroat world can survive without that element of indispensability, that element of self-sufficiency, and to that extent Atmanirbharta envisioned by the Honorable Prime Minister is kind of has been the hallmark of everything that we do today. Especially we saw today in the budget speech, everything, most of the things have been underpinned by that ethos. Now Dr. Chinoy, for that thing to happen, for that thing to to fructify, manufacturing sector has to be very, very robust. Now, how do you see manufacturing picking up from here, especially when we look through the prism of Finance Minister's budget speech today? So, I think, first of all, the overall parts of the budget, I'll agree with what Dr. Paul and Shubhamoy said. But if you look at this budget, it places manufacturing as the main driver of growth. It's moving away from broad incentives to creating specific ecosystems. And I'll explain that going forward. Tailored to various sectors, including strategic, high-tech, and at the other end, labor-intensive and capital goods. So if I were to say, the biopharma or biopharma Shakti project, I think I'll leave Dr. Paul to talk about that because that's his really area of expertise. But if you take the semiconductors, now we've launched the Indian Semiconductor Mission 2.0. Right. It's roughly gone up to about 40,000 crores. And you're looking at manufacturing equipment, materials, and looking at intellectual property and full stack design. There's a whole emphasis on industry-led R&D also. The next, as Shubham mentioned, was the rare earth and critical materials. And this you're actually creating a corridor across Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and looking at everything from mining to manufacturing. Chemicals, 3 new chemical parks. Chemicals is a big strategic area. In capital goods and infrastructure, this is very, very interesting. We are spending so much on roads, metro, etc., but we were providing the opportunity to foreign capital good manufacturers. Now, the finance minister actually said there will be a huge capital goods infrastructure linked manufacturing thing, from lifts to tunnel boring machines. Right. And there's a huge issue there. There is a containers for exports, a 10,000 crore program.
And on the labor intensive side, if you look at it, there's a textile program. We can talk about that later. There's a sports good program. Interestingly, there's a Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative support Khadi districts, one district, one product, and revitalization of industrial clusters, 200 clusters all over. Focus on sports goods and focus on toys. So it's a real breadth in the manufacturing. Of course, MSME is also manufacturing, but it's been dealt with separately. Absolutely. डॉक्टर पॉल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी मिस्टर चिनॉय ने बात की जो बायो फार्मा सेक्टर के बारे में, वित्त मंत्री ने इस बार इस सेक्टर के लिए बायो फार्मा शक्ति जो एक प्रोग्राम शुरू करा है जिसमें 10,000 करोड़ का आउटले है, तो ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि और उसमें कई बातें हैं, इसमें ट्रायल क्लिनिक्स का भी जो है इस्टेब्लिश करने की बात कही है, 1,000 ट्रायल सेंटर इस्टेब्लिश की जाएंगे, तो इसके बारे में अगर आप हमें विस्तार से बता सकें कितना ज़रूरी है ये? एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च हो रहा है, बायो फार्मा शक्ति, उसकी अनाउंसमेंट आज हुई है. शक्ति स्टैंड फॉर स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. इसका फोकस ये है कि जो फ्रंटियर्स ऑफ क्योर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उनके ऊपर इन अ वे होल ऑफ गवर्नमेंट मल्टी सेक्टोरल पुश किया जाए. बायोफार्मा में कौन से प्रोडक्ट आते हैं? इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जो कि लिविंग सेल्स से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट किए जाएंगे, ह्यूमन से, जर्म से, एनिमल ओरिजिन से. ये बायोलॉजी है, ये इनर्ट केमिकल्स नहीं है ये. सो हमारी जो जेनरिक्स हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स है, पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो हम लैब में जोड़ के बना सकते हैं. लेकिन बायोलॉजिक्स वो होते हैं जो कि बायोफार्मा मिशन का एक हिस्सा बनेंगे, जो कि ह्यूमन एनिमल ओरिजिन से, लिविंग सेल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होंगे. प्रताप, वो कौन से हो सकते हैं? कैंसर की ट्रीटमेंट, ऑटो इम्यून डिजीजेस की ट्रीटमेंट, वैक्सीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. अब अगली जो गेम है दुनिया में, वो गेम जेनेरिक और क्लासिकल फार्मास्यूटिकल से हट के वहाँ एडवांस होंगे. इस पे सारी आ रही है, क्योंकि अब हमारे पास वो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल होंगे हैं जिससे कि हम डीएनए को, जीन को और जो बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम उसको मैनिपुलेट करते हुए हम क्योर्स को प्रस्तुत कर सकें. एंड विद एआई एक्चुअली दिस हैज बिकम even more possible and the possibilities are immense. So what has been stated is that India positions itself to be in the leadership role for biopharmaceutical production and research and production. There are multiple elements into the program. First and foremost, it is decided that the 3 new NIPERs will be created around this fundamental capability. NIPERs are National Institutes of Pharmaceutical Education and Research. उसमें जो बने उनको हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा स्पेशलाइज्ड एलिमेंट हो. जैसे कि अहमदाबाद वाला नाइपर जो बायोमेडिकल डिवाइसेस के ऊपर उसकी चर्चा होती है, जो मोहाली वाला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस कर रहा है. अब 3 वो बनाएंगे जो कि बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाएंगे. उसका इकोसिस्टम बहुत हैवीली इस तरफ गियर किया जाएगा और 7 जो हैं उनमें और ताकत बढ़ाई जाएगी. नंबर 2, 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स को रेडी किया जाएगा. हम जब ऐसी दवाई बनाते हैं, एक क्योर बनाते हैं जो पर्सनलाइज मेडिसिन की तरह आगे आएगा, सेल एंड जीन थेरेपीज की इसमें भी बात होती है, तो हमें कहाँ पे उसको टेस्ट करना है? पहले बनाओ फिर ढो के कहाँ कराना? हम पहले ही ट्रायल साइट्स को तैयार रखेंगे और जैसे जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स, ये क्योर्स हमारे सामने आते हैं और जब क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल शुरू होने हैं तो जाके प्लग एंड प्ले करके उसमें हम जवाब देंगे. इसमें आईसीएमआर मेन भूमिका निभाएगा. जो 1000 साइट्स बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि हमारा रिसर्च होता जाए, हमारा जो नाइपर में होगा या और जगह भी होगा, सारा कोएलिस होगा और ट्रायल भी हो, लेकिन हमारा रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो भी एक एफिशिएंट होना चाहिए, निम्बल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, लेकिन फैसिलिटेटरी होना चाहिए. तो उसमें भी बदलाव लाए जाएंगे क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करने की पद्धति, नॉमेनक्लेचर, सिस्टम, स्टेप्स अलग होते हैं.
इस तरफ जब आते हैं तो वो सब कुछ बदल जाता है. फॉर एग्जांपल अगर एक सेल एंड जीन थेरेपी आएगी तो 15,000 पे वो ट्रायल नहीं होता, वो 20 पे होता है या 40 पे होता है वगैरह वगैरह. तो इन मल्टी प्रॉन्ग्ड एक अप्रोच ली जा रही है जिसके द्वारा कि हम एक बायोफार्मा हब बनेंगे, ग्लोबल हब बनेंगे, जो क्योर्स हम यहाँ पैदा करेंगे वो अपने देश के लिए भी हैं और दुनिया के लिए भी हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस इज द फ्यूचर, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड क्योर्स एंड फोकस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. मिस्टर चिनॉय, इस जो अभी डॉक्टर पॉल बात कर रहे थे कि बायोफार्मा हब बनाना, इसमें जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, जो हमारी युवा शक्ति, जो आज वित्त मंत्री ने जो बात भी कही अपने बजट में, वो कितना बड़ा, इसमें कितनी अहम भूमिका निभा सकती है? अनुभव ये ऐसा है कि अगर जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया कि हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जी, अब एक इंडिया की एक चैलेंज हुई है कि हम सिंथेसिस में अच्छे हैं, फर्मेंटेशन और ह्यूमन उसमें हमारे बहुत एक जगह से पीछे थे जी. और जो हम यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, आज जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में ये सिखाया जा रहा है. और जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा कि नाइपर्स में भी ये सिखाया जाएगा, तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है. और अगर आप विश्व में देखें तो इस एरिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए जी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी कठिनाई है पिवट करने के लिए, क्योंकि वो या तो सिंथेसिस में है कि एक पर्टिकुलर एरिया में है. इसमें तो स्टार्टअप्स और युवा के लिए एक बहुत ही अच्छा है. और जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, अगर ये 1000 जो क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स होंगे ना, वो तो ट्रायल सेंटर्स तो एक है, उसके इकोसिस्टम के लिए पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको कलेक्ट करना, उनको पूरा ब्रीफ करना, उसका जो इकोसिस्टम बनेगा उसमें भी काफ़ी युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने का. Right, Dr. Paul, I would like to ask you, talking of this pharma sector in particular and the health sector in general, the finance minister today announced, the simplification process and the tax exemption thing about 17 drugs, medicines including the cancer critical medicines would be basic duty exempted, and 7 more rare diseases drugs would be exempt from duty. How significant do you think that this is for the Indian health sector? Well, this is responding to the needs of the people. It is to make sure that those who need advanced therapies, until such time that we make our own, those therapies are available, they are on payment. But what the government is doing in a gentle, humble, human touch way is that there shall be no duty. So it becomes affordable for many more people. And that gesture is, I think, a very, very humane gesture. 17 such drugs, largely anti-cancer drugs, and some of them are actually biologics, will be exempt, as well as rare diseases. The families who have these rare diseases, they have so much of difficulty because they can visualize that there is a cure potentially in some other country at a cost of 3 crore, not available. So that has been eased up and we welcome that. और अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी. नमस्कार स्मृति जी, नमस्ते. आपका पहला रिएक्शन, प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया, उस पर पहली आपकी प्रतिक्रिया. देखिए, मुझे लगता है बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखना चाहिए. बजट, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे और उससे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण, 10 वर्ष की मोदी सरकार की एक पूर्ण यात्रा को इस बजट में एक तरह से हम एक नए स्वरूप में समाविष्ट होते देख रहे हैं. महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था साल 2014 में लगभग 25 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला भारत सरकार से, लेकिन ये संख्या बढ़ के अब 95 करोड़ की हो गई है. तो उस दृष्टि से इंक्लूसिव ग्रोथ को भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए ग्रोथ के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण का प्रमाण आज के बजट में आपको देखने को मिला. एक तरफ बायोफार्मा शक्ति नाम की एक सौगात भारत को आज मिली, जिसके अंतर्गत आज फार्मास्यूटिकल के पूरे हमारा जो व्यवसाय करते हैं भारतीय कंपनियां, उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आज विश्व की 60% वैक्सीन बनाने वाला देश भारत है. विश्व में 20% जो जेनेरिक मेडिसिन जाती हैं वो भारत से जाती हैं.
तो जब 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति के नाम से घोषणा होती है, उससे भारत फार्मास्यूटिकल की दुनिया में नए खिताब हासिल कर सकता है। इस मानसिकता के साथ सरकार ने प्रस्ताव आज संसद में रखा। दूसरी ओर रेयर अर्थ मिनरल के कॉरिडोर की आज भारत सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण की। विश्व का थर्ड सबसे बड़ा रिजर्व रेयर अर्थ का वो भारत में है, लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन का अगर हम संख्या देखें तो लगभग 1% तक ही सीमित है भारत का योगदान। तो वो योगदान कैसे बढ़ सकता है, वो इस कॉरिडोर की स्थापना से वो एक नई उपलब्धि या एक नई क्षमता को पाने का एक उसकी यात्रा सुनिश्चित करने वाला बजट का ये प्रावधान रहेगा, ये मेरा मानना है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जब बात होती है तो आज 40,000 करोड़ का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से बजट में किया गया। इसके अंतर्गत आज जब हम बजट में एक्सपोर्ट के आंकड़े देखते हैं तो आज से 10 साल पहले 4 से 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था, जो बढ़ के अब 35 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत तीसरे पायदान पे है और इस प्रकार की घोषणाओं से वैश्विक स्तर पर पहला पायदान पाने में मुझे नहीं लगता भारत को कोई भी चुनौती का ऐसा सामना करना पड़ेगा। इस वित्तीय जो अनाउंसमेंट है उससे बहुत बड़ी सहायता, सहयोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को मिलेगा। लेकिन एक विशेष बात और, आज भारत सरकार ने 12 लाख करोड़ का आवंटन कैपेक्स की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से घोषित किया। ये मुख्यतः श्रेणी 2, श्रेणी 3 के शहरों में जाएगा। जो सामान्य जनमानस, जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ती है वहाँ उनकी दरकार बढ़ती है कि लोकल ट्रांसपोर्ट हो, लोकल पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था हो। इन सब में इस वित्तीय आवंटन का इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता है एक प्रगतिशील बजट, भारत को और सुदृढ़ करने का बजट और हर वर्ग, हर समुदाय को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने वाला ये बजट है। Smriti ji, no country, no economy can grow without including or engaging the other half of the 50% of the demography, and I am talking about the women folk here in India. And in line with the Prime Minister's ambitious vision of Viksit Bharat by 2047, and you yourself have been a former Minister of Women and Child Development, we all know that. So, what are provisions in the budget do you see for the women folk, which was announced today? 43% of STEM graduates in our country are women. And today I'm extremely elated that an announcement of every district will have one girls' hostel in STEM institutions was made. Additionally, we all know that close to 10 crore women today are a part of the self-help group movement in India, of which there is a rural economy that is generated to the tune of close to $37 billion. Now, to have a she-mart concept for such women so that they can find access to better markets is something that we should all celebrate. But I also believe that when the Prime Minister has proclaimed benefits for the health sector, those predominantly impact us all families, especially Ayushman Bharat has been one of the greatest successes of Prime Minister Modi's tenure. The fact that 50% of those who have benefited from this program are women is again a cause for great joy for me. स्मृति जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए और केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर पॉल, अभी जैसे स्मृति जी ने बात की आयुष्मान भारत की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, आज के बजट में भी अगर हम देखें तो इसमें जो एक प्रावधान है कि अगले कुछ सालों में 1.5 लाख हेल्थ केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा ये भी है कि जो कुछ एक सेंटर्स नए और क्रिएट किए जाएंगे, उनको आप कैसे देखते हैं, मेडिकल हब्स, स्पेशली मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? 3 पॉइंट्स पे ये बात आगे बढ़ रही है जी। सबसे पहले बात करते हैं जो कि केयर गिवर्स के बारे में आज अनाउंसमेंट हुई है। हमारे देश में हमें एल्डरली केयर के लिए जी, दिव्यांग जन की केयर के लिए बहुत ज़रूरत है कि ऐसी ट्रेन लोग हमें मिल पाएँ। एट द सेम टाइम जी, ये जॉब भी है और ये भी है कि बाहर के देशों में केयर गिवर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है। कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अब एल्डरली का नंबर बढ़ रहा है, 11-12% है।
ये अगले कुछ सालों में ये दुगना होने वाला है 2047 तक। तो एक बहुत एक क्लियर का डायरेक्शन अब आया है कि जिस स्पीड से हम केयर गिवर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं कि सेवाएं दे पाएँ, उसमें एक अब बहुत एक क्वांटम स्पीड आ रही है। हम 14,000 15,000 क्रिएशन की बात करते थे, अब हमने क्लियर किया है कि भारत सरकार 1.5 लाख ऐसे केयर गिवर्स की को आगे ट्रेनिंग देने का शुरुआत। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की के बारे में, और वो बहुत एक तरह से एक नई शुरुआत है और बहुत बड़ी शुरुआत है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेज की बात होती रहती है, लेकिन एक सेट ऑफ कार्डर्स है, लगभग 45-50 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं। उनमें फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आँख की जांच करने वाले ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ओटी में जो काम करते हैं, डायलिसिस में जो काम करते हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी कैटेगरी। इसके लिए भारत सरकार ने कमीशन बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में। अब उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। इनकी ज़रूरत अगर देखें तो कम से कम 7 मिलियन की ज़रूरत को हम प्रोजेक्ट करते हैं। इट इज़ बॉटम ऑफ द पिरामिड। अभी भी आप देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट जहाँ बड़े हॉस्पिटल में भी यहाँ मान लीजिए 50 होने चाहिए, वहाँ 3 होते हैं। इस तरह की ज़रूरत है जो कि आगे पूरी करनी है। इसकी पाइपलाइन नहीं थी पूरी तरह से और फ्रेगमेंटेड थी। आज फैसला किया गया है कि हम इस एरिया में इनको बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे और ये लेकर चलेंगे कि अगले साल तक 1 लाख, अगले 5 साल में हम 1 लाख क्वालिटी एश्योर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ में अब जो ये नई अगली डायमेंशन आ रही है, जिस तरह से मेडिकल सीट्स को बढ़ाया गया, पीजी सीट्स को बढ़ाया गया, नर्सिंग को पुश किया गया है, उसी प्रकार अब एक नया एक मैं कहूँगा मेजर फ्रंट एक खोल दिया गया है जिसमें नौकरियाँ भी हैं और सेवा भी है। और ये तीसरी बात वेरी ब्रीफली, मेडिकल टूरिज्म एक ग्रेट सनराइज सेक्टर है। सर आप चंद्र साहब इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। इतना स्कोप है, इतनी हमारी ताकत है और ऑलरेडी भी हम इसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो अब एक क्लियर रिकमेंडेशन आ गई है कि हम 5 बिग रीजनल हब्स पैदा करेंगे। उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, टर्शरी केयर होगी, उसमें आयुष होगा, उसमें ट्रेनिंग होगी, उसमें रिसर्च होगा और एक कनेक्ट होगा और जॉब्स आएंगे, अनुसंधान होंगे। इट्स अ ग्रेट विन विन इनिशिएटिव। इसके बारे में कभी क्लैरिटी आ नहीं रही थी कि किस तरह से किया जाए, लेकिन अब डिसाइसिव एक्शन इसके ऊपर होगा। मैं उसको वेलकम करता हूँ। Dr. Paul, you talked about the allied medical and the elderly care, which India so kind of greatly requires now. Now, when we talk of mental health, and today there was a push, there was a word from the finance minister regarding this thing, and how important this is, because most of us are kind of engaged with the physical activities and all and everything, but mostly this sector or this point is mostly neglected, especially for the elderly. How do you look at it? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य एक चैलेंजिंग स्वरूप अब ले चुका है। हमेशा से ही था। हेल्थ कंप्लीट तब तक नहीं होती जब फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ कंप्लीट हो। लेकिन पोस्ट कोविड पर्टिकुलरली और जो लाइफस्टाइल में तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, हमारे इकोसिस्टम में, फैमिली स्ट्रक्चर में, सोशल सिस्टम में आ रही हैं सारी दुनिया में, लेकिन हमारे पास इसका जो बर्डन बढ़ रहा है और वरिंग लेवल तक पहुंच रहा है, हम सब जानते हैं। इसमें ताकत बढ़ाने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। इसको ताकत बढ़ाने के लिए टेलीमानस को शुरू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 साल पहले वो हमें सौगात दी थी और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि वो काम हो रहा है, जिस पे आप काउंसलिंग ले सकते हो उस हब को फ़ोन करके। अब जो कहा गया है कि हम हाई एंड एक्सपर्टीज़ इसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। NIMHANS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज एक नेशनल एसेट है। इट्स अ जूल इन द क्राउन ऑफ इंडिया, जो बेंगलोर में स्थापित हुआ है। इसने अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत देश को इसने पॉलिसी और सेवाएं दी हैं। उसी की तर्ज पर उत्तर भारत में एक नया NIMHANS को इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट आज हुई है। इसके साथ साथ नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स जो रांची और तेजपुर में हैं, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा और उनको हम रीजनल एपेक्स मेंटल हेल्थ हब्स की तरह लेंगे। इसकी स्पेशल इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे और मेडिकल साइंस में जब आगे बढ़ते हैं तो सोच,
knowledge creation, context specific solutions, और expertise of the right level, outreach activities. जो academic part है, जो कि knowledge hub है, जो स्रोत है सोच का, उसमें ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और इसके चलते हुए इसके जो इफेक्ट होगा वो इंस्टीट्यूशनल ही नहीं होता, सारे देश भर में इसमें बदलाव आएगा, और इसमें सब अलाइन होने चाहिए, और हमारे मेंटल हेल्थ कार्यक्रम जितने भी है प्रोग्राम्स हैं उनमें इसमें ताकत आएगी। शुभमय, अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं चिकित्सा की, हेल्थ की, तो इसमें एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। अभी जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, पहले एम्फोसिस था शुरुआत में कि मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करने हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे, नर्सेज की ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा था। इस बजट में हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी, जो उन्होंने बताया एसोसिएटेड फील्ड्स हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, सरकार एक एक करके आगे कदम बढ़ा रही है, और ताकि जो हमारे जो अब तक के जो ऐसे क्षेत्र थे जो उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है कि हमने एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया या उसको प्राप्त करने के करीब है, तो अब हम दूसरे एरियाज पे फोकस करें। जी, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि हेल्थ केंद्रीय और राज्य स्तर पे दोनों लेवल पे इसका बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत है, और मुझे लगता है आज के ये जो घोषणाएं जो हुए हैं इनसे फ़ायदा ये रहेगा कि ये सिर्फ एक केंद्र चालित स्कीम या केंद्र चालित एक प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा, इसमें राज्यों को अपना भूमिका निभाने के लिए बहुत विस्तृत स्कोप बन जाता है, क्योंकि हेल्थ के जिसे कहते हैं कटिंग जो डिलीवरी है, फाइनल जो डिलीवरी है वो राज्य स्तर पे होना ज़रूरी है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी हमें हासिल करना बाकी है। सो मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट आउट the health revolution in India. Right now we'll be slipping into a quick break for the English and Hindi news bulletins, but do stay tuned because we'll be right back at 7:10 p.m. with more on the other side. तो बने रहिए हमारे Union Budget 2026-27. केंद्रीय बजट 2026-27। 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 Union Budget 2026-27. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में। आज सुबह जैसे हमने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था वित्त वर्ष 2026-27 का। इसी पर हमारी चर्चा हो रही है, और चर्चा में एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर विनोद पॉल, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल फिक्की दिलीप चिनॉय, और आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी। अभी तक हम जो बात चर्चा चल रही थी हमारी, वो चल रही थी जो हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में। एक और जो आज जो उन्होंने वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट की, उसमें ये था कि जो सिटी रीजन्स है, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए 5,000 करोड़ की उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बात ये कही है कि जो ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, उन्होंने इनको भी ग्रोथ का, विकास का इंजन बताया है। तो इसके ये जो एक अनाउंसमेंट हुई है, इसके बारे में आप शुभमय क्या कहेंगे? बहुत ही ज़रूरी, और खासकर अगर आप बजट के आवंटन का जो एलोकेशन देखें तो ये दोनों में अर्बन चैलेंज फंड
और अर्बन हाउसिंग, इन दोनों में काफ़ी जोर शोर है, इन द सेंस कि बजट में इसमें सही एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा फंडिंग दिया गया है। अर्बन चैलेंज फंड में 5000 करोड़ पर का जो आवंटन किया गया है, मैं मानता हूँ ये एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़, मैं एक चीज़ आपका ध्यान आकर्षण करूँगा कि वित्त मंत्री कई बार कई स्कीम्स के आज जो अनाउंस किए उसमें एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, चैलेंज। जी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है केंद्रीय राज्यों की रिलेशनशिप में, क्योंकि हम इससे पहले हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो मोटा मोटी उनका अप्रोच ये है कि सिर्फ राज्यों को स्टैटिक तरीके से कि भाई इस जगह पे ये होगा, इस जगह पे वो होगा, इसकी घोषणा वो नहीं कर रही थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि राज्यों से सेंटर के बीच में बातचीत होगी। डॉक्टर पॉल जैसे एक्सपर्ट्स उन पर निगरानी करेंगे, उन पर देखेंगे, एंड जो स्टेट्स के जो स्कीम्स खरे उतरते हैं जी, तो एक सिंपल एग्जांपल दे, जैसे ओलंपिक के लिए बिडिंग होता है कि कोई कौन सा शहर ओलंपिक्स के लिए उसका दायित्व मिलेगा, ठीक उसी तरह से अर्बन चैलेंज फंड में कितने शहर एक पर्टिकुलर लेवल्स तक खरे उतरते हैं, उनमें ये पैसा दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो फंडिंग होता है, उस फंडिंग में उस शहर या उस रीजन का एक, जैसे कहते हैं, एक उतावलापन दिखता है, कंपेटिटिवनेस। और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं मानता हूँ कि ये आने वाले दिनों में बहुत सारे स्कीम्स में, जहाँ पे हम कहते हैं कि स्कीम्स में आवंटन किया गया लेकिन उसकी खर्च नहीं हुई, उसकी क्रियान्वयन नहीं किया गया, ये वाली जो कंप्लेंट है वो काफ़ी हद तक उतर जाएगा। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसलिए आप देखेंगे जैसे मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म में 5 टूरिज्म क्षेत्र बनाया जाएगा, लेकिन किसी भी क्षेत्र का नाम नहीं दिया गया। और मैं सोचता हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में या बहुत जल्दी इनकी घोषणा होगी, और वो घोषणा भी वही सिमिलरली चैलेंज के रूप से कि कौन सबसे ज़्यादा इसमें उतरते हैं। तो मुझे लगता है बजट का ये इस बारी का एक वेरी इंटरेस्टिंग एक पहलू था। कई सारे स्कीम्स में, एक्सेप्टिंग बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन या जो रेयर अर्थ कॉरिडोर जिसका शुरुआत में शनाई जी जिक्र कर रहे थे, बाकी इनको छोड़ के प्रैक्टिकली किसी चीज़ में भी, जैसे ईस्टर्न इंडिया में एक ऑरेंज हब बनाया जाएगा, ये इसकी घोषणा की गई, लेकिन कहाँ पे नहीं किया गया। ये एक इंटरेस्ट बन जाता है, इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाता है, और मुझे लगता है कि केंद्र और राज्यों में एक बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक होड़ शुरू होने वाला है, जो मैं काफ़ी गौर रखूंगा। डॉक्टर पॉल, आप क्या कहेंगे? शुभमय कह रहे हैं कि नाम नहीं लिए गए हैं, 5 मेडिकल हब्स बनाने की बात कही, नाम नहीं ले गए, ऑरेंज सेक्टर बनाने की बात कही, क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्या एक तरह से, क्योंकि ये सब बातें इतने बड़े जब हब्स बनेंगे, रिसोर्सेज आएंगे, तो कहाँ उनको लोकेट करें, वो डेटा के ऊपर, रेडीनेस के ऊपर, ज़मीन, प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस, उसको अगर हमने नॉलेज हब बनाने हैं, एजुकेशन हब्स बनाने हैं, वो सारे कहाँ पे बेस्ट सूट करते हैं, कहाँ बेस्ट डिविडेंड्स आएंगे, कनेक्टिविटी, वीज़ा। हमारे जो मेडिकल टूरिस्ट आते हैं वो सर्टन लोकेशन से आते हैं। उसके अलावा हमारी ये भी एस्पिरेशन है, मान लीजिए कि हम पड़ोसी देशों से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, लेकिन हमारी एस्पिरेशन है कि वो यूरोप से भी आए, क्यों नहीं आए? उनकी भी लंबी लाइनें हो रही हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, बारी नहीं आ रही अल्ट्रासाउंड की। तो हमारी बिल्कुल क्लियर एम्बिशन है, और हमारी इंडस्ट्री की क्लियर एम्बिशन है कि हम हाई वैल्यू और उन देशों से भी मेडिकल टूरिज्म के लिए जो लाभार्थी यहाँ आना चाहें उनको हम अट्रैक्ट करेंगे, उससे हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, उससे हमारी साख बढ़ेगी। तो ये एक अलग तरीके से हमारे देश की जो साख ऊपर जाएगी, और दिखाएंगे हम क्वालिटी परफॉर्मेंस, तो वो कहाँ बेस्ट होंगे, ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली फ्यूचर में होगा। Dr. Paul, we were talking about the city economic regions where an allocation of 5,000 crore rupees over a period of 5 years, especially, and this is so important that it has been allocated for tier 2 and tier 3 cities, because most of the time we hear about the tier 1 or the metros, of course, that's there. Let's not forget that the finance minister also mentioned about the temple towns here when we talk about the city economic regions, and also in her other part of her speech she talked about the aggregation of industrial hubs in mostly in the tier 2 and tier 3 cities. Now this would of course bringing that amount of more consolidation and boost to economy. Your say on that? Very fundamentally,
नीति आयोग में इसकी बार बार चर्चा होती रही है और मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक इसका जो बैकग्राउंड काम है कुछ सालों से इसमें हमारे संस्थान में हुआ है। सोच ये है कि जब हम सिटीज़ को प्लान करते हैं तो हम उसको लिविंग के लिए, ड्वेलिंग के लिए, कंफर्ट के लिए कोर नज़र ये होती है, लेकिन एक एस्पेक्ट हर सिटी का ये होता है कि वो तो एक इकोनॉमिक हब है, उसमें इंडस्ट्री आएगी, उसमें स्कूल्स आ रहे हैं, उसमें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाणिज्य हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, मार्केट है, उसकी एक इकोनॉमिक दृष्टि भी है। तो सिटीज़ एज इकोनॉमिक हब्स जो रियलाइजेशन है ये काफ़ी टाइम से चला हुआ था कि एज आवर अर्बनाइजेशन increases, we must be mindful of this aspect. And so when we are strengthening our urban infrastructure and services, when we are looking at the aspirations of people, we should visualize that there are cities which must evolve into those kinds of futuristic model. Importantly, cities also have characteristics which are suitable for certain type of economic growth. Yes. There are inherent pluses of a situation like Surat is made for very diamonds. typical of the city. वो एक खास चीज़ हो जाती है तो उसको क्यों नहीं हार्नेस किया जाए। कहीं पे ऐसी लोकेशन है कि फार्मा बहुत ही बड़े तरीके से आएगा, तो ये जो थिंकिंग आई है इसका एक अब क्लैरिटी से एक स्कीम की तरह, प्रोग्राम की तरह हम सबके सामने आया है। सो इट इज़ अगेन इट इज़ फॉर विकसित भारत, दिस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल एनर्जाइज आवर economic as well growth as well as urbanization in a systematic sustained way. डॉक्टर पॉल, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, हम जब सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह इस बजट में 5,000 करोड़ का जो उनके लिए आवंटन किया गया है ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो, इस कदम से जो हम पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं, जो माइग्रेशन देख रहे हैं, जो अर्बन माइग्रेशन हो रहा है छोटे शहरों से टियर 2 टियर 3 से, उसको कितना रोकने में कितना बड़ा ये कितना अहम रहेगा? किसी हद तक बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे टियर 2 टियर 3 में जाएगा तो हमारे मौके हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरह से भी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि हम इस तरह से अब सिस्टमेटिक सोचेंगे कि ये इकोनॉमिक हब्स हैं तो उनका वेलफेयर भी हम लुक आफ्टर करेंगे, उनकी सुविधाएं भी उस तरह से अलाइन होंगी। उसमें आप एम्प्लॉय सोशल इंश्योरेंस है का जो सिस्टम है हमारा, वो भी वहाँ पे दिखेगा कि उसका वेलफेयर भी हो। तो दूर जाने की बजाय नज़दीक जाने की बात होती है, और एक होलिस्टिक अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो इंक्लूशन पार्ट जो है उसमें और जो सिटीज़न की नीड्स हैं उसकी भी बात सामने आती है। तो उस विजन के साथ एक नए तरीके से अर्बनाइजेशन का मॉडल जो है वो अब हमें देश की ज़रूरत है, अर्जेंट ज़रूरत है। अर्बनाइजेशन इन अ सिस्टमेटिक वे, उसके बिना विकसित भारत की यात्रा मुश्किल है, ये होना ही है। Dr. Paul, when we are talking about the industrial hubs or economic hubs, let me bring you to another important area. Shubhma was also mentioning, as was Mr. Chinoy, of the rare earth corridors. Now, this dedicated corridors in Odisha, or rather I would like Mr. Chinoy to answer that the dedicated corridors, rare earth corridors in Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, to promote research and mining of critical minerals. R&D of course is also there. Now when we talk of rare earths, this is so very important, for this modern day economy. Now take us through the plan. Now what the government has there for us in the offing. So thank you, Nishit, but if you look at the whole plan, it's from mining to manufacturing. Okay, so Orissa, Kerala, Andhra, parts of Tamil Nadu have mining. I don't think many of the listeners recognize that Tamil Nadu is actually the hub of EV manufacturing. Whereas there are 5 different automotive hubs, Tamil Nadu is the hub of EV manufacturing. Now, how do you take the mineral, mine the mineral, link it to a production sector, link it to the battery manufacturing sector, link it to the automobile electric vehicle manufacturing sector, whether it is rare earthless magnets, permanent magnets, or look at motors, electric motors, or look at the aspects of that. So it's a complete thing. The earlier instance of this was the defense corridors.
whether it was the Bangalore Chennai defense corridor, the UP defense corridor, where you had many small things and you had raw material facilities, and you actually created an economic corridor. It links to the previous question of where you were thinking of setting up these urban economic hubs. So the urban economic hubs will be connected. And if you we earlier talked about the connectivity in the high-speed rail, which Shubhamay said is actually been specified, right? It is exactly, so where is it? Bangalore, Chennai, So along these corridors, so if you were to plot a lot of these things in the map, you will see that they are linking raw material rich states to manufacturing hubs, to production hubs, to markets. So, that is the idea behind this. And then, if you look at Tamil Nadu or Andhra, they have the R&D in this space. A lot of people, even Telangana actually is there. DMRL is there. The other laboratories are there. So that's the idea of how to actually do it. So anyway, I think so. The whole chain is being created, and there is now a very decisive strategy to get this very critical enabler for our development, growth and development right. So डॉक्टर पॉल, आप ये कहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इतने एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर की, रेयर अर्थ मेटल्स की, मैग्नेट्स की हम बात कर रहे हैं, आज की जो, अगर हम आज का जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो है उसको देखें, जिस तरह के सप्लाई चेन ब्लॉक्स हम इतने पिछले कुछ सालों में देखते आ रहे हैं, किन्हीं भी जो भी उनके कारण रहे हों, उनको देखते हुए सरकार का ये कदम जो पूरे लिंक करा है उन्होंने कि प्रोडक्शन सेंटर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से लेकर, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर भारत को अपने जो 2047 के में विकसित भारत का लक्ष्य तक पहुंचना है तो. Critical enabler, critical earths are now critical enablers, and we have seen that the एक होड़ लगी हुई है कि जहाँ भी ये अवेलेबिलिटी है उसको पकड़ो और उसको कंट्रोल करो. तो इसमें पहली बात आती है जो हमारे अपने ही रिसोर्सेज हैं, हमारे अपने, जैसे बताया गया क्लियरली कि हमारे पास इतना पड़ा हुआ है, हमारे पास रिजर्व्स हैं, उसको हार्नेस करना तो एकदम ओवर्ट प्रायोरिटी है. एंड दिस इज देयरफॉर अ वेरी स्ट्रेटेजिक एज वेल एज वेरी थॉटफुल एंड अ वेरी एसेंशियल स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टुडे. और इसी में हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, शुरू में निशित ने बात की थी, तो एक आज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की भी बात हुई है जिसमें 2000 करोड़ रुपए होंगे. शुभमय, इसके बारे में कितना, क्योंकि सेल्फ रिलायंस हमारे प्रधानमंत्री का शुरू से आत्मनिर्भरता उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है. हम जब भी देखते हैं, जितने मौके उनको मिलते हैं, वो आत्मनिर्भरता की हर क्षेत्र में बात करते हैं. ये फंड जो है 2000 करोड़ रुपये का टॉपअप फंड है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, कितना अहम है? हम जनरली बजट में जब आइटम्स की घोषणा होती है उसमें फंडिंग के हिसाब से उसकी अहमियत को देखते हैं. एक जिसे कहते हैं वाणिज्य करस्पॉन्डेंट होने की वजह से हम लोग टिपिकली उसको दोनों को जुड़ के देखते हैं. हम देखते हैं कितने जीरो हैं. बिल्कुल. तो 2000 करोड़ आपको इमीडिएटली बता रहा है कि ये दिस इज नॉट जस्ट अ टोकन एलोकेशन, इसके पीछे सशक्त एक थॉट है. इस बार के बजट में आप देखेंगे कि बजट उस कंडीशन में बनाया गया जहाँ पे हमारे देश में, जिसको इस बारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वर जी ने कहा कि दी पैराडॉक्स ऑफ 2025, exactly, कि हमारे देश में जितने सारे चीज़ें सही होना था सारे सही हुए हैं, लेकिन हम एक ऐसे जगह में पहुंच गए हैं दुनिया में जबकि चारों तरफ एक लड़ाई, एक तरह का, मतलब जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी का एक माहौल बन गया है. उस बीच में एक कंट्री को, आज मैं ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट देख रहा था, सबसे पहला उनका हेडलाइन यही था, इंडियाज बजट बैट्स फॉर स्टेबिलिटी इन एन अनसर्टन वर्ल्ड. ये इन्होंने सही पकड़ा, सही मूल मंत्र पकड़ा कि भारत की बजट की मूल चित्र क्या है, स्टेबिलिटी और इन एन अनसर्टन वर्ल्ड. तो उस कंटेक्स्ट में सेल्फ रिलायंस फंड बहुत ज़्यादा आप इसके मायने रखता है. क्या करता है ये कि आप किसी भी चीज़, जैसे हम सिटी की बात कर रहे थे कि सिटी के डेवलपमेंट्स की, रेयर अर्थ्स मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का, जैसे हेल्थ सेक्टर के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन, एमएसएमई के बारे में भी अनाउंसमेंट हुई है. एमएसएमई में ये सारी चीज़ें, मतलब
बेसिकली बजट का चित्र ये है कि जहाँ पे हमारी वीकनेसेस हैं उसको नज़रअंदाज ना करके उन्हीं चीज़ों पे ही एफर्ट दिया गया है. सो इट्स लाइक एक तरह से कहते हैं इट्स नॉट मच मोर देन अ बजट, इट्स अ प्लान डॉक्यूमेंट. तो वो एक बुनियादी को हम अगर कह रहे हैं कि हम 2020-40 का 47 का हम विकसित भारत का अगर हम प्लान करेंगे तो किस तरीके का चीज़ देखना होगा. और इस पर सबसे बड़ी टिप्पणी मुझे लगता है आज का क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो टैक्स ब्रेक दिया गया 2047 तक. मैं बहुत गौर से देख रहा था किसी देश का बजट में या टैक्स पॉलिसी में 22 साल का टैक्स पॉलिसी का सर्टेनिटी कोई नहीं देता है, कहीं पे नहीं हुआ है. ये एक दिस इज लाइक इंडिया सेइंग कि भाई हम जानते हैं इस पर हम चोटी पे हैं, हम शीर्ष पे रहेंगे. स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की आप जो बात कर रहे थे उसमें हम कह रहे हैं कि हम इस पे एकदम कायम रहेंगे. तो जैसे चाइना की कुछ कैपेसिटी है, अमेरिका की कुछ कैपेसिटी है, उसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में हम टॉप पे रहेंगे और हमारे पास ये चीज़ें हैं जैसे शनाय साहब आपको बताएंगे. तो और उसके लिए हम अभी से बोल दे रहे हैं कि जैसे क्योंकि इसी वजह से इसी तरह का स्ट्रेंथ ही आपको दिखाएगा. इसका पिछले कुछ दिनों का पहले का अगर घोषणा देखें तो आपको इसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन दोनों ने ही भारत में अगले 15 साल में इन्वेस्टमेंट्स के उन्होंने प्लान क्लियर कर दिए हैं. तो उन्होंने ऐसे ही प्लान नहीं बनाए हैं. उनको लग रहा था कि भारत की जो टैक्स सर्टेनिटी जो पॉलिसी सर्टेनिटी है वो दिखेगा. अब वो पॉलिसी सर्टेनिटी कैसे था वो आज वित्त मंत्री दिखा रहे थे. जी जैसे आप कह रहे थे SRI फंड जो है जी वो एक फंड ऑफ फंड्स है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि 2000 करोड़ क्या फंड है, लेकिन आज की डेट में इसका जो लीवरेज रेशियो होता है 1:4. और ये सेकेंड ईयर रनिंग है इस फंड का. पिछले साल तक जो गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ इस फंड में डाले थे उसमें से डिस्पर्सल हुआ था करीब 15,000 करोड़ की फंडिंग हुई है. और इसमें अगर आप देखें तो इस बजट में एक माइक्रो फाइनेंस का एक फंड निकाला है जिसमें ये एक तो ये लार्ज जो SME ग्रोथ फंड भी आया है. दूसरा जो माइक्रो एंटरप्राइज फंड SRI फंड टॉप अप इज स्पेशली इंसेंटिवाइजिंग द micro enterprises, the smaller segments of MSEs that are looking to transit to the smaller medium category. और ये MSEs को खाली बताना था एक वायबिलिटी है उनकी, इनोवेशन है, वो फोकस ऑन आत्मनिर्भरता, तो सेल्फ रिलायंस वो जो इसलिए वो जो फंड है, और लिस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि आप फंड ले सकते हैं जब आपकी लिस्टिंग पोटेंशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट इक्विटी देती है और वो जब एग्जिट करती है तो प्रॉफिट पे एग्जिट करती है. Absolutely, there is a lot of talk about Atmanirbharta, and rightly so, given the geopolitical tensions that we are seeing, the roadblocks, the supply chain blockages and all. China, we are seeing what they are doing. Now, talking of India's semiconductor mission 2.0, now which was launched. Now, how does this stack up in the face of challenges we face externally, Dr. Paul? If may I ask you? I may request my distinguished colleague to come on this. No, first of all, it's risky to talk in front of Dr. Paul. I mean, like he always has far more than he lets out in terms of his understanding of issues. But before I go into that, there was more than semiconductor. There's other issue that, do you think? I was keen on asking Dr. Paul that the health sector's exposure this time, was it the largest ever, would you say, in recent years? This time the amount of or the sort of things that had all been subsumed in the health envelope. I think in terms of various areas that in the health sector and related healthcare sector that have been touched this time is in a way unprecedented for a long time. And I would like to make a mention of another initiative which must be spoken about, and that relates to strengthening the emergency and trauma care services at the district level. Such a necessity. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana looks after secondary and tertiary care inpatient. Ayushman Arogya Mandir program is comprehensive primary health care. What is missing in between the two? How do I reach when an emergency occurs? In a way,
if I use that paradigm. And we have been strengthening our ambulance services, we have been strengthening to some extent emergency trauma, but not in an optimum or decisive way. So I think if you hear the speech carefully, this is something which is aspirational, because to strengthen services, clinical services for things that do occur unpredictably. They occur on the roadside, they occur in the home, there is an appendicitis at home, there is a stroke, there is a heart attack, and so on and so forth. How do you build a world-class emergency trauma system? So you're seeing a very major decision and allocation in regard to that. District hospitals will be strengthened, there'll be triaging protocols, there'll be also making sure that there is no third delay, that when you reach the hospital, quickly the things happen. So this is a new push which was very much needed, and it will directly impact in a positive sense the care of people. One other very gentle and very noble provision is the creation of creches in the for the tribal population. That will be community run, tribal population located, geography located creches. I very warmly welcome that initiative. So there are good things, and as you are correctly saying, there is a lot to be talked about in the space of health care, health technologies, care itself, human resources, and so on and so forth. We're very delighted today. So we thank you so much, Dr. Paul, for having joined us and shared so much of light and so much of knowledge with our listeners. Thank you so very much. We look forward to have you again on our show sometime. Thank you very much. If I may bring you Shumoy in this discussion, and let's jump to some other aspect of the budget presentation today. We talk about the MSMEs, which is which the Finance Minister called the champions, as the growth champions of Indian economy. Now, equity support dedicated 10,000 crores SME growth fund, that is the top on top of the Self-Reliant India fund, which was announced in 2021 with 2,000 crore rupees, and then the liquidity support through TREDS, TREDS, and professional support. Now, how do you see this MSME sector kind of filling up the gap, or rather kind of bolstering the Indian economy? We're talking of MSMEs here. Yeah, certainly. You know what? So let's put it this way. Budget announcements typically had two parts. The one was looked at, which is the part A, which was supposed to be for the general sectors, and the other part B, which was the taxation thing. And normally the idea is the taxation is for you and me. The part A is for the general people. I mean, like, aspirational things which don't really go much or go anywhere. What has happened over the last few years is that mold has been broken, and a lot of policy actions which are clearly marked and measured policy actions have started to dominate the party. Now, a big part of that is the MSME. The MSME was always looked at as just a sort of a very noble paragraph in the budget, but left it at that. The picture started changing from COVID. When the reconstruction from COVID created a need to bring the MSMEs into, sort of rebuild the capacity of the MSMEs. And so interventions like Credit Guarantee Fund and others came into the MSME. This time, what has happened is that process has actually shown the capacity, the ability of the MSMEs to sort of, catch the imagination of the MSMEs. Now, the second part that's happening is that the MSMEs have shown two things. First of all, they've shown the ability to grow. Mr. Shana was just talking about the fact about the MSMEs getting listed. A very interesting thing that happens, markets change. Markets actually catch some things very fast. The IPO market has become the most interesting thing, that where small companies are catching the attention of the investors.
Right. And these are the companies which wouldn't normally be there. People used to go in for the multi-baggers. Yes. So that change is showing that there's a lot that can be done from the small and medium enterprises in India. The second part is the SMEs are developing as the foundation of the manufacturing revolution that we are trying to create. So if you want a defense corridor to be built, if you want a railway corridor to be built, if you want a shipping corridor to be built, shipping industry, shipping building, you need a collection of MSMEs around to be developed, to provide the connectivity of millions of parts that need to be corrected. The semiconductor enterprises in India, the semiconductor revolution in India has started with the idea that there has to be a series of companies surrounding the mother company. All of these have brought the interest on the MSMEs into the policymakers' domain as a very strong deliverable, which is why the money that is this time being allocated for MSMEs has been what I should call non-trivial, in the sense that it is big sum, it is also something which is usable, and it is also something which is of practical use. A very important part in the MSME thing is, I think, the TREADS thing. The TREADS mechanism. What is the TREADS mechanism? Basically, MSME's biggest problem is that when their working capital gets blocked, and when the working capital, and the reason why the working capital gets blocked is they produce something, then they sell it to the companies, they don't get the money back. It takes time, and the company runs into a shortage of cash. The TREADS mechanism allows them to trade those receivables on the platforms in the market, so that their working capital shortage is taken care of. So finance ministers this time said that the CPSEs, the Central Public Sector Enterprises, will have to compulsorily come on the TREADS platform, which is the trade discounting platform for the MSMEs, and make the payments in 45 days. And she said that we hope the other companies will come in. Together, it creates a very major, what you might call liquidity lubricant for the sectors, which is something that we've been talking for a long time. The factoring market, which is part of it is the TREADS. And this is a very, very important, these are very important sets of developments for the small scale sector. So I think there is, as I said, a very significant work that's been happening on the small scale. Yeah. Just to add very quickly, so for your listeners, I think the CGTMSE, which is the Credit Guarantee Scheme for MSMEs, is now actually going to guarantee the invoices raised by MSMEs on TREADS. So that means that the TREADS receivables can now be turned into asset-backed securities. And what is interesting is that all government e-marketplace purchases will be linked to the TREADS to share real-time data on government purchases, allowing MSMEs to get cheaper and faster financing. Absolutely. Union Budget 2026-27. बजट उपरांत विशेष चर्चा में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और मेरे साथ मेरे को एंकर हैं निशित कुमार, और बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष रूप से आमंत्रित आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी और दिलीप चनॉय स्टूडियो में उपस्थित हैं। दिलीप जी, आपसे प्रश्न मैं करना चाहूँगी, जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात हुई है, एक हाई लेवल कमेटी बैंकिंग पर बनाई जा रही है विकसित भारत के लिए, इसके पीछे आपको क्या प्रमुख उद्देश्य लगता है? कितना इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर का सुदृढ़ होना इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए? तो सोनू जी, जब हम बैठे हुए थे उद्योगपति के बीच में और हम बजट को लाइव देख रहे थे, तो एक जगह जहाँ पे तालियां बजी जब वित्त मंत्री ने ये घोषित किया था कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए एक तरीके से जो कमिटी बनाई जाएगी उसको लेकर के, और उसमें इंडस्ट्री के लिए जो है ये जो चेंजेस होंगे और विकसित भारत के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो वित्त मंत्री ने बैंकिंग का भी जिक्र किया था और एनबीएफसी का भी जिक्र किया था। तो ये जो ट्रेडिशनली जो जब ये सरकार 2014 में आई थी तो हमें एक ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें इस टाइम तो इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा था हमारे पास एक डबल
बैलेंस शीट की एक एडवांटेज है जी। तो फिर भी जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रिकवरी से एफिशिएंसी और स्केल पे जा रही है, जो पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इसमें ये जो कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करेगा जो बैंकिंग जो सेक्टर है उसको अलाइन करेगा जो नेक्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्योंकि देखिए अगर आप नए जो आईटी की बात हो रही है 1980 और उस ज़माने में जब आईटी उभर के आया था तो हमारे बैंकिंग सिस्टम उस सेक्टर को लैंड करने के उनको पता ही नहीं था क्या था। अगर आप जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो आगे आ रहे हैं जैसे एआई है वगैरह, उनके लिए लेंडिंग के क्या नॉर्म्स होने चाहिए, उनको कैसे करने चाहिए, और जो हमारे गवर्नमेंट के जो एनबीएफसी अब हम देख रहे हैं ऑल्टरनेट एनर्जी आ गया है, तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, उसको कैसे स्केल करें और उसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे लें, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रहे हैं, कैसे ये होंगे, और वो बैंकिंग और इंसॉल्वेंसी कोड को भी देखेगा। तो ये ज़्यादातर में इसका एक ये उद्देश्य है, और आगे जाके जब ये घोषित होगी शायद कुछ होगी। जो अदर कमेटी जो अनाउंस की थी जो एआई वगैरह पे, उसके तो एनेक्चर ए में टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए थे, इसके लिए उन्होंने कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं दिए, हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। Since we are talking about the banking sector, Shubhma, if I may bring you in, banking, as Mr. Chinoy is also mentioning, in 2016-17, if we may look back at that period, the NPAs, the gross NPAs, and the net NPAs as well. Now, when we look at 10 years down the line, 2026, the sheets, the balance sheets have been cleaned to a larger extent. The banking sector has been robust, and the banking has been giving, the credit growth has also been quite phenomenal. Now, to talk of the banking sector reforms, the committee which the finance minister was talking about to look into the reforms of the banking sector, what do you think? What's the hunch that you have that these committee would be looking into all? Well, I mean, you're right. The banking sector changes, they started with the promulgation of the Insolvency and Bankruptcy Code in 2017, and used the help of that, banks gradually reduced the huge burden of NPAs on their balance sheet, and it is something which has really helped the Indian economy. But the banks themselves do realize that after the mergers that has happened, that they now have the balance sheet, but they need to be a bit bigger, and to do that they need to get into areas which had not been earmarked for them. One of them was the mergers and acquisitions, financing mergers and acquisitions of companies. Indian banks, frankly speaking, hadn't done this for ages or at any time. Now, to get into that sort of an activity, which means basically blurring the distinction between traditional banking and investment banking, it would require a bit of, what I would say is that it doesn't just mean that you write in laws, but you also make lots of structural changes in the banks. Differentiate between big banks, the intermediate banks, medium banks, small medium banks, and then there's the issue about whether which of these should be government run, which of these should not be government run. So there are lots on the plate which need to be thought through. The Indian economy is becoming rapidly big, and the growth rate that we have had of the Indian economy in the past few years is nothing compared to the growth rate of the economy that's going to happen now. So between now and 2030, if you're talking of the fact that Indian economy will be at $8 trillion economy, like that's double the size of today's economy. Now, with that sort of an economy, the banks would be a different set of entities altogether. I mean, they'll be indistinguishable from. I mean, they'll be absolutely be there'll be ones which you cannot surmise of today. So to get that sort of structures into them, plus the fact that there's a fintech revolution happening, which is actually changing also the relationship of the people with the banking sector, all of these require thinking through. It requires thinking even at the level of RBI, that what will be the Reserve Bank of India's role. So plenty of stuff that needs to be done. As Mr. Shanna was pointing out, that even writing the terms of reference of this committee is going to be quite something, because the terms of reference will actually tell you what is the roadmap that is going to be there of the banking sector. So the very fact that she has said is, I think, a very major thing. And along with that, the fact that the banks will also be getting into the corporate bond market, which she has also said that there's going to be major changes, which she has promised, and that's something that we had not done for ages.
reform in the corporate bond market. So yes. और अब चलते हैं हम लखनऊ, जहां से इकोनॉमिक एनालिस्ट एपी तिवारी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। बताएं कि आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है इस बजट पर जो आज आया है, किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था को गति देगा, नई ऊर्जा देगा? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बजट आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ते हुए विकास की गति को बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ रोजगार बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाकर उसको विकसित करके एक निर्यात बढ़ने की भी स्थिति रहेगी। मेरा मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश विशेष रूप में दुनिया के अन्य देशों के साथ और ब्लॉक के साथ स्वतंत्र व्यापार के समझौते किए गए हैं, उनका परिणाम ये होगा कि भारत का निर्यात बढ़ेगा, लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि निर्यात की गुणवत्ता बेहतर हो और साथ ही साथ निर्यात अधिक कॉम्पिटिटिव हो, अर्थात उत्पादन की लागत घटे। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा तो जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और जब उत्पादन की लागत घटेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका असर ये भी देखने को मिलेगा कि निर्यात बढ़ेगा। बावजूद इसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार की जो जियो पॉलिटिक्स है, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो एक टैरिफ को लेकर जो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसको डील करने के लिए भी इस बजट में जो प्रावधान है वो घरेलू अर्थव्यवस्था को ताकत देने पर है। और ये घरेलू अर्थव्यवस्था को ताकत देने की जो प्रक्रिया है वो कह सकते हैं कि जो हमारी सामर्थ्य है घरेलू उसको बढ़ाते हुए है, चाहे वो जनशक्ति है या अन्य कह सकते हैं जो भौगोलिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। कुल मिलाकर जैसे जलमार्ग का विस्तार और कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर है, ओडीओपी का सेक्टर है, इसको आगे बढ़ाया गया है। ये वो क्षेत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं एक और परंपरागत क्षेत्र भी है और दूसरे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इसको आधुनिकीकृत जो किया जा रहा है उससे कह सकते हैं विकास या कह सकते हैं ग्रोथ के बढ़ने, साथ ही साथ रोजगार के बढ़ने और निर्यात के बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी तरह इस बजट में सबसे खास बात यह है कि बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी गई है। लोक लुभावन घोषणाएं नहीं है इस बजट में, लेकिन राजकोषीय संतुलन को साधने की दिशा में राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात को नियंत्रित किया गया है, 4.3% पर रखा गया है। साथ ही साथ डेट जीडीपी रेशियो को भी 55.6% पर रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जब ऋण नियंत्रित रहेगा, राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहेगा, तो उसका परिणाम ये होगा कि ब्याज का भुगतान कम होगा और अधिक वित्तीय संसाधन विकास के लिए उपलब्ध होंगे। तो कुल मिलाकर ये बार बार इस बात को देखा जाना चाहिए कि चाहे खेती का क्षेत्र हो, अगर खेती के क्षेत्र को ले लें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए खेती और गैर खेती की क्रियाओं को एकीकृत करने की कोशिश की गई है। जहां तक खेती का सवाल है उसमें एआई का प्रयोग, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने की बात है, और साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि खेती और गैर खेती क्रियाओं को गाँव में ताकत देने, कृषि का विविधीकरण करने, पशुपालन है, मछली पालन है, जैसे नए तालाब खोदे जाने की व्यवस्था है, तो इससे जल संरक्षण को भी कहेंगे एक बल मिलेगा। साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात इस बजट में है कि डीकार्बनाइजेशन की भी शुरुआत कर दी गई है। यानी जो चुनौतियां कह सकते हैं पर्यावरण को लेकर हैं, जलवायु परिवर्तन को भी लेकर हैं, उनको डील करने की बात है।
सेमीकंडक्टर अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर, और यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सेमीकंडक्टर के साथ ही साथ एस्ट्रोफिजिक्स को प्रमोट करने की बात की गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक और स्वास्थ्य को, चिकित्सा को फोकस में लाया गया है। जहाँ तक एक तरह से कह सकते हैं कि जो फार्मा शक्ति के तौर पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। एक और कह सकते हैं जो दवाइयां हैं वो खासतौर पे जो कैंसर से संबंधित 17 दवाइयां ऐसी हैं जो सस्ती हो जाएंगी, विदेशों में पढ़ाई सस्ती होगी। तो ये भी तो कह सकते हैं कि इस बजट से पढ़ाई और दवाई भी सस्ती होगी। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर इस बजट से विकास को गति मिलेगी, और जब विकास को गति मिलेगी तो एक जो विकसित भारत का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक पाने का, उसको रूप देने में, उसको मूर्त रूप देने में ये बजट काफी हद तक कह सकते हैं सहायक सिद्ध होगा। प्रोफेसर तिवारी, इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आज के आम बजट पर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने हमें इतनी खूबसूरती से की हाइलाइट्स के बारे में बताया। दिलीप जी, अभी शुभम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, उसके बारे में हम ज़रा बताएं कि इस बजट में किस तरह का बल दिया गया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे, और ये कितना एक सशक्त स्रोत है वित्त का पूरे उद्योग जगत के लिए। तो सुनील जी, अगर आप देखें तो पिछले कई बजट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जिक्र नहीं हुआ था जी। और अगर कॉर्पोरेट्स के लिए फंडिंग देखें तो एक वो बैंक फाइनेंस कर सकते हैं, दूसरा शेयर बाजार में अपने स्टॉक्स लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी शेयर बाजार में है, जिनकी बैंक्स का एक तरीके से लिमिट्स हो गए हैं, वो फंड्स कैसे रेज करें? तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जब कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं तो वो जब किसी को इशू करते हैं वो ट्रेडेबल नहीं है, वो मार्केट नहीं है किसी के अंदर, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, उसमें लोग इन्वेस्ट करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, और उसका जो पूरा मार्केट साइज है वो एक तरीके से स्टैग्नेंट हुआ है। तो इसमें अगर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलप किया जाए और इसको कैसे लिंक किया जाए, वो एक वित्त मंत्री ने इसको घोषित किया गया, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ये काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री की एक मांग थी ये, और बाहर भी डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए एक फाइनेंस करने का एक बड़ा साधन है। और पिछले कई महीनों में और कम सुन रहे हैं, और वित्त मंत्री ने भी कहा है, इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा है कि हमें कैपिटल की ज़रूरत है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो एक कैपिटल रेज करने का कंपनीज के लिए एक साधन है, और देश में काफ़ी एक तरीके से एक फ़ायदा होगा। हम पहले जो बैंकिंग रिफॉर्म्स की कर रही थी, वहाँ पे कोई थोड़े से रेशियोज़ हैं, अगर इस रेशियो का थोड़ा सा हम चेंज करें, ये मैं आरबीआई के रेशियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे बैंकिंग के सेक्टर के जो कानून में रेशियोज़ हैं, अगर हम रेशियोज़ को स्लाइटली चेंज करें तो जो स्टैट्यूटरी रेशियोज हैं, नहीं स्टैट्यूटरी रेशियो में सीआरआर से ऐसा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनको कैश रिजर्व्स होल्ड करना पड़ता है अलग से उन्हें, तो उसको अगर चेंज करें, पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अब प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक काउंसिल में है, उन्होंने इसके ऊपर एक पेपर लिखा था कि कैसे हम 20 या 30 हजार करोड़ हम बैंकों से मार्केट में ले जा सकते हैं। तो एक पूरा एक कैपिटल देने का एक ये प्रयास है। Now from corporate bonds, let me draw, gentlemen, your attention to the sovereign gold bonds here. Now we have been seeing what the gold is doing for the past year or so. Now with the series 2016-17 or 17-18 now about to mature, now the sovereign gold bonds, the Indian economy is kind of sitting on quite of a stockpile of if you say the cash to be dispensed to the people who had bought those bonds. Now how do you see these SGBs kind of playing out over the years? That is one. And the second part is, was the Indian government prudent enough not to look into the future to just issue these SGBs without taking into account the movement of the precious metal in the future? So one of the thing about a responsible government, and that's one of the primary things that has happened over the several years, which we are very pleased about, is the India government has stopped playing around with tax rates and
promises that it has given. As an economy becomes more mature, a promise that has been issued by the sovereign must be fulfilled, Yes. even if it hurts the sovereign Absolutely. for a particular year or not. Now, what has happened is you're right that the sovereign gold bonds, when it was issued, they seemed like a great idea. Over time, because of the movement of the gold market, they don't look a great idea. But what is happening now is that the government is saying that, look, I'm not going to change my tax structure. I'm not going to change my, I'm not going to create a defensible position. I'm telling you, this is something very significant, because there used to be one time when, when deposits in the small savings, when they would mature and come for redemption, the government would either put a tax on it, or the government would say, I'm impounding a certain percentage of it to be invested in somewhere else for your own good. Now, those are things which actually take away the faith of the investors. A major economy cannot, looking at the international market, when saying that we are, one of the first points that the finance minister made was that we are integrating ourselves with the global economy very strongly, cannot do that sort of steps. And that's why, even though those mature bonds will come along, so the simple investment, so the simple redemption of those at a primary level will not be getting into trouble. When you're getting into non-primary sort of bonds bought, so there are people who bought bonds as a issuance, and there are people who bought bonds as a tradable instrument. Now, those two treatments would be different, but that is a market-related thing. That is a market risk that you take. But a primary investor who's taken the bond when the government issued it, that person deserves to get their capital and interest back, and that is being protected. So there's that fundamental difference that is there, which is why also I'm taking on to the other part, that there was a lot of interest this time that savings instruments should be, in the banks, should be given a preferential tax treatment to be able to compete with equities. But again, it is a process that has been started for several years, that the government will not play around with instrumentality, with the taxation regime of savings instrument or any other financial instruments. It distorts the market. It makes it difficult for people to make long-term plans. It might give short-term gains, but it creates problems, which is what the problem was also for the LTCG this time, the long-term capital gains, that treatment has not been changed. And these, I think, are fundamental, what I should call axioms of faith. It creates short-term pressures, but it creates long-term certainty, and I think that is very important. Absolutely. And that has been maintained. So Nishad, they have not issued any new bonds. Yeah. I was about to ask that. In fact, Mr. Shenoy, they have eased the market. They've not issued any new bonds. Absolutely. And the redemption comes on October 26, which is like few months away. Yes. It just may be possible they might actually issue some very attractive interest rate or attractive scheme to get people to stay invested, because absolutely, that's a very interesting point that you make. In fact, that has been said Shenoy, that if they mature, then they get the full interest. Absolutely, we'll come to that. But I would think that given the fact that the government's tendency has been, and that I think is something that is actually earning credit for the Indian handling of the Indian public finances, that the government is not in the business of creating new instruments to distort the market, because if that instrument gets created, then that will actually give benefit to some investors, true enough, but it will distort the market, because there's a liquidity that's coming into the market, there's a liquidity that's going out from some people. The banks or the mutual funds and others, they should be able to plan for it accordingly. Absolutely. It should not, the government should not come in with its capacity to create distortions, and I'm very, very confident from what the finance minister said today and all those things, that's not what the government plans to do. That's a very interesting point that you make, Shobhma. We will come to that. There is lots of discussions on that point, but before that, we are joined in by Professor Ashwini Nanda, economic analyst from Jammu. Professor Nanda, welcome to the show. Thank you. Professor Nanda, if we can have an all-round view of the budget today presented by the Honorable Finance Minister. How do you see the budget? Yes, this budget is quite interesting, and it seems to be very forward-looking, and it balances the domestic situation in the country and what is happening outside the country.
And it is poised for a long-term growth for the country, 2047, keeping in mind Viksit Bharat. Because if you look at the focus on infrastructure, the focus on knowledge industry, the focus on the kind of indirect employment, and particularly IT sector and AI, these are some of the cornerstone of this budget, which is putting lot of stress on a futuristic trend for the country. This semiconductor also, the kind of intervention they are going to do in semiconductor, then ease of doing business, then rare earth minerals. So these things cannot appeal in the short term. In the long term, they are going to create an ecosystem which is really going to take the country forward. Because we are now embroiled in a situation, we know how the world has become really volatile, how terms of trade are really collapsing, we have politics coming into economics, and lot of things are happening. So on the one hand, we are trying to make India self-reliant, and see if something, we are planning for some kind of exigency. And in future, if something happens and all, and we are ready. And at the same time, there is also lots of focus on social sector, which is coming from inclusive growth. And for example, I will take the focus on the aging population. We have about we don't have census, but we are supposed to believe that 10 to 12% of the total population of the country will be aged, and the focus on geriatric care, then the focus on mental health, then also the focus on Ayurvedic health facilities for the people. So these are going to be big game changers in the coming time. And they will certainly anchor India to a better ecosystem and providing not only employment, not only a good style of living and all, but they will also put India in a forward situation in all coming years. Absolutely. I think I would see also the focus on manufacturing industry, particularly SME. Given the kind of employment SMEs generate, the kind of role SMEs have in reduction of regional disparity, and the way SMEs contribute to our GDP, that's a big thing. This SMEs will absolutely they will lift countries upward. So these are very interesting interventions which have been pointed by absolutely. Professor Nanda, thank you so very much for your inputs. And स्टूडियो में शुभम आपसे हम जानना चाहेंगे and दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे Mr. Chinoy would be leaving us now. And thank you so very much, Mr. Chinoy, for having joined us and shared your views on a very important topic today. Thank you so very much. Thank you so much. शुभमय, जो कंटिन्यूड पुश दिया जा रहा है एआई मिशन को, और जो एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है भारत विस्तार, एक मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए एडवाइजरी टूल, इसकी अनाउंसमेंट हुई है और खास बल दिया गया है गवर्नेंस के साथ साथ एग्रीकल्चर में एआई एडॉप्शन का। इसको आप कितना एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच मानते हैं? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में इस वक्त जिन बिंदुओं पे बात जिक्र होता है, जैसे देखिए बजट अभी आया, बजट पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, सारा दिन बहुत सारे चैनल्स वगैरह में, ऑल इंडिया आकाशवाणी में कितनी सारी चीज़ों पर चर्चा की गई, लेकिन कुछ बिंदु हमारे देश में विदेश में जिन पर नज़र डाला जाता है वो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। तो एआई पे हम कितना गौर से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कितना गौर से इस पर अमल दे रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहे हैं, इन पर क्या क्या कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है एआई का। इसलिए वित्त मंत्री जी ने जैसे एआई गवर्नेंस और एआई एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने के लिए जिन कार्यक्रम के अनाउंसमेंट्स किए,
वो सिर्फ कार्यक्रम में नहीं रहते हैं, वो रहता है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, तो सेमीकंडक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तरह की चीज़ों पर कितना सरकार की जिसे कहते हैं रीच है, पहुंच है, और कितना इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। और इस पर आप सिर्फ देखेंगे कि सिर्फ AI इन एग्रीकल्चर एक जिसे कहते हैं एक एस्पिरेशन नहीं, बल्कि एक ठोस कार्यक्रम है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में अभी थोड़ी देर पहले हम सिटीज़ की बात कर रहे थे, तो इमर्जिंग सिटीज़ में मुझे लगता है एक चीज़ पर बहुत चीज़ आएगा, वो है पोल्यूशन लेवल चीज़ों के ऊपर कि सरकार किस तरह के स्टेप्स लेते हैं, किस तरह के कदम लेते हैं। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें एक कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि इंडिया AI समिट आने वाला है अभी फरवरी में, और उसमें विस्तृत चीज़ें वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से हमें सुनने को मिलेंगे, अश्विनी वैष्णव जी से सुनने को मिलेंगे। लेकिन कितने उन चीज़ों का कहाँ पे पूरा जिसे कहते हैं ओवरऑल स्टोरी में कितना बैठता है, कितना सटीक बैठता है, कितना सुदृढ़ बैठता है, ये इस पर सबकी निगाह रहेगी। सो इसलिए ये जस्ट जिसे कहते हैं अनाउंसमेंट फॉर द सेक ऑफ अनाउंसमेंट्स नहीं, इनका जिसे कहते हैं काफ़ी स्ट्रेच्ड तो इससे कार्यक्रम रहता है। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, किसानों की समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ में जो हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हम एक नया आयाम देना चाहते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, वीट, चावल, पैडी, इनका जो प्रोडक्टिविटी का कैपेसिटी वो लिमिट में पहुंच चुका है। अभी हम नए प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लाइव स्टॉक की, फिशरीज की, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो हम फार्मर्स की इनकम की डबलिंग वगैरह की जो बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से, और इनको करने के लिए AI को काम में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही हमारे जैसे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकॉनमी के लिए इस तरह के इंटरवेंशंस बहुत यूज़फुल आता है। एप्लीकेशंस, किस तरह के AI एप्लीकेशंस इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने तरीके से उसको कितने सुचारू तरीके से लाया जा सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब केंद्र सरकार के आज के जो अनाउंसमेंट्स थे वित्त मंत्री के सारे वो हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। Absolutely, cutting edge technologies like AI applications and all has to be incorporated in any economy if it has to march forward. We'll be continuing with the discussion at 8:10 p.m. and we'll be back then. And before that, we are leaving you with the Hindi and English bulletins, which will be broadcast in a short while from now. Do stay tuned in. Union Budget 2026-27. केंद्रीय बजट 2026-27। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2026-27 में विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट कहा। उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टरों में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। इसके अलावा देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।
आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजित करने पर जोर दिया गया है। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट देश की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि ये विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार करेगा। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि इस साल रेलवे को 2,78,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कुल बजट में से 1,20,000 करोड़ रुपए यात्री और रेलवे सुरक्षा पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बजट में देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय बजट 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाता है और अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि बजट आर्थिक विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच एक मजबूत संतुलन स्थापित करता है, साथ ही भारत की भावी अर्थव्यवस्था की नींव भी रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला में संत गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पद्मश्री संत निरंजन दास और उनके शिष्यों ने उनका अभिनंदन किया। डेरा पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर का अनावरण किया। उन्होंने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया। डेरा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिम्बाब्वे के बुलावायो में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 253 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 35वें ओवर में 4 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने 49 ओवर और 5 गेंद में 252 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for the year 2026-27 in Lok Sabha today. This was the 9th consecutive budget presented by her. She called the budget Yuva Shakti driven. Ms. Sitharaman said this year's budget is inspired by 3 kartavya of accelerating economic growth, to build capacity of the people and to provide resources, amenities and opportunities to every family, community, region and sector. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. The minister announced that Biopharma Shakti, with an outlay of 10,000 crore rupees, will be launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub in the next 5 years. For the labor-intensive textile sector, the finance minister announced launch of Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. The finance minister announced 7 high-speed rail corridors.
In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. The government will set up high-powered education to employment and enterprise standing committee to focus on the services sector as a core driver of Viksit Bharat. Basic customs duty has been exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. Later, in a post-budget press conference in Delhi, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the budget is the first one in the second quarter of the century, leading towards the vision for India to become a developed nation by 2047. The Finance Minister said in this year's budget, health has been given equal importance, with special emphasis on mental health. Prime Minister Narendra Modi has hailed the Union budget, describing it as historic. In a video message, the Prime Minister said this budget is the foundation for country's journey towards a Viksit Bharat. He called it a Yuva Shakti budget, reflecting the aspirations of 140 crore Indians. He said this year's budget will give India's reform express new energy and new momentum. यह युवा शक्ति बजट है, उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Defence Minister Rajnath Singh, Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav, Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda, Transport Minister Nitin Gadkari, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal have hailed the Union budget. The Chief Ministers of Puducherry, Uttar Pradesh, Gujarat have welcomed the Union budget. Prime Minister Narendra Modi today attended the 649th birth anniversary of Sant Guru Ravidas Ji at Dera Sachkhand Balan in Jalandhar. Before reaching at the Dera, the Prime Minister unveiled the new name of the airport as Sri Guru Ravidas Maharaj Ji Airport, Adampur. He also inaugurated the terminal building of Halwara Airport in Ludhiana virtually. This airport will establish a new gateway for the state, especially for Ludhiana industry. Young Indian shuttler Devika Sehag clinched her maiden BWF Super 300 crown after Malaysia's Go Rinwei retired midway through the women's singles final of the Thailand Masters at Bangkok today. The 20-year-old from Haryana was leading 21-8, 6-3 when world number 68 Go, a two-time former world junior champion, pulled out due to a hamstring injury, handing the Indian the biggest title of her career. And that is the end of this news bulletin. केंद्रीय बजट 2026-27। बजट उपरांत विशेष चर्चा में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट सदन के पटल पर रखा और इसकी बारीकियों पर हम इस विशेष कार्यक्रम में लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं सोनू सूद और मेरे साथ हैं मेरे को एंकर निशित कुमार। और बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक खासतौर से स्टूडियो में आमंत्रित हैं, सिद्धार्थ सिंह और दुर्गानंद झा। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। दुर्गानंद जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। आप हमें बताएं कि ये जो बजट आया है 2026-27, इसका प्रमुख आपको पहलू क्या लगता है? जो भी इसके हाइलाइट्स हैं, की हाइलाइट्स अगर हम टॉप 3 कहें तो आप किन को आंकेंगे? देखिए, ये बजट विकसित भारत के लिए बनाया गया बजट लगता है। भारत को कैसे 2047 तक एक विकसित देश बनाना है, उसके लिए बहुत पहले से बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग मेनी स्टेप्स which is focused on making India a developed country by 2047.
Right. I think focus on education, focus on semiconductor, focus on improving infrastructure more, and focus on many other issues, for example on SME. I think these are very important steps which will make India a developed country by 2047. सो बहुत ही समावेशी बजट है जिसमें विभिन्न जो हमारी इकोनॉमी है, सोसाइटी है, उसके वर्गों को ध्यान में रखा गया है। सिद्धार्थ जी, अगर आपके पास आए तो आप हमें स्पेसिफिकली बताएं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो बल दिया गया है वो उसके क्या प्रमुख पहलू हैं ऐसे समय पे जब पूरे विश्व में उथल पुथल है और हम अपने यहाँ जो ग्रोथ है उसको विशेष बढ़ावा देने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए सोनू, जो आपने सवाल पूछा, मैं ये कहूँगा कि इस बजट में अगर आप मोटे रूप से देखें तो एक बहुत सधा हुआ बजट फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो आपने सवाल पूछा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे और इस साल हमको ये पता है कि नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, तो ये एक इस तरह की एक्सपेक्टेशन भी थी कि उसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत सरल कानून हम लेके आए हैं, नया इनकम टैक्स कोड जो लेके आए, तो इसी वजह से आपने देखा होगा कई जो जिस तरह की कंप्लाइंसेज हैं जो एक टैक्स पेयर को करना होता है, अपना टैक्स जब वो भरता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी कंप्लाइंसेज होती हैं, तो उनमें कई तरह की जो है रिलीफ जिसको कहा जाए वो दी गई है टैक्स पेयर को। जो आपकी टैक्स फाइलिंग की डेट है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग कर दिया गया, उसको थोड़ा बढ़ाया भी गया है। अगर आप अपना टैक्स फाइलिंग को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बढ़ा दिया गया। अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया, आप और ज़्यादा डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक छोटी सी पेनल्टी के साथ जो है उसको आप कर सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते थे, जो अगर आप किसी तरह की पेनल्टी जो आपने नहीं दी तो उन सबको भी डीक्रिमिनलाइज करने का जो एक बहुत बड़ी घोषणा की। और देखिए इससे होता क्या है, दुनिया को आज हम हिंदुस्तान में निवेश के लिए हम आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम अपने कानूनों को ड्रैकोनियन रखेंगे तो ऑब्वियसली लोगों में एक भय रहता है, डर रहता है। और आप लगातार देखेंगे जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 से, हम देखेंगे तो बहुत सारे व्यापक तौर पे ऐसे कानूनों को जो है उन्होंने वापस लिया है या सिरे से टोटली ख़त्म कर दिया है। तो शायद इनकम टैक्स को लेके भी इसी तरह का एक हम संदेश देना चाहते हैं। साथ साथ एक जो कस्टम्स के साथ में, क्योंकि आप देखेंगे कि इनकम टैक्स में पिछले साल रिलीफ दी गई, नया कोड आया, साथ साथ जीएसटी के जो दरों में भी हमने रैशनलाइजेशन लाया, बहुत बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म भी। तो अब जो बचा था और जिसके ऊपर वित्त मंत्री जी ने पहले एक हम लोगों को इंडिकेशन भी दी थी, हिंट भी दी थी कि कस्टम्स एक साइड है जो कि अभी भी अनअटेंडेड है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया गया है। लोगों में कैसे ट्रस्ट डेवलप किया जाए इंपोर्टर के साथ। अगर आप ये सरकार मानती है कि आप रेगुलर इंपोर्टर हैं, आप बड़े पैमाने पे इंपोर्टर हैं, बहुत लंबे समय से हैं, तो आपके साथ आपको एक ट्रस्ट की जो है हम संज्ञा देंगे या उस कैटेगरी में डालेंगे कि यू आर अ ट्रस्टेड इंपोर्टर। एंड उसके साथ साथ आप अपना जो टैक्स है उसको भी पार्ट्स में भी दे सकते हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे बहुत सारे बड़े इस देश में मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान उपयोग होगा उस पे BCD जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दी गई है। कैपिटल गुड्स बड़े जो जिनका प्रयोग होता है बड़े कामों में, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको भी जो है उन पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ ज़ीरो की है। EV से रिलेटेड जो बैटरीज़ हैं उन पे ज़ीरो की है। और अगर हम आम आदमी की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन पे जो है कस्टम ड्यूटी ज़ीरो की है। तो इस तरह के मैं कहूँगा बहुत सारे, और ना केवल इस इंडस्ट्री या फोकस्ड, इसके अलावा अगर आप देखेंगे चाहे हेल्थ, बड़े पैमाने पे कैंसर ड्रग्स पे जो है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाई गई। साथ साथ रेयर जो हम मानते हैं कुछ रेयर डिजीज़ेज़ हैं या उनसे जुड़े हुए जो सप्लीमेंट्स हैं उन पे भी कस्टम ड्यूटी को ज़ीरो किया है सरकार ने। सो काफ़ी संवेदनशील पूरा रुख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। Siddharth, if I may look at the
debt to GDP ratio. It's 55 point something now. A trickle down from the earlier year, for the earlier fiscal. Now with this fiscal glide thing, which is happening now. Earlier we used to talk in terms of fiscal deficit. Now this is the new term. Now when we juxtapose this figure with the more advanced economies, let's talk of United States. It's sitting at 130%, or the other economy, maybe Japan. Japan is also not doing that great. UK, another Germany, another. How do you see this kind of this consolidation and this kind of discipline, which has been kind of constricting or kind of constraining this slippage more and more with each passing year? Nishit, if I would say one thing which stand out about Prime Minister Narendra Modi's administration is from the day he took over, he has been completely focused on how to reduce the fiscal deficit of the country gradually, and government has, I would say, except COVID years, government has never slipped on its aim to bring down the fiscal deficit. Obviously the aim is the more you bring down your deficit, obviously you have more money to invest on resources with you, to invest on social sector, on health, on education, on infrastructure. So, and the fact that you mentioned that this year obviously we are moving away from the fiscal deficit target, obviously, but that target also would be there. Government has announced is committed that they will meet this year's target, which was 4.4, and next year they have set a 4.3. Yeah, and the finance minister was asked also that you have set a very modest target. So she said, I have kept a target which is realistic. I could achievable. हाँ, achievable. जो आपने बात बोली बिल्कुल ठीक. तो और जो हम अब डेट टू जीडीपी जो की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और इसका जो हमारा लक्ष्य है, we aim to bring it down to about 50 से नीचे, about 50% plus minus 1 by 2031. Yes. So, and for this year we have kept 55.6. Yes. A shade under 56, which was in the earlier fiscal. 56.1 था last year, और अभी 55.6. We want to get it. We are trying to bring it down by half a percentage point. And we also need to, one thing which we need to keep in mind, that this is despite a difficult year. Absolutely. We have been, and almost one full last year has been difficult for us since President Trump has taken over, the tariffs and the geopolitical situation. So see the commitment of the government that it is not moving away from the path of fiscal consolidation despite being in such difficult times, precarious situation, and uncertain times, I would say. In fact, आप uncertain times की बात कर रहे हैं, तो I would also like to ask you कि capital expenditure जो government का है वो लगातार बढ़ रहा है. 2 लाख करोड़ था FY15 में, financial year 2014-15 में, और बढ़ते बढ़ते 11.2 लाख करोड़ हुआ पिछले वर्ष, और अब जो टारगेट रखा गया है आने वाले वित्त वर्ष के लिए 12.2 लाख करोड़, और सेंटर की जो नेट टैक्स रिसीट्स हैं वो भी 2 लाख करोड़ बढ़ गई हैं पिछले मौजूदा वित्त वर्ष के लिए, रादर नेक्स्ट वित्त वर्ष में जो अनुमान दिया गया है. सो क्या लगता है आपको, ये कितना बड़ा एक सूचक है? कैसे ये संभव हो पा रहा है इतने डिफिकल्ट टाइम्स में? क्या आपको लगता है कि इससे जो विदेशी निवेशक हैं उनका भरोसा जगेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में? नहीं, देखिए सोनू, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ये हमने जो खासकर जब कोविड आया, जब हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर भी पीछे हट गया इन्वेस्टमेंट करने से, तो सरकार ने स्टेप इन किया, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, और इसलिए सरकार ने कहा कि चलिए, जब इस समय, जब मौजूदा समय में जब प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है, हम आएंगे, हम डिमांड को क्रिएट करेंगे, और तब से लगातार आप देखेंगे इस साल जो आपने बोला, आने वाले साल के लिए 12 लाख करोड़ के ऊपर तकरीबन का कैपिटल एक्सपेंडिचर का एम है, और सरकार ये लगातार ना केवल इसको मीट कर रही है बल्कि बहुत बढ़िया से, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिख रहा होगा आपको एयरपोर्ट्स की क्वालिटी, आपके पोर्ट्स की क्वालिटी, तो या आपके रोड्स की, और इस साल जो बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात आपने कही, जहाँ ये पैसा लगेगा, अब हम जल मार्गों की बात कर रहे हैं. 20 नए जल मार्ग बनाने की बात हो रही है. अभी तक हम हाईवेज की बात करते थे, तो अब हम जल मार्ग को भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसकी जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं एक जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, और
जब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो ऑब्वियसली बाहर दुनिया में एक भरोसा जगता है और एक डिमांड क्रिएट होती है, तो वो और इसी का आप एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारण है कि आज फिर भी हम हिंदुस्तान जो है दुनिया के सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अगले साल के लिए भी अनुमान है कि हम ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहेंगे। और टैक्स रिसीट्स का भी जो हम पॉइंट मैंने रेज किया था कि बढ़ी है टैक्स रिसीट्स, डिस्पाइट जो आपने कहा कि इनकम टैक्स में भी कटौती हुई पिछले वर्ष, जीएसटी रेट्स में भी काफ़ी कटौती हुई, उसके बावजूद जो टैक्स रिसीट्स बढ़ रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में? नहीं, देखिए, जो अभी हमने बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो आप आसान करते जा रहे हैं करदाता के लिए, जो आप चीज़ों को आसान कर रहे हैं, प्लस आपने टैक्सेस के रेट घटाए हैं, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप ईमानदार टैक्स पेयर हैं तो आप आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जो आपने जीएसटी रैशनलाइजेशन किया है, जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड पुश है, और वही कारण है जो आप बात कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़, क्योंकि हमारी जीडीपी का आकार लगातार बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आपको जो टैक्स बॉयंसी भी दिखाई दे रही है। ये तब है जब आपने जो कहा कि हमने इनकम टैक्स की लिमिट बनाई, उसके साथ साथ जीएसटी के दरों में भी जो है बहुत बड़ी कटौती की, लेकिन शायद डिमांड पुश आ रहा है जीएसटी से, साथ साथ जो इनकम टैक्स में हमने रिलीफ भी दिया है, और कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा जत रहा है, लोगों में भरोसा है, लोग आगे आ रहे हैं। और शायद ज़्यादा लोग उनका इनकम लेवल्स भी उठ रहे हैं, ज़्यादा लोग उस ब्रैकेट में आ रहे हैं। वो भी है, इनकम भी बढ़ रही है, ऑब्वियसली वो तो दिखता है ना, जब आपकी जीडीपी बढ़ रही है लगातार, अब 7%, और अब जिस साल इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रोथ रेट जो अभी तक हम बोलते थे 6.5% है, वो तकरीबन अब 7% हो गया है। Right. And taking your word forward, Siddharth, about the capex now, Mr. Jha, we have been seeing, the public kind of capex, getting more and more enlarged over the years, 12 point something this year. Now, where do you see the roadblock when it comes to the private capex push? First of all, I would like to say that we should not expect too much from a budget. What is budget? Budget is an annual financial statement of the government. It is said that budget is to to rob the Peter to pay the Paul. Okay. So I think what is the government policy that matters more than how much budgetary allocation is made in the budget. Policy of the government is very sound. It wants to make India a developed country by 2047. So far as what you are telling about the capex, private capex, yes, I think government is taking a bold step. I think we should appreciate government's effort. All right, Siddharth, if Nishit, I would add to that, in terms of private capex, as Mr. Jha said, I think government is trying to bestow confidence in the private sector, and if you look even post imposition of tariff, we have tried to handhold our exporters, in whether it is for most of the labor intensive sectors. We have announced special schemes, plus you also see we have announced a special scheme outside of this, is again outside of the budget, for critical minerals. We had announced a big scheme was announced for shipbuilding. So government is trying to somehow energize spending push, and it on its own, government is taking initiatives by launching these huge infrastructure projects, and especially in new areas like shipbuilding is something where India is now coming up. We are entering this sector. So I think, and all this ultimately what happens is, obviously private sector, everything they look according to their own balance sheets. So, and I think once this confidence returns, and the confidence, if you look at the private capex, the confidence is slowly returning. So with the continued push on ease of doing business, reforms, and the manufacturing push even in this budget, so I think this will steadily bring them back, and I don't think there is much to worry. Obviously whatever capital expenditure government does also gets supplemented
by the private sector. सिद्धार्थ, जैसा आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को लगातार सरकार की तरफ से पुश मिल रहा है, स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं कि नए नए एरियाज़ में, जैसे आपने शिप बिल्डिंग की बात की, उस सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया सरकार ने, एंड सिमिलरली स्पेस, डिफेंस, इन सब में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। लेकिन जो पुराने सेक्टर्स हैं उन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। अगर आज के अनाउंसमेंट्स हम देखें, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक 5-pronged प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हुई। कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर मॉडर्नाइजिंग द इंडस्ट्री और अपग्रेड करने के लिए जो टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम है, क्योंकि अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, एडवांस टेक्सटाइल्स हैं। ये कितना आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, लेदर, उन पर जिस तरह का बल दिया जा रहा है? मैं इसको और थोड़ा सा आपकी बात को आगे ले जाता हूँ। टेक्सटाइल को दिया, और टेक्सटाइल में भी क्या होता है कि बहुत सारा जो इंडस्ट्री है वो MSME सेक्टर में है। तो आप ध्यान देंगे कि केवल इट इज़ नॉट टेक्सटाइल्स, अगर आप देखेंगे तो एक MSME के लिए भी 10,000 करोड़ का अलग से फंड अनाउंस किया है वित्त मंत्री जी ने। उसके साथ साथ जो एक एग्जिस्टिंग फंड है उसमें भी 2,000 करोड़ रुपए जोड़े हैं। और जो टेक्सटाइल्स है, चूँकि सबसे ज़्यादा जब टैरिफ लगा तो ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट था, तो और साथ साथ एक पुश ये भी डिमांड आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि मॉडर्नाइज, क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी नई आ रही है, नई मशीनें, नए स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए चूँकि हम उस सेक्टर में अग्रणी बने रहें, चूँकि टेक्सटाइल्स में जो हमारी एक्सपोर्ट्स में डोमिनेंस है उसको हम कैसे कायम रखें, तो शायद ये स्टेप उसी डायरेक्शन में है। और इसको साथ साथ MSME से भी जोड़ा है, तो MSME टेक्सटाइल्स, तो दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्ट करेंगे और इसको बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा सोनू कि जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके 2-3 और जो बड़े अहम अनाउंसमेंट्स हुए, जो कि एक रेयर अर्थ की कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, या इसके साथ साथ जो सेमीकंडक्टर मिशन, दूसरा सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो रही है, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लेके भी आज वित्त मंत्री जी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। जी, Right, and we'll continue the discussion, and in the meanwhile we are joined in by Gauri Pimpre, economic analyst from Mumbai. Welcome, Gauri. Yes, thank you, sir. Gauri, if your all-round view on the budget presentation today, how do you find it? It's good. It's good as industry-wise. Hello. Yeah, we can hear you. Okay. As sector-wise हम देखेंगे तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, MSME सेक्टर है, और टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा किया है। बायो फार्मा हब का अनाउंसमेंट हो गया है, और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए दिए गए हैं। कैपेक्स है वो बढ़ गया है। कैपेक्स का बढ़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स उसका अल्टीमेट इट विल बेनिफिट टू द इकोनॉमी। So all over budget is good. And one more thing, that for rare earth minerals, that in economic survey it is mentioned that now the geopolitical move will depend on AI and rare earth minerals movements. Accordingly, the decision has taken for the production and extraction and manufacturing of that rare earth minerals. 5 states have given special recognition for that, and that is the good thing in this budget. Overall, the budget is very good for the growth of Indian economy. Right. Thank you so very much, Gauri, for having joined us and shared your views on it. And I will come to Siddharth. One very critical area of concern is the outflow of funds by FIIs and FPIs. Now with this STT coming in today, of course it's for the derivatives only, 150% for the futures and 50% for the options. Now we saw how the market reacted today. It was a complete bloodbath today. Do you feel that there could have been a few stimulus for the markets to kind of stand on its own legs? See, Nishit, I would say the basic underlying theme for increasing the STT on future and options, and this was very elaborately explained by the finance minister in her post-budget conference, because what the government is worried about the huge, very high volumes in future and options, and the revenue secretary almost termed it as highly speculative. And people, and when I'm talking of people, I'm not talking of big investors, I'm talking of the Aam Aadmi, the retail investors, losing huge amounts of money. So the finance minister said, it is my duty to increase this STT and to give an indication, to give a hint, and to give a warning
to the retail investors that they need to be careful, because this is a segment where you may lose your money, and we want and basically what I think the push is also that government wants investors to come in the cash segment. You do cash trading, and as well as the question to you, since you asked about FPI is going away, I think I see it in a very different way. There has been criticism that government's foreign direct investment has been down, but do we know today that the amount of our own industrialists going in overseas and investing money, setting up factories, setting up industry overseas outside of India? And the other thing that we allow FPIs to take money is also a sign of a very healthy economy. That if you coming and investing in our markets, in our economy, if you can also take back your profits at your free will. So there is nothing negative. Yes, STT is obviously an indication to that, and I think markets will come around. So जी, कई बार नीजर्क रिएक्शन भी होता है, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अनंत मिश्रा, जो है सीनियर जर्नलिस्ट, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं. अनंत जी, बताएं कि जो केंद्रीय बजट 2026-27 आया है, जिसे युवा शक्ति ड्रिवन बजट बताया गया है, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऊर्जा का स्रोत होगा? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जितने भी अभी तक बजट आते हैं उसके बारे में लोगों की धारणा रहती थी कि लोक लुभावन बजट देते थे, पॉपुलिस्ट बजट जिसको कहते हैं. ये मैं इतने सालों से पत्रकारिता में हूँ और ये देख रहा हूँ, इस बार जो सरकार ने बजट दिया है वो एक पॉपुलरिस्ट या लोक लुभावन वादों की जगह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से कदम उठाया है. आज देखिए कि हम एक तरफ जब तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ खड़े हुए हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ऐसे में सिर्फ छूट देना, करों में राहत देना, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता. देश को आगे बढ़ने के लिए अपना वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम करना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान देना पड़ेगा, जो रेल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो सरकार ने बात की है, जी, अभी शेयर बाजार को हो सकता है ये थोड़ा सा बजट अच्छा नहीं लगे, लोकप्रिय नहीं लगे, क्योंकि उनके अपने अलग हैं शेयर बाजार के. जी. पूरी तरह से जब देश को हम आगे ले जाने की बात करते हैं और जापान को पीछे छोड़कर, जी माफ कीजिएगा, आपकी जो कनेक्शन है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, सो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं आ रही है. सो हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने जो हमें बताया आज के बजट के बारे में. दुर्गानंद जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनको आप कैसे देखते हैं, खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, के उपयोग से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है. भारत विस्तार जो एक मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नॉर्मली हम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज से रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ कृषि क्षेत्र के लिए जो इस्तेमाल करने की बात की गई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ऐसा लग रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृषि सेक्टर में उपयोग करने से जो किसानों को जो है उसको उत्पाद का अच्छा फ़ायदा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा मिलेगा, और ये कृषि सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा. और जब तक हमारा कृषि सेक्टर अगर बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी. इससे जो थोड़ा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अर्बन और रूरल एरिया में हुआ है तो वो बैलेंस हो जाएगा. इसीलिए ये जो इसको कहिएगा जो हमारे इकोनॉमी को एक ट्रांसफॉर्म करने वाला ये स्टेप है. Siddharth, if we may talk about AI continuing, AI has been the hot flavor of the season. We saw what the discussions in Davos, which happened some time back as well. Now, with the government kind of announcing a tax holiday until 2047 for foreign companies, which are providing
cloud services. Now this focus on data centers. Now how significant is this? How do you see this? I think Nishit, because if you look at the kind of data centers they've been announced in India, being set up in several states. हाँ, ये कंडीशन है कि इंडिया में होना चाहिए. वो डेटा सेंटर जहाँ से आप क्लाउड सर्विस दे रहे हैं वो हिंदुस्तान में ही होना चाहिए. और हिंदुस्तान में आप देखेंगे डेटा सेंटर्स को लेके वी आर सीइंग सो मेनी अनाउंसमेंट. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट वाज रिसेंटली बाय गूगल सेटिंग अप इन आंध्र प्रदेश, एंड देयर हैव बीन नॉट ओनली वन. आई एम मेंशनिंग वन नेम. आई थिंक देयर हैव बीन सेवरल सच announcement, and it is data centers are going to be very key in terms of future technology, artificial intelligence, as you said, and as Sonu just mentioned about the AI based app for our Indian farmers. So I think it is because with that intent to attract big players, big multinationals into India, which are already in very advanced in terms of they have achieved advancement in terms of artificial intelligence. So I think that is the basic intent, that and we want them to come and do it in Make in India. Basically the idea is that you come to us, you manufacture here, you provide these services from India, from an Indian, from a data center established in India, and we would give you those kind of concessions. And to give an example of that, I would say, Nishit, Apple is one of the biggest success models that we have seen. When initially Apple showed its intent to come to India, they were asking for several tax concessions, but what they were not committing was establishing a factory in India. Center, yes. In India. So we said, you come and produce in India, you come and make in India, because that also, to add to what you were saying, tax concession also leads to, you would set up your data center. My own my own young youths, engineers would get employed here. So it generates economic activity, it gives employment to us, and it also establishes, and we are also I would say we are already established player in terms of information technology. So giving tax concession is also again is another incentive to tell them to come and बी इन इंडिया. और टैक्स कंसेशंस के साथ साथ जो जनरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करते रहना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एक और जो सेक्टर है टूरिज्म, जो बहुत ही लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और हमारे देश में उसका स्कोप भी बहुत है, बहुत खूबसूरत देश हमारा माना जाता है. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की अनाउंसमेंट की गई है उसे स्थापित करने की, और टूरिस्ट गाइड्स को 20,000 टूरिस्ट गाइड्स को अपस्किल करने की बात की गई है, और कुछ चुनिंदा जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको भी टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में डेवलप करने की बात की गई है. ये कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है? नहीं, बिकॉज आप देखेंगे अगर फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें, और जो आज हम देख भी रहे हैं, तो जिसकी हमको या इस समय में आज की डेट में तो आप देखेंगे तो टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स फॉर एनी कंट्री एंड फॉर अस ऑल्सो. And so I think that is basically the idea is to continue on that, and we want to set up, give focus on those sites. Obviously, I think some of them are Buddhist sites, and so the idea, and besides this also, I think there have been some specific announcement in terms of 2-3 I think hotspots, basically for tourism hotspots. I think in Himachal, Uttarakhand, Jammu Kashmir, and skilling obviously is required, because when the foreign tourists come to India, they should be able to interact, understand, and they should feel comfortable being in our tourist spots. मिस्टर झा, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज हुआ है ऑरेंज इकोनॉमी का, scale up करने के लिए. It's another area which has come up big in recent times. The government plans to set up AVGC, that is animation, visual effects, gaming and comics content creator labs in 15,000 schools and 500 colleges. Tell us more about it. How does it? देखिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो उसका जो हायर सेक्टर है उसमें हम बहुत आगे नहीं हैं. तो मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा लेबर इंटेंसिव फील्ड में हैं. तो गेमिंग या बाकी सब जो भी चीज़ है, अगर उसमें गवर्नमेंट अगर इंसेंटिव देने का जो अनाउंसमेंट की है, मुझे लगता है इससे जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा.
और जो हम दूसरे देश के जो है गेमिंग इस सब को जो यूज़ करते हैं तो उसको रिप्लेस मिलेगा, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे और हमारे लिए इनकम का ये हमारे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स ये हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है जो गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है ये काफ़ी सराहनीय है और इसको मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा भविष्य में परिणाम आएगा। और एक चीज़ और मैं कहूँगा जो जैसे आपने अभी टूरिस्ट सेक्टर क्या किया, टूरिज्म जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा सेक्टर सोर्स है और उसमें क्या है जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव वो सेक्टर है, तो अगर हमारा टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है उसको मतलब सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये फॉरेन एक्सचेंज जो सिद्धार्थ जी के हैं उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा। दुर्गानंद जी सीख बात कह रहे हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत है टूरिज्म का, इट एड्स ऑन टैक्सी, एक्सपोनेंशियल राइज, होटल्स, तो वो एक से एक जुड़ा हुआ है, गाइड्स हैं, तो वो उस तरह से। सिद्धार्थ जी, जैसा कि अभी कोई हमारे एक जो एनालिस्ट आए थे वो भी कह रहे थे कि बजट पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है कि बजट में एक किस तरह की, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज की थी वित्त मंत्री ने कि इंडिपेंडेंस डे 2025 के बाद से 350 रिफॉर्म्स अनाउंस हो चुके हैं, सो आपको इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन एंड लेबर कोड्स। सो आपको लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स का जो एक्सप्रेस है वो सिर्फ बजट वाले दिन ही नहीं चलता है, वो पूरे जो वर्तमान सरकार है उसके अंडर ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस लगातार चल रही है? आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली सोनू, और जिसको कहते हैं ना, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए है, जब से वो प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है 24/7 365 डेज, और ये तो आज का बजट है और ये एक जिसको हम कह सकते हैं आईना आने वाले साल के लिए जो अनाउंस हो जाता है, जो आपको दिखेगा, जो आप फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन जो इस सरकार की खूबी रही है, जो बात आपने कही, जहाँ तक चाहे वो लेबर कोड की बात हो, चाहे वो जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात हो, ये सब बड़े बड़े फैसले जो है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लेके जो पीएलआई स्कीम्स हैं, तो ये सब हमने देखा है। यहाँ तक कि जब निर्मला सीतारमन जी ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया था कई साल पीछे, तो वो भी बजट के बाहर ही वो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था। तो इस सरकार की ये खासियत है कि जो करना है जब करना है उसको हम करेंगे, हम समय का इंतज़ार नहीं करेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए जो है केवल बजट पे फोकस नहीं, इसीलिए उन्होंने बोला रिफॉर्म एक्सप्रेस की जो बात कही, क्योंकि आप देखेंगे लगातार जो डिक्रिमिनलाइजेशन है, शिप बिल्डिंग को लेके जो हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा जो रेयर अर्थ को लेके जो एक पीएलआई स्कीम लेके आई सरकार पीछे, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के लिए आई, तो ये सब कदम बजट के बाहर थे। बजट तो है ही है, बजट एक आप फोकस्ड अप्रोच होती है कई डिपार्टमेंट्स के लिए, कई सेक्टर्स के लिए, सभी सेक्टर्स के लिए आई वुड से। तो लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल बखूबी आपने बोली कि ये जो इस गवर्नमेंट की जो कदम उठाने की जो वो और जो रिफॉर्म्स करने की वो रुकती नहीं है, वो सालों साल चलती रहती है, दिनों दिन। So the reforms express has many more stations. This was of course a big station where it took a halt, but we'll see. और स्पीड भी लगातार बढ़ रही है एक्सप्रेस की। Absolutely, it's a work in progress every day, and it's continuing. So thank you, and मिस्टर झा, आप भी 30 सेकंड है हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे बजट के लिए? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, जो बहुत दिन के बाद ये ऐसा बजट आया है जिसमें लोक लुभावना कुछ भी नहीं है और देश को विकसित बनाने का ये बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस डिस्कशन के लिए। और सवा 9 बजे हम फिर आपके साथ होंगे। Absolutely. We are slipping into a quick break. We'll be listening to the Samachar Sandhya, and the news at 9 will be back at 9:50 p.m. with more and more of discussions. Stay tuned. Union Budget 2026-27. इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, जिसका सफर होगा दिल्ली, तमिलनाडु, असम, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक। बच्चों तक पहुंचेंगे, उनकी कहानियों से जुड़ेंगे पीएम मोदी। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया,
जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, जल्द आ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2026। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। कहा, बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित। रक्षा क्षेत्र को अब तक के सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में भारत को वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव। सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा। वर्तमान वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% और नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 8% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, ये बजट देश में सुधारों को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग संगठनों ने बजट की सराहना की। कहा, बजट नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के जालंधर में संत गुरु रविदास जी के 649वीं जयंती में शामिल हुए। कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता पंजाब के उद्योगों के लिए नए बाजार खोलेगा। भारत की देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब जीता और कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में जीत के साथ अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट 2026-27 में विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। वित्त मंत्री ने मेघा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। इस नई पहल से बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. वित्त मंत्री ने भारत को एक वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया। इससे जैविक घरेलू उत्पादन के लिए परिवेश तैयार होगा। इस रणनीति के तहत फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान और 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन शामिल है।
देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का भी प्रस्ताव है। प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2% है और 2025-26 के बजटीय अनुमानों की तुलना में 15.19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह बजट सुरक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है और राष्ट्र के हित में है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 8% रहने की संभावना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि केंद्रीय बजट में 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान की तुलना में नॉमिनल जीडीपी के 10% तक बढ़ने का अनुमान है। मंत्रालय के अनुसार सेवा क्षेत्र 9.1% वृद्धि के साथ देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख चालक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजित करने पर जोर दिया गया है। इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल सेंटर को भी विकसित करने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार उस दिशा में सरकार का ये बजट उस पहल को दिखा रहा है। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बजट देश की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, जिसका सफर होगा दिल्ली, तमिलनाडु, असम, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक। बच्चों तक पहुंचेंगे, उनकी कहानियों से जुड़ेंगे पीएम मोदी। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया, जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, जल्द आ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2026। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग संगठनों ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये बजट नागरिकों की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार करेगा। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि इस साल रेलवे को 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने बजट में देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री वैष्णव ने कहा कि कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर होगी और इससे 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा।
7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की घोषणा की है। चेन्नई बेंगलुरु, इससे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में यात्रा 1 घंटे 13 मिनट की हो जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। फिर मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट। तो एक तरीके से मुंबई, पुणे, हैदराबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को विकसित भारत 2047 की नींव बताया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार कपड़ा, सेमीकंडक्टर, कंटेनर निर्माण और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करेगी। सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को बल मिला है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। देश में नई फैक्ट्रियां लगे, नया निवेश हो, देश की क्षमता बढ़े, बढ़ते हुए उपभोक्ताओं की डिमांड को पूरा करने के लिए, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो तो उसका आउटलेट डबल कर दिया गया, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके। टेक्सटाइल्स हो तो नए टेक्सटाइल पार्क भी आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक है। विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। विभिन्न उद्योग संगठनों ने बजट की सराहना की है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला में संत गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पद्मश्री संत निरंजन दास और उनके शिष्यों ने उनका अभिनंदन किया। डेरा पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर का अनावरण किया। उन्होंने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत की युवा खिलाड़ी देविका सिहाग ने आज थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के 20 से हट जाने के बाद देविका ने पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ 22 वर्षीय कार्लोस अल्कराज का करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे के बुलावायो में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। कहा, बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित। रक्षा क्षेत्र को अब तक के सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में भारत को वैश्विक जैव औषध विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव, सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा, खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत करता है। कहा, यह बजट देश में सुधारों को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के जालंधर में संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती में शामिल हुए। भारत की देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता और कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में जीत के साथ अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2026-27 in Lok Sabha. Says budget inspired by three kartavyas of accelerating economic growth, build capacity of people and to provide resources, amenities and opportunities to all. Defence sector gets all-time high allocation of 7.85 lakh crore rupees. Budget proposes to develop India as global biopharma manufacturing hub. Semiconductor Mission 2.0 announced dedicated rare earth corridors to be set up to promote mining, processing, research and manufacturing. Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. Several measures for development of East and the Northeast India announced. Country's real GDP estimated to grow by 7.4% in current fiscal with nominal GDP growth at 8%. Prime Minister Narendra Modi says Union Budget presents ambitious roadmap to boost Make in India and Atmanirbhar Bharat. Stresses new energy and momentum to be injected into country's reform express. Union ministers, chief ministers of many states and industry bodies hail the budget, saying it will fulfill the sentiments and expectations of citizens. Prime Minister Modi attends 649th birth anniversary of Sant Guru Ravidas Ji in Jalandhar, Punjab. Says India-EU free trade agreement will open new markets for Punjab's industries. In badminton, India's Devika Sehwag clinches women's singles title of Thailand Masters. And in Australian Open tennis, Carlos Alcaraz wins his maiden men's singles title. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for this year 2026-27 in the Lok Sabha today. This was the 9th consecutive budget presented by her. She called her budget Yuva Shakti driven. Ms. Sitharaman said this year's budget is inspired by three kartavyas of accelerating economic growth, to build capacity of the people and to provide resources, amenities and opportunities to every family, community, region and sector. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. The minister announced that Biopharma Shakti, with an outlay of 10,000 crore rupees, will be launched to develop India as a global biopharma manufacturing hub in the next 5 years. For the labour-intensive textile sector, the finance minister announced launch of Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. Ms. Sitharaman proposed to increase outlay of electronics components manufacturing scheme to 40,000 crore rupees. She also announced that 3 dedicated chemical parks will be established to promote mining, processing, research and manufacturing. The finance minister announced 7 high-speed rail corridors. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Basic customs duty has been exempted on 17 drugs and medicines for cancer patients. 3 new All India Institutes of Ayurveda will be established to prepare more skilled health personnel. On the importance of artificial intelligence in governance, the finance minister said adoption of technology is for the benefit of people including farmers, women, youth and Divyangjan to access newer opportunities. The finance minister announced India Semiconductor Mission 2.0 will produce equipment and materials, design full-stack Indian IP and fortify supply chains. The finance minister highlighted the government's vision for increasing farmers' income, empowering Divyangjangs and the vulnerable to access mental health and trauma care, and focus on the Purvodaya states and the northeast region to accelerate development and employment opportunities.
The finance minister said fiscal deficit in financial year 2026-27 is estimated to be 4.3% of the GDP compared to 4.4% in current fiscal. As per the first advance estimates published by the National Statistics Office, India's real GDP is estimated to grow by 7.4% in FY 2025-26 with nominal GDP growth at 8%. Later, the copy of the Union Budget was tabled in the Rajya Sabha by the Finance Minister. Defence services have received the all-time high allocation among the ministries in this year's Union Budget. Ministry of Defence said the allocation amounting to 7.85 lakh crore rupees stands at 2% of the estimated GDP for the next financial year and shows a significant increase of over 15% over the budgetary estimates of 2025-26. It noted that the total defence budget is 14.67% of the central government expenditure. Defence Minister Rajnath Singh said the budget strengthens the security development self-reliance balance and it is in the best interest of the nation. He said the budget will fulfill the sentiments and expectations of citizens. इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए In this budget, a provision of 7.85 lakh crore rupees has been made for the defence sector. Following the historic success of Operation Sindoor, this budget strengthens the resolve to further reinforce the country's defence system. This allocation is more than 15% higher than last year. This year, a provision of 2.19 lakh crore rupees has been made for the overall capital expenditure of our armed forces. Overall, this budget strengthens the balance within security, development and self-reliance. आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है. In her post-budget press conference in Delhi, the finance minister said the budget is the first one in the second quarter of the century, leading towards the vision for India to become a developed nation by 2047. The finance minister said in this year's budget, health was being given equal importance with special emphasis on mental health. Primarily, we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, we will ensure that technology is brought in to benefit the common man. And above all, with all this inclusive development, Sabka Saath, Sabka Vikas, and that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations for bringing better health facilities and also making sure we are able to provide dignified opportunities for Divyangjan. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Budget 2026-27 presents an ambitious roadmap to give new momentum to the Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives. In a video message, Mr. Modi said this year's budget will give India's reform express new energy and new momentum. He said the budget turns today's aspirations into reality and strengthens the foundation of India's bright future. आज का बजट ऐतिहासिक है. इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है. ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है. ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है. ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है. Union Ministers Amit Shah, Dharmendra Pradhan, Ashwini Vaishnav, Shivraj Singh Chauhan, Jagat Prakash Nadda, Nitin Gadkari, Piyush Goyal, Jewel Oram, Jyotiraditya Scindia, Annapurna Devi, Sarbanand Sonowal have hailed the Union Budget. Mr. Pradhan said the budget will give boost to education and employment creation. Home Minister Amit Shah extended heartfelt congratulations on behalf of every Indian to Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman for the Union Budget. In a series of social media posts, Mr. Shah said the Union Budget reflects the vision of building a developed India by 2047 and outlines the roadmap for the next 25 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal termed the budget for Future Ready Bharat. I would term this budget as a budget for future ready Bharat, right from manufacturing to services to export to women, self-help groups, education and skilling, fishermen, animal husbandry and promoting new age technologies. I think this is truly a budget which strengthens our resolve for Viksit Bharat 2047.
Addressing a press conference in New Delhi, Union Minister for Railways, Electronics and IT and Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, said government has proposed to provide support to the Indian Institute of Creative Technologies of Mumbai in setting up AVGC Content Creator Labs. क्रिएटर्स इकोनॉमी ऑरेंज इकोनॉमी में Under the creator economy and the orange economy, creator labs will be established in 15,000 high schools and 500 colleges. This will create 20 lakh jobs. If we look at the employment impact of METI, employment in IT, GCCs and electronics manufacturing together is already close to 1 crore. With today's announcement, this employment will increase significantly and new employment opportunities will also be created in the orange economy. ऑरेंज इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. Chief Ministers of Puducherry, Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, Odisha have welcomed the union budget. Industry bodies, PhD Chamber of Commerce and Industry, CII, FICCI have hailed the union budget. PhD CCI Chairman Dr. Ranjit Mehta said the budget will increase competitiveness among the small and medium enterprises. He said the fund will increase the competitiveness among the MSMEs. CII President Rajiv Memani said the union budget fulfills the demands of industries, including those of the MSMEs. He also lauded the special focus on the services sector. FICCI President Anant Goenka said this budget has been focused on growth, inclusivity and Yuva Shakti. Mr. Goenka added that the budget reflects continuity and stability. Overall, the budget is one of stability and continuity in a world where we are seeing a lot of uncertainty and change. India has emerged as one space where macroeconomic comfort, macroeconomic stability has been very high. Inflation is under control. This budget only builds on the past messages, on the past focus areas of the government. It gives a very high focus on a macro view as well as the micro few sectors that the government wants to focus. The Congress has criticized the Union Budget 2026-27. Reacting on this year's budget on social media, Congress President Mallikarjun Kharge said the budget does not provide a single solution to India's many economic, social and political challenges. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee dismissed the budget, alleging that the state has been deliberately sidelined. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan alleged that the central government has failed to consider the state's long-standing demands. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, plunged nearly 2% in a volatile special trading session for the Union Budget today. Barring IT, all other sectoral indices ended lower. Markets started the day on a positive note but quickly dipped into negative territory. The Sensex tanked 1,547 points to close at 80,723, while the Nifty slid 495 points to settle at 24,825. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at @AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi today attended the 649th birth anniversary of Sant Guru Ravidas Ji at Dera Sachkhand Bala in Jalandhar. Before reaching at the Dera, the Prime Minister unveiled the new name of the airport as Sri Guru Ravidas Maharaj Ji Airport, Adampur, and virtually inaugurated the terminal building at Halwara Airport in Ludhiana. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the budget presented today in the Parliament, industries and MSMEs in Punjab and the country have been taken care of. He said the India-EU free trade deal will open up market to Punjab-based hosiery, sports and other industries. Young Indian shuttler Devika Siha clinched her maiden BWF Super 300 crown after Malaysia's Goh Jin Wei retired midway through the women's singles final of the Thailand Masters at Bangkok today. In tennis, Carlos Alcaraz has won the men's singles Australian Open title, completing the career Grand Slam and thwarting Novak Djokovic's bid for a record 25th major title. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2026-27 in Lok Sabha. Defence sector gets all-time high allocation of 7.85 lakh crore rupees. Budget proposes to develop India as global biopharma and manufacturing hub. Prime Minister Narendra Modi says Union Budget presents ambitious roadmap to boost Make in India and Atmanirbhar Bharat. And that's all in the news at 9. Good night.
केंद्रीय बजट 2026-27। Welcome back. A warm welcome to this special discussion today that we are having on the Union Budget, which was presented by the Honorable Finance Minister in the Parliament today. And with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood, and we are joined in by a very elite panel today, consisting of Shri Ravi Agrawal, Chairperson of the Central Board of Direct Taxes, CBDT, Shri Vivek Chaturvedi, Chairperson of the Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, and of course, as usual, Mr. A.K. Bhattacharya, Senior Economic Journalist. Welcome, gentlemen, to the show. Thank you. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत आपसे करते हैं मिस्टर अग्रवाल। आप सीबीडीटी के चेयरपर्सन हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर सबसे अहम जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आज क्या हुई हैं, अगर आप हमें बता सकें, क्योंकि ये हमारे सभी को अफेक्ट करती हैं। आज जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं बजट में, उसकी चर्चा करने से पहले मैं ये विदित कराना चाहूँगा कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये स्टेप 2 है। ओके। इससे पहले स्टेप 1 हमने, अगर आपको याद हो तो, जब इनकम टैक्स एक्ट 61 को हमने सरलीकरण किया था और इनकम टैक्स बिल 2025 जब हम लाए थे, इसको कि पार्लियामेंट में पेश किया था पिछले साल हमने फरवरी में, और उसके बाद पब्लिक डिस्कशन हुआ उसके ऊपर और सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंटेरियंस की थी। उनके सुझाव के बाद अगस्त 2025 में वो एक्ट बना, इनकम टैक्स एक्ट 2025। जब हम उस प्रोसेस में हमने क्या किया, उस प्रोसेस में हमने जो भाषा थी उसको हमने सरल किया और जो उसके प्रावधान थे वो इस तरह से उसमें प्रस्तुत किए जिससे कि हमारे करदाताओं को आसानी से उसके प्रावधान समझ में आए। जी। सो इसीलिए वो स्टेप 1 था जहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज। अब ये है स्टेप 2 कि आफ्टर हैविंग सिंप्लीफाइड द लैंग्वेज, अब हम उसके प्रोसेसेस को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। Processes in terms of decriminalization, processes in terms of giving facility to the taxpayer to update the returns at different stages, rationalizing of the tax rates, TDS rates, और बाकी और प्रावधान है जिसके बारे की मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं कहूँगा कि इस बजट में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स को जितने प्रावधान थे उनका किया गया। तो 61 के एक्ट में जो प्रोसिक्यूशन प्रावधान थे उसमें जो डिफॉल्ट्स थी उसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का हो सकता था, उसको अब ख़त्म किया गया है और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट को एकदम ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो प्रावधान है वो है 0 year to 2 years या 0 year to 6 months depending on the gravity. 2 years is the maximum. 2 years is the maximum. Repeat अगर ऑफेंस होगा तो वहाँ पर 3 साल हो सकता है, बट अदरवाइज 0 to 2 years is the maximum. 2 years। और उसके अलावा पहले वाले एक्ट में प्रावधान था एंड फाइन, अब है और फाइन। तो आप फाइन पे कर दें तो आपको नहीं इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। जी। वो फाइन है या फीस है? फाइन है। सो अब फाइन पे करे कोर्ट जो है, अगर उसमें देखेगी डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, तो इस हिसाब से इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों को हमने ऑप्टिमाइज किया है। सो दैट इज मेजर डीक्रिमिनलाइजेशन का एफर्ट है जो कि सरकार के जन विश्वास के कॉन्सेप्ट से भी जेल करता है। जी बिल्कुल। दूसरा जो इसमें मेजर शिफ्ट किया गया है वो है मिनिमाइजिंग ऑफ लिटिगेशन के कंटेक्स्ट में, कि पहले जो था जहाँ पर लिटिगेशन जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी उसमें लिटिगेशन ज़्यादा होता था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब क्या किया गया है कि टैक्स पेयर को अलग अलग स्टेजेस ऑफ असेसमेंट में भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आए और अगर वो उसका टैक्स पे करके उस इशू को क्लोज करना चाहता है तो कर सकता है।
जैसे कि नोटिस देने के बाद भी अगर टैक्स पेयर आना चाहे और कहे कि अच्छा ठीक है मैं टैक्स पे करके और ख़त्म करता हूँ, तो एडिशनल थोड़ा सा टैक्स पे करके और उसके बाद उसको वहीं पर ही वी कैन क्लोज द इशू। इवन अगर ऑर्डर पास हो गया है, ऑर्डर पास करने के बाद भी अगर टैक्स पेयर आता है कि अच्छा ठीक है मैं जो हूँ उसको क्लोज करना चाहता हूँ, सो आप एडिशनल टैक्स दीजिए और आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, एडिशनल टैक्स पे करके एंड यू कैन क्लोज द इशू। सो उससे विश्वास हम लोगों का ये है कि आगे लिटिगेशन में काफ़ी कुछ उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ जो मेन किया गया है उसमें यह है कि अभी तक क्या था कि पहले असेसमेंट होता था और उसके बाद पेनल्टी लगती थी, तो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस था। तो पहले असेसमेंट हुआ, उसके बाद वो अपील में जाता था, अपील में जो है कुछ साल लगते थे, फिर जब अपील में अगर उसका कंफर्म हो गया तो फिर पेनल्टी शुरू होती थी, तो सीक्वेंशियल प्रोसेस था। अब दोनों को मर्ज कर दिया है, तो असेसमेंट और पेनल्टी एक साथ लगा के और उसके बाद जैसे जैसे वो अपील की स्टेज पे जाएगा तो दोनों एक साथ जाएंगे रादर देन की सीक्वेंशियल प्रोसेस है। उससे भी एक तो टाइम कम होगा लगेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और क्योंकि कंसर्न एक ये भी था, हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर असेसमेंट और पेनल्टी दोनों कर देंगे तो डिमांड ज़्यादा निकल आएगी, तो क्या किया जाए, तो उसको भी हम लोगों ने रैशनलाइज किया है कि भाई 10% ही अगर आप पे कर देंगे दैट इट्स ऑल्सो ओके, या कुछ केसेस में हम इसको डेफर कर देंगे और उसको इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, तो इस तरह के प्रावधान भी उसमें किए गए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर। चौथी चीज़ जो किया है इसमें मैट के कंपनी से कंटेक्स में मैट के प्रोविजंस थे, जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, वो जो प्रोविजंस थे उसको भी रैशनलाइज किया गया है। और उसमें जो पुराना चला रहा था, पुराने क्रेडिट्स जहाँ पर अवेलेबल हैं उसको ऑनर किया है, और गोइंग फॉरवर्ड आगे के जो है क्रेडिट्स प्रावधान है कि आगे उसको अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ जो किया है वो बाईबैक ऑफ शेयर्स के कंटेक्स्ट में किया है, वो भी एक स्ट्रक्चरल इशू था। तो बाईबैक के शेयर्स में उसमें हम 2024 में ही आया था ये प्रावधान, जिसमें था कि अगर बाईबैक ऑफ शेयर होगा तो उसको डिविडेंड इनकम मान लिया जाएगा, और बाकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उसको कैपिटल लॉस के तहत वो आगे कैरी फॉरवर्ड। बायबैक बाय द प्रमोटर्स, बायबैक कोई भी अगर बायबैक चाहे प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स, okay. तो उस केस में जो है दैट वाज बेसिकली अ कॉम्प्लिकेटेड वन एंड इट वाज आल्सो इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द टैक्स पेयर्स, तो उसको भी रैशनलाइज किया गया है। राइट। तो इस तरह से कई प्रोसेसेस हैं जिनको रैशनलाइज किया गया है। द मंशा ये है कि जब 1/4/2026 को इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो आए तो ईजी हो अंडरस्टैंड करने में, भाषा सरल हो, बेटर प्रेजेंटेशन हो, और जो ये प्रावधान है वो रैशनलाइज्ड हो, जिससे कि कंप्लायंस बढ़ेगा, लोगों में कंफर्ट लेवल आएगा एंड उससे टैक्स रेवेन्यू भी आएगा। और एक भाई भी समाप्त होगा। आपसे एक सवाल मुझे क्लैरिफिकेशन के तौर से पूछना था कि जो बाईबैक में जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो हैं उनका जो टैक्स रेट है वो कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% में होगा मेरे ख्याल से, और जो कंपनी या प्रोमोटर होगी उसमें 22% होगा। उसका जो तारतम्य जो है ये क्या इसका कारण है, क्यों इसका रीज़न है? जी, तो बायबैक के कंटेक्स्ट में इसको बायबैक को ड्राइव कौन करता है? एक तो हुआ उसका कमर्शियल एस्पेक्ट की उसका जनरल रिजर्व्स हैं तो उसको कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड वो अपना बायबैक के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन इसकी कॉल लेता है इफेक्टिवली एक प्रमोटर। करेक्ट, राइट। सो प्रमोटर जो है इसमें ड्राइव करता है एक तरह से। तो दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो हुआ नॉन प्रमोटर, तो मैं अगर नॉन प्रमोटर हूँ और आप भी नॉन प्रमोटर हैं तो मैं हो सकता है एक्सरसाइज करूँ डिस्क्रिशन, दूसरा शेयर होल्डर ना करे डिस्क्रिशन एक्सरसाइज। तो जिसने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया उसने अपना शेयर भी वापस कंपनी को दिया, तो कैपिटल एसेट भी वापस चला गया, और उसको जो है कैपिटल गेन्स लगेगा डिपेंडिंग ऑन कि क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग है। सो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर को 12.5% अगर लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल है, करेक्ट, तो उसको 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो उस हिसाब से अभी वो डिविडेंड इनकम पे 30% टैक्स अगर देता था, तो यहाँ पर 12.5 हो गया, उसके लिए बेनिफिट है, उसके लिए बेनिफिट है। One also very important point which the finance minister mentioned today as regards to the tax was the motor accident compensation. Yes. Mr. Agrawal. Yes. Now the interest awarded by the MSCT earlier used to be taxed. Now it's exempted from IT. Now how significant it is, because mostly we have seen, in MSCT cases, it has been a deterrent kind of for people, to pursue or maybe, to go about it. How do you see this? In fact, you see that reflects, you see the sensitivity of the government also. Absolutely. Because बड़े unfortunate incident के बाद ही कुछ इस तरह के situations होंगी जिसमें कि ये
कंपनसेशन अवार्ड हो रहा है, किसी इंडिविजुअल को अवार्ड हो रहा है, तो and the tax sword be hanging, you know, and the on- tax sword is also hanging, Yes. और उसके बाद वो prolonged litigation के बाद या proceeding के बाद the person gets certain interest on that, और उसके ऊपर फिर हम टैक्स कर रहे हैं उसके, so that was That's a double whammy yeah, for, that's a you double know. whammy. Yes, So therefore we have just done away with that. Absolutely, Just done away with that. आपके पास आएंगे फिर मिस्टर चतुर्वेदी, आप चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। आपसे जानना चाहेंगे कि जो कस्टम्स ड्यूटी को लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं सेक्टर वाइज, थोड़ा उसके पीछे का जो रैशनल है वो बताइए। क्या ऑब्जेक्टिव है सरकार का इन कस्टम्स ड्यूटी चेंजेस के द्वारा, क्या गोल है? जी, तो जहाँ तक कस्टम्स ड्यूटी के रेट्स के चेंजेस, जिसमें कंसेशनल ड्यूटीज़ काफ़ी सेक्टर्स को दी गई हैं, उसके पीछे एक बहुत ही कैलिब्रेटेड और बड़ा नुआंस अप्रोच है। अप्रोच ये है कि हमारे कौन से क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। अब आप जैसे लीजिए एनर्जी सेक्टर है, तो उसमें हमने कहा कि कैपिटल गुड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन सेल्स विच गो इनटू द बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स, उसको हम एग्जेम्पशन देंगे। न्यूक्लियर एनर्जी में हमने कहा कि कंसेशन देंगे जहाँ पर गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, और पहले इसमें एक लिमिटेशन होता था कि 440 मेगावाट तक का ही हम पावर प्लांट उसके ऊपर देते थे। हमने वो डिस्टिंक्शन भी ख़त्म किया है सरकार ने। तो जो अप्रोच है बहुत स्पेसिफिक सेक्टर वाइज है। आप अगर लेदर इंडस्ट्री में देखें तो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है लेदर का, उसमें जूतों में एक आइटम होता है शू अपर। शू अपर अपने आप में निर्यात होता है, जूते का पार्ट तो होता है लेकिन शू अपर अपने आप में निर्यात होता है। तो शू अपर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उस पर कंसेशन दिया गया है। बहुत इतनी बारीकी से इस बार सरकार ने उसको ध्यान दिया है कि कौन सा हमारा सेक्टर है जिसको हमको स्पेसिफिक बढ़ावा देना है। मरीन सेक्टर है, सी फूड प्रोसेसिंग है, उसमें पहले ये होता था कि जो आपने पिछले साल का एक्सपोर्ट किया उसका 1% FOB वैल्यू के बराबर का आप ड्यूटी फ्री कर सकते थे। उसको बढ़ावा देने के लिए उस लिमिट को 1 से 3% कर दिया गया है। फिर छोटा लघु उद्योगों में छाते बनते हैं। अब छातों में दिक्कत यह है कि चीप इंपोर्ट्स काफ़ी आते हैं, तो उस पर हमने ड्यूटी बढ़ाई है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए ड्यूटी बढ़ाई भी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे बढ़ाई है क्योंकि डिटर्जेंट में लगता है, तो उस पर हमने ड्यूटी बढ़ाई है क्योंकि कंपटीशन था। तो हर तरह से सरकार ने बड़ा नुआंस्ड अप्रोच लेके चले हैं कि किस सेक्टर में क्या आवश्यकता है और उसी हिसाब से चलते हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखिए तो हमने कहा है कि अगर आपको रॉ मटेरियल पार्ट्स बनाने के लिए हवाई जहाज का चाहिए जो डिफेंस सेक्टर में मेंटेनेंस के लिए हो, जो MRO ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए हमने कंसेशन दिया है कस्टम ड्यूटी के रेट्स में। तो भिन्न तरह से पर्सनल इंपोर्ट्स के लिए हमने ड्यूटी का रिडक्शन दिया है। फिर कैंसर को फाइट करने के लिए 17 दवाइयाँ हैं, उस पर हमने कंसेशन दिया है। रेयर डिजीज़ेस होती हैं उनकी एक लिस्ट है, तो हमने उसमें 7 और नई रेयर डिजीज़ेस ऐड करी हैं कि अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाए किसी व्यक्ति के साथ, तो जो अगर वो इन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसके इंपोर्ट्स ऑफ फूड आइटम्स या जो मेडिसिन या ड्रग्स जो इसको ट्रीट करने के लिए चाहिए, उसके लिए हमने उसमें कंसेशन दिया है। तो हर तरीके से बहुत ही स्पेसिफिक जाके हमने उसको देखा है कि कहाँ पर हमारी इंडस्ट्री को आवश्यकता है, या तो उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए, रेजिलिएंट होने के लिए, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, और जहाँ पर व्यक्तिगत सवाल है तो इंडिविजुअल्स के लिए भी हमने जैसे बैगेज रूल्स में बहुत चेंज किए हैं इस बार, क्योंकि बैगेज रूल वो होता है जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आप एक टूरिस्ट की तरह या यात्री की तरह आते हैं जी। अब ये 2016 में लास्ट चेंज हुए थे, तो 10 साल से कोई भी आपका जो ड्यूटी फ्री अलाउंस होता है, जो जनरल फ्री अलाउंस होता है एक यात्री के रूप में जहाँ विदेश से आते हैं, वो चेंज नहीं हुआ था। तो हमने उसकी लिमिट को 50,000 से 75,000 किया है, विदेशी टूरिस्ट के लिए 15 से 25,000 किया है। उसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो हवाई अड्डों पे होती थी वो ये होता था कि कई बार प्रोफेशनल्स अपना इक्विपमेंट लेके आते हैं, कैमरे लेके आते हैं, अब वो उसको इंडिया में यूज़ करके और फिर वापस ले जाते थे। अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें या तो उनको उसको डिटेंशन सर्टिफिकेट देना पड़ता था या ड्यूटी पे करके अंदर ले जाना पड़ता था। तो अब हमने उसको बहुत सरल कर दिया। एक सर्टिफिकेट होगा इंपोर्ट के टाइम पे, और जब आप देश छोड़ के जा रहे होंगे उस सर्टिफिकेट को आप कस्टम ऑफिसर को दिखा दीजिए, तो ना तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी और ये बड़ी सहूलियत से आप उस चीज़ को वापस ले जाएंगे।
तो इस तरह के चेंजेस बैगेज रूल में किए, जैसे ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस है, अगर आप विदेश में रह के आ रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने साथ स्वाभाविक लेके आते हैं। 3 साल में आपने इकट्ठी करी है तो उसकी लिमिट जो थी उसको हमने करीब 7.5 लाख कर दिया, अगर आप 3 साल से ज़्यादा लेके आए। उसकी एक हमने विपरीत व्यवस्था भी इस बार करी है जो भी नहीं थी। जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो एक लॉन्ग टर्म वीज़ा पे इंडिया में आने लगे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, विदेशी लोग आते हैं, तो ये सुविधा जैसे हमने भारतीय नागरिकों को विदेश से लौटने पे ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस की दी है, सेम सुविधा ऐसे विदेशी व्यक्तियों को भी जो भारत में एक लंबे समय के लिए वीज़ा पर आए हैं किसी कार्य के लिए, वो अपने यहाँ से अपना सामान लाना चाहते हैं, तो ये सेम सुविधा हमने उनको इस बार भी दी है। तो जो प्रपोजल हैं अगर आप देखिएगा तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ लिविंग है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री है, आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत है, सबके लिए है। Mr. Agrawal, I'll come to you, but Mr. Chaturvedi, you just mentioned about the duty exemption on nuclear imports of goods required for nuclear power projects. So that I believe is until 2035 or so. Yes. Right. So Mr. Agrawal, a lot of hue and cry over the STT, which happened today, and we saw what happened, on the streets today. And also, there had been murmurs, of late of the LTCG and the STCG. Your say on that? Well, we have could this STT kind of a thing could have been kind of offsetted by some concessions in the LTCG or STCG? You see, what one has to appreciate also is that STT on the cash segment has not been disturbed. Right. Because that is more related to investment in shares and securities and all. What has been actually touched is STT on FNO segment. Right. And if you see the volume of transactions that are happening, the growth in those transactions, now in the last about 2 years, 1 year, it has been an exponential growth. Humongous, yes. Humongous. And what is the nature of the transactions? The nature of the transactions is largely speculative yes. in nature. Yes. Right. And who are all the people also who are participating in it? The retail segment who is also participating, but then it is not, apart from the retail, majority of it is also being done by the non-retail sector also. So retail sector people mostly they are incurring losses. Right. So there are 3 components. One is it is rising exponentially. Okay. It is speculative also. People who are participating, retail persons who are participating, they are incurring losses also. So basically the attempt through this is to sort of address these 3 limbs to this nature of transaction. Absolutely. And from a taxation purpose, through a increase in the taxation, so that we contain the volumes that are involved. What is being also reflected through statistics is that the volume of transactions goes up to as high as 500 times the GDP of the nation. Now that's humongous. Right. So that is basically the intent behind coming up with this proposal. Absolutely. Mr. Chaturvedi, if I can come to you, I'll come to you later. If I look at the revenue assumptions in the budget, what I find is very interesting is that in spite of this nuanced rationalization of the customs duty, you are not really projecting a very high growth on customs duty collection. The growth is about 5.5 or 6%. Right. Whereas in excise, you are seeing a double-digit growth after some time. Yes. It was growing at 12% last year. Current year, you are expecting it to grow by 15% next year. Right. Now, my question to you is, if you see it in light of the GST collections, now it continues to be in the negative. The GST collection in the current year would see a sharp drop, contraction, and even for next year, you are projecting a contraction. So my question is that why are you projecting such a nominal growth, less than your nominal growth of the economy and customs, but a sharp rise in excise? And why do you think that the GST tax rationalization did not lead to the kind of buoyancy that was expected of this? So these are the questions that I would like to ask you. All right.
So I'll start with the excise part first. Now, excise, I think the revenues are fairly good right now, and we expect that goodness to remain, largely coming on the back of the levy on tobacco and Zarda, which is a machine-based levy, which has come in addition, of course, to the... Is the cigarette thing also is coming in? Yes, I'll come to that as well. So, tobacco, one part is, of course, the machine-based levy on tobacco products like Zarda, scented tobacco. The other is, of course, the duty element, which is on cigarettes, where we have seen a hike. And mind you, we haven't really had an increase in the duty on cigarettes for quite a while. So that explains a certain degree of optimism on the revenue front as far as the excise collections, going not only into the but this year, of course, we are doing well. Of course, mindful of the fact that in April 2025 we also had a levy of ₹2 per litre on petrol and diesel. So that has taken us so far so good. Next year, with the levies, the hiked levies of excise on tobacco products and cigarettes, we hope to do well on that. Customs revenues, yes. Right now, if you look at our budgetary forecast for this year, we are in excess of our projections. As far as the collections are concerned. Now, your initial question was that the rates that were announced today. Now, as I said earlier, these rates which have been announced today by way of concessions are also with an eye on what you get in return, in the sense that either you're promoting a particular sector for the purpose of the criticality of the sector for the economy and the country, like the energy sector. It could also be for promoting growth and leading to exports, so that the volume of trade increases. So it's not really a revenue measure, so to say. And customs projections are also conservative, because you have to be mindful of the fact that we are also having a lot of free trade agreements which will kick in, and that of course means that a lot of concessions. I think that explains the customs duty. So that should fit the puzzle, if I may say. Now, as far as the GST is concerned, of course the rate rationalization happened in September, and while the consumer and the economy have definitely benefited by way of a lowering, it has also translated into an increase in the taxable value of supply, if you see. For example, the figures that came this morning on the GST cross collection, around 1.99 lakh crore, they're virtually slightly more than what we collected in January of 2025. And mind you, when the rates were different. So, while from the perspective of having had a revision of rates, and therefore of course it will take some time for the supplies to reach that level that you are able to get that buoyancy, and of course we have a certain degree of hit on the GST revenues. But in the long run, as we go ahead, as the GDP grows, as the economy grows, we are hopeful that of course, if not in the immediate term, somewhere in the short to the medium term, we should be able to start hitting those levels again as the taxable supply increases, there's more purchasing power, there's more choice for the consumer, and of course the overall market sentiment that should of course also remain. Okay. So on GST you are very hopeful that things will probably... It should, yes. The buoyancy will kick in. Yes, because I don't think we've done too badly. If you look at the figures of the gross collections, we are slightly more than what we were last year this time. Yeah, but nowhere compared to the nominal economic growth. Yes. So आपको लगता है कि compliance better हुआ है, tax administration better हुआ है, digitization की वजह से जिसका impact देख रहे हैं? देखिए, digitization बहुत ही बड़ा कंपोनेंट रहा है, खासकर जीएसटी की जो व्यवस्था है उसमें डिजिटाइजेशन के बिना शायद हम इतना नहीं भी कर सकते थे। उसके अलावा जो सरलीकरण हुआ है रजिस्ट्रेशन में और रिफंड में, खासकर अगर आपने नोटिस किया हो, हमने कहा था कि हम 90% प्रोविजनल रिफंड देंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का और ज़ीरो रेटेड का, तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जब इंडस्ट्री और ट्रेड के हाथ में वो पैसा आता है और काफ़ी सुविधापूर्वक तरीके से आता है, तो वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक नहीं होता है और रिफंड्स आर ऑल्सो हैपनिंग। तो सरलीकरण और प्रोसेस रिफॉर्म्स और जो डिजिटाइजेशन है, ये तीनों की वजह से काफ़ी हद तक कंप्लायंस अच्छी भी हुई है
और उसका असर दिखा। मिस्टर अग्रवाल, एक जो केंद्र बिंदु बताया गया है जो कि हाइलाइट्स हैं बजट की, उसमें ये है कि डायरेक्ट टैक्स द्वारा आईटी सेक्टर को सपोर्ट दिया जाएगा एज इंडियाज ग्रोथ इंजन, और उसमें ये सेफ हार्बर की बात की गई है। ये बता सकते हैं कि ये क्या है? ये जो थ्रेशोल्ड सेफ हार्बर का आईटी सर्विसेज के लिए 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया गया है, ये किस तरह से लाभदायक होगा? जितनी भी हमारी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, या जो केपीओज हैं जहाँ पर ये हम आउटसोर्स करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आर&डी है, ये सब 4 कंपोनेंट्स हैं आईटी इंडस्ट्री के जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक जिनका कि टर्नओवर 300 करोड़ था या उससे कम था, वो लोग सेफ हार्बर के प्रोविजंस को ऑप्ट कर सकते थे। और उसमें सेफ हार्बर का मतलब ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि ये बाहर की कंपनीज के साथ होता है कि यहाँ की कंपनी और बाहर की कंपनी के बीच में किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें कितना परसेंटेज मार्जिन होना चाहिए। तो परसेंटेज मार्जिन ये था कि अलग अलग का था, आईटीएस का 1% मार्जिन था, केपीओ इंडस्ट्री का अपना अलग मार्जिन था, आर&डी का अलग मार्जिन था। अब कोई आईटी इंडस्ट्री है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ या दूसरी कैटेगरी में फॉल करता हूँ, तो वही अपने आप में डिसवेट करता था लोगों को इसको ऑप्ट करने के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एंड टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री, दिस वर्टिकल, ये इन सब चारों सेक्टर्स को एक साथ मिला दिया गया। तो अब ये कैटेगराइजेशन का डिस्प्यूट खत्म हो गया, चाहे वो आर&डी प्रोवाइड कर रहा है या आईटीएस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अगर आईटी इंडस्ट्री है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो गया। दूसरा क्या किया गया कि इसको जो टर्नओवर था, टर्नओवर को 300 करोड़ से बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया। तो अब हम लोगों ने इंडस्ट्री को टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री का देखा कि भाई ये जितनी आईटीएस इंडस्ट्री ये सब जितनी है वो टोटल हैं कितनी, तो निकल कर आया करीब 10,000 कंपनीज हैं जो कि टोटल है। तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ये 2000 करोड़ के नीचे हैं, तो यानी सारी एलिजिबल हो गई फॉर दिस सेफ हार्बर। और फिर अलग अलग जो रेट्स थे जो पहले थे उसको भी रैशनलाइज करके उसमें 15.5% का रेट लगाया कि जो कोई भी आपका वर्टिकल हो इनमें से 15.5% का अगर आप सेफ हार्बर हमने आपको दे दिया, तो अब एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इसको ऑप्ट करेंगी और उससे टैक्स सर्टेनिटी आएगी। जब टैक्स सर्टेनिटी आएगी देन पीपल वुड गेट प्रमोटेड एंड एनकरेज टू एक्चुअली वर्क। अब जो बची हैं उनका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एपीएस कहते हैं हम लोग, तो वो करीब 100 के करीब बची हुई हैं। तो जो बड़ी हैं इंडस्ट्रीज हैं उनका फिर वो सेफ हार्बर की जगह ये अपना एक डिटेल्ड एक्सरसाइज होगी, और उसमें भी हमने समय सीमा तय कर दिया। पहले ये ओपन एंडेड था, तो अब ये है कि अगर एपीए आईटीएस कंपनीज की अगर होगी तो 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे। इसका कोई रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है क्या? इसके रेवेन्यू इम्प्लीकेशन रहेंगे कितने ये 15% है, 15% जो मार्जिन रहता है उसके ऊपर फिर टैक्स आएगा 35%। तो इस तरह से दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, और आई थिंक कि ये इफ आई मे से इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। So I wanted to ask you another question. If yes, please. The finance minister made a big announcement on this tax holiday for cloud services companies in the data centers. Yes. And we have heard about $75 billion of investments have been promised in this country. But there's also some, some clauses or conditionalities that have been put in that they have to service the Indian customers. Now, what is the tax holiday package for these foreign investors to come in and enjoy the tax holiday facility in this country? Can you throw some light on this? So, like for example, any app, any TV programs that we see, right? So those are basically provided through internet, through cloud services. So how does it operate? It operates, what is cloud? So cloud is basically set of data centers, servers all across, maybe somewhere in India, some would be in some other country, some other country. And when you actually see a program, it is not necessary that you see a program from a server which is only based in India or some other country. It may be a combination of so many servers situated at different parts of the world. So
data center, setting up of a data center is also a infrastructure sort of initiative, which also brings a lot of jobs and it triggers economic activity also, and therefore we need to promote this data center. Now, the hesitation on part of the global chain was that if they come here and they host their data in the servers that are situated in India, they would be considered to have a permanent establishment. PE. And once a PE is established, then their global income could be subject to tax, which was a big cause of concern for them. So what has been actually brought out is that the data center situated in India would provide physical infrastructure and space for the servers and all those things, but the application, if it is application of an outside entity, that entity can actually place their applications here on the servers that are situated in India, and then their income would not be subject to the global tax, though the PE would be there because that business establishment is there, but then an exemption is given that it will not be basically taxed, the global income would not be taxed. And to provide that certainty, this is made available to 2047. So for 20-21 years, this certainty would be there. That would actually prompt the outside players to come here, incentivize them. Incentivize. Absolutely. Now, if they actually provide any application or some program in India, then they would have to come through an Indian reseller, and Indian reseller income would be subject to tax. So that's how the system would work. Mr. Agrawal, there was a talk in the budget speech of the Honorable Finance Minister about the amnesty of people who had hidden income or assets in the foreign land, which they might not have declared. Now, there is, I guess, a one-time amnesty or a one-time pardon sort of a thing. Could you walk us through the procedure? Yeah. It's not an amnesty, actually. It's not an amnesty, of course. That would be a fine and immunity. Fine. Immunity, yes. Yeah, it is. That's the correct term. Yes. Yeah, so it was basically providing a window to to such persons to actually come forward and declare their assets. So, if you recall, in 2015, when this Black Money Act had come, the government had provided a window of about 3 months for the people to actually come out and disclose on their own accord and pay the taxes and commensurate penalty and complete the process. So some people came, some mostly did not. But then subsequent to that, in these 10 years, regular information through automatic exchange of information is now flowing from different countries to India on an annual basis. So about 35 lakh to 40 lakh pieces of information flow to the database of the tax department, and what one finds is that there are genuine mistakes on part of the taxpayers, the small taxpayers, for example students. They've gone there, they've opened a bank account, they forget to actually disclose those assets, or some professionals, some ESOPs they've got and they have not disclosed the income because it's more for on account of ignorance on their part. Right. So to take care of such people and to provide them that opportunity to declare their income and to pay the taxes and close the issue, this window has been provided. But why is the cutoff at 5 crore? Basically to ensure that only small defaults like these. So the big ones will get caught. जैसे आप संवेदनशील बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स उनके शायद स्टूडेंट्स हैं. The 5 crore is a very important thing. Exactly. It must be based on the database that you have. Yeah, so it's basically. So, Mr. चतुर्वेदी, अभी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे. उस संदर्भ में जो कार्गो क्लियरेंस अप्रूवल्स में जो चेंजेस हुए हैं और जो कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात की गई है, उसके बारे में बता सकते हैं कि ये कैसे हेल्प करेगा? जी बिल्कुल. तो जहाँ तक कस्टम्स की प्रोसेस के सरलीकरण का सवाल है, उसमें हमने कुछ कदम सरकार ने इस बार उठाए हैं. बजट में उसका अनाउंसमेंट भी हुआ है. इसमें ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी एक ऑथराइज एक्सपोर्ट ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर स्कीम है, और उसमें हम ये सुविधा देते हैं कि आप माल ले आएँ और उसके बाद ड्यूटी तत्काल ना दें, आप हर 15 दिन के इंटरवल पे दें.
तो इसको ड्यूटी डिफरल कहा जाता है। और इस ड्यूटी डिफरल को हमने उसकी जो मियाद है उसको 15 दिन से अब 30 दिन किया है। तो इफ़ेक्टिवली आप आज पूरे महीने तक आप माल ला सकते हैं और उसका जो ड्यूटी का भुगतान है वो महीना ख़त्म होने के बाद पहली तारीख को कर दें। तो एक सुविधा हम ये लाए हैं। इसी के साथ एक और जो हम चेंज और लाने वाले हैं वो ये है कि एईओ में करीब कुछ चंद हज़ार हमारी एंटिटीज़ हैं जो अभी हैं, और हम चाहते हैं कि इसका हम दायरा बढ़ाएं। अब दायरा बढ़ाने के लिए हमको अपना कैचमेंट एरिया देखना है। तो हमने एक प्रोविज़न किया है कि मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर जो हैं, जो भारत में कोई माल बनाते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं और जो इंपोर्ट भी करते हैं, वो एक अश्योर्ड एंटिटी है, उसकी फैक्ट्री भी होगी, उसका पता भी है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर को हम इनकरेज करेंगे उनकी एप्लीकेशन लेके, और हमको वही सुविधा हम उनको देंगे जो हम आज की डेट में एईओ को देते हैं, विच विल बेसिकली भी डिफरल ऑफ ड्यूटी, कि आप 1 महीने बाद अपनी ड्यूटी करिए। और उसके अलावा कुछ और कस्टम्स की जो प्रोसेस हैं उनका हमने सरलीकरण इस बार सोचा है। जैसे जब आपका जहाज़ से माल उतरा तो बहुत सारी कस्टम्स की प्रोसेस हैं, आपको गुड्स का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, माल का एग्जामिनेशन होता है, कभी कभी दूसरी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर आप खाने पीने का पदार्थ लाए तो उसमें आपका प्लांट क्वारंटाइन आ जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी आ जाएगी। तो ऐसे सब चीज़ों में काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसे क्लाइंट्स को जो एईओ हैं और जो मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर हैं, हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑटो हो जाए, और अगर कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका माल भी सीधे कस्टम्स के कंट्रोल से ड्यूटी पेमेंट के बाद सीधे आपकी फैक्ट्री में पहुंच जाए। और उसकी जो रिवर्स सुविधा है वो हम अपने एक्सपोर्टर्स को भी दे रहे हैं कि आपका फैक्ट्री से माल सीधे कस्टम्स तक आएगा और बिना किसी इंटरवेंशन के लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा प्रेडिक्टेबिलिटी देखने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का, जिसमें मैं एक रूलिंग ले सकता हूँ आपसे एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, और वो रूलिंग वैलिड होती है। मेरे इंपोर्ट्स एक पर्टिकुलर पोर्ट पे आएंगे तो उसका क्लासिफिकेशन कांस्टेंट रहेगा। तो इस सुविधा को हमने बढ़ाने के लिए इस बार कदम उठाया है। हमने कहा कि वैलिडिटी ऑफ द रूलिंग विल इंक्रीज फ्रॉम 3 years to 5 years। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है कोरियर एक्सपोर्ट्स पे। कोरियर एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ा हमारा एक सेगमेंट है, इंडस्ट्री बहुत उभर के आ रही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कोरियर, और खासकर हमारे जो लघु उद्यमी हैं वो जब विदेश में अपना सामान भेजते हैं तो कुरियर के थ्रू, क्योंकि जल्दी पहुंचता है और उसको भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें भी लिमिट थी 10 लाख रुपए तक की। तो अगर आपका कोई सामान 10 लाख से ऊपर का है तो आप कुरियर से नहीं भेज सकते, आपको कार्गो या समुद्र के रास्ते भेजना है। तो वो लिमिट हमने हटाई है, और इससे बहुत फ़ायदा होगा हमारे हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनर्स, नीश आइटम, बीस्पोक फर्नीचर टाइप के जो लोग डील करते हैं, क्योंकि उनके तो एक एक माल की कीमत ही 10 लाख से ज़्यादा की होती है। इसमें एक दिक्कत और आती है, कई बार बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कंसाइनमेंट्स, बड़े बड़े कंसाइनमेंट को सीधे एक बार में भेज दें और फिर उनको टुकड़े में तोड़ के वो विदेश में भेजते हैं। तो 10 लाख की जो कीमत की जो लिमिट थी उसकी वजह से उसमें अविरोध होता था, तो वो हमने हटाया है। इसी के साथ एक और समस्या होती है कि आपने माल तो भेज दिया, उसके बाद वो रिजेक्ट होके आ गया या रिटर्न होके आ गया, किंचित कारणों से कस्टमर ने नहीं लिया, तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा जटिल होता था कि उसको माल खोल के देखा जाता था, उसको एक फ्रेश इंपोर्ट की तरह ट्रीट करते थे अगर आइडेंटिटी न इस्टेब्लिश हो। तो हमने ये प्रावधान किया है कि डिजिटली हम जो डॉक्यूमेंट आपके एक्सपोर्ट के टाइम पे थे उसी को हम इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट से मैच करके देखेंगे और सिस्टम बेस्ड उसमें एक डिटर्मिनेशन करेंगे और उसके बाद उस माल को जाने देंगे। तो उससे काफ़ी असुविधाएं जो एक व्यक्ति को होती थी वो होंगी। उसके अलावा पर्सनल लेवल पे बैगेज रूल्स जो थे, जैसा मैंने आपको बताया 2016 से हमारे यहाँ चेंज हुए थे, तो उसमें हमने काफ़ी चेंज किए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया है जो हमने कस्टम एक्ट में एक चेंज किया है, द डेफिनेशन ऑफ इंडिया एज डिफाइंड विच गोज बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, वो हमने स्पेसिफिकली किया है अपने फिशरीज और फिश लैंडिंग के लिए, जिससे कि हमने अपने फिशरमैन को वो सुविधा दी है कि आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी अगर फ़िश हार्वेस्टिंग करेंगे और उसको अगर बाद में मेनलैंड में लाएंगे तो वो इंपोर्ट नहीं होगा, और आप वहीं से पकड़ के उसको अगर प्रोसेसिंग के लिए आगे विदेश में भेजना चाहें तो उसको हम एक्सपोर्ट मानेंगे। तो ये बहुत सारे इस तरह के कदम हैं जिसकी वजह से प्रोसेस का सरलीकरण होगा और इससे पोर्ट पे कंजेशन ख़त्म होगा, सुविधा होगी आयातों को और निर्यातकों दोनों को अपने माल को और सुविधा से भेजने और लाने की। Sorry. Yeah, please. I have one question to both of you.
because it's rare to get both of you together. and this question is about overall revenue projections, and the question is as follows: that in the current financial year, the nominal growth of the economy is going to be 8%, but you still have managed to grow your revenues, tax revenue, gross tax revenue, by 7.7% or so. But next year, your nominal growth projection is going to be 10%, but you'll be growing at only 8%. Now, is it conservative budgeting, or you are preparing for something that we don't know and you know? Because 8% on a nominal growth of 10% looks to me in a way gross underestimation. It should be at least be 10%. No, so far as the direct taxes is concerned, if you see that today, this year, the nominal GDP is 8%, and the growth that is projected is about 8.7 or something. So therefore, it is with a tax buoyancy of 1.07, right? So we would be able to get that. And the next year, the projection is 10% GDP growth. But your growth is much less. No. In fact, the growth there also in the direct taxes is also above 10%. Because not direct tax, I'm talking about the overall revenues. आपके उसमें you are right. Direct taxes you have recovered on income tax hugely. Yeah. So but I'm saying overall, especially because of indirect taxes? Largely the GST part is. The GST part is thing. Mr. Agarwal, one section, I mean a large section rather of the citizens would be be very interested in having a house of their own. So what does the budget present them as far as the housing segment or the housing support is concerned? You see, the provisions that were there earlier, those remain. So therefore the deduction on account of interest, that is available, right? So that is one, and then the rollover, that in case you sell a certain asset and then you invest in the other asset, that is there. So these are the provisions that are there for taking care of the requirements as you have mentioned. All right. Mr. Agarwal, जो ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम, उसको लेकर अभी क्या स्थिति है? किस हद तक चेंज ओवर हो गया है एडॉप्शन में टैक्स पेयर्स द्वारा? तो अगर हम देखें इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, HUF हुए, इंडिविजुअल्स हुए, जो कि नॉन बिजनेस है, उसमें करीब 82-83% लोग जो हैं वो आ गए हैं न्यू टैक्स रजीम में. और अगर हम इंडिविजुअल्स और HUFs और इस तरह के जो प्रिजम्पटिव टैक्स के हमारे बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उनको अगर हम साथ में अगर क्लब कर लें तो अबाउट 88% लोग न्यू टैक्स रजीम में आ गए हैं. जो हमारी नॉन ऑडिट फर्म्स हैं, वो उसमें न्यू और ओल्ड टैक्स रजीम का अंतर नहीं है, क्योंकि उसमें तो रेट ऑफ टैक्स सेम है. जो हमारी कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, वहाँ पर अभी इन टर्म्स ऑफ इनकम अगर हम लेके चलते हैं तो एज इन टर्म्स ऑफ इनकम अबाउट 60% ऑफ इनकम इज़ नाउ इन द न्यू टैक्स रजीम. बाकी जो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम देखे चलेंगे कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पर क्योंकि लॉस मेकिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ करीब 50% हैं, वो अभी भी ओल्ड टैक्स रजीम है. बट वी बिलीव दैट जो ये हमने नया मैट का प्रोविजन जो लाए हैं, जिसमें कि अब है कि जो क्रेडिट अगर उसको लेना है तो नए टैक्स रजीम में आके लेना है, perhaps that would also persuade people to come to the. Also, the tax rate is at 14% now, so which is very. So जो minimum tax है, it's not minimum alternative. हाँ, so minimum alternative tax नहीं है, minimum tax है. Minimum tax has been reduced from 15% to 14%. So that's an attraction. Yes. So that's what basically. So we feel that going forward, direct tax, ये अपना new regime में, people would be persuaded. So that brings to an end of this section of the discussion, wherein we had just 2 and 3 rather very distinguished guests, Mr. Ravi Agarwal, Chairperson CBDT, Shri Vivek Chaturvedi, Chairperson CBIC, and Mr. A.K. Bhattacharya, Senior Economic Journalist. Stay tuned, because at 10:10 p.m. we will be coming back with an exclusive interactions with the secretaries from the finance ministries. Thank you all of you gentlemen for having joined us. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Union Budget 2026-27. केंद्रीय बजट 2026-27। Union Budget 2026-27. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट 2026-27 में विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना है। वित्त मंत्री ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और खादी, हथकरघा तथा हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। इस नई पहल से बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों और एक जिला एक उत्पाद तथा ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2% है और 2025-26 के बजटीय अनुमानों की तुलना में 15.19% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजित करने पर जोर दिया गया है। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट देश की कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान नहीं देता। केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग संगठनों ने भी बजट की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर के डेरा सचखंड बलना में संत गुरु रविदास जी की 649वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पद्मश्री संत निरंजन दास और उनके शिष्यों ने उनका अभिनंदन किया। डेरा पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा आदमपुर का अनावरण किया। और खेलों में भारत की युवा खिलाड़ी देविका सिहाग ने आज थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद देविका ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ 22 वर्षीय कार्लोस अल्कराज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।
और जिम्बाब्वे के बुलावायो में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwani, the news read by VC Pramod. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for the year 2026-27 in the Lok Sabha today. This was the 9th consecutive budget presented by her.